centric approach, young India centric approach that Delhi began to have. But then things have just fallen. Look at Prithvi Shaw, classic example. You know, a boy with so much talent. You know, there are backers, there are people who still have nothing but positive things to say about Prithvi year after year after year. And but I mean, to the common eye, we all know what we are looking at, right? So there are a lot of corrections required now. How is Delhi seeing this? How does Delhi want to see this? Do they want to use this season to kind of somehow get through and then probably plan? See, this is I keep on repeating this. I'll give an example. Delhi, considering the Bombay bunch that they have in the middle order, by now they would have identified that here is this young boy Mushir who they can invest in, right? Let's say they buy Mushir. Any franchise, I'm thinking would want to buy Mushir Khan, would buy with the option that they can retain him next year. Because this boy is going to be picked up at a good thing. Should he come back into the mega auction list, right? So franchise would be looking to buy a Mushir now, keep him, kind of whatever at the lowest salary grade, retain him, so that you don't really have to think about it in the mega auction. So that is something I would like to see Delhi doing, which is use this to kind of look at the big picture and kind of play the game of patience. Jimmy, but barring the couple of innings here and there, Prithvi Shaw ka jo pichla season tha, looking at that, can Delhi go for someone who is also a keeper and can bat up the order, like probably in the opening slot? What do you have to say? They'll have to. Look, we discussed this yesterday. Delhi need an overseas opener and a keeper, and like we discussed yesterday, they need an Indian opener. Because Prithvi Shaw, fitness issues and form, this is always going to be a problem with him, even in the best of times and the worst of times. So if there's planning, they're batting around Prithvi Shaw being a reliable opener. Unfortunately, I think they're not going to go very far. Again, we discussed it yesterday. They have David Warner, World Cup winner, as opener. They have Mitchel Marsh, World Cup winner, at number 3. Why not go for Travis Head? You know, Travis Head is the flavor of this year, along with Pat Cummins. Man of the match in the World Cup final, man of the match in the World Cup semi-final, man of the match in the WTC final. So the 3 tournaments, the 3 big matches for Australia this year, Travis Head has been a constant. Recency bias bhi hai. He made a late start to the World Cup, got a blistering some 68 ball 100. Uske baad, when he took, like I said yesterday also, when he took 2-3 days to recover from the high of the World Cup, he played just 3 T20s. In those 3 T20s in Indian conditions, he gave blazing starts, 35, 34, 28. So a team like Delhi, I would imagine, would see someone like Travis Head. Now, they also need a keeper because Rishabh Pant aa sakte hain, but Delhi Capitals ko filhal ये सोच के जाना पड़ेगा कि ऋषभ पंत नहीं आ रहे. That's your worst case scenario. आएंगे तो great. You need someone. Josh Inglis is there. Kusal Mendes is there. You need keepers who, like you said, top order batsmen. Josh Inglis got a blistering 100. It came in a lost cause. But recency bias, you might see him get some bidding. Kusal Mendes, traditionally Sri Lankan keeper batsman, कभी नहीं गए IPL में, but someone like him can open, can bat 3. So Delhi's main weakness is जब से शिखर धवन गए वो जूझ रहे हैं कौन आएगा next. I would say go for either Travis Head, like you rightly said, keeper चाहिए, Josh Inglis है, Kusal Mendes है. Do not go, without being disrespectful, do not go to that Abhishek Powell type level. हो सके युवा खिलाड़ी है, बहुत talent है. You need to be made of slightly tougher mentality. That's why in the history of the IPL, only one uncapped keeper batsman has come to the fore, and that's Rishabh Pant. No disrespect, कोई और खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाया. I would want to see them go for international top order keeper batsman. Chinmay, I'll just come to you. Sahil, considering the purse they have, Delhi Capitals 28.95 crores, they can bid for someone like a Travis Head or Kushal Mendes. They should, they will. And they will go for Travis Head, that is for sure, because Warner, you are not sure how long he's going to play, right? And again, this is like a 2.5 month thing, but if you get someone like a Travis Head really cheap, you can also end up retaining him before the mega auction, because he's someone you can like invest in for the next 2-3 years. Actually, he said keeping the big picture in mind. But the keeping option, I think Abhishek Powell, they definitely, I don't know why he's still retained. I don't. That's a backup, I guess. But still, there are plenty of good keepers in India right now, and Abhishek Powell, except playing for Bengal, hasn't done anything of major note that he was retained. And last year Delhi were all at sea, boss. You can't have a Abhimanyu 20 side. What was happening there?
And that was all baffling. And right now, I think Urvil Patel is one keeper. Gujarat, top order batter, scored a 40-50 ball 100 this year only. Gun player, was with Gujarat Titans, was released. But I think that is one backup keeper they can have. But completely agree with Jamie that you need quality at top of the order. That's for sure. With that, we have started with the auctions as well. But Chesma, you were saying something. About PC. If there's anybody who knows what is the exact status of Rishabh Pant, that is Delhi Capitals. They can't afford another season without him. उनका season शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था last year. Like Sahil said, they were giving tryouts mid-season. They need so much in terms of their batting, and Rishabh Pant is not just a keeper; he's a captain. He's a prime batsman. It's just they know what is going to happen, and I think this time they are going to prepare in case Pant is not available. But without Pant, I don't see them going anywhere. Moving on to Mumbai Indians, Srini, 17.75 crores overseas. They have total of 8 slots, 4 overseas. What do they need? Just because almost everything is sorted for them. Bowlers. Desperately. Mitchel, Starc, Vanindu Hasaranga. Or that guy, Gerald Coetzee. One of these three is a must. And if they can bolster their bowling attack, they are literally they are very much India's favourites. And the way Coetzee performed in the World Cup, that just adds up. Yes, but then also Hasaranga, especially in conditions like Wankhede, I wouldn't be surprised. Jamie, what do you think? Left arm spinner or a premium pacer? Look, I think this has also been said before also. Piyush Chawla was exceptional. But if you're relying on Piyush Chawla to do it again back-to-back years, आपकी bowling थोड़ी कम है. You have Kumar Karthike, Ritik Shaukin अभी नहीं है. You need to replace, like Shane said, you need a fast bowler and you need a spinner. अब Lasith Malinga वापस आए हैं. Someone like a Dilshan Madhushankar, again, I go back to recency bias. Coetzee was brilliant, but where did Madhushankar first make his name in that World Cup? Second ball, Wankhede when he bowled Rohit Sharma, right? At one point for about 10 days, वो इस one-day World Cup के leading wicket taker थे. समाप्ति पर वो number 3 पे थे. 18 wickets he had, 18 wickets Gerald Coetzee had. Both are, but 23, 24, left armor, Malinga factor, and I'm going to have to agree with Srini. Hasaranga की ज़रूरत पड़ेगी, and maybe Malinga will rope in these two players. Okay, Sahil, just coming to RCB. A budget of 23.25 crores. They have 6 slots left, 3 overseas. A lot to fix up. Though they have a pretty balanced squad. They have a Lomro probably in the middle order for now. Anuj Rawat is there, DK is there, then Virat, Faf, and Maxwell. But they still need bowlers who can contain. Their top 7 are sorted. You have Faf, Virat, Rajat Patidar, Glenn Maxwell, Cameron Green, Dinesh Karthik. Then you can have probably also Suyesh Prabhudesai you can chip in, or you can try a Mahipal Lomrod who has been doing well for Rajasthan in the domestic circuit. So I think the 7 is sorted. You have Karan Sharma as your leggy. You have Mohammad Siraj. I think what they need right now is a bloody good death bowler. That is something which is required after Harshal Patel's inconsistent returns last season. I think they need someone at the death. They have Topley. I think they have retained Topley, but you can't trust Topley to last 14 games. So you need a good medium pacer for sure. They need someone who can play that containing role, or probably someone who can bowl in the death. Because you talk about Vijay Kumar Vaishya, Siraj, Akashdeep, Topley, they give away runs at times. So do you think they need a containing bowler, probably in the power plays more than the... They need good fast bowlers for sure, because see, you need to fill in Hazelwood's shoes also, and he was very good for RCB. He wasn't that bad. With Siraj, with the new ball, I think both of them made a good pairing. And so you need some sort of bowler in that mold who can do the job up front and in the final overs. But more than that, I think they still haven't found that perfect bowler to replace Yuzvendra Chahal. Even that Hasaranga experiment fell flat. So they need definitely a good left arm spinner or leg spinner for sure, who has the heart to bowl at Chinnaswamy. Not the skills. Everyone has the skills. You need a big heart to bowl at Chinnaswamy. But again, you also need somebody from the domestic circuit who has been performing really well. Uncapped one. Do you think RCB can make that change? Can go for that innovation this time? So see, RCB camp, from what I heard, they had a camp right before the auction. And there was a Delhi bowler, Mani Grewal, who attended those camps, and I think he bowls quick. He's 145 plus, very strongly built boy, hits the deck hard.
and he is strong, six-pack abs and all that jazz. So he's strong and hasn't played a lot of cricket for Delhi, but he's in the under-23 CK Naidu probables this year. There's another spinner who I have played a lot of cricket with, Digvesh Rathi, another Delhi boy, played under-23, under-25, mystery spinner, has the ability to bowl 4 different deliveries. So he could be one bowler to watch out for too. But I think Anshul Kamboj, you were mentioning right before the auction that he was a net bowler last time around. So they need those bowlers, but I think more than that, they need an out-and-out good fast bowler, and they could well go for Mitchel. And he's coming from a very good Vijay Hazare tournament. He picked up 15 odd wickets in those games for Haryana. There's a bidding war going on for Rovman Powell, who had a 1 CR of base price, and it's between KKR and Rajasthan, if I'm not mistaken. Chetan bhai. Yeah, a little surprising that Rajasthan Royals are going for it. I'm not sure where do they have a spot for him, because maybe as a backup batsman, because Josh Butler might not be available for the entire season. So they are looking at, he's obviously the mini auction. So you're looking at somebody who's there just for a season. They're looking for a backup for Josh Butler is my thought. They have Shimron Hetmeyer in the middle order. Unka middle order mein, I thought they need somebody else. So not somebody like a Rovman Powell. And KKR again, I'm not sure, because they do need a top order batsman. Like he has an issue against spin. That's very, very widely known. But let's see how it goes. For now, these are the two sides which are going for him. It'll be interesting to see which of them gets it, and उनका किस तरीके से change होगा dynamics team का, वो देखना बहुत जरूरी है. For now, I think both of them are actually. Did we get a green light there? Has some team got it? 7.4. But it's hilarious because RR had a budget before this of 14.5 crores. And they've spent 7 crores. 7.4 crores. 7 crores on Rovman Powell. And they still have 7 slots and 2 overseas left now, if they've picked him up. This is another Rian Parag move. No, he bats 5-6. But Jamie, why would they need... Jamie, I'll just... This just goes to say, while you were talking, I was looking at the other screen, I'm just laughing. हम इतने सोच के आते, plan बनाते आते, हम यहाँ बैठे, हमें घंटा मालूम कि ये franchises कैसे सोचते हैं. I mean, who would have thought, just yesterday on Cricket Next Soumya, I was saying I'm struggling to put together 5 names. Did anyone think the first name, Rovman Powell, would go for 7? Like Chetan said, he does not bowl. He's got a spin problem. He's been extremely inconsistent in the IPL. But he just got a match-winning 50, 5 days ago. So forget the World Cup. People are probably, picking him on what he did last week. Very, very surprised that RR have spent half their money. No, but they're missing one point here. He's the captain of Barbados Royals. Rajasthan Royals sister concern. That's a concern. So they are tournament आपको India में खेलना है. No, that's fine. नहीं India में खेलना है. But I'm saying कि they are taking a look at the performances. Hear me out. Look at the budget. Yeah, that's fine. Budget की तो आप छोड़ दो. अब आप auction में आते हो, budget के बारे में नहीं सोचते हो. This is a huge, I don't know, it's a negative for them to go at 7.4 crores. But what I'm saying is, they've seen his performances in the CPL. They've seen what he can do. They've seen something that DC didn't see, we didn't see. Sahil obviously has just said he bats at 5-6. He bats at 5-6 because Delhi mein he was not going to get that top order spot. You look at CPL, he bats in the top 4. But यहाँ पे, from that perspective, how are you? Rajasthan Royals ka top 3 is fixed unless and until you're thinking. Do you think then Rian Parag gets his position to bat at? If you have Rovman Powell at 5 or 6, he can bat at 4. I don't know. I can't make sense of this price tag for sure. The auction, okay, fine. You wanted Rovman Powell, you get Rovman Powell, but why so much interest in Rovman Powell on basis of one CPL? We saw what happened with him at DC, boss. We saw what happened with him at DC. He was struggling. He wasn't able to read the googlies. Okay, on a serious note, Srini, I'll just read out the squad now, including Rovman Powell for Rajasthan Royals, Josh Butler, Sanju Samson, Yashasvi Jaiswal, Shimron Hetmeyer, Kunal Singh Rathore, Dhruv Jurel, Dovin Ferreira, Rian Parag, Ashwin, Chahal, Adam Zampa, Trent Bolt, Kuldeep Sen, Avesh Khan, Prasidh Krishna, Sandeep Sharma, and Navdeep Saini. Where do you play him? Well, as I said, I mean, looking to the only connect that I can see is the Caribbean Royals, kind of the link that they're trying to, and this is something that even KKR, by virtue of having run their CPL franchise, they always had players who could give them that cross connect, between their Indian franchise and the Caribbean franchise. Maybe it's a branding exercise. Other than that, I don't see any reason why Rovman Powell for
4 4 CR. crores. Yeah. I mean, let us shut shop and go back because I don't know why are we even discussing. And logic on that here. note, Jamie, really Rosso has got unsold. Expected? Yeah, absolutely expected. Look, he's done some fantastic things for South Africa and across the T20 franchise landscape, but unfortunately last year he didn't do anything. और जब आपको बहुत बड़ा मौका मिलता है, लगातार 3 पे खेल रहे हो, 4 पे खेल रहे हो, when you don't do anything in 8, 9, 10 games, very, very tough. Yeah. You can do what you want to do in the BBL and CPL and all those leagues. अगर आप Indian conditions में 1 साल तक कुछ नहीं करते हो, मुश्किल है आपको वापस आना. And I don't know why he set his base price so high. For me, this is a surprise. For me, this is a surprise. 7.4 is a surprise, you know. No, it is. But what I'm saying is कि अगर आप Rovman Powell के लिए जा रहे हो, तो why is KKR not going for Riley Russo? He does the same job. That's in the sorry middle. to interrupt you, Chetan. RR are going for Harry Brook, Hammer and Tongs. Wait. The bid is over 3 crores already. No, wait. We'll get to that. But my point is कि Riley Russo को अगर आपको चाहिए, KKR they've missed out on. It just does not make sense. Why did they not go for Riley Russo at all? Because they were saving money for Harry Brook. Rajasthan are going for Harry Brook. Right? Rajasthan are going for Rajasthan Harry and Brook. DC are in a bidding war, so to say. 3.4 crores already. DC I understand. DCI, yeah. DCI Because they still need थोड़ा meat चाहिए उनको middle order में. अगर especially if Rishabh Pant is not there, they need somebody जो Mitchel Marsh के बाद आके कर सके. And Harry Brook is going to do that role only. वो हम देख चुके हैं. He's not going to be a top order batsman. So and DC have the money. Rajasthan 5 करोड़ के बाद तो राजस्थान चुप हो जाएगा ना. Yeah. But I think उनको ज्यादा शॉपिंग का जरूरत भी नहीं है. 11 तो उनका मैं उंगली पे गिन सकता हूँ. किसका? राजस्थान का जरूरत नहीं है. I think But just still, a that couple doesn't in make the sense middle for order. I don't Roman Powell to know. go at 7.4. No, I'm very 5 was surprised. still I'm fine. very If they surprised. needed, if Rajasthan needed a middle order batsman, then they should have saved their money for Harry Harry Brook. Brook, exactly. The only reason Rovman Powell they went hammer and tongs for 7 point, it does not make sense. The only reason is he is Barbados Royals ka captain. They know what he's capable of, but in a different league. His performances in the IPL do not, and I think we are all in agreement here. His performances in the IPL do not warrant 7.4 CR. That too, जब राजस्थान के पास सिर्फ 14-15 They have करोड़ है. everyone. Yeah. And they have everyone. That's a balanced This is, squad. Maybe I was thinking they would use their money to go after another bowler to back up to be with Probably a domestic left arm bowler. Yeah. And yesterday we were talking about Madhushanka, who has a base price of 50 lakhs, but they could get into a bidding war for Madhushanka, and the other teams they might have their money. Auction में एक चीज आपको डायनामिक जरूर ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है और कितना बाकी टीम्स आपको उस पैसे की वजह से कितना मैन्यूवर आउट कर सकती हैं. If somebody has 20 crores in their pocket and Rajasthan has only 7 crores, आप कितना दूर चले जाओगे उस bidding war में? I think that's, I don't know. I mean, I'm not the expert I don't have the analysis that Rajasthan Royals does, but they know something that we clearly don't. But Srini, why is Sunrisers not bidding for Harry Brook? They haven't gone for Rovman Powell. They do make these kind of decisions and they have the budget, they have the purse. Sunrisers haven't, have they? They haven't. Wasn't Sunrisers? Harry Brook was with Sunrisers. Was with Sunrisers. Right? So they released him. Yeah, they released him. I don't know what to get. Harry Brook has been sold to Delhi for 4 crores. Horrible. For? That's a steal. 4 crore. Horrible. That's a steal. You are expecting him to score at a tired Kotla Square, which will be hosting 4 Ranji Trophy games. You remember what happened at Kotla, where DC were all crybabies that the pitch is But I tired. think at It's 4 not crore, Harry Brook is not It's a bad. steal. It's a It's a steal. steal. It's a steal. But that's Last year he went for 13 crores. 4 crores. 7.4 crore. No. 11 crores There are last two things here. 4 crores से आपको ये पता चलता है कि first of all, he was overpriced at 13 crore, which everybody knows. Yes. Yeah. Second, not everybody is sold on the way Harry Brook has performed. Yeah. They don't think that he can perform in these conditions. Yeah. That's why he's at 4 crore. He's a steal. He's a Forget- steal. I think at 4 crore, forget Harry Brook is very good. नहीं यार, you need नहीं. But See, you look at it's also about the DC's hype batter. that the player has. No, it's also about the hype that the player has. But barring that one inning last season. True. Agree to that. You look at Agree to that. No, I don't agree to the fact कि जो slow pitch है and all of that, IPL के लिए pitches अच्छे से तैयार हो जाती हैं. My point is this much: DC need somebody in their middle order. Mitchel Marsh के बाद ऋषभ पंत के वहाँ पे. But I'll tell you Go where ahead. I think they're going to bat him. They're going to bat him as an opener because Opener. he will. I agree Actually, with we have the Sahil, first he will bid struggle for, at the Kotla. His best chances to get runs. He's not an opener. He's not an opener. But he opened. You can after 8 matches, they opened with him for 4 matches last year. SRH, now you're talking about. Hyderabad, But yes. it did not work. Correct. But if you have, I agree.
it's a steal deal, but to my mind, it's still 4 crores because they need an opener. If they're batting him in the middle order, Travis Head. they're Okay, finishing so 10 out we of have a 10. bidding war between Yeah. CSK and SRH for Travis Head. There you go. No, ये बहुत लंबा जाएगा. Yeah. He's a top buy, and I 10 think to there will 12 be crores other probably? teams. 10 to 12 crores probably. I'm waiting to see who jumps in at what they see. Yeah, somebody will jump in at Yeah, 7 crores. 7 crores. Exactly. 7 crores. Yesterday, we discussed 2 franchises which desperately need DC. Travis Head. DC was one of and them. Hyderabad. But no, Correct. but look, DC have now got Harry Brook, and if you're saying he's DC going to now bat in the wouldn't top come in. order, Yeah. If I'm saying, If- my gut feeling is, no, if, I don't think so. If they wasted 4 crores, they will get nothing out of batting. But in the middle Jamie, order. if you have a Harry Brook, and if I'm saying Rishabh Pant is 50-50, just thinking, you are exhausting all your overseas slots in the batters. Who will bowl for? But you Delhi- don't really need to play him. David Warner, if you don't need to Rishabh play is him in every every match. No, if they don't don't, need to if they play him don't, every like we match. just said, if they don't make a sudden bid for him, it's going to be David Warner, Harry Brook, and Mitchell Marsh are your top 3. उसके बाद lottery. जिसका मतलब पृथ्वी शॉ का पत्ता कट. जो होना भी चाहिए. जो होना चाहिए. There's this, no, they might use him for they might use him as Impact an player. impact player. Correct, But correct. I mean, I just no, don't. I still don't think Harry Brook as a top Opener? order batsman. I think he will bat at 5 or 6. जो Rovman Powell उनको नहीं दे पाए, और जो Riley Russo, जो Riley Russo नहीं दे पाए. That is something that what DC will Harry try Brook, and get. can Harry Brook, Srini, can he come at number 3 because you have David Warner, Mitchell Marsh probably opening or probably Marsh swapping three. Marsh 3 and Marsh, I think 3. Harry best Brook ever opening? team. Probably that can Rather be the than lineup. I don't see Harry Brook as an opener. That's Yeah. for sure. It has to be after that number 4 Yeah. or number 5. I don't know if this was what Delhi was planning. Yeah. I think right now they've got him at a very good price, but now they have to figure out how to figure out. use him. Yeah. If You know, CSK don't get Travis Head, if CSK get Travis Head, they're not going for Ravindra. Correct. Well, Why they don't have place to play Ravindra? Yeah, If they they have. can They play can him at Because Travis they Head, already no, get Travis Head, shut no shop and go Ravindra. back home. Yeah. That's it. So then Gaikwad doesn't open. But Sahil, if they don't So get Travis Head at 3 or what? Or Conway Travis at had 3? a 3. Conway Travis at had 3. Conway at 3. They No, definitely Conway don't opens. experiment Conway with Conway opening opens. slot. Conway They opens. won't, yeah, they No, Travis had a 3. 3. Travis Conway, Head, no, I'm saying Conway Conway and Gaikwad, they're not going to And- touch. Okay, so do they really need someone like Rachin Ravin right now because they have Ravindra Jadeja and also Mitchell Sandner for left No, arm? they I'm not just for left arm. Mitchell Sandner, again, it's a problem. Where do they fit it? No, I'm just saying you have him in the squad Look. right already. Look, we're talking about Rachin Ravindra. जब Yeah. हम उनकी बात करेंगे, you only have to talk about him as a batsman. Batsman, yeah. World Cup में his bowling it did not set the stage alight. There's not much But there. the flip side is that here it's only 4 overs. You And you what have I- that extra hand. to But bowl you over. have What I feel- Ravindra what I feel Jadeja and you looking at- have Mitchell Sandner. Looking at You Moeen don't- Ali's availability, probably that is why they're going for Travis Head because he can bat No, but left-handed if they're and going off for spinner. Travis And Head, off then- spinner. then- Off spinner, Handy yeah. off spinner. Then Rachin Ravindra was never in the scheme of things. As They is still probably- were No, in that was just yeah. Because you had that was just discussion. probably two similar forte players already and experienced ones in the No, IPL. that's what MS likes, right? So but that's what Chetan is He saying, loves the right? battery on You- left arm You spinners. don't go to a Ravindra expecting 4 overs. Yeah. दो ए- दो तो ये भी डाल सकता है. अच्छे डाल दो सकते ये SRH exactly. ने AirPods ले लिए. It used to irritate me a lot. They used to have those wired things. और वो भी एक कान में और वो दूसरा लटक रहा होता है. I am so glad to see that they are sitting with AirPods. So what's the big news? They have the They have AirPods or AirPods. Rovman Paul going for 7.4 crores. No, SRH have AirPods. SRH have AirPods. That was just so irritating for me to watch. But look, this is now 5.6 crores. This is I'm still waiting for somebody to enter at 7 crores. Let's take a guess. कौन enter करेगा? DC probably. DC probably. Not DC was. Then you Paisa don't have is- any slot for a The bowler. the bigger fan I am of RCB, probably RCB as well. No, not RCB. बहुत सारा पर्स दे दो. RCB कहाँ खिलाएगा? नहीं खिला सकता. But I'm still expecting him to go RCB for has at least पैसा- 12, पैसा 10 तो to 12 crores. पैसा है Have they bought RCB. anything yet? No, they haven't. पैसा तो है. Hyderabad will, I think, if no one comes in like Chetan is expecting, I think Hyderabad because they Hyderabad need. has that kind of a purse, no? नहीं, but they're it's Six. always been दो ताबड़तोड़ ओपनर और एक आपका गया. Yeah. तो बेयरस्टो के साथ ये लेफ्टी and he's basically David Warner level ना. Yeah. Bearstow and Head. गजब. And plus left-handed. वही No, Bairstow is there. Best is Punjab. there. Bairstow is Punjab Kings With- now. अच्छा with Punjab Punjab Kings. So they have- So they have Abhishek Sharma and Mayank Agarwal. Mayank Agarwal, Abhishek Sharma, Oh, then Aiden Head, Markram, Head. and Glenn Phillips, Henrik Klaasen. Chennai don't need him as much as Hyderabad need him. I guess they're picking him for Moeen Ali. SRH have a good middle order now. Klaasen, Phillips, Klaasen, Phillips, that's a good Markram, middle order. ये जा रहा है Abdul भाई, ये Samad. जा रहा है. 6.4. And also Washi. Can't Washi, forget yeah. him.
He's Washington handy. batted. See, SRH भी if they Marco take, Jansen as well. if SRH get Travis Head, वहाँ पे भी overseas का issue है. बड़ा issue है. बहुत बड़ा issue. कहाँ पे? But In SRH. because you have नहीं आप देखो ना कितने भरे पड़े हैं आपके पास. You have Glenn Phillips, you have Aiden Markram, Marco Jansen, Heinrich Klaassen. But if you, he will. Faruqi, if No, you no, want he to will play. I'm bowler just as well, saying. I'm just saying Faruqi. कि there is a lot Correct, to correct. digest over there. But their top order Chennai- is the top order is Chennai- one of the worst. Chennai have 16 crores to play here, yaar. Because look, Ben Stokes you released for 16 crores. You literally have 16 crores to throw at this guy. You do. I probably feel And- they'll go for 10 to and- 12 crores is the budget they'll But have they'll- for him. No, I'm not saying For they will Travis throw Head. 16 crores, but I'm saying they can They go can, to that much. But you have to see CSK. There are two franchisees जिसके बारे में हम बात करें, चाहे MI हो चाहे CSK हो, they go long term. They don't think 2 years, 3 years down the line. If they take Travis Head today, they are talking retention. Yeah. They will be Talking thinking retention next. So from that perspective, they can happily go 10, 12 crores. I don't think SRH have a shot here. I'll be very honest. They've stopped. CSK is out. CSK is They've out. got him. So if anyone comes in at 7, like you predicted, Yeah. मजा आएगा. CSK is out. They're CSK is out. out. SRH. Oh my SRH. god. Srini, if SRH gets him, Wow. you know, It's a steal. there's boss. a, This is the it's, real it's a steal. But again, where do you play him? Like, how do you Open. open? But you have a lot of. SRH with CSK that wasn't the deal. Yeah. But with But SRH, SRH the you open. overseas SRH slot is the open. first name on the You team. have only 4 overseas slot. Then whom do you? No, but see, that's the thing they will have to juggle. right now with the kind of And the kind of options that they have, And yes, he has gone to SRH. Oh my Travis God. Head Travis Head, I did not stolen expect away. that. Aiden Markram, I did not expect that. Klaassen. Marco Klaassen. Jansen, Klaassen. That's it. Again, last time यहीं बैठे थे हम लोग, and I said on paper Hyderabad have a damn good franchise, but it didn't translate. So you have to budget for that happening again. Yeah, but the thing is, right now, if you look at their, अगर हम उनके 4 overseas गिनाएं अभी, that's Travis Head, Travis Head. Aiden Markram, who's their captain, Marco Jansen, and Heinrich Klaassen. These 4 start, Yeah, for sure. right? You can then bench and then- Glenn Phillips. Faruqi, yeah, and then Faruqi as well. you see how it Faruqi- goes. Fazalak Faruqi भी हैं, so depending on marker, so आपका जो toss up रहेगा वो Marco Jansen, Fazalak Faruqi और Glenn Phillips के बीच में रहेगा. So it just depends what kind of purchases they have. I think they need a spinner also. So that's at 7 CR, that's a steal, but I'm very surprised that CSK pulled out. Okay, so looking at the all-rounder squad, Srini, Abhishek Sharma, Washington Sundar, Shahbaz Ahmed, they're all-rounders. And then they have Mayank Markande. They don't really need a part-time spinner. They have hell lot of them in the squad. So probably Travis Head can be used as an impact player just for the batting pit. Possible. No, you will play him as you will use a spin, yeah. Why use Travis Head as an impact player? Impact You will player keep नहीं him- आप no, करोगे I ना, don't overseas- think Srini, what do you have to yeah, say? because he brings a lot to the table. Srini, what do you have to say? Well, What you shall can't we say? definitely be using Travis Head is not your impact player, but I'm wondering with Sunrisers, the more I'm looking at the squad, Yeah. for me, their perennial problem has seemed to be the what you pick at the auction and how you kind of put them Put to them in, use yeah. is like 2 different things. Yeah. Look at the way when they initially bought Washington Sundar. I have always felt that Sundar is not your tailender. Yeah. It took them time to understand that Washington Sundar could have been played right up in the middle. So I think it's a case Second of they round, not being able to identify. Yeah. Oh, finally MI is in the race Karunar for- has gone unsold. Unsold. Yeah. And now we have Steve Smith. What MI are bidding for Steve Smith? Did they put up a bid? No, you just mentioned MI is there. No, I saw- Acha, okay. No, the camera panned to Rahul Camera Sangvi, pan, but that doesn't mean anything. So MI ने अभी तक कोई bid नहीं डाला ना, Nah. So that और is RCB ने भी नहीं for the डाला. next RCB set. ने भी MI is waiting on Yeah, RCB. yeah, will they- take they- them they domestic don't- they need uncapped bowlers. players. They need bowlers. नहीं बिके Steven Smith. Steve Smith unsold. Steve Smith He unsold. might come back. Huh? DC I will get doubt. him. I doubt. DC will get him at base price. Base price. Last round. Manish Pandey is the next There one you at go. base price 50 Ooh, lakhs. Manish Pandey. Who you said KKR? KKR and CSK. No, you can Not have CSK him, for you know, sure. at No, 50 you lakhs. need- Not MS Dhoni. You need. MS Dhoni is a big fan of Manish I Pandey. doubt. Big Let's see. fan. Let's see. That's just my gut feeling. I'm sure I can be wrong. But I again, mean, the kind of base I price was wrong that is, live. that can be a steal. I literally said that CSK will take Travis Head and SRH got him. So I can be proven wrong easily. So that's not a point. I'm saying unsold. Unsold. Unsold, yeah, same here. I agree. Massively overrated. Or probably Massively overrated. they'll I'd go stick after to him. them. No, after DC a have while. got him. DC have No, No, this DC was the previous bid. no DC. So they put in a bid. No, they put in a bid. At No, base they price. haven't. They haven't. That They haven't. They're just Okay, showing where That he is played base last. price, 50 lakh. Okay. No, They the had it previous. last Okay, year, yeah, previous. Probably- released it.
वेट हो रहा है आगे के Unsold. probably after Yeah, Unsold. नहीं जाएगा। 15 Manish years. I now think he's I think they'll come back for 15 him. years, 2 innings. Yeah. हो गया, For now Manish he's Pandey. Unsold. No, come on. 2 seasons he gave for KKR, yaar. 2 innings, 2 innings. That season they won. He was really, and Gautam Gambhir was there. He was really consistent. 9 साल हो गए भाई उस बात को. That's true. Finished, but finished, he's finished. had a good season, not just one inning. 2 innings, and they both Second came in year. that same season. But Jamie, at that price, you can have him in the squad at least. Okay, they're taking a break. I don't have the This purse, is why so the auction is these franchises can have him run drinks for all I care. But if any team is featuring, no disrespect, someone like Manish Pandey in your plans, it's not worth it. Yeah. Even if We've been talking about a lot of teams, Srini, but Punjab Kings, what do they need? 29.1 crores, 8 slots, 2 overseas. They are pretty sorted. And They're hoping to buy Shah Rukh Khan back cheap. probably for Why 10 would- crores. Why are people still talking about Shah Rukh Khan? The kind of Because season he they need an informed spinner. because yes, And he picked up wickets. His bowling has been more being talk more of the talked town. about Talk than of his the town, batting. He had horrible seasons So- for Tamil Nadu in both Vijay Zare Correct. and Yeah. What Syed is it that Mushtaq. Punjab need? They need a good top order batsman, right? No, they have Shikhar, they have Prabh Simran. they I would- need an The investor. last year the was best so of- dependent The best on of- Shikhar the best of. to see them through. So they definitely need a backup option for Shikhar right up the order. No, but when Bairstow returns, I think they're sorted there as well. But Jimmy, just your thought on Manish Pandey thing. You haven't been a big fan of No. him. I think he has been the biggest underachiever when it comes to. I also have. Look, I look. have my Here, other- here's my thing on Manish Pandey. At the age of 18 or 19, he becomes the first Indian centurion in Yeah. the IPL 2009. Chalo, fantastic. Did he ever give you returns on that? Chetan is right. He had that 1 or 2 good seasons, but both of his knocks, there was a 94 in one of the final, and there was an 80 odd. Beyond that, what's he done? He's actually lost KKR matches when they persist with him. He's lost SRH matches. Yeah. There were matches when he comes to the crease and the run rate was in control. And crease pe rehke, it's gone from 7 to 8 to 9 per 10. That to me is a red flag, Yeah. Upar se he's not performing in domestic cricket. So there's really little to be gauged in this day and age. In 2024, which is when the IPL will be, if you're including Manish Pandey, personally, I don't think it'll work. And Srini, it makes sense too, right? You wouldn't go for a Manish Pandey or instead go for an under 19 player like a Mushir Khan, Exactly. who is like one for the future. You can actually groom for future I rather would than go back just- looking for that 18, 19-year-old that Jamie mentioned that he saw in 2009, but not the Manish Pandey as of today. And I mean, anybody who's seen the growth pattern, the growth chart between 2009 and over the years, will have nothing but disappointment to share, because here is what happens is when you look at a promising career and then you see it unfolding in a manner which you hadn't perceived or which you thought was disappointing. Obviously you're going to start looking at other options. So I think that's the case with Manish, that other than of course the numbers that speak for him. If you remember, 2 new franchises had come in 2010. The Sahara Pune Warriors, yeah. and where Manish had left an existing franchise to go away. All that, it was like, just the commercials of IPL had just taken over the cricketing logic, which I don't blame, of course. The point is, somewhere during that time, the path player kind of forward was lost. Shani, IPL auction का मतलब blockbuster, 17 crore, 19 crore, 20 crore, 15 crore. In this IPL auction आपको क्या लग रहा है कि किस प्लेयर पे बहुत ज्यादा मार्क रहेगा या किस प्लेयर पे पहला प्लेयर 7.5 करोड़, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सोच के खर्चा किया है राजस्थान रॉयल्स ने रोमन पॉवल पे। राजस्थान के पास बजट भी कम है, बहुत ज्यादा उनके पास पर्स में वैल्यू भी नहीं है जी, उनके पास। बट बजट कम है, लोगों के पास स्लॉट्स भी कम है, और दूसरा ये कि आप जो भी प्लेयर को यहाँ पिक कर रहे हो, हर फ्रेंचाइज देखना 1 या 2 स्लॉट फिल करने के लिए ये पार्टिसिपेट करिए ऑक्शन में, क्योंकि आप जिसको भी पिक कर रहे हो 3 महीने का बाद है वो फिर मेगा ऑक्शन में चला जाएगा। तो अगर आपके पास वो कोर तैयार है आपका, तो आप सिर्फ 1 या 2 प्लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप पिक कर रहे हैं। चेतन, ओवरऑल अगर हम देखें इस पूरे ऑक्शन को जी, तो आई थिंक लग रहा है मुझे कि बहुत ज्यादा हर फ्रेंचाइजी के पास बहुत बड़े चेहरे नहीं है या फिर बहुत ऑप्शन नहीं, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट जो साहिल कह रहे थे कि आपको प्लेइंग 11 डिसाइडेड है, आपको क्या करना है, किस तरह से प्लेइंग गेम लेके लिए जाना है, आपको खेलना है। तो आई थिंक किस प्लेयर्स को आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा इस बार इस ऑक्शन में जो मिनी ऑक्शन है उसमें सबका जो
पॉइंट है वो कैच करेगा। देखिए मिनी ऑक्शन में क्या होता है कि आपके जो स्क्वाड हो गया, बड़ा स्क्वाड हो गया, देन यू स्टार्ट प्लगिंग द गैप्स, प्लगिंग द होल्स। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल हो चुके हैं। आई थिंक दिस इज द फाइनल ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर साइकिल। वी माइट हैव अ मेगा ऑक्शन नेक्स्ट टाइम अराउंड। तो अभी सबके जो टीम्स हैं, स्क्वाड्स हैं, दे आर प्रीटी मच सेट। जो आज हमें ज्यादा मूवमेंट दिखेगी वो उन टीम्स में दिखेगी जिनके बॉलिंग लाइनअप सेट नहीं है। समबडी लाइक एन आरसीबी या मुंबई इंडियंस, इनके बॉलिंग लाइनअप सेट नहीं है। उन्होंने जो उनके पास एग्जिस्टिंग बॉलर्स थे रिलीज कर दिए। और हमारे पास हमने, अगर आज हम ऑक्शन लिस्ट में देखें, जो टॉप डॉलर प्लेयर्स हैं ज्यादातर आपके ऑलराउंडर्स हैं, आपके स्पिनर्स हैं, वो भी स्पिनर्स में भी ओवरसीज स्पिनर्स हैं, और पेसर्स हैं। वहां पे 2 नाम आते हैं, हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर। आई थिंक उनके ऊपर एक अच्छी बिडिंग होनी चाहिए आज। उमेश यादव हैं, ही हैज टन्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो आई एम लुकिंग एट स्पिनर्स एंड पेसर्स। कुछ टीमें हैं जिनको थोड़े ज्यादा गैप्स प्लग करने हैं, डीसी हो गए, राजस्थान हो गए, जिनको एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए, केकेआर को एक्स्ट्रा बैटर्स चाहिए। बट ओवरऑल जो सिनेरियो है इस समय, यू प्लगिंग गैप्स, और the other thing is that you need spinners and you need pacers, और वही ऑक्शन लिस्ट आपको दिखाता है। So a lot of teams will also be preparing, क्योंकि उनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है। आप मुंबई इंडियंस का देख लीजिए, कैप्टन चेंज हो गया है। So this is a year that they are saying, okay, you know what, Hardik, you come in, you take a look at the squad. Obviously they would want to win, everybody wants to win, लेकिन अगर वो नहीं भी जीते तो they'll get a start कि okay, ये स्क्वाड कैसा है, इसमें अगले साल क्या करना है। Same thing goes for KKR. They've got Gautam Gambhir in. They'll take a look. They'll see क्या है, and then mega auctions में क्या कर सकते हैं. So a lot of building for the future, but at the same time plugging gaps in your current squad. One of the things I realized was that KKR, they have the money. So if they want to kind of set in whatever for next year, yes. Even for this, the 2024 IPL, they have the money. So you were talking about how they fall short on that one big name, either with the bat or the ball. They have the money to spend if they have identified who they want. And they can spend that money for the long term as well. क्योंकि अगले साल जब आप retention पे जाओगे, assuming there is going to be retention and assuming there is going to be mega auction उसके बाद, तो उनके आज existing कौन हो सकते हैं? I am thinking Shreyas, Nitish Rana, and Suyash. Suyash is a bet for the future. I'm sure they would not want to leave him out. उसके अलावा would they want to retain Andre Russell and Sunil Narayan? तब तो आप छोड़ दो, तब तो आज आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। So today they could get that big buy from the bowlers or the spinners who can be a future retention player for them. Especially with someone like Chandu Pandit or Abhishek Nair in the at their thing. Few would understand India's domestic circuit better than Chandrakant Pandit. बहुत कम लोग होंगे आज की तारीख में जिन्होंने इस डेप्थ के साथ इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट को देखा होगा। तो अगर मुशीर को अगर आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या अगले साल अगर मुशीर को ऑक्शन में डालोगे तो वो तो लंबा जाएगा। तो अगर हो सकता है इफ यू वांट टू बाय हिम चीप टुडे, हालांकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि रिटेंशन रूल्स चेंज होने चाहिए, बट दैट फॉर अनदर टाइम। रिंकू सिंह भी हैं जो रिटेन होंगे उनके वहां पे, तो आई डोंट नो व्हाट आर दे गोइंग टू डू। रविंद्र जी उन पे भी फोकस है ना। आपने आईपीएल में जो रूल्स आए नया बॉलर्स के लिए है, जो आपने भी क्या स्टडी किया, बॉलर्स को देखना होगा कि कौन से बॉलर्स है जिनको इस मिनी ऑक्शंस में, आईपीएल के जो ऑक्शन चल रहे हैं, प्लेयर्स कैच करेंगे, टीम कैच करेंगी, ताकि न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग उनको फायदा मिले। तो किस पे नजर होगी, खासतौर पे गुजरात टाइटंस की अगर मैं बात करूं? दोनों ऑस्ट्रेलियन पेसर्स, 2 ऑस्ट्रेलियन पेसर्स। मुझे लगता है कोई भी टीम हो, यहाँ मुंबई इंडियंस इंक्लूडेड, अगर आपको पेसर देख रहे हैं आप, ये बिडिंग वॉर अगर मैं देख रहा हूँ अगर होगा, ये दोनों के लिए होना चाहिए। कोई भी अगर पर्स लेके बैठा है, मिचेल स्टार्क के लिए देयर हैज टू बी अ डाउट, क्योंकि इन द पास्ट या तो वो पुल आउट कर लेते हैं ऑक्शन से पहले, या फिर ऑक्शन में वो टीम से पैसा खर्च करवाते हैं, बड़ा पैसा खर्च करवाते हैं, एंड देन ही पुल्स आउट। सो हाउ मेनी टीम्स आर गोइंग टू से टुडे कि लिसन, अगर आज इसने फिर से यही किया, आई एम जस्ट गिविंग, लेट्स टेक मुंबई's एग्जांपल, बिल्कुल सही, लेट्स टेक मुंबई's एग्जांपल। पिछले 2 साल में दे सफर्ड, they really suffered because they don't have a proper pacer to support Bumrah. Although I'm willing to think that once bitten twice shy, franchises will do their homework. No, they would have spoken with him. There is no doubt. They would have spoken with him. और अगर वो इतने टाइम के बाद ऑक्शन में आ रहे हैं तो कुछ सोच कर ही आ रहे होंगे. But still, there's that factor. और अगर they obviously prepare more than us. They have more information than us. So I'm just saying कि अगर आज जो भी वो ऑक्शन लिस्ट में है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज को वो चाहिए, तो उन्होंने उनसे बात जरूर की होगी कि बॉस, हम तुम्हारे ऊपर 10 करोड़ खर्च करने को तैयार हैं, but don't pull out and make a fool of us, because then ना हम यहाँ के ना हम वहां के.
and there are teams there who would want him. लेकिन if he pulls out, फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे. श्रेनिक, एक न्यूज ये भी रन कर रही है कि ड्यूरिंग आईपीएल जब होना है, मतलब शेड्यूलिंग आ रही है कि मार्च 2 और मार्च अप्रैल में जाएगा, उस समय लोकसभा इलेक्शंस भी रनिंग रहेंगे, तो कुड माइट बी पॉसिबल कि हम दुबई जा सकते हैं या खेल सकते हैं. तो उन पिच कंडीशंस को देखते हुए फिर आप क्या देखेंगे कि किस टीम पर बिडिंग ज्यादा होनी चाहिए? मुझे T20 में बहुत कम आपको कॉम्बिनेशन आपकी क्या होती है 11 में, आपकी किस कॉम्बिनेशन को आपको आप मैच में लेके जा सकते हैं, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस है. आप कहाँ खेलने वाले हैं उसका इतना मायने नहीं होता है. अगर आप सब कॉन्टिनेंट पे आप यूएई में भी खेलेंगे तो वो ऐसे काफी मतलब इट्स जस्ट दैट वो ओवर यूज हो जाती है पिचेस, क्योंकि वो 3 ही वेन्यूज पे आप बहुत ज्यादा खेलते हो. ग्राउंड है. तो वो सेकंड लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में अगर थोड़ा बहुत उसका फर्क पता लगने लगता है. बट मुझे नहीं लगता कोई फ्रेंचाइज इतना सोच के Depth तो आज चाहिए. टीम खरीदेगी नहीं. और हालांकि आई डोंट सी आईपीएल गोइंग आउट ऑफ द कंट्री आइदर, वो भी नहीं होगा. जी भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा डीडी, मतलब एक ऐसी टीम जिसके पास पोटेंशियल है, बस पोटेंशियल पे खेल नहीं पा रही है. तो डू यू थिंक कि डीडी इस बार कुछ सरप्राइज करेगी, सरप्राइज पैकेज के तौर पर जाएगी किसी टीम प्लेयर के पास? ऑलरेडी हैरी ब्रुक जो है, मेरे हिसाब से अब स्टील डील तो है, बेस प्राइस 2 करोड़, डीसी गॉट हिम फॉर जस्ट 4 करोड़, पर आई स्टिल थिंक डीसी हैरी ब्रुक को लेकर क्या करेगी, राइट? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चेतन एंड श्रीनी बिलीव कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे. बिल्कुल. मैं कह रहा हूं अगर आपने उनको सिर्फ 4 करोड़ में लिया है, इट्स अ स्टील डील, बट मिडिल ऑर्डर में वो नहीं चले पिछले साल, वो ओपनर के तौर पे नहीं चले. लेकिन डीसी की जरूरत है एक ओपनर की, राइट? जब से शिखर धवन गए, जब से श्रेयस अय्यर गए, बैटिंग हैज बीन वीक. अगर आप आज के टाइम पे 2024 में पृथ्वी शॉ को 10-12 मैच के लिए एज अ वायबल ओपनर लेके चल रहे हो, तो मेरे हिसाब से दिस इज शॉर्ट साइडेडनेस. आई थिंक गट फीलिंग, हालांकि स्टैट्स बोलेंगे कि हैरी ब्रुक इज बेटर इन द मिडिल ऑर्डर. आई थिंक अनलेस दे बिड फॉर अनदर कीपर, मे बी जॉश इंग्लिश या कुशल मेंडिस, अगर वो एक और विदेशी ओवरसीज बैट्समैन को नहीं लेंगे तो यू विल सी हैरी ब्रुक ओपन. बट लॉन्ग टर्म इसमें कोई विजन नहीं है. ऑन पेपर जब से पहले डीडी थे, अब डीसी हो गए, जब से ये फ्रेंचाइजेस है, ऑलवेज कोई भी ऑप्शन देख लो, कोई भी सीजन देख लो, ऑन पेपर दिल्ली की टीम अच्छी होती है, पर अनफॉर्चुनेटली 15-16 साल में एक भी टाइटल नहीं जीत पाई. सो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट. हमेशा आई सो एग्री विद हिम. इतने सालों के ऑक्शन में हर ऑक्शन जो खत्म होता है, दिल्ली की टीम को आप देखते हो, लगता है यार क्या टीम है. वो फिर थोड़ा आपको टाइम लगता है वो डेप्थ समझने में. साहिल, गुजरात के लिए क्या बोलेंगे आप? गुजरात टाइटल्स, फर्स्ट आईपीएल उन्होंने शानदार जीता, अब कप्तान भी चेंज हो गया है, नए कप्तान उनके पास है, नई प्लानिंग उनके पास होगी. क्या इस वक्त गुजरात टाइटंस के पास पॉकेट भी बहुत बड़ा है अभी फिलहाल, तो क्या लग रहा है कि वो खुल के पैसा खर्च करेंगे या फिर थोड़ा सा वो भी होल्ड करेंगे? नहीं, प्लेइंग 11 डिसाइडेड है, 1-2 प्लेयर पे हमें जाना है. आई थिंक पर्स सॉर्टेड है, पर्स बहुत है, पैसा बहुत है, और शॉपिंग करने के लिए उनका इंटेंशन भी रहेगा कि फास्ट बॉलर चाहिए. पैट कमिंस का जेमी ने अभी बोला था, रिसेंसी बायस भी है, एंड ही कुड बी अ हैंडफुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, क्योंकि आईपीएल के अंदर जिस तरीके की विकेट्स वहां मिलती हैं, शामी एंजॉयड अ लॉट ऑफ सक्सेस लास्ट आईपीएल वहां पे विद द न्यू बॉल, एंड पैट कमिंस एंड शामी इज गोइंग टू बी नाइटमेयर फॉर एनी ऑपोजिशन. सो पैट कमिंस इज डेफिनेटली वन ऑप्शन, एंड आई थिंक मोर देन वो ऑक्शन में क्या करते हैं, आई थिंक सीजन से पहले क्या रहेगा, क्योंकि मेरी श्रीनी से भी बात हुई थी, चेतन से भी बात हुई थी कि आईपीएल से पहले शुभमन गिल जब बैटिंग कर रहा था, उसके ऊपर कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं था, उसके ऊपर स्ट्राइक रेट का प्रेशर नहीं था, उसको ये नहीं सोचना था मेरे को रन किस पेस पे बनाने हैं, क्योंकि शुभमन जाता तो नीचे जो बैटिंग आ रही थी, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान तक, कोई भी स्ट्राइक रेट का प्रेशर उस पर आने नहीं देता. तो अब शुभमन के ऊपर स्ट्राइक रेट का प्रेशर भी हो सकता है, कैप्टेंसी का भी प्रेशर हो सकता है, डायनामिक्स चेंज होंगे. जो हार्दिक एक कॉटन की तरह बैठा हुआ था ना मिडिल ऑर्डर के अंदर, उसका रोल अब इस फ्रेंचाइज को रियलाइज होगा कि वो कितना अहम रोल उसने निभाया है, कि 4 नंबर पर आकर वो बैटिंग कर रहा था, जल्दी विकेट गिरती थी, 3 पे आता था. सो आई थिंक फास्ट बॉलर एक एरिया है जो वो जरूर टारगेट करने वाले हैं, वो जरूर लेने वाले हैं. पैट कमिंस की तरफ तो मुझे दिख रहे हैं वो जाते हैं, उन्होंने शिवम मावी को भी रिलीज करा है, सो 5.5-6 करोड़ वहां पे भी उनके आई थिंक आ गए हैं. तो पैट कमिंस आई सी कि ये लोग बिड करेंगे, और इवन मधु शंका टू, क्योंकि जॉश लिटिल के साथ आप उसको भी वैरायटी में यूज कर सकते हो एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. चलो कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जब वर्ल्ड कप में ही गॉट इंजर्ड, तो उनकी भरपाई करने के लिए इंडिया हैड टू ब्रिंग इन 2 players. गुजरात टाइटंस नीड 2 players. Thankfully they have the budget for that. But वहाँ पे गुजरात टाइटंस में ये भी है कि वहाँ पे they have that leadership vacuum. So Pat Cummins obviously is a great choice for them to go for him, क्योंकि वो एक leadership role भी लेकर आएंगे, leadership acumen भी लेकर आएंगे. But सिर्फ उनके बैटिंग और बॉलिंग की भरपाई करने के लिए यू नीड 2 सुपर प्लेयर्स, एंड या गुजरात विल हैव टू यूज देयर
money very, very judiciously. I agree with that point. You need एक तो आपको तगड़ा बॉलर चाहिए और एक बैट्समैन चाहिए, और आप जिस भी और तरीके से आप भरपाई कर ले, बट हार्दिक के एब्सेंस में आपको एक तगड़ा बॉलर तो चाहिए, वन गुड बॉलर, एंड देन ऑफ कोर्स द सेकंड ऑप्शन दैट यू हैव, यू गोइंग फॉर अ बैट्समैन भी अच्छा चाहिए, क्योंकि लाइक साहिल पॉइंटेड आउट, he didn't bat at 5 and 6 like he batted for India. तो आपको एक फिनिशर नहीं चाहिए, आपको एक इनिंग्स बिल्डर चाहिए जो नंबर 3 और 4 पे रोल करेगा। सेशन में किया था गुजरात टाइटंस के। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो उन्होंने टॉप 4 संभाला है गुजरात टाइटंस का, जो उनको फ्रीडम गुजरात टाइटंस में मिली थी टू परफॉर्म विद द बैट, विद द बॉल, एज कैप्टन। आई डोंट नो इफ 3 प्लेयर को भी अगर खरीद लेंगे दैट इज गोइंग टू बी एनफ टू रिप्लेस हिम और नॉट। जिसकी बात हम कर रहे थे रचिन रविंद्र, फाइनली I think Amrit, Rachin से पहले biggest Uncapped movement has actually happened. वनिंदु हसरंगा from 10.75 crores, 1.5 crore base price SRH को मिल गया। वनिंदु हसरंगा, Yes. और did RCB even? No one, just the base bid. SRH, the only bid, 1.5 crore. Even I thought I saw the SRH owner saying what? हाँ, मतलब she couldn't believe her luck. And Jimmy, This is what RCB does to a player. लेकर क्या कहेंगे, क्या चेन्नई, गुजरात, इनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो पार्ट टाइम बॉल भी कर ले, अच्छा फील्डर भी है और एक बैट्समैन टॉप क्लास है। अगर एक फ्रेंचाइज है जो एक रचिन रविंद्र, ठीक है, पार्ट टाइम स्पिनर स्लैश बैट्समैन हु बॉल्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर always rotate players, no? बिकॉज ऑफ द MS धोनी फैक्टर। अब जो रोल मोइन अली पिछले 3 साल से निभा रहे हैं, ज्यादातर 3 पे आते हैं, बॉल्स 4 ओवर्स। चेन्नई में अगर आप 50% मैचेस उस चेन्नई पिच पे खेल रहे हो तो समवन लाइक अ रविंद्र मेक्स परफेक्ट सेंस। आल्सो थोड़ा डाउट है कि मोइन अली पूरे सीजन में रहेंगे। मोइन अली मेरे हिसाब से फिर भी उनका ओवरसीज स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रहेंगे, लेकिन इंजरी हो या कुछ भी हो गया, अगर रविंद्र आपके बैकअप ऐसे प्लेयर हैं, क्योंकि ओपनिंग कर सकते हैं, 3 पे खेल सकते हैं, फिनिशर बन सकते हैं, गन फील्डर है। हाँ, शायद 4 ओवर ना डाले, बट स्टील डील। वर्ल्ड कप में आने से पहले 50 ओवर क्रिकेट में तो वो 6 और 7 और 8 पे खेलते थे, तो वो मिडिल ऑर्डर तो आराम से वो कोई इससे बैकअप प्लान को लेके जाएगा रशिन को, मतलब इवन कोई भी फ्रेंचाइजी हो गई तो उसे तो टॉप गियर में लेके आना चाहिए कि नहीं? अगर वो बैकअप में नहीं, हम टॉप गियर में लेके आएंगे। बाकी 9 फ्रेंचाइजेस ये लागू है, पर क्योंकि सीएसके है ना, दे कैन एक्चुअली कीप हिम एज अ बैकअप प्लान, क्योंकि मोस्ट लाइकली वो लॉयल्टी और सीनियरिटी के फैक्टर में मोइन अली को ज्यादा चांस देंगे। पर अगर मोइन अली का हल्का सा निगल हुआ या बेन स्टोक्स वाला किस्सा हो गया, you've got a damn fine upcoming all-rounder to do it. तो एक ही फ्रैंचाइज है जो शायद इनको अगर खरीद लें, उनको प्लान बी में रखेंगे, बाकी ऐसा कोई फ्रैंचाइज नहीं है। सुनी, do you think कि गुजराती रचिन को लेकर आगे बढ़ेगा, या फिर do you think कि पंजाब? मैं देख रहा हूँ पंजाब क्या करना चाहता है। मतलब पंजाब अगर राइट नाउ किसी को अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत है, डेस्परेट नीड है, तो वो पंजाब को है। आप शिखर धवन से कितनी मेहनत करवाओगे? शिखर धवन के अलावा मुझे उस लाइनअप में कोई दिखता ही नहीं है जो ऑन अ गिवन डे आपको मैच निकाल के दे। तो लास्ट ईयर आई थॉट यू नो इट बेस्ट तो है, I mean depending on his availability, and English players might not be available this time around. True. तो मुझे तो वो देखना है how do they lessen Shikhar's pressure. We weren't discussing Rachin for Punjab, but now when I think about it, he could be a very good player for them. 100%. At 3 or and they've got the money to order, I think they can definitely go like hammer and tongs for Rachin Ravindra. but एक बात देखो ना साहिल, जब से स्क्रीन पे आया 2.5-3 मिनट हो गया ना, बेस इतना आगे नहीं गया, so he's not one of those players जो मैंने कल कहा था, he's not going to be a big player like you asked me ना। Chennai will get him for a steal deal, और भले ही उसको स्टार्ट ना कराएंगे, if he goes for anything under 4 crores, but then it doesn't make sense. I don't see him at Chennai. I don't see him at Chennai. और कोई bowling as in नहीं one of the things is, you know, Titans है ना, you buy a player not having in your plans, it doesn't make sense because it's only Titans, for one season. it's with CSK and Titans at the moment. No, CSK Titans, CSK before Titans Punjab. RCB नहीं, before Titans RCB. No, Titans didn't bid for him. look ना, Titans is there. अभी right now ना, They bid for him. CSK Punjab. Now they're the bid out. is with CSK 1.8. तो I can't read. The bid is with CSK at 1.8. Punjab were at 1.7. आप इस पे 1.80 खरीद के आप इसको बेंच पे रख सकते हो। मतलब बैकअप प्लान के तौर पे ही आप उसको कंसीडर करें। ले गए भाई, ये हो गया स्टील तो। CSK स्टील, yeah, CSK. Why did Punjab stop? Super At 1.8 crore? only. इससे मतलब ये सब Seriously?
You know what? I'll just complete this. मुझे जो last mega auction में जो trend दिखा था, I'd like to reiterate that, and that is going to be the trend. Looks like this time again and going forward. Have a core. अगर आपके पास core आपके पास है, तो just go in for absolute newbies. अगर आपका core तैयार है तो. You know, अभी जिमी ने जो बात कही, why चेन्नई सक्सेसफुल इतना आईपीएल में क्यों है? Because टीम वो रेडी करता है फ्यूचर का. Just like उन्होंने around 2 CR खर्च किया है अर्जुन पे, लेकिन वो बैकवर्ड प्लान पर है कि नहीं, देखते हैं, खिलाते हैं अगले साल. लेकिन अगले साल उसके अगले साल के लिए एक प्लेयर रेडी कर रहा है कि हाँ, अगर मोइन चले जाएंगे तो कौन आएगा? तो रचिन उसकी भरपाई करेंगे, रचिन होंगे उसके फिलर होंगे उसके तौर पे. तो एक जो कहते हैं ना कि फ्यूचर. हाँ, बट आप वही सीएसके को जब एमएसडी स्क्वाड से बाहर निकल जाएंगे तो उनको फ्रॉम स्क्वायर वन उनको फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनके स्क्वाड में जो लंबे रेस की जो आप घोड़े जो बोलेंगे वो ऋतुराज गायकवाड़, वो एक नाम आप देख लीजिए. उसके अलावा उनको पूरा स्क्वाड की तैयारी फिर करनी है, क्योंकि वो काफी एक डेविन कॉनवे है जो एज वन ओवरसीज प्लेयर वो रिटेन कर सकते हैं. हम अभी तक सोच रहे हैं कि हम अभी तक सोच रहे हैं ना कि इतनी छोटी बिड्स क्यों लग रही हैं, because it's going to be about the bowlers and all-rounders and spinners. And now we are getting I think this could be the first mega buy today. Look at the speed. Look at the speed today. This is going to increase. Hyderabad, Chennai. Shardul, Chennai missed out on Shardul earlier क्योंकि उनका पर्स खत्म हो गया था मेगा ऑक्शन में. Yeah. So they will try to get him back क्योंकि वो जो बैलेंस देते थे. And MS Dhoni is a big fan of Shardul. नहीं, in T20 अगर आपके पास ऑलराउंडर है जी बिल्कुल आप टॉप गियर पे हो. हाँ, लेकिन CSK has this thing ना कि हमारा प्लेयर वापस आना चाहिए हमारे पास. They will also go for Josh Hazelwood today. They will try to. Limited availability है, but they'll still try to go for it. But I just don't think he's going to break the bank. This is Somebody else will enter. Has to. Just 3.2. Who are they saving money for? Starc can't go for 20, boss. No. That will be like who madness. are they saving the money for? Pat and Starc. Punjab could have gone for शार्दुल का होना किसी भी टीम के लिए बेनिफिट ही है. मतलब डेथ ओवर में कटर चेपॉक में तो एकदम गोल्ड है. शार्दुल चेपॉक पे तो गोल्ड है. तो मैं वही कह रहा हूँ, हैरी ब्रुक 4 करोड़, शार्दुल 3.2. We can sit here. They are ready for it. I think LSG पे कैमरा गया था. चेन्नई ने आपकी बात सुन ली है. उन्होंने पर्स खोला. But who is there in the race along with SRH pulled out. नहीं, SRH. No, SRH is there. SRH is there. So they should just pick the paddle. Yeah. SRH is there. SRH is there. Yeah. 4 हो गया. चलो 4 is out. They're out. I'm telling you, why she did this? पहले she also did अगर that. दोनों ये कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो तीसरा कौन है? नहीं यही तो. LSG पे they panned the camera, but I don't think बढ़िया LSG फिल्म आई थी. entered. तीसरा कौन याद है? I don't see LSG is there. They are discussing it. LSG पहले भी डिस्कस कर रहे थे. नहीं LSG ने bid ही नहीं करा भाई. नहीं, still bidding is on. LSG did not. Where are you seeing this? What happened? This is big bird like tracker. मेरे पे क्यों नहीं आ रहा? गए 4 में, Super Kings. मात्र 4. Chennai. 4 crore Chennai. I Not can't bad, believe this. not bad at all. I can't. No, so even yesterday when you were saying it, I 100% I get the logic of Chennai wanting him. Chennai wanting him, but at बिल्कुल, 4, getting him at 4 crore. I didn't see him going beyond 6 at all. 4 crore is measly. It is measly, but I'm not surprised at all. Again क्या thought process होगा? चेतन शार्दुल को लेकर चेन्नई का. नहीं, I think they, like I said, Chennai is a team जो उनके players हैं जो उनको पता है कि ये player हमें बैलेंस देता है. 2 साल पहले शार्दुल को वो नहीं ले पाए थे. They had to choose between Deepak Chahar and Shardul Thakur, and I think they chose wrong in that auction. क्योंकि दीपक चहर उसके बाद इतना इंजर्ड रहे, इतना नहीं दे पाए. और शार्दुल का आप देखो पिछले 2 सीजन्स, he's been at DC, he's been at KKR. मतलब वो ऐसे लग रहे हैं ना कि उनको अपना घर नहीं मिल रहा है. मतलब होता है ना, एक परिंदा उड़ रहा होता है, उसको अपना घर नहीं मिलता है. I think this is a good homecoming for him. He does well at Chepauk. MS Dhoni really likes him, you know, the kind of player he is. And जो वो balance देंगे, bowler, 4 overs, and a very useful lower order batsman who can hit big. I think he will be at home at Chennai. This is a huge buy for Chennai. Azamtullah. Umar Zaid, GT. 50 lakhs. 50 lakhs. Base price पे. No, I think fill in the blanks. No, I think he's a good batsman. He's a good batter, but you shown. can't call him an all-rounder. No, they need batters also. They need batters also. They need No, he batters did. also. वो तंदुलकर ने भी एक tweet किया था. To see हाँ, जिसकी बात हम कर रहे थे. अब अब ये देखना कि पैट कमिंस
Let's get the this popcorns is out. हाँ, this is अगर ये भी 5 करोड़ में चले गए ना तो भाई आज का दिन Then the नहीं, teams आज have का become smarter. हाँ, they have become no, then this is a trend कि आज हम खर्च नहीं करेंगे पैसा. I mean, वही कह रहा था, हम इतना सोच के आते हैं, ये अलग सोचते हैं ये लोग. GT KKR क्यों ले? KKR had him पहले ना. Yeah. They released him the season he was not available. ये फोटो कब की यूज कर रहे हैं ये? Mumbai, there you go. Mumbai का तो कल Mumbai make their first move. They need the bowler. They need the they don't bowler. Yeah. Mumbai have entered the fray. ये जो कल कहा चेतन ने शो पे कि ये पहला 15 वाला हो सकता है. But Mumbai don't have 15 to throw. Mumbai नहीं, but your But yeah, GT. Yeah, I did pick him for late 15. bid, GT. Yeah, I did pick him for 15 crores. Yeah. If he goes for anything I would be less surprised than if Mumbai put under 10. every bit on this. under 10, no, that would be mad if he goes for under 10. I would be surprised if Mumbai put literally 70% of their. Yeah, I won't be either. Mumbai have done that in the past. Yeah. They've done that in the past. देखिए पिछले You दो- remember the mega It just auction? makes sense for them to get a good fast bowler at You- whatever price. You remember the mega auction? जब ईशान किशन के लिए they threw in 16 crores and then built the rest of the team with those छोटा players. They've done that before. देखो आपको एक बेहतरीन The one बॉलर thing, मिल रहा है, आपको एक गन फील्डर मिल रहा है, So और right ऐसा now it is बैट्समैन मिल between रहा है Chennai कि and Mumbai. साल right? में एक बार he'll Yes, get you a Chennai and 14 Mumbai. ball 50. So this is the next. And This he's a is the captain, next यार, वो Ben Stokes चाहिए, moment. This is the Ben Stokes moment from last year as well. And No. Srini, after Am I tried for Ben Stokes? I still feel between Cummins and Starc, MI will prefer Starc. सुनी हम जो बात कर रहे थे आफ्टर एमएस आप किसको देख रहे हो कि चेन्नई सुपर किंग्स को लीड कर पाए बिकॉज़ चेन्नई I को सब have कुछ said नहीं this- होगा I have been saying this for a couple of years now. Ruturaj Gaikwad is their next captain. But if I can add, what obviously I agree with him. Ruturaj Gaikwad is their potentially their next captain. लेकिन मैं यहाँ पे MI ने जो किया, मुंबई इंडियंस ने जो किया, उससे लेना चाहूंगा. उन्होंने गेम चेंज कर दी है. What did they do? They went to another team. They bought a captain in the middle of a cycle. Retain बहुत दूर की बात है. अभी 1 साल बचा है इस cycle में. They got an IPL title winning captain कि हमें ये चाहिए. They changed the game. उन्होंने कहा कि ये करा जा सकता है. So tomorrow CSK might say, okay, you know what? We need somebody who's proven, who's done well at this game. What is stopping them from doing that? What is stopping any team from doing that? I agree with ये Srini. न्यू पैटर्न स्टार्ट है ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट है आईपीएल के लिए, आईपीएल की मार्केट के लिए, जो हम ट्रांसफर विंडो की मार्केट होती है उसके लिए दिस इज अ गेम चेंजिंग मोमेंट. एमआई हैज चेंज्ड द रूल्स और आप ये चीज एमआई से ही एक्सपेक्ट करोगे बिकॉज out of the box thinking and and they are really good at what they do. And I'm just giving an example in the future, not just CSK, anybody, but no, there's no stopping if Ruturaj Gaikwad doesn't work out. And also, Then maybe. Also, see, it's also a case of, demand will always match supply. Yeah. Right. So, True. What you want, what is available vis-a-vis, is the player ready to come. I think one of the biggest unaddressed problems with IPL in the player market is that nobody seems to be giving a lot of importance to what does the player want. I think in the 7.4, I think both these teams could well be locking in their future captain option. Mumbai had exactly. Mumbai is out, but both Chennai and RCB could well be looking at their next captaincy option too. No, I mean Faf is No, going no, to no. Faf is there for next 4 years. Faf kahin nahi Jimmy, ja Faf raha kahin nahi ja raha. 4 years. Not 4 years. RCB 4 years easy. He's Look at his fitness. चाहिए, but वही बात तो हो रही है. फाफ डुप्लेसी फिर भी आपको वो Chennai काम Super कर Kings, सकते हैं. I always see captain will be Indian. I don't know, ये हम लोग बात कर रहे हैं long term vision SRH की. अभी SRH एक बड़ा option आएगा. SRH पूरा change entered हो at सकता है. 8 crores. 8.540 Mumbai Indians. Mumbai are Indians saving for Starc then. Yeah, exactly. They're saving for I said, Starc. MI They will have not to get start. Kutsia. But Srini bhai, आप Both. कह रहे हो- Both. Koji I'm- and or even- Starc. even- They can get both. I I'm think with Madhushankar Chetan. too. I'm with Yesterday Chetan on we Mitchell Starc calculated. entirely. Yeah. कि मैं समझता हूँ कि वो क्या लाते हैं, लेकिन
you're taking a punt. Alyssa Healy gets injured, something happens, he's always by her side. There's always, I agree with what you said, कि hopefully discussions were had कि भैया हम 10 crore देंगे, वादा चाहिए, but Mitchell Starc is just unpredictable. 10 CR. बोला ये if इसको नहीं मिलेगा 10 CR तो किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? इस पूरे साल इसने जो छुआ वो सोना बन गया. नहीं WTC champion. It's not World just Cup about champion. this year. Recency bias always factors. Yeah, that's true. But this guy, I mean, And Hyderabad. 2018 का जो इंडिया का टूर था ऑस्ट्रेलिया का, he MI performed ने मना कर दिया? so well. MI back out. MI back out. बहुत पहले. Who is MI pulled out at Stop. 4.6. That is Have they RCB. pulled out or stopped? long time back. No, long they time. stopped. They like pulled out before They said we are SRH. not interested. Yeah. But They pulled out can- before SRH. But nothing stops them from. Pat Cummins will finish as one of the greatest Australian cricketers ever. ये तो लग रहा है So- कि मुझे 12 CR हो चुका है, लेकिन ये वो बढ़ा नहीं रहे हैं. ग्राफिक में कोई इशू है, I I mean, guess. this is just slightly off topic, लेकिन अभी जो चेतन ने बात कही ना, अब आप सोचते हो लोग भूल गए ये बंदा 6 साल से क्रिकेट से बाहर था because of a back 12 CR with 6 sorry, years. SRH. Pat Cummins did not play cricket. 12 He CR would have already with been a SRH. great. No, he's No, he is, he's but I'm going to saying finish as an all-time Australian great. 6 साल he didn't play cricket. Yeah. Imagine. And the last time I went to Australia last year for the T20 World Cup, the public perception was against him with Yes, what sir, yeah. with what happened with Justin Langer. Within 12 months, बिल्कुल काया पलट गई है. आपने देखा होगा किस तरीके से प्यार मिला है ऑस्ट्रेलियन टीम को for that best test. और पर्थ में ही सबसे ज्यादा against this Australian side, this Australian leadership, because Justin Langer is from Perth, right? From Western Australia. लेकिन वो रिवर्स कर दिया है. 14? This guy is do you think कि ये क्या 15 crores. मैंने कल शाम को बोला है 15 crores. कल शाम को हम Pat Cummins 15 crores. डिजर्विंग प्लेयर है, मिलना चाहिए. The लेकिन- most un-Australian Australian captain ever. The वो है most ना, वो- un-Australian हाँ, Australian captain. इनको नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? 14. It's just the franchise is surprising me. I just don't want him to go to RCB. So RCB ka overseas quota is done na? Yeah. At the auction Yeah. table. You have Maxwell, Faf, Cameron Green and Pat Cummins. Oh, हो गया. wow. But that's a great quota. That's a That's great quite a good- मैं great अपने जो quota. कल अगर बीट लगाई है तो ये 15 प्लस हो चुका है. Called it. साहिल सरप्राइज या फिर ये No, था not कि- at all surprised Man, because it's see there. जो Nobody seems to be done yet. जो दो Yeah. टीम्स हैं उनके पास पैसा है और उनको चाहिए भी है तो वही ना ऑक्शन के अंदर वो डिमांड सप्लाई वाला रूल एकदम मिनी ऑक्शन में परफेक्ट Okay, this is Apply going होता है। past 20, it looks like. 16.5 18 तक जाएगा. 18 जाएगा. 18. तो 18 जाएगा तो इट मींस गुजरात टाइटंस के पास ज्यादा पर्स है. हैदराबाद गुजरात टाइटंस Who entered? नो No, nobody. अब तो ये दोनों- is running 17 Oh my God. 17.25 17 Oh, 17.50. Oh wow. What is the I highest think figure? IPL highest 17.50 था. 18.5 18.5 था. Sam Sam Curran. Curran पिछले साल. He'll beat it. हो गया, Oh हो गया, wow. Compared. 18. 18.25 Daniel Vittori सोच रहा है यार. 18.5. 18.5. 18.5. Oh, 18.75. highest player. 19. हो गया. 19. highest 19. Pat Cummins. 19. Pat Cummins. IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी. गुड लॉर्ड दैट्स अ लॉट ऑफ मनी हम इसे कह रहे थे कि मिनी ऑक्शन है. ये तो 19 बम्पर हो CR. गया ओ वो 19.50. 19.50 श्रेणी 20 होगा पार. 20 ये क्या हो रहा है? ले. बॉस पर्स कितना है इन लोग का है ना? खाली आरसीबी के पास करेंगे 23 हो गया, करोड़ है 20. सिर्फ। हाँ तो RCB does this thing, no? Touch. 20. तो 21 में शगुन कर दो यार Who took it? Who took it? क्या है? Who's going? नो इट्स 2025 बॉस इट्स स्टिल गोइंग It's still going, but RCB has to pull out at some point. RCB They need a spinner. They need a spinner. नो दे गॉट मयंक डागर ना ट्रेड Wow. विंडो Mayank Dagar is going to will them the IPL. हाँ, IPL तो वैसे भी नहीं जीतना RCB ने. फाइनल So you're right. क्यों Jamie? Yeah, They can throw all 23 crores बिल्कुल. because they don't need anybody else. बिल्कुल. No, I mean, everybody needs a good bowler, so why not? But you also need a good spinner, no? They released Hasaranga. They released Harshal Patel. अब सिराज और पैट कमिंस के There. RCB is going. When it, RSH is also going. श्रेणी आपने इतना वो ऑक्शंस देखे हैं, वो ये क्या एक्सपीरियंस हो रहा है आपको भी? well, I RCB. guess teams are like willing. What it's telling me is कि
अब ऐसा है कि पैसा है, पैसे खर्चने भी हैं, बट वैल्यू चाहिए और लेगेसी चाहिए। कहते भी है ना कि जब वो ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, तो यही पैट कमिंस के साथ भी हो रहा है। खुद उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि मेरे ऊपर इतनी बिडिंग आई जा रही है, 20.5 करोड़ यार। Last time also when he was part of IPL 15 करोड़ में गए थे। RCB are done. Obviously they have to be, at some point they will have to be. They need a lot of players, they don't have bowlers, and I'm assuming they want to win the IPL. No, I think if they could have got Cummins, so it would have been Siraj, Cummins, Akashdeep, Mayank Dagar and Karan Sharma, and Cam Green and Maxwell. Yeah, that still doesn't win you the IPL. अभी हैदराबाद के पास 26 यार का बजट था, इन्होंने इसमें 20-50 खर्च कर दिया, 20-50 खर्च कर दिया हैदराबाद ने, 4 के राउंड बचा उनके पास भी। मतलब फ्रेंचाइजी ने माइंड मेकअप किया हुआ है कि मुझे इस प्लेयर को लेना है जी, होमवर्क तो पूरा होता है ना। सिमिलर होगा स्टार्क के साथ भी, अब इसका इतना हो गया तो बट उसमें मुंबई बाहर नहीं जाएंगे, उसमें मुंबई बाहर नहीं जाएगा और आरसीबी भी नहीं जाएगा। तो आरसीबी कैन पुश एमआई टू द लिमिट व्हेन इट कम्स टू स्टार्क। This is crazy. The Mumbai Indians Gerald Coetzee. So how much did he go for, Pat Cummins? 20.5. 20.5. The highest ever in IPL, Yeah, right? by Highest 2 crores. by 2 crores. Wow. बेस प्राइस 2 करोड़ था ना पैट कमिंस का। ना मुंबई इंडियंस के पास जो पॉकेट है वो अराउंड 18 सीआर का है। अब जो हम बात कर रहे हैं लखनऊ जायंट्स, वो तो छोड़ ही दो उनके लिए। गुजरात टाइटंस, अभी बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने खोला नहीं है, क्यों? I don't know. I thought, जैसे कि मैंने कहा था, I thought ये पैट कमिंस के पीछे भागेंगे क्योंकि एक तो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, आपको कैप्टन चाहिए। I don't know who they're going to, because like we discussed, हार्दिक पांड्या को आप 2 प्लेयर से रिप्लेस करते हो, but that captaincy vacuum, I mean, I know Shubman Gill is there, but you need someone more experienced. तो देखते हैं भी किसके पास जाएंगे, है ही नहीं कोई और ऐसा कोई एक्सपीरियंस ऑलराउंडर ना। Okay. RCB के पास around 25. MI have entered and CSK have entered. So I was expecting कि MI will go for Gerald Coetzee क्योंकि उनको पेसर्स चाहिए। मिचेल स्टार्क और जेराल्ड कोत्जिया दोनों पे उनकी नजर रहेगी। कल शाम को हमारा प्रीव्यू शो था, उसमें हमने ये बात किया था। 25 No, 23, 24. 23 yeah. So 23. MI will definitely go for him. आज MI लगभग 2 ओवरसीज पेसर और 1 इंडियन पेसर पे 23 या तो नजर बनाएंगे। ऑप्शंस हैं जेराल्ड कोत्जिया, मिचेल स्टार्क, मधुशंका, उमेश यादव और शिवम मावी। इन 5 में से आई थिंक उनकी नजर 3 पर जरूर है आज। Mavi I think is going to either KKR or LSG. Strong hunch. Wherever he's going, but I'm sure MI will be interested in him as well. Yeah, Karthik Tyagi too. Karthik Tyagi too. He's So also ये available, 6 कार्तिक त्यागी का नाम मैंने कल मिस कर दिया। ये 6 बॉलर्स में से 3 पर कम से कम MI की नजर जरूर होगी। उनका मॉडल यही है कि 3 पेसर 2 स्पिनर, और आपको स्पिनर इतने ज्यादा नहीं है। हसरंगा चले गए हैं, सो यू हैव आदिल रशीद एंड मुजीबुर रहमान कमिंग, तो दोनों ओवरसीज स्लॉट वाले हैं। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे डू इन द पेस ऑप्शंस, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या स्पिन ऑप्शन रहेगी उनके पास। एक चीज अमूमन देखा गया है कि जो चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, सनराइजर्स हैदराबाद हो, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं ओवरसीज प्लेयर्स पे। लेकिन चेन्नई ऐसा प्लेयर्स को सेलेक्ट करता है जो बहुत ही अनकॉमन सा प्लेयर है, लेकिन रातों रात चेन्नई उसको लाके स्टार बना देता है। जैसे रश्विन की हम बात कर रहे हैं। रश्विन एक ऐसा प्लेयर है जो हर कोई जान रहा है। इस वर्ल्ड कप से पहले कोई नहीं जान रहा था, जो बहुत ज्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं करता, लेकिन आफ्टर दिस वर्ल्ड कप एवरीवन नोस हु इज रश्विन। ये एक जो प्लानिंग होती है किसी भी टीम के लिए कि कुछ नए प्लेयर्स उठाओ, 4 साल 2 साल 3 साल रखो अपने बीच, ट्रेंड करो और उसे फ्यूचर टीम बना के छोड़ो। तो ये प्लानिंग कहीं ना कहीं चेन्नई के सक्सेस का सबसे बड़ा एक वेटेज है। चेन्नई तो मैं कहूंगा इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट रहा है। अगर आप एक स्पेसिफिकली देखें तो चेन्नई हैज गॉन इन फॉर एस्टैब्लिश्ड टीम्स। आप चेन्नई का अगर एक प्रोसेस देखोगे तो वो एक बीच में जोक बन गया था कि अगर आप अंडर 30 हो तो आप बिलोंग ही नहीं करते चेन्नई में। डैडी आर्मी। तो हाँ, तो वो तो आप 30 साल से ऊपर का रहना तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गया था। In the meantime, MI have got Gerald Coetzee. 5 CR. Yes. Called it. Steal. 2 out of 2? Jamie? Coetzee तो even I said yesterday. I didn't say he'll go for a lot of money. Not how much 5 CR. That's a very good buy. That's a very good buy. ये देखना है हर्षल पटेल कहाँ जाएंगे और क्या आरसीबी इनके लिए वापस आएगा या नहीं आएंगे। आई डोंट थिंक वो आएंगे, क्योंकि हर्षल पटेल जो फर्स्ट कपल ऑफ सीजंस में उनके पास वेरिएशंस थे,
उसके आगे बढ़ नहीं पाए हैं. He's always relying on slower deliveries, all 6 deliveries. और पंजाब वो और नहीं चलता है. जीटी दोनों के बीच में कंपटीशन है हर्षल GT, पटेल को that's लेकर। interesting. आशीष नेहरा Except उल्टा ब्लेजर expect डाल him के to बैठे हुए do हैं. some weird हाँ, things कुछ or ना कुछ इनको करना ही है. blazer उल्टा उल्टा ब्लेजर डाल डाल के के। बैठे हुए हैं उल्टा आशीष. ब्लेजर, चश्मा उल्टा पीछे. चश्मा पीछे. Okay. दबंग. But no, Harshal Patel, I agree. He has lost that zip. He's of lost the that first zip. two वो जब seasons. से जडेजा ने उनको कोई 32 रन मारे ना आखिरी Yeah, ओवर में, he's yeah. not been the same. I think वो Yeah. इंजरी के बाद जब वापस आया ना, Yeah. उसका रिदम ऑफ था क्योंकि उसका स्लोअर वन रेगुलर स्लोअर वन नहीं था, वो डिप आता था, वो डिप चला गया. Next Ranjit. तो At the next हर्षल break, पटेल we'll को take a लेकर बात चल रही है इस वक्त। अराउंड 5 CR भी पटेल पहुंच चुके हैं I'll text. पंजाब और गुजरात। लेकिन वो जो इंजरी की बात साहिल तुमने की कि अभी एक इम्पैक्ट था हर्षल पटेल का, लेकिन जिस तरह से जडेजा ने जो स्कोर किया अगेंस्ट उनके, एक प्लेयर का करियर सडनली चेंज हो जाता है। करेक्ट। एक ओवर, आपकी एक इंजरी आपको कहां से कहां लेके चली जाती है, और फिर आप हर्षल पटेल को आप खोज रहे हैं, हम उनके लिए वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि हाँ उन्हें लाओ, खिलाओ और उन्हें तैयार करो फिर से, लेकिन उनके अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल पर हर्षल पटेल अब तक नहीं खेल पाए। करेक्ट, ये तो है। मतलब आप देखो, अगर आप याद करोगे वो दौर जब वो पर्पल कैप विनर बने, आरसीबी के लिटिल लोन प्लेयर थे, उसके बाद आरसीबी ने उनको रिटेन करा, इतना पैसा उनके ऊपर खर्च करा, पोटेंशियल था, सबको स्किल भी था, आज भी है। और वो जो मेंटली वो इतना स्ट्रांग था ना कि सबसे डिफिकल्ट ओवर्स वो डालता था। आप देखो आरसीबी उसको 4 ओवर जो फेंकवाते थे वो 14वां, 16वां, 18वां, 20वां मोस्टली रहता था, या एक ओवर बीच में कहीं स्लिप इन हो गया। उस दौरान वो गेंदबाजी करना किसी भी बॉलर के लिए आसान नहीं है, और इंडिया में तो खासकर जब आप इतने ड्यू के साथ सेकंड इनिंग में बॉल डालते हो। बट वो इंजरी के बाद जब वापस आया, आई थिंक वो रिदम का प्रॉब्लम हुआ, बहुत रिदम ओरिएंटेड बॉलर था, रिदम ड्रिवन बॉलर था। और जो स्लोअर वन की मैं बात कर रहा हूँ ना, एक स्लोअर वन रेगुलर होता है, हर्षल पटेल का स्लोअर वन डिप करता था आपके ऊपर, तो वहीं पे ये खिलाड़ी बहुत ग्रेट बना था। और ग्रेटनेस ये है कि आज इसकी बोली फिर 7 करोड़ के पास हो गई है, क्योंकि इसका डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा रहा है। हरियाणा के लिए विजय हजारे ट्रॉफी जो हरियाणा जीती है अभी 2 दिन पहले, हर्षल पटेल ने अहम भूमिका निभाई फाइनल के अंदर, क्योंकि राजस्थान वो गेम ऑलमोस्ट जीत गया था, बट इन्होंने आके विकेट निकाल दिए। गेम चेंजर कि आरसीबी रिटेन कर लेगी इसको। बट जो हम उससे नहीं बात कर रहे थे कि पंजाब को भी जरूरत है, पंजाब की टीम और गुजरात की टीम पेपर पे भी दिख रही है हमें, ठीक है, लेकिन उन्हें एक ऐसे प्लेयर चाहिए जो गेम चेंजर हो, जो अपने को बॉलिंग में, थोड़ी फील्डिंग में हेल्प कर सके, क्योंकि वो मिसिंग है अभी भी। मैं जो पंजाब की टीम भी बात कर लो या फिर गुजरात टाइटंस की भी बात कर लो, पंजाब में तो राइट नाउ आपको एक स्टेबल बैटर की जरूरत है। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सारा कुछ प्रेशर जो है वो शिखर धवन पे ही है, तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस आउट करना पंजाब। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर रचिन पर शायद पंजाब को बीट करना चाहिए था, जो सीएसके ने करके उन्हें बैकअप के तौर पर रखा है? रचिन तो 100% अच्छे फॉर्म में चल रहा है रचिन ना, काफी चीप ऑप्शन, क्योंकि लिविंगस्टन इज अ लॉटरी ना, लियम लिविंगस्टन इज अ लॉटरी। लियम लिविंगस्टन कांट बी और लाइक कंसिस्टेंट नंबर 4 और नंबर 5 इन अ टी20, वो एक लॉटरी है, वो मैक्सवेल वाला भी नहीं है, वो देखो तो लॉटरी है। बैट्समैन 8 I think Rachin could have been good for Punjab for sure. इवन आल्सो दिल्ली के लिए भी ठीक था, दिल्ली। पर दिल्ली में अमृत फिर वो है ना, कितने ओवरसीज प्लेयर, वो तो फिर इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग बना दी, जितने उन लोग ने, पर कहां खिलाओगे? मतलब आई थिंक राइट नाउ ऑन द टेबल यू शुड बी फाइनलाइजिंग योर 11। अगर मिनी ऑक्शन की आप बात करेंगे, 11 अपना शीट बनाओ, मतलब आप कर लो, पर 11 आपके माइंड में रहना चाहिए, जो आज मतलब आप इतना आगे That's fine, but इसका मतलब ये नहीं है ना कि you can't have your 8 overseas players. No, you have, but fair enough. मतलब 11 बनाओ मोटा-मोटी, आपका एक 80-90% आप सॉर्टेड रहने चाहिए। Correct. Going into a mini auction. वो सब छोड़ो, हर्षल पटेल को देखो, he's crossed the 10 crore mark. That's a little excessive for him. I'm जो बात हम फाइल कर भी रहते हैं कि अब रीसेंसी बायस आया, इसका डोमेस्टिक अच्छा गया, विजय हजारे अच्छा, that's a little expensive for him. That's way over what I thought. Excessive. I understand recency bias, लेकिन IPL में काफी time से he's not been that potent, so and he's lost his place in India's team. तो जब आपका एक brand value गिरता है, I didn't see him going for more than 6. So this is for me personally is little जैकपॉट कह रहे हो आपकी हर्षल पटेल के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। नहीं, because उनका performances over the last 1-2 years was not that great. He's not taken that next step. From that perspective, I thought, yeah, Jamie's right. But Jamie, do you think maybe a change
change in team, change of ground might help him. Because RCB mein to as it is a death trap for bowlers. Again, very, very keen to see where he finally ends up. Punjab has the highest. पंजाब नहीं जाना चाहिए उसको, वो उसके करियर का एकदम नहीं, that is how much budget is there. उसको नेहरा जी चाहिए, अगर करियर में कुछ करना है चाहिए ना, जो मोहित शर्मा के साथ हुआ उसको नेहरा जी चाहिए. नहीं, not just नेहरा जी, but आप ये भी देखो ना, अहमदाबाद is a huge ground, और इनका जो slower variations है, that is going to work on a ground like अहमदाबाद, जहाँ पे इतना बड़ा ground है, the boundaries are really big. It's not like चिन्नास्वामी जहाँ पे आंख बंद करके आप छक्का मार रहे हो. छक्के लास्ट ईयर लगे भी अहमदाबाद में थे, रिंकू के 5 भी वहीं आए थे. मतलब ग्राउंड बड़ा लगता है पर डायमेंशन ऐसा नहीं है. अहमदाबाद लाइक ग्राउंड लुक्स इंटिमिडेटिंग, बट इट्स नॉट दैट डायमेंशंस में बड़ा है. लाइक क्लियर तो हो जाता है. 11:30 हो गया. It's not like RCB, right? Yeah, not like It's not like RCB. 11.75 and counting now. So 10.75 का जो इसका RCB के साथ बिड था वो क्रॉस हो गया after RCB release. But let me ask you guys, is he not a bit too one-dimensional? Like, are you just now he is? Him, now he for sure he is. 6 out of 6 slower balls. Power play में इतना खास नहीं है. Going on. Yeah, that's what I'm saying. Watch this. We can talk about grounds and conditions. जहाँ भी खेलेगा, is he going to give you that much? को देख के मेरे को वो वीरेंद्र सहवाग का कोट याद आ गया. When Sehwag was the mentor or the director, something he was with Punjab. No, he was at the table. He said, "Never hand that paddle to a lady because she'll never stop shopping." And she hasn't. They've got him for and 11. They get the bid at 11. We have a lady with Breaking us also news, now. So 11.75. let's not make those kind of remarks. Okay, so hi guys, meeting you here for the first time. Well, thanks to Amrit. First, thanks Amrit. You guys tell how's it going. I want to know SRH. Chetan, SRH जिस तरीके से चल रहे हैं अभी तक. Yeah, I mean a couple of good buys for them. I think Travis had really good buy, not just in the short term but also in the long term for them. Because next year we might look at players who might get retained. Last year उनको top order में उनके पास कोई नहीं था जो उनके young Indian batters को guide कर सके. Mayank Agarwal was not firing for them. So Travis Head, one of the top batters of 2023. I think that's a very, very good purchase if he can carry that form. And we all know what he did in Ahmedabad to us. So from that perspective, I think, that's a very, very good buy for SRH. Yeah, and Srini, we're talking about Travis Head, but talk of the town is Pat Cummins. And RCB went for Pat Cummins, and it felt like कि सारे पैसे वो उन्हीं पे लगा देंगे, but a wise decision to back out at the last moment. I'm not surprised. I'm not surprised with Pat Cummins getting money. 20 crore touch kiye hain. Yes, kind of looked like at one point that it would touch 20, but that bit is surprising. Yeah. Pat Cummins getting a lot of money. I think they just got it divided. Pat Cummins को extra दे दिया, वलिंदु हसरंगा को इतने ही सस्ते में ले लिया. तो वो कहीं ना कहीं balance out हो गया. और मेरे ख्याल से वो 3 buys में SRH has done a very good job. एक और शायद अगर वो 5 करोड़ कुछ बचे उनके पास, एक और अगर कोई young batter को उठा ले वो, तो ये they are sorted. Yeah, and Sahil. हमने पैट कमिंस को देख लिया है, हमने यहाँ पे रोमन पावेल पे देख लिया. व्हाट इज द अप्रोच दैट यू आर थिंकिंग? क्योंकि मुझे याद है कि हम आपसे बात कर रहे थे, यू सेड कि जितने भी फास्ट बॉलर्स होंगे वो ज्यादा बिकेंगे इस ऑक्शन में. डू यू थिंक इट्स द ट्रेंड दैट्स गोइंग अराउंड राइट नाउ एज वेल? I think it's likely to continue. We are just talking about the overseas players. Let the uncapped Indian players come into the picture. You will see some names becoming crorepati's today because अभी teams को वो requirement है. और अभी 2 bouncer वाला rule जो introduce हुआ है, उसके बाद you will see more and more fast bowlers coming to the picture and become very, very relevant in the scheme of things. And right now, as we speak, I think Mitchel, as we are speaking, Livingston का replacement या backup चाहिए आपको. This boy fits the bill. 4 crore mark. Yeah, he's a phenomenal player. Last 12 months, जैसा spin को खेला है, कड़क. I'm surprised GT is not going for him because हमने अभी आपके आने से पहले इस में बात की थी कि हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने के लिए आपको एक प्लेयर चाहिए जो बैटिंग करता है, जो मीडियम पेस करता है. और चलो कैप्टेंसी acumen might not be there with Daryl Mitchell, but the finishing ability from number 4 he can finish games. वो 4 से ही पूरी इनिंग्स को पकड़ के टर्न कर सकते हैं. And he can finish games. हमने देखा है what he does for New Zealand. This is the perfect player. I mean, obviously they can't replace Hardik Pandya with just one player. Yes. But still, this is the perfect replacement in my mind for Hardik if you're looking at the attributes. But right now, and I'm surprised they are not in going the World Cup. I think two of the finest centuries in this World Cup came from this guy. Both against India. The best bowling attack in the tournament. Both against India. Both in a losing cause, but both, if the team was there anywhere in the game, it is thanks to him.
Yeah. I think the So, first speaks volumes. game, Dharamshala, the way he handled Yeah. Kuldeep, Exactly. that He took the game close. Yeah. one day before that game, I was speaking to him. We did an interview for Cricket Yeah. Next, and I did ask him about the IPL. I see, matlab, light remark. Yeah. You know, you want to play? Yeah, it'll be nice playing for the IPL, but we take a lot of pride in playing for New Zealand. He was all chill, but right now chill will all heat up because this is a lot of money, 6 crore. Yeah. He's nearly 6 crore He's now, but he touching 6 deserves crores. that. Like middle order batter, gun player, very good footwork, again spin, very 6 dominating. crores is very good for Yeah. him. And what DC is in for him? Delhi Capitals and Punjab I Kings don't are in understand DC this going for him. bidding battle. DC Jamie. is DC. DC को किस क्या टीम को चाहिए? ज्यादा जरूरत है दोनों में से अभी? Look, if you look at what Daryl Mitchell offers any franchise, any team, Just DC Punjab. it's massive. वो वो निकल team गया पे ना खेल पहले। सकते हैं, वो finisher बन सकते हैं. You look at what No, he does just DC in Punjab. England's domestic tournament. Look at what he does in New Zealand's domestic tournament. ये जहाँ जाता है, ये wicket निकालता है. He's always at the ball, so he's a very utility player. And I'm surprised it's taken franchises this long, Suramya, to realize that Daryl Mitchell क्या कर सकते हैं. Srini is right. He scored 2 fantastic hundreds. He got an even better 100 in one of the matches against England before the World Cup in that series, you know. But he's undervalued. Last season, he sat in RCB. His main job was to do reels with Jimmy Neesham, you know. Yeah. It's a crime that the world is waking up to what Daryl Mitchell has. उससे पहले 2021 T20 World Cup, I was doing shows with Chetan and the guy was coming out. He got the team into the final, you know. And now I think he's finally getting his due, you know. So जहाँ भी ये बंदा जाएगा, he's going to be gold because he should be playing every single match of the IPL that he gets any contract with, yeah. I call him the Grant Elliott clone. Okay. You know, he's built like that, मतलब a bald Grant Elliott in a way. यहाँ पे तो बाल हैं, and like Srini said, ये बहुत पुरानी photographs use कर रहे हैं. But yeah, he's like a Grant Elliott clone. That kind of mindset that he brings in terms of finishing the games. Like I said, वो पूरी innings को पढ़ के, match को situation को पढ़ के, he can do that. He did that both in Dharamshala and in Mumbai. The most successful batter against India in that World Cup. But even before that, he was like Jamie said, he's not been getting his due. I was always surprised why he's not playing in the IPL, a more prominent role in the IPL. For me, he's a perfect CSK player, a perfect GT player. Yeah. And I'm surprised both, obviously, CSK is much settled right now. Yeah. But I'm surprised GT is not GT in could for have him. gone for him, I'm really surprised GT is not in for him. Well, But I think I hope he goes to Punjab because he'll get 14 good games there. DC तो will continue to play musical कोई है नहीं ना chairs. पंजाब में. Exactly. कोई है नहीं पंजाब में पंजाब है ही कोई नहीं ना, तो कोई. 4 पे आप इसको easily उतार के you can solidify that middle order. Have Liam Livingston at 5. You are sorted then. Have Bairstow at 3, Prabhsimran and Shikhar Dhawan at top of the order. You're sorted with top 5. इतना That complicated. is something. It's a very nice line that Sahil used. You know, that at least if he goes to Punjab, उसको 14 game मिलेंगे, which is what every player wants. हर Yeah. player को अगर आप पूछो Exactly. 14 priority games क्या चाहिए, है, yeah. वो तो यही बोलेगा कि I should get my space under the lights. I think. So they have Harry Brook and now they're going for Daryl Mitchell. I don't It understand makes what DC no are doing. sense. It makes no sense. और सबसे बड़ा DC के साथ नेगेटिव पता है क्या था last season? Obviously, apart from Rishabh Pant, उससे बड़ा नेगेटिव नहीं हो सकता है. लेकिन the other negative was that they let go of Kagiso Rabada. Yeah. They were forced to let go of Kagiso Rabada. Yeah. Not last year, last 2 seasons. Yeah, They mega were- auction. Yeah, mega auction में. And Anrik Nokia never stepped up. से last season Yeah. तो शायद injury हो गई थी. हाँ, कम और खेला. उससे पिछले season में भी, the first season of this cycle, he was not able to step up. He was not the Anrik Nokia. Yeah. The reason was because he was Anrik Nokia along with Kagiso Rabada. Exactly. So DC should be looking to replace Rabada. Hmm. And I don't think either नहीं हो सकता. Harry Brook or Daryl Mitchell replace Rabada. Yeah. Exactly. So, I don't know why they're going for Daryl Mitchell. Then you already have Harry and they're Brook. spending 10 So crores. it means you are spending 10 on Daryl Mitchell. So what Jamie was saying is 4 on right. Brook. Then, So Brook is going to open. yeah. Then वरना where will कितना खिलाओगे? नहीं, but आप उनके 4 overseas गिनाओ इस टाइम पे. नोकिया खेलेगा या नहीं मैं तो 6 खेलेगा? गिना सकता हूँ. नहीं, उन्होंने नहीं, जितनी आप- शॉपिंग नहीं, कर ली है. 4 गिनाओ ना. Mitchell आप- Marsh, David Warner. David Warner, Mitchell Yeah. Marsh will play. Yeah. Then you have only 2 spots left. Harry Brook, अभी Mitchell गए नहीं हैं, but Harry Brook, Mitchell and Nokia. Is Nokia still there? I think he was released. Nokia Let me was not double check. released. I think he was released. Let me No, double he's check. not in the pool. He's very much there. He's very He's much there? He's Yeah. there, yeah. He's not in the pool. He's not been released. If he was released, he would have come up by now, na? Correct, In correct. fast So- bowlers.
For Daryl Mitchell 10 करोड़ का मार्क तो टच हो ही चुका है यहाँ पर. और हम जो बात कर रहे थे, obviously he's a Yeah, ace so they player, released yeah. Mustafizur. Mustafizur. Mustafizur was not going to be Yeah. important for them. But again, Mustafizur was they got Mustafizur so that they could try and replace Rabada. But Mustafizur didn't work out for them. But they have Ishant Sharma, boss, leading the attack. They don't need anyone. The great, grand old man of India is there. But why Punjab Kings like are I said after with Daryl RCB, Mitchell, Sahil? Yeah, what? Why Sorry. Punjab Kings are after him? Punjab Kings definitely need him at number 4. Okay, at If number there's 4. one player they could like bank upon for the entire season, I think it has to be Daryl Mitchell. एक availability की बात भी है because they have. Okay, we also have to figure this out that this is just one season. क्योंकि उसके बाद we are assuming कि mega auction will come up. Yes. It's a third year. Yeah. So it's a short term buy. So you're thinking for next season, and with the T20 World Cup immediately after the IPL, there's a good chance English players might not be available for the entirety of the IPL. So आपको बेस्टो का replacement चाहिए, आपको लिविंगस्टन का replacement चाहिए. बेस्ट और लिविंगस्टन के बिना तो पंजाब के पास कुछ बचा ही नहीं है. हाँ. So from that perspective, they are going hammer and tongs for him. Makes perfect sense to me. Because look, what he does is he can float. चार पे best option है वो Suramya. Yeah. But the guy can float. He's a quick starter when the situation demands by T20 parameters. वो again strange term, वो anchor कर सकते हैं. लेकिन भाई वो दूसरी तीसरे गेंद पे छक्के लगा सकते हैं वो. You know? And I'm surprised that I've seen him in that. इनका जो domestic है वहाँ पर न्यूजीलैंड में some Georgie Porgy it was called last time. फिर वो Ram Slam in whatever it's called. I mean whatever it is. Whenever I'm seeing him in T20 franchises, चाहे UK हो या New Zealand हो, he has a knack of taking wickets. He bowls 4 overs, 2 for 30. That's golden. तो जहाँ भी जाएगा Daryl Mitchell, I think he's a steal. He's just an amazing player. But वही बात है ना जेमी, दिल्ली कैपिटल्स में जगह क्लियर समझ में नहीं आ रही है. बिल्कुल. Delhi Capitals में, like I think Sahil was saying or Chetan was saying, Delhi Capitals में वो कहाँ से fit होंगे? I'm actually struggling because again, then you're saying कि आपका David Warner, Harry Brook, Mitchell Marsh or Daryl Mitchell, your top 4 or your overseas players. आप एक spinner नहीं खिला सकते हो, आप एक overseas bowler नहीं खिला सकते हो, unless you're saying कि Harry Brook is our plan B player, हम उसको नहीं खिलाएंगे. जब कोई injured होता है, जब कोई player rest मांगता है, तब हम Harry Brook को खिलाएंगे. But DC have Lungi Ngidi as well. That's what I'm saying. They have players which we're not factoring right now, and they'll be bowling all-rounders or fast bowlers. So strange. So, this makes no sense. From DC's perspective, because they've Punjab can afford to go till 15 for him, because yes, Punjab can afford to. But Sahil, let's talk about Delhi Capitals as a team. So they pulled out. Okay, DC have pulled out. Good decision. Sahil, when you talk about Delhi Capitals as a team, okay, so the last time when we saw Delhi Capitals, it seemed that they were all over the place. They didn't have a proper plan because obviously Rishabh Pant wasn't there. Then it was onto David Warner, and they lost first 5 matches, and then they were looking. A lack of planning was also there. Delhi Capitals, this time as well, when they are sitting here in the auction, it seems that they don't have a proper planning, right? Because they're going after Daryl Mitchell. But आप खिलाओगे किस नंबर पे, ये एक बड़ा सवाल है. So how is this team made? Because आपके पास कुछ options है जो आप ले नहीं रहे हो. And then auction maybe you are not going after the right players. I think it was a season of chaos for Delhi last time around, for sure. Right from David Warner taking up captaincy and doing what he did. There was no intent from him at top of the order. The batting didn't click. Prithvi Shaw struggled. They tried Sarfaraz Khan. They tried Manish Pandey. Everyone just struggled except Akshar Patel. I think there wasn't any bright spot from their campaign. David Warner to a certain extent facing the strike rate pressure when you are batting nearly run a ball. So that is not T20 batting for sure. So it was a season of chaos, and I'm still surprised what they're doing at the table this time around too. आप bowlers लेकर आओ, अक्सर के साथ एक quality spinner लेकर आओ, आप batting pack करी जा रहे हो, get a couple of good Indian uncapped players, boss, and have them around the likes of Mitchell Marsh, David. I think they also have Phil Salt, or have they released him? They've released him. Phil Salt is released. So you still have a couple of good quality overseas batters uske around Indian players. But again, have that balance. No, it's not International Premier League. Everything Sahil is saying is correct, but what do they need? They need a top order person who keeps wickets. You cannot expect a first ball of the IPL Rishabh Pant will be there. They have to budget. उम्मीद कर सकते हैं कि ऋषभ पंत वापस आएंगे, but you have to plan for him not to be there. You're chasing Daryl Mitchell. I would much rather they've gone for a get back Phil Salt, go for Josh Inglis, go for Kusal Mendes,
Daryl Mitchell is not going to give you what you need. You need a keeper batsman Right. जो top 3 या maximum 4 पे खेलता हो. And if you're going to spend 14 crores on Daryl Mitchell, आपका keeper कौन है? ऋषभ पंत. You cannot assume he's going to come back so soon. So strange. And will he come as a wicketkeeper batter, or he'll be coming Yeah. specially Yeah. only Yeah. as a batter? That's a question. So they need to keep their monies for a backup for Pant as a batsman, as a wicketkeeper. That's most important. लेकिन उस पे जाने से पहले मैंने क्या कहा था? Daryl Mitchell is your CSK player. He's Yeah. your typical CSK Yeah. player. I was surprised why they didn't go for him. And look, they've entered They have bidding entered for the him. bidding war. At 12.5 CR, they entered the bidding for Daryl Mitchell. Yeah. And ये तो एक trend रहा है ना चेतन CSK के साथ. They always go after the New Zealanders. You know, they are always after them. Punjab are off. Punjab done. are out of the bidding war. Oh, so CSK will get So him. CSK. At 14. So this is what. 14. This is interesting. He is your Okay, let's typical. just wait. The countdown is on. Let's just wait what's going to happen here. But he is your typical CSK CSK player. player. And I was surprised that CSK GT were also not going for him, but I was surprised कि CSK क्यों नहीं जा रहे हैं. They had that purse, and you know it made sense why they let Travis Head go. Yeah. Because they had 16 crores of Ben Stokes purse. Ben Stokes को उन्होंने release किया. They had 16 crores to spend on an overseas player. तो एक बात बताओ चेतन, इनके overseas कौन रहेंगे? You start We'll with come to Devon it. Let them Conway. get it. We'll let them get it, and then we'll come to it. But what I'm just trying to say is, So the discussions going Yeah, on in and in the meantime, I'll open. yeah. I think Pathirana and so, yeah. Conway are going to be two. No, wait. So we So have Daryl Mitchell Devon is most likely Conway, to go to CSK. Moeen Ali, Moeen Ali is not available for the entire season. Manish from what I Tikshana, Patirana. So that's 4. And then who else did they get today? heard. Tikshana hata hona. Rachin Ravindra. Rachin Rachin Ravindra. Ravindra. Tikshana kyun He's hata? gone. He's Nahi, gone. her match 14 games not. And, I'm just counting the yeah, overseas overseas. players. He's sold to Super Chennai Kings ने Super खरीदा. Kings. He is your quintessential Chennai player. यही मैंने आपको कहा था. They entered at 12 crores, and now this makes sense because Travis Head ko they let go, and they've got what? What did Ben Stokes not do for them last year? He did not play as much, but he did not bowl. Yeah. This guy bowls. Absolutely. Yeah. This guy bowls. He's going to give you those 2-3 overs. What they'll do is, whoever is the captain after Dhoni or whoever it is, they don't need to worry about playing an extra pacer. Yeah. Boss, CSK have had a gun auction so far. Rachin Ravindra, Shardul They- Thakur, So Daryl now- Mitchell, yeah. they have plugged whatever gaps there And were. They have that's done where more. planning They have comes done in, more. Sahil. Yeah. That's They've where done planning more. comes Yeah. in. When you sit at the auction table with Correct. proper planning, when you know what are the So they vacant knew where spots they and you went, go on they for were the where right they players, were that's So- what happens. That's why they have won title 5 times. They know the game. They are here in the auction right now. Conway, Mitchell Santner, Rachin Ravindra, Daryl Mitchell, Tikshana Patirana. That's 6. Moeen Ali, 7. That's your 7 overseas players. अब आप Santner Art. हाँ Santner Art, ना? Santner count कर लिया. So 7 overseas players. They still have 1 slot remaining, and just they'll get Hazelwood. They'll get Hazelwood, Okay. and now try and keep rotating. Okay, let's you know, park that. You know, Yeah, we Hazelwood will. We and will. But CSK. my point is कि they will keep rotating these Yeah. players, and look at the core that they have got. Oh my God, this CSK are already favorites for next year. Yeah, they are. And you mentioned 3 New Zealand players, right, Chetan? Yeah. We got Rachin Ravindra 4. and Daryl Mitchell right now 4. in this auction. And Conway and Mitchell Santner Mitchell are already Santner. there. So they should have black stripes on that yellow now. But Sahil, you tell us why they're so fond of New Zealand players. Stephen Fleming. Fleming. It's a no-brainer. It's a no-brainer. I think that's the kind of chilled out atmosphere they've had in the dressing room for years, except that Ravindra Jadeja captaincy Yeah. episode. इसी बात को आगे लेके मैं एक और बार कहूंगा, न्यूजीलैंड इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत रही है. Josh Hazelwood spent 1 season with Dhoni. Australia won that year. Sam Curran spent 1 season. England won that year. They've now got they have Santner, they have Ravindra, they have Conway, and now they have Daryl Mitchell. New Zealand are winning the T20 World Cup because Dhoni का हाथ इतना बड़ा होता है teams पर. Well, we'll play it on camera- loop once that happens in T20 World Cup. For now, it's the IPL auction time. Chetan is talking about, how CSK are on point in the game. And right now Chris we have Woakes. Chris Woakes. Yeah. Chris Woakes ke liye Punjab Kings have entered the bidding. And it Not seems surprised. that no Not other team's quite interested. So far, we don't have any other team bidding for Chris Woakes. Why Chris Woakes for Punjab Kings, Chetan? Obviously they need the players, Mhm. but it makes no sense because
एक तरफ आप जॉनी बेस्ट और got लिविंगस्टन का him. बैकअप बना रहे हो, they've got him for 420. 420. Who was the Steal. other Yeah. bidder? Who was the other bidder? KKR. KKR. Steal. KKR. KKR is interesting that they were in for him. So But- clearly they're Yeah. looking for bowlers who He can was there move the before ball. with them also. Yeah. KKR. But not very convincing. But he's Punjab. not been convincing in these Hmm. conditions. That's been the problem. और अभी वो इंग्लैंड के टेस्ट टूर में की टीम में भी नहीं है. Yeah. Because these conditions don't suit him. Under lights with the ball moving around, yes. And I thought GT would be interested in him. Yeah. You know, they've released Lockie Ferguson. He can bat a bit. So he gives you that number 7, number 8 ka batting. And instead of Lockie Ferguson, they would have got somebody. Mohit Sharma is moving the ball. So can Chris Wokes. So Yeah. I thought GT would have been interested in him. Proper all-rounder. Proper all-rounder. Proper all-rounder. Yeah. But disappointed that they did not go for him. A Yeah. very good buy for Punjab. वैसे- I think a better buy for Punjab than Harshal Patel. In my Yeah, can opinion. say so. Yeah. Sahil, Harshal Patel, nobody was thinking that, Harshal Patel will go on for around 11 crores or so. Do you think it's good buy, or do you think that he could have been sold at much lesser price as well? No, in the last couple of seasons, one area where we have seen Punjab struggle, in spite of having the likes of Kagiso Rabada and Arshdeep Singh, it has been the death bowling. Arshdeep has been very erratic. Like if you get the last fifer versus South Africa out of the picture, he has been very erratic for India too. There have been wickets, but he has leaked runs. He has been very inconsistent, very wayward. The no balls wides have been in plenty, and with Punjab too, right? Because he has been doing bulk of the heavy lifting when it comes to death bowling, and Rabada has been very off color in Punjab colors. He was a different bowler when he was bowling with Anik Nokia in DC colors, but now the complexion has completely changed for Rabada, the bowler. But that's where they needed someone like Harshal Patel. They needed someone to control those death overs. क्योंकि अभी तक आप क्या देख रहे थे, राहुल चेहर को बॉल दे रहे हैं, हरप्रीत बरार जो इनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो एक आध ओवर आके आपको दिखता था डालने के लिए. So that was not taking them anywhere, right? You needed bowlers who could do the job in the final. Do they still have Nathan Ellis? I'm not sure. Have they retained him? Punjab Kings. He's there. He's there. So that he's there too. So you need to plug those death bowling gaps. That is where Punjab have struggled for the last two editions. And Mohali, I don't know whether they're going to play at the old stadium or the new stadium which has come up now in this IPL, but that's an unforgiving ground for bowlers. So you need to have those bowling areas intact, all plugged up. और अगर आप धर्मशाला 2 मैच गए वहां पे अपना जो PR करने जाते हैं तो वहां तो और मार लगेगा. वहां तो एकदम पाटा बन जाता है क्योंकि जून जुलाई में. Yeah. So right now we are talking about the set of auctions. We had a lot of discussions around the players, but the biggest buy has been Pat Cummins. Jamie, we all knew Pat Cummins एक ऐसे खिलाड़ी रहेंगे इस auction में, but were you imagining that he'll go on for 20.5 crores? That's the biggest buy ever in IPL. No, not that much. But like we discussed yesterday, and Chetan got the ball rolling, saying that he should be the guy who gets 15. And between 12 to 15 did seem reasonable because देखो मैंने कल भी कहा था पीयूष शो पे कि उसने जो भी छुआ इस साल वो सोना बन गया, right? And Chetan rightly said कि a year ago he was not a very well liked person in his own country, that is Australia. Yeah. But when you win 2 of the biggest prizes, right? T20 World Cup, I get it. It's the flavor of the current times, but WTC, despite being only 2 years old, is a really valued trophy, right? इनके साथ जो भी हुआ पिछले 2-2.5 साल में Australian team के साथ, for him to win the WTC and then 4 months later shut up a nation by winning the One Day World Cup when nobody thought that team could do it, that has been value. ऊपर से, look, we know his numbers in T20 are not the greatest, but he's still a valuable all-rounder. Yeah. He's got, the highlights we're watching, 14 ball 50. Yeah. The way he shut down the Indian team, which was 10-0 by bowling 10 overs around the stumps, bowling cutters, इसने एक देश को चुप करा दिया. Yeah. And now that same country has rewarded him, salam kiya usko by giving him 20.5 crores. And he's a leader. So he's giving you an all-round package. I'm not surprised now when I look at it that he's gone for 20.5 crores. I saw that last night. He did. He said 15. He didn't say 20. Ask him now. He didn't see 20 coming. Obviously not. 20 But is this 20 is unimaginable in a But mini auction. it's paisa vasool. 20 is unimaginable in any auction. This is the first time it's पैसा वसूल 20. तो तब होगा ना जब SRH वहां तक अगर जाएगी भी. हर एक But then when you season. buy a player like this, then you obviously want to. I mean, they've got what, Travis Head, and they've got आप उनका overseas players देखो, and then you look at let's take a look at They've got a lot of overseas
world is woken up belatedly to is bande ka dimag. So I'm not this. He will win SRH the title. लिख के ले लो मुझसे. And we can, और जैसे साहिल ने कहा कि we need to be figuring out the 11s. और आप you can literally see Sunrisers 11. Mayank Agarwal and Travis Head to open. Then you have Rahul Tripathi at number 3, Aiden Markram number 4, Heinrich Klaasen number 5, and then Marco Jansen or Pat Cummins, depending आप किसको खिलाना चाहते हो. Heinrich Klaasen को नहीं खिलाना चाहते. Then you have other batsmen there. Abdul Samad is there. Then Washington Sundar, Abhishek Sharma is there. Shahbaz Ahmed का spin वहाँ पे हो गया. And then you're looking at pacers. Pat Cummins is already there. Marco Jansen is already there. Bhuvneshwar Kumar is there. Mayank Markande is another spin option for them. We are looking at Umran Malik. We have not counted him yet. We are looking at 13 players, 14 players, and we can't even figure out the 11 out of those 14. So they have got a banging first choice playing 11. Yeah. Just to add exactly what this, I said it earlier before you came, Saramya. पिछले साल हम यहीं बैठे थे. इस साल actually we're talking about the auction. On paper, I said this Hyderabad team has the players to win the title. Unfortunately, and I'm Chetan's going to disagree with me, Aiden Markram, the captain, he let down this team. They had no business not getting to the playoffs last time around. This time they budgeted, they've got a leader. No, but you have to understand, he did not come to the start of the tournament because South Africa was busy playing a tournament क्योंकि उनको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना था. Markram was there from day one. No, he did not play. He just missed one or two. He missed the first game. He missed the first game. But I'm saying, no, but that's, see, if you're a new captain. What the problem was, I'll quickly add. Aiden Markram was a captain just on paper. He wasn't aware about anything. Correct. I can say that That's on the record. Bilkul, At every press conference, you would ask him about players, replacements. I don't know, management is taking on. So that management is now off. Correct. So right now, as I'm thinking loud, Pat Cummins is your SRH captain. Bilkul. Aiden Markram is not going to be your captain because that management is no longer there. That's what I... Could be. But what I'm trying to defend Aiden Markram by saying that he was playing international cricket, और जब आप इस माहौल में आते हो where the management is interfering, they are picking your teams, which is what irritated David Warner and Kane Williamson as well. And let's be honest, जब आप ऐसे scenario में आते हो, you need to be there from day one. With an overseas captain, that is not possible. Overseas captain who's missing 2 weeks of prep, missing the first game, and then coming in. और वहाँ पे already experimentation चल रहा है because you have a 14 crore player, उसको opening कराओ, फिर उसने 100 मार दिया, फिर उसको 4 match और दो. That doesn't work. Exactly. Jamie, this is what this new management has sought to erase. Remove doubt. Are we sure we have entirely new management? Yeah, Dan Vittori is on the table. He's the coach, but so Chetan will come to this discussion a bit later. The support staff has gone. Chetan and Sahil will come to this discussion a bit later because we have a special guest with us. We have Graeme Swann with us, and we'll be having word with him right now about the ongoing IPL auction. Graeme, what do you have to say about this IPL auction, especially Pat Cummins to SRH for 20.5 crores? Brilliant. I was just listening in there. Again, Sunrisers on paper always have a fantastic team, and they're definitely stronger. And I agree completely there that Aiden Markram was no leader. He was no captain. He wasn't a guy who was going to sort of drag his team. He's not the sort of big physical presence and the natural born leader, I don't think. He's a brilliant player that Pat Cummins is. So Pat Cummins, on the back of a successful World Cup, albeit in the 50-over format, he's landed himself an absolute, a nest egg there. He'll be driving a Lamborghini home with a big smile on his face. However, having said all that, and yes, I agree that Sunrisers on paper do have a very strong 14, 15-man squad. And you struggle to get the 11. I still don't think that they're going to do it. I don't know why. I've got this sinking feeling about Sunrisers every time. There seems to be something in the background that has annoyed captains and in the past. And maybe Pat Cummins is the one who's going to come and clear all that away and say, no, be a very strong leader. I think that's what they need, a very firm leader who grabs that franchise by the scruff of its neck and say, look, we've won this before. We're a top 4 team. We're going to get there this year. For some reason, I don't know why. Maybe it's because I'm English and Harry Brook's been discarded. That could be it. I'm more than happy to admit. But I think they're in a better position this year than they were last.
Yeah, and tell us which team impressed you the most, because a while back, Sahil was saying that CSK so far they have got a really banging auction so far because they have Rachan Ravindra, then they went for Daryl Mitchell as well, and then Shardul Thakur too. But which team impressed you the most so far? Yeah, you've just taken the words out of my mouth. CSK have been brilliant so far. They're always good at these auctions, and they're always very relaxed and sort of calm, and the eyes looking sideways, and they always seem to get their man. Daryl Mitchell is a huge buy. I think, even though it was a 50 over World Cup we've just seen, he also does it in the T20 format as well, and he's been excellent. Before the auction came up, his was the name that I was looking at, thinking he could be the difference for one or two of these franchises, because he bats in that really awkward middle order slot in the IPL where you have to win games from 4, 5, 6. It's why those guys go for so much money. And he just sits in that slot really well. He bowls a little bit, but don't read too much into that. He's not been bought for his bowling. But with the bat, he can win you games. So CSK have done brilliantly so far. I always like looking down. I've got a big soft spot for Rajasthan Royals as well. So I'm very keen to see what they can come up with at this auction, whether they can bolster their squad as well. But I think so far, Chennai, as current holders of the IPL, are looking very, very strong again. Sahil, you happy about that? Because you said the same thing. I just want to ask Graeme, how much would it take for him to shift his following from Rajasthan Royals? Do we need Rahul Tewatia to be traded to SRH then? To be honest, wherever Rahul Tewatia goes, I will follow. To be honest, a good drive. I haven't liked him the last couple of years, but yeah, there's certain players who take your fancy every now and again. I'll never forget that steamy night days, but every now and again he'll pop up and win you a game, and it always brings a massive smile to my face whenever he does. If we can ask him, Chetan, Chetan Narula here. What do you think? Do you foresee for him? Can he bat in the top, or will they use him in the middle order like England are using him in T20 cricket now? I think he has to play in the middle order. I felt a bit sorry for Harry last year. He was sort of a young lad, got a huge paycheck, went to Sunrisers, and do you remember he got that 100 and did, quite frankly, the worst press conference ever afterwards? He said, well, that should shut a few people up. It was like holding head in hands thinking, oh, Harry, don't say stuff like that, for goodness sake. Because we all know that cricket comes back to bite you on the bottom if you do stuff like that. It doesn't like it. The cricketing gods do not like that whatsoever. And he had a stinking IPL after that. It was really bad. And I can understand why a lot of Indians will be shaking their head thinking, what is it with this player? He can't bat at all. He was dreadful by the end of the tournament. However, I think Delhi have actually picked up a bit of a bargain. I know it's nowhere near the sort of money he was on last year, but you're going to have to trust me on this one if you haven't seen him. He is an electric player. And once he gets a manager, a coach who can... I don't know how the best way to treat Harry, whether it's an arm around the shoulder, pump his tyres up, or be quite harsh on him. I don't think it's being the harsh way. I think if he has a coach with an arm around the shoulder who really makes him believe in himself, he can deliver special things. He's currently doing it in the West Indies for England in the T20 format. But is that Delhi? Is that the way they're going to go about it and be that sort of loving, nurturing coach? We'll have to wait and see. Personally, I think he'll do very well. And I have no doubt in the long run that everyone will say, that's why people did pay that much money back in the day. But I understand completely how he's gone for so much less this year after last year's IPL. Yeah, Graeme, in all these seasons of IPL, we have seen one team which hasn't won the title, and all eyes are on that team. That's Royal Challengers Bangalore. And this time as well, when they entered the bidding war with SRH for Pat Cummins, everybody's talking about, what RCB is doing, because they don't have that much purse to go after a certain player or a single player. What do you have to suggest to RCB so that they can go closer to the trophy at least? Tell you what, I'm going to give you a bit of backroom information. Those who don't know, Mo Bobat, who's gone from English Director of Cricket sort of role, and he's now in charge of RCB. He is a very, very astute character. He has done wonders. All the stuff about basketball and the resurgence of the England team behind closed doors at the spotlight. Mo has been responsible for a lot of that
a lot of the younger players being able to come into Baz McCullum's and Ben Stokes' team and do well. So RCB are in a very good place. And I think, and I always think this, even before this auction, you look at RCB's roster, you look at their squad, and you shake your head and you think, how are they not winning this thing every year? Yeah. How do they not just walk away with a trophy? And every year they start brilliantly and look like the team to beat and then fade away. Surely at some point that has to change. They can't forever be the nearly men, the bridesmaids and never the brides. And I'm saying this early, very, very early. I think RCB might go on and win it this year. I've just got this feeling. Virat's not going to play too many more IPLs, and he wants to go out on a bang. And I wouldn't be surprised if this is the year that they turn around and do it. And even though we haven't seen much come into the squad yet, I don't think they honestly need it that much. I think get everyone fit, get everyone firing, and get Glenn Maxwell. I mean, Glenn Maxwell can bat on his knees these days, so he doesn't even need to stand up. I reckon RCB could be the team. Well, Jamie, do you second that? Look, I mean, anyone who's watched the show knows my views on where RCB stand. But again, I think Graham's got a point there. With Virat Kohli, you will ask the question, how many more years? And 16 years, his team has not won the franchise. But again, they're one of those teams where they often go into, just like Delhi, before they were Delhi Daredevils, now they're Delhi Capitals. Forget what the name is. They often go into auctions with, on paper, I think Graham would know this, very, very sorted, but somehow either the captaincy doesn't work out or they pick the wrong 11. So again, as good as a team RCB might have a few hours from now, if things don't align for them, I'm always a little bit suspect about them. But like Graham said, I would love for Virat Kohli to finally get his hands on the trophy, because we know for 15 years what a performer he's been. But again, like cricket, Graham mentioned earlier in regards to Harry Brook, cricket has a strange way of coming back and biting you. Sometimes having great players doesn't necessarily mean you win titles, because things have to fall in line. And I think that would probably be RCB's legacy for 16 years, is things just haven't fallen into place, despite having on paper some damn good teams. Sahil, you want to ask something to Graeme? Yeah, Graeme, we're talking about Pat Cummins, Daryl Mitchell, but the first pick of the day, Rovman Powell, how surprised were you with that price tag, and considering RR went after him right from the jet go, like 7.4 crores for Rovman Powell? Were you surprised, or did you see that coming, because that bigger price tag just to get the auction rolling? Tell you what, I've seen a lot of Rovman Powell away from the IPL. He's played a lot of franchise cricket. He's been in the West Indies recently against England. He's been in the T10 that I've covered in Abu Dhabi. He is an incredible finisher. And what I think franchises are looking for, every team, if they could, would have that big, strong West Indian finisher like Andre Russell, like Karen Powell have done for the you know who I'm talking about. I've gone blank, sorry. But these guys who are massive finishers for their teams in the middle order. Rovman Powell is like the next guy stepping into that. He's the big, brutish, strong West Indian finisher who can smash the ball miles and strikes the love of fear of God into most bowlers at the back end. So I'm not that surprised that he got so much money early on. Although you do think that first pick, you sometimes think people will tiptoe into the auction and not really open their wallets. But I wasn't that surprised that he went, because he has a serious talent. Honestly, I've seen this guy hit the ball further than any other cricketer ever. He's a decent bowler as well, and he can lead if need be as well. So I think it was a surprise that he got so much, but I wasn't, I'm not that alarmed by the amount of money that he gets, because he is worth it, trust me. Yeah, so we have Ryan Pollard, that's the name I was looking for. I do apologise. Yeah. It's earlier there. Yeah. So we're talking about the teams, but there are two teams, RCB and LSG, that are yet to buy players. Graeme, any tips for these two teams? You already talked about RCB, but LSG. Well, it's looking down the list, isn't it? And looking who you can steal, who are those guys. I tell you who won, Phil Salt. If someone gets hold of him, he's an incredible player. He really good. And if they've already gone while I've been talking, I do apologise. I'm trying to keep up to it on my phone whilst I'm talking to you, and I'm not very good at doing two things at once. I was only a spin bowler after all. But yeah, Phil Salt, if someone gets hold of him, he could be an incredible buy. He's in the form of his life. I know he's English, and I'll always champion English players, but he has got a bit about him. He's got a character, not unlike David Warner. He's
very sort of up and at him at the bowlers. He gets a lot of people's heckles up, and that can really work as a batsman. That can put bowlers on the back foot and get your team off to a good start. So if I were one of those two franchises, I'd be looking to get a hold of him because I think he could be brilliant. Other than that, yeah, I'd look at the South Africans. You know, South Africa had such a good World Cup, and there's one or two of them flying around or floating around in the auction. If you can get your hands on them just to bolster your middle order, that might be the way forward. Okay, Jamie, you wanted to ask something. Just Graham, just on the issue of Delhi Capitals, you know, they released Phil Salt. Do you think perhaps they might go back to him? Because until we know where Rishabh Pant's fitness is, I would assume the Delhi Capitals would have to at some point have plans that he's not going to come back. And you need a keeper because, with all due respect to the keeper they had before, it's not a Rishabh Pant. So from that regard, given the fact that Phil Salt just got 100, he can open, he can bat 3, but Delhi Capitals do need a keeper in the top order, right? Yeah, and honestly, after they've released him, whether they're regretting that now, think, oh, do we do that? Because you think of it as from a player's point of view. If you've been released by a franchise, they're basically saying you're not good enough for us. We don't need you. It's never a nice thing to. It's like being dumped by your girlfriend. They might say it's not your fault, but you know at the end of the day it is. So if he then wants to go back, if they want him to go back, whether that sits well on the player's shoulders and whether that sits well with the management of Delhi, because there'll always be that feeling that, you know, you didn't think I was any good last year. Now all of a sudden you like me. I'm not sure that would be a marriage made in heaven. I think he'll go to another franchise, but I can absolutely see your point. They do need a keeper. With Rishabh not 100%, and we don't really know. Of course, if Rishabh Pant is fit, then he plays every single time in any franchise. But yeah, whether Phil Salt and Delhi would be a natural matchup after their sort of acrimonious parting of ways, you never know. I don't think it'd work. Yeah, so we are yet to go with the auction, the another leg of the auction. But here Graeme was telling us, you know, what different teams should do, especially RCB and LSU who are yet to buy players. Graeme, lastly, I want to know from you, any player that are you excited to look forward to in this auction who hasn't been sold yet? Because there is Steve Smith in the waiting as well. It's always the big famous names that you look for, isn't it? So Steve Smith, obviously. I'm not sure if I was a franchise owner, I'd go for Steve Smith these days, just because of his age and the T20 format isn't really his major cup of tea. Just like Joe Root pulled out, even though they're two of the world's best players in the Test format, they don't really suit the T20 as much as some other players. So I always look for guys that I know, and I always think more like, you know, how much money are they going to get? So their Christmas party will be a good one this year, whatever. One guy I will put, and I'll say this name, and you might laugh at me, but David Willey is this player who he has this funny way of always taking wickets whenever he plays, and he looks very innocuous when he bowls, but he always gets wickets, and he's in that auction, and I reckon he could be an absolute bargain for someone and be a brilliant squad player in the middle. And before that, I mean, I was obviously this morning when I woke up, I was thinking who is going to be the big player. And I thought it'd be Pat Cummins. And I'm going to give a round of applause for Pat Cummins because, my word, he's earned this paycheck, I think. And I was just listening to you boys talking before I came on about how his stature has risen so much from that 50-over World Cup, from his leadership. And I thought he led brilliantly. When you think of what a shambles Australia were at the start of that World Cup, to go on and win it against an Indian team who looked absolutely unstoppable, I think a lot of it had to do with the calmness and the leadership of Pat Cummins. So well done, Pat. I wish you all the best in orange. Well, we wish all the best to Pat Cummins, and let's see what happens ahead in this auction. Chetan, we were talking about David Willey. Graeme rightly mentioned his name, that he is excited to look forward to him in this auction. What about you? Yeah, absolutely. And he's somebody who can pick up wickets, like Graeme said. And I think a lot of teams are trying to save up money. This auction is all about getting those right bowlers in place. We've already seen Pat Cummins go for huge numbers. Gerald Coetzee, Mumbai Indians got him, so they'll be looking to get a couple of other bowlers as well. So we'll have to wait and watch. I think soon we'll be on the remaining pacers and spinners, and that's where I think the rest of the big money buys are going to come from.
Well, let's see what happens. Now we have the another set of players in this auction, starting with Tristan Stubbs. Graeme, what do you have to say about Tristan Stubbs? Fantastic player, you know, he's a very, very powerful player. And you know, like I was talking earlier, in that middle order, 4, 5, and 6, those absolutely electric positions where people like Sky and Glenn Maxwell win you games for their franchises. Tristan Stubbs is one of those players who could go in there. So when I was talking about those South Africans for the other franchises to pick up on, Tristan Stubbs is one of them. He could be an absolute brilliant buy. Yeah, and as we talk about the players, we also have this list of unsold players, and it's growing again and again with names after names. We have Phil Salt in this list. Sahil has been unsold now. Is it surprising for you? Surprise, no, but I think the base price did play a role there, because base price of 1.5 crore for Phil Salt, I think that, for me personally, kind of went against him, because at the mini auction, you know, we have seen overseas players kind of keep those high base prices, and the Indian players have been smarter on that front. Yeah. You know, Shah Rukh Khan went for 9 crores, but he has kept his base price at 40 lakh. So, you know, we need to be smarter with the base price. And I think that is something which went against Phil Salt in this round. We could well see him in action again when the teams like opt for accelerated auction towards the fag end of the mini auction. But right now, I think 1.5 crore base price was something which went against Phil Salt, for sure. This base price thing has been talk of the town lately, Chetan, because, you know, there have been a lot of players whose base price has been an issue when it comes to bidding, you know, and this time, as I was talking about Phil Salt, do you think that has been the case with a few players? It can be. I'm not sure if it has been this time around. It can be, especially in a mini auction, because the teams are looking for particular players for a particular amount of money. So, you know, you don't, like somebody like a Steve Smith, I mean, fantastic player, but you don't really want to spend that money first and then miss out on the big buys by even a 1.5 CR margin. Want them under consideration once again. But Josh Inglis is coming up now, and I think DC will be interested in him. Before that, KS Bharat has gone to KKR. KS Bharat to KKR. 50 Yes. base 50. price. I think Josh Inglis is somebody that that DC can replace Phil Salt with. So although they have a lot of overseas players already, but they do need a wicketkeeper option for Rishabh Pant that we've been talking about in terms of his fitness. And the base price is a problem. Yeah, English isn't coming cheap. How much does DC have left? 2 CR. 2 CR. No, English base price is 2 CR. No, but how much does DC have left? They left with Capitals have 18. 18. No, that's players. That's players. They have max. That's players. No, I think if they are able to pick him up at base price, then they maybe they can. Like I said, they might go for him again, probably in the later round where you know you again have the unsold players coming up for consideration. I think he's gone unsold. So Unsold. yeah. Just a question to Graeme, if I can. Yeah. Yeah. Hi. With David Willey, were you disappointed he was not given the central contract from ECB, and is that going to have a bearing because he's going to be available for the entirety of the tournament, unlike some of the other English players? Strange one. The timing of the ECB for that one just before the World Cup, it did upset David really. I know that, and he's sort of retired from international cricket more in a huff than anything else because he was still doing well. But that does obviously it opens up for the entire IPL. So I think it has had an effect on him, but probably in a good way because he's one of those cricketers who loves to scrap. He's you know, let's face it, he's not the prettiest cricketer, he's not the quickest bowler in the world, he's not the best looking batsman, but he is so effective in a T20 team. And we've seen it, you know, it's often those players who aren't the superstar players who get you the brilliant 100, who get you the dazzling 5 wickets once in a tournament. It's the ones who always pick you up 2 wickets, who always seem to come on and get the key player out. And he is that player. He's got that Midas touch. So I think he's a very attractive offer. I don't think he might look and think, well, we'll have him if we get him cheaply. I wouldn't be surprised if 2 franchises have a bit of a bidding war and he gets a half decent price. But he's the sort of player who really could make a difference, even though he looks so innocuous. I can tell you, I grew up with him as a young lad. He's always had that sort of resilience and that will to win that any skipper would want in a team. So I wouldn't be surprised. I wouldn't mind actually if he ends up at Rajasthan along Rovman and Powell.
Rovman Powell, because I think Rajasthan are putting together a lovely little franchise to win it this year. Yeah. So, Jamie, as we were talking about the base price, we saw Josh Inglis, we have seen, Phil Salt as well, and the other players who went unsold, which clearly means that base price is one case, if not the only case, but one case to consider when you go for the bidding, especially in the mini auction, because teams look for the players who have a bit lower base price and then they bid for them. Because it seems that here teams are looking forward to the players who have a bit lesser base price so that they can buy them and then they can fill the slots remaining in the team. Look, it's been a common theme, I think, from the first auction, that the overseas players have a certain attraction to the franchises, but it's mainly the all-rounders. You've seen enough cases of batsmen who've set their base price at 1.5 or 2, or even bowlers, spinners, like Hasaranga. Hasaranga had it at 1.5 and he's gone for just 1.5. Yes. So I think when it comes to base prices, it's very tough to say what actually works and what doesn't work. Look what happened right now. We had the keepers, and I agree, Phil Salt, 2 crores, a bit much. I think Josh Inglis definitely, even though he got 100 a few weeks ago against India. But then look at someone like Kusal Mendes. He kept his base price at just 50 lakh. Yeah. He's been Sri Lanka's best white ball batter for the last year and a half. Asia Cup, he was the leading run getter. Yeah. In this World Cup, okay, the run sort of trailed off, but he's been in good form. So I thought, at least someone for 50 lakh would have taken him. But he didn't go, neither did Phil Salt, neither did Josh Inglis. So at the best of times, sometimes it's not about the base. And then in the list, we also have Lockie Ferguson. Again, but it's more about the impression. Sri Lankans have never been, barring a few names, have never been hot tickets at the IPL. But I thought someone like Kusal Mendes opens, bats 3. A team like DC, to my mind, should have got him, but they didn't. And his base price was just 50 lakhs. So auctions are strange on the best of days. They are strange, and that makes them quite interesting. We had Chetan Sakaria on screen. It's been sold to Kolkata Knight Riders. Next up, we have Alzarri Joseph. That's also an interesting player. Let's talk to Graeme and hear it out from him what he thinks of Alzarri Joseph. Just now, here's a guy who's very excited, who, many people won't know a great deal about, but again, he's a very, very physical player, a big guy who can dominate teams. So I was just listening to that track there. I'm in agreement. When it comes to like base price, people say if you put your base price high, you put yourself off from some franchises. It's actually all about whether they want you or not at the end of the day, where the two teams want you. It's like if you've got a lovely classic car that you send for auction, if the right people aren't there to buy it on the day, no one will buy it and you won't get your money's worth. But if 2 guys who really fancy it are there, you'll end up getting top dollar. So, I agree that putting a high base price could potentially put people off. But, if they're put off by a base price, let's face it, for some of these guys, 2 crores, it's like, Phil Salt, if you want him in your team to win the IPL, you'd be more than happy to pay double or triple that. So, it is a tricky one though as a player when you're going into an auction. I mean, I used to go in and say, well, I'm only available for 10 games anyway, so I'll put my base price as high as possible, thinking it doesn't really matter if I don't play, but if someone wants me, then they're going to have to pay me a lot of money. So I think that's why a lot of overseas players used to do it anyway. Now they're available for the whole of the IPL. I'm surprised that more people don't just go in and say, you know what, put me as low as possible and we'll God in you. And I think that's what RR want. They want someone to go in that sort of middle to late part of the innings. They've got Josh Butler at the top. They've got their top 3 who score so well. Jaswal and Butler always score well at the top. But when they don't, they haven't got the strongest middle order. And I think Rovman Powell going in is why they've brought him in for that role. It helps that he can bowl as well. But I think the main sort of areas batting at sort of number 5 or 6 for those last 8 overs. And it will surprise a lot of people the money he's gone for. But I think that the franchises obviously do their homework. And the fact that there was a bit of a bidding war and he went for that means that they know something and they rate him as well. I really rate him. I think it's a good buy, actually. And with Trent Bolt and Josh Butler and Shimron Hetmeyer and with Powell, is that the 4 overseas players? That's the core of their overseas players to start with? Probably, when you look at it, I mean, I haven't got the squad list in front of me, but it's always that, isn't it? You don't want too many overseas players in the squad, obviously. I mean, Delhi
would have 16 Australians if he left it to them. But you can't. So we've always got to work out what is the best way to do this team, and that is why if a team are putting that much money on Powell to get him involved, you think he has to play. They're not going to pay that much on a squad player, and then you have to shuffle the pack, don't you? I mean, quite interestingly, Trent Boult missed out on one game near the end of last year. He's brilliant, Trent Boult. We all know what he can do with the new ball. But at one point, I'm sure I can remember him being just left out near the end, and they said it was the injuries worry, but it was to shuffle the overseas pack. So I hope they don't do that. I hope, from a Rajasthan point of view, and I'll be wearing my pink shirt with pride again this year, that Trent Boult plays the whole tournament, because he's brilliant with that new ball taking wickets in his first over. And then the hundreds from Joss and Jaswal. How are they not winning it this year? It's Rajasthan all the way. Maybe a few more runs from Sanju Samson will do it. Yes, Sanju, of course, yeah. Maybe. Or maybe Delhi will swoop in and try and steal him to go and keep wicket for them. Who knows? Who knows? Who I knows? know that can't happen, by the way. Yeah, and a while back we were talking about the two teams, RCB and Lucknow Supergiants. They were in bidding war for Alzarri Joseph. He's crossed the 11 crore mark, 11.5 crore. It is for Royal Challengers Bangalore. Jamie, I think let's talk to Chetan first, because so far Chetan's predictions have been on point. Chetan, you feeling relaxed and happy now? Alzarri Joseph is with RCB? I mean, they need bowlers. There's no doubt about it. I mean, they let Harshal Patel go. They let Hasaranga go. They were bidding big for Pat Cummins, was it? Yeah, They were Pat bidding big for Pat Cummins. Cummins. So they do need bowlers. They've got 11.5 CR from 1 CR base price. The question mark for me is he going to give you the returns that with that much money that they've spent? You know, with RCB, you always expect them to spend big on one player, which doesn't work out in the end. So we would want to wait and watch how this works out for them. But from a bowling perspective, a decent buy, like Graeme was saying, that he's a lanky bowler, can hit the deck hard. But again, he's going to play 7 games at Chinnaswamy. Yeah. That's going to be tough. That is tough for any bowler. So yeah, jury's out on that. But A lot of money for him, isn't it? Lot of money. And RCB, I mean, Chinnaswamy is no easy place to bowl. No, I still wake up with clammy palms thinking about bowling against Sachin Tendulkar at the Chinnaswamy. So, I mean, I don't know what this guy's going to feel. I mean, it's brilliant for Joseph. I mean, imagine you sit there as a player. And this one thing you might not know as players, you're not always sort of in time zones where you can watch the auction or whether you're awake. He might even be in the West Indies, they're behind. He's probably still fast asleep. He's going to wake up with a lovely alarm call, isn't he, in the morning? Here's some poached eggs and here's a couple of $1 million, mate. So he's going to be very happy, but whether he'll still be as happy once he actually turns up and bowls at the nets at the Chinnaswamy a couple of times and realises what he's in for. Harshal Patel actually being released, I think that's a big gamble for RCB. I can understand that he didn't quite have the IPL last year that he did in previous seasons, but here's a guy who gets 30 wickets or 25, 30, 35 wickets every IPL, bowling in that tricky middle period at the Chinnaswamy. I think whoever's decided that they can do better than him, they must have a good game plan. That's my mate Mo Bobat. So they must have a good game plan. So I'm not going to go against this. Alzarri Joseph to win the title. I'm giving the title to about 5 franchises here, I realised. Yeah, 5 franchises so far. But yeah, we'll see what happens ahead. Right now, bidding's going on for Umesh Yadav. DC and GT are in the bidding war. SRH started the bidding war first, Jamie. They looked quite interested in Umesh Yadav. But Chetan was talking about, what Gujarat Titans really need at this moment. Do you think Umesh Yadav can fill in the remaining slots or the most wanted slot that GT really needs right now? They need a fast bowler. They need an all-rounder and spent. With RCB, you always expect them to spend big on one player, which doesn't work out in the end. So we would want to wait and watch how this works out for them. But from a bowling perspective, a decent buy, like Graeme was saying, that he's a lanky bowler, can hit the deck hard. But again, he's going to play 7 games at Chinnaswamy. Yeah. That's going to be tough. That is tough for any bowler. So yeah, jury's out on that.
But A yeah, lot they of money need- for him, isn't it? Lot of money. And RCB, I mean, Chinnaswamy is no easy place to bowl. No, I still wake up with clammy palms thinking about bowling against Sachin Tendulkar at the Chinnaswamy. So, I mean, I don't know what this guy's going to feel. I mean, it's brilliant for Joseph. I mean, imagine you sit there as a player. And this one thing you might not know as players, you're not always sort of in time zones where you can watch the auction or whether you're awake. He might even be in the West Indies, they're behind. He's probably still fast asleep. He's going to wake up with a lovely alarm call, isn't he, in the morning? Here's some poached eggs and here's a couple of $1 million, mate. So he's going to be very happy, but whether he'll still be as happy once he actually turns up and bowls at the nets at the Chinnaswamy a couple of times and realises what he's in for. Harshal Patel actually being released, I think that's a big gamble for RCB. I can understand that he didn't quite have the IPL last year that he did in previous seasons, but here's a guy who gets 30 wickets or 25, 30, 35 wickets every IPL, bowling in that tricky middle period at the Chinnaswamy. I think whoever's decided that they can do better than him, they must have a good game plan. That's my mate Mo Bobat, so they must have a good game plan. So I'm not going to go against this. Alzaro Joseph to win the title. I've given the title to about 5 franchises here, I realised. Yeah. Yeah, 5 franchises so far. But yeah, we'll see what happens ahead. Right now, bidding's going on for Umesh Yadav. DC and GT are in the bidding war. SRH started the bidding war first, Jamie. They looked quite interested in Umesh Yadav. But Chetan was talking about, what Gujarat Titans really need at this moment. Do you think Umesh Yadav can fill in the remaining slots or the most wanted slot that GT really needs right now? They need a fast bowler. They need an all-rounder. And we know that Shubman Gill is the captain, but they still need that senior player. Yeah. Where it's going to come from, I thought GT would go hard for Pat Cummins. They did not, but they do need fast bowlers. If I'm not mistaken, their fast bowling will majority of it will be around Mohammad Shami, Mohit Sharma. Mohit Sharma was brilliant last year, but can you expect him to rock up and do it again? I don't know. So they definitely need fast bowlers. And look at someone like Umesh Yadav. He's been playing forever. He's that kind of bowler. He needs the captain's confidence. Look at him under MS Dhoni. Look at him under Virat Kohli. There were 2 very distinct Umesh Yadavs, Yeah. So it's not so much about how much he goes for. It's about where he goes and how he's handled. If, and again, that if is so massive when it comes to Indian cricket and especially the IPL. If he's handled well, this could be a bowler. Graeme just mentioned 25, 30 wickets. He could be that guy who gets you 20, 22 wickets because he's that good. But unfortunately, when not handled, he often ends up being very, very substandard. So wish him all the best because he's a good bowler. Umesh has gone to GT, right? Yeah, GT. Yeah. So GT wanted that bowler who could bowl in the power play. Now that Hardik Pandya is not there, Hardik was giving them 2 overs at least in the first 6 overs. Yeah. So they needed someone, and Umesh in the last couple of seasons, especially with that season with KKR, if I'm not wrong, he was brilliant with the new ball. And he has been regularly playing the domestic cricket tournaments for Vidarbha, has been like turning up every game in the Vijay Hazare Trophy, Syed Mushtaq Ali Trophy. So pretty much in the rhythm, and I think this makes a lot of sense. And now this boy I'm really interested in. Yeah, Shiva I was about Mavi. to come to you, Sahil, but Shiva I'll Mavi. shift all the attention to Soumya, and we'll talk about Shiva Mavi for a while. But before that, let me give you an update that Umesh Yadav has been sold to Gujarat Titans for 5.80 crore. His base price was 2 crore, and he's now been sold to Gujarat Titans for 5.80 CR. And now let's talk about Shiva Mavi. Soumya, what do you have to say? Because I know with all the chats that I've had with you, you have been, up with essays on Shiva Mavi. What do you have to say for him? I'm really excited. Because he's someone, I feel he's someone who has a lot of ability, hasn't got that kind of anything under 2-3 crores for him can be a steal. The kind of ability he has, quick enough, and a lot of teams will be needing him, and LSG and RCB are in the bidding war for him, if I'm not mistaken. Yeah, LSG and RCB. I had that hunch. Don't be surprised if KKR jump into this. MI. I think I'm not sure about MI because from what I've gathered, speaking to people around, LSG for sure, KKR are expected to jump into this auction for sure. Looks like it, but he's a very good bowler. I think GT wasted his 1 complete year by keeping him on the bench for reasons which are not known to anyone because they bid heavy for him. I think 5 or 6 crore, 6 crore they spent on a bowler and they played a bowler. I'm not taking anything away from Mohit Sharma,
But if you invested 6 crore in a Shiva Mavi, why would you keep him on the bench when he was fit and available throughout the season? Exactly. Was he fit? He was fit. He was completely fit. If they didn't play him, there was something missing there. Something missing there. I don't know what Well- was missing, but he was completely fit. He was Right. completely fit, and even right now he's recovering. But he had a fracture in the 12th rib, which is like a freak injury which happened. The 12th rib is a freak injury. Like it's not normal for fast bowlers to have a 12th rib fracture, and it was very unfortunate for him. He's recovering well right now, and 5 crore bid is something what he would have Right. required, and it has happened. Yeah, but Very here, happy for Sahil, him. we got 4 teams. Let's ask Graeme about which team should have Shiva Mavi. Here we can see LSG and RCB in the bidding war. We got a voice here that MI can also bid for it. We also got a voice that KKR can also go for Shiva Mavi. But what do you think? Which team will be the apt team for Shiva Mavi? I'm in agreement when someone just typed in there saying, I wouldn't be surprised if KKR swoop in. I think KKR need to bolster their bowling, so I wouldn't be surprised if they go. He is a real talent. I agree with that. I mean, it was a lot of money for him to sit on the bench last year, so something had to be awry or amiss somewhere. But when you look at bowlers who can actually go in and do a good job early on, there's so few and far between in the IPL that you'd think all these franchises would be after someone like that. So personally, out of this, I think KKR. Yeah, KKR can be a really good team for Shiva Mavi is a talent. Let's see, it's bidding war between LSG and RCB right now. Jamie, what do you think? LSG and RCB, do you think that they have a decent slot for Shiva Mavi kind of talent? Absolutely, both teams need fast bowlers, and both teams need Indian bowlers, because we've already discussed at length about the issues that come up when you have that 4 overseas player slot, and especially RCB. And RCB, Yeah. I think bowling has been their problem for since the IPL came into existence. A team like RCB, they need fast bowlers. They've got a good management setup now. I think Grant Flower has now joined them. He's coming off a time with the Australian team that won the World Cup. You've got Faf du Plessis. We're discussing Faf du Plessis earlier on the show. Not a spring chicken, but he's so fit that if they can build the next level of RCB players around him as a captain, someone like a Shiva Mavi could just slot in there and have that year which we expect from him. Look, he's been around for a long time, won the Under-19 World Cup, got injured, did take 4 wickets on his India debut, if I'm not mistaken. But again, like we're discussing here, very strange that he goes for 6 CR and does not play a game last season. So I think he's a good bowler for India. Kusal Mendes went unsold. Keeper. Josh English, Phil Salt. So we Unsold. have next player, Mr. Starc, Big who man. is getting Big man. Big moment of the day. going under the hammer, and it's a big moment. Chetan bhai, what are your thoughts? Well, the camera has panned to Mumbai Indians straight away. And you know what? We've been waiting for them. DC are also into it because अगर मुंबई है तो दिल्ली को तो आना ही है बीच में, जो हम पिछले 2 साल से देखते जा रहे हैं. So from that perspective, I think we're going to have a bit of a slugfest here. Not exactly 20 crores, but I see this going to 8 to 10 to very, very easily. I think 8-10 crores very, very easily. I think this is the highlight of the day. Mumbai will try their best. They might just spend 80% of their purse today trying to get Mitchel Starc. So I think they're desperate for Mitchel But Starc. Jamie, 8 to 10 crores for Mitchel Starc. Okay, not taking away anything from his talent and ability, but the availability. Again, like Chetan rightfully said, and let's hope he was right in his assessment, कि अगर आप जा रहे हो Mitchel Starc के पास, तो you have to have that discussion. Look, mate, it's been 6 years, I think, if I'm not mistaken, 6 years. that you've not been around. You've pulled out most times. I think once there was injury. Otherwise, he had the T20 World Cup in mind. He had the Ashes in mind twice. He had the World Cup. He had Alyssa Healy and her commitments. Whatever it is, अगर आप उसको डाल रहे हो auction में, इस बार भाई हमें वो guarantee चाहिए. So yes, I understand why there would be a bidding war. And look, we're talking, and since I've started talking, he's gone up what? 6 crores. 6 Well, crores. he was around 3 when I last looked. होगा वो, but again, until he comes out and says, हाँ भाई मैं 2 महीने के लिए यही हूँ. Doubt रहेगा. Jimmy, you're right. But what also comes to mind is probably what might have happened is with the culmination of the 2023 World Cup, his white ball responsibilities for Australia more or less ended. No, but there is a T20 World Cup. I doubt he's going to go for the obviously T20 T20 World Cup. He will. I would think he'd be there. Okay. But again, I'm thinking it's Mitchel Starc. You have to take him.
Australia again, for Sahil, this World Cup, Caribbean, the I kind think of it's- tracks considering that are there considering is- you I have don't know, okay, I mean- you have a T20 World Cup, probably getting that practice T20 mode and everything. Exactly. Fine. And but even- again, yeah, no, yeah, but fair that's- enough. No, no, He no, will- I he agree. is No, no, going no, to- no, I no, think no. he should But go. again, that is a problem. Even if there is a that T20 problem. World Cup where he is actually a ये kind of a पहले भी serious हुआ There is है. a problem with England. IPL is a great opportunity. English and Australian players that they want to manage their workload as well. That is also a problem. ये पहले भी हुआ है कि there's a T20 World Cup coming and he still pulled out See, of the IPL. Yeah. So it's not a new thing. They have to speak with him and say, boss, because look, they spent 10 crores on him, which is what, out of their 12 crores left, and tomorrow he pulls out, Mumbai will be nowhere. So, And as it is, they've been struggling without a pacer. the term workload management, I respectfully, it should just be restricted to red ball cricket, not white ball. Yeah. 4 overs in IPL, 4 overs in T20. You don't really, Hmm. if you can't manage your workload for 4 overs, you really need to stop playing cricket. Yeah. True. So I don't see that the need for that term, workload management. Yeah. I think everything is in favor of Mitchell Starc coming back to plate it. When will he earn his money? He's achieved all the accolades that he can as a cricketer, as a red ball cricketer, as a 50-over cricketer. Now it's about, happy retirement time. And this is the time for him to say yes to IPL, make himself available. This is the time when he needs to earn, kind of in the money. Like kind of, and I think Get the returns. once bitten, twice shy. I think even the franchises are going to be extra careful in putting that money on the table, knowing that he's 100% available. Yeah. So it's not going to happen again. I'm sure people have done their homework. Sahil, here the Australians and the New Zealand players are having a brilliant time. I think MI have just Have like pulled pulled out. out of the race. Pulled out at for 9.8. Yeah, Mitchell they Starc. have only 12 crores, right? Yeah, so they pulled out at 9.8. I think they desperately needed someone Yeah, like a yeah. Mitchell Starc. I'm happy KKR is at least buying someone. Yeah. I was trying to find out what have they done. GT are in the picture again. GT are in the GT, picture and KKR in the picture GT now. Because GT and KKR both have some good Which, pucks to with them. me, this again doesn't make any sense. Ki Delhi were there just to raise the price for Mumbai, and then जैसे ही मुंबई के price के beyond चला गया, they went out at 9.6. Mumbai went out at 9.8. I mean, as they always do. no, but Delhi had the purse. Yeah. If they really wanted him, which is what really irritates me about Delhi's auction But again, strategy. I'm so vibing with Ashish Nehra's look right now. I just can't get my eyes off him. That ulta Take off your chashma, jacket and ulta wear it blazer. reverse, ना हो जाएगा. Dude, this is a different vibe. for a altogether. second jacket जो ठंड हो गई है स्टूडियो के अंदर मैं अभी एक सामने डाल लूंगा. But my point is, every time in every auction they do this once or twice with MI. Yeah. They keep on bidding, raising the price, and which is a proper auction tactic. Yeah. But if you really wanted Mitchell Starc, they could have just stayed in the auction and they could have been part of the auction right now. They have the purse. they have the purse. And this is something that really irritates me about Delhi, because the kind of players they buy, Chetan bhai, not the lineup in the final 11s. that's what I'm saying. Ki jo wo players they end up buying, it doesn't work out for them. Yeah. In the meantime, you are spending the auction, taking panga with another team. Yeah. Playing these, Mind games. mind Kind games. Look at MI and what they have done in their IPL history. Yeah. Look at DC, what they have done in their IPL history. So, On that note, Srini, Mitchell Starc. I think With 14 we crores. are in 14 for another crores. jackpot because Another jackpot. two teams with the beefed up purse Yeah. on the table, Yeah. they are going after Starc, and both are like they want Starc. I'm But I surprised think- RCB is not there, but they've already spent 11 crores on Yeah. Alzari Joseph. And he has played for RCB, so that's fine once. And you also have Reece Topley. Na? You don't really need him. Like if it's about need. I think 14.5. KKR won't stop. Shouldn't stop for it. Shouldn't Both stop. of no, see the thing is, both of them are at 31 crores. But GT So- can afford, for GT having Starc is luxury. They have the purse, they have Exactly. the quota sorted. Quota. So same with They have the KKR balance also. sorted. No, KKR ko to like they to Same with need KKR. players. KKR to need players. So Like it's the same GT with ke them. liye to it will be like a So that's what I'm saying. Ki yahan pe there is no reason for either of them to pull out. Both of them have high purse, 31 crores. They can easily go 20 crores. Yeah. And they both need the player. ऐसा नहीं है This could कि go beyond Cummins actually. this could go beyond This could. Cummins. I don't think both And are they hope should for have around 30 17. plus. And hopefully for once he will turn up. That's what. After Hopefully, 20, after if 20 he doesn't, crores, if he doesn't turn up, then we he'll must be like, "तू like भैया रहने दो, renegotiate माफ our करो." association with mega cricketers. auctions में तो बहुत सारे मना कर देंगे तुम funds मत आ part रहे ये हैं. मत. No, boss. I see, guess this is the idea behind
him getting that. After 20, he could well tell Cricket Australia, I need to manage my workload according to the IPL. According to IPL. No, but I think just I guess 17, stop now. 17. 17. just going back to what Srini was saying. ना इस साल भाई वो टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा टाइटल जीत के आया है. हाँ. वनडे का जीत के आया. I still think he's going to go to the T20 World Yeah, Cup. I But should so. ticking off these two things, ना हाँ भाई, you know what? Now I अब मैं can take IPL it के लिए easy. ready हूँ. Yeah. So it makes sense. And when he's ready, he's getting what 18 crores. My God. But again, it's again, I understand he's a fantastic white ball bowler, but Pat Cummins is giving you leadership. Pat Cummins is giving you a damn good fielding option and batting. Mitchell Starc outfield में अच्छे ऐसी बात नहीं है, पर वो dive नहीं करेंगे जो Cummins करेंगे. Batting तो है नहीं T20 में, so it's still you're paying a lot of money for just one core skill, you know. So somewhat surprising that he's come so close to Pat Cummins. I think GT is going to pull out. He's come very close to Pat Cummins. Yeah, this is. But who else do GT need? GT need a couple of middle order options. GT need a lot. That they can need go a lot. They can go to GT domestic need a players lot. for that. Uncapped players. Have they really replaced Hardik Pandya? No, This is what I'm getting to. They haven't. But when you talk about Hardik Pandya, there's the all-round core. You can do that. Barring Rashid Khan, वो आपका वो senior leader कहाँ है वो उस team में? नहीं है ना. बुद्धिमान साहा नहीं है. Kane वो Williamson. leader कहाँ है? Kane Williamson. यार आया तो ठीक है, वो नहीं आया तो? Oh, who's got them? 20 crores. 20 crores. No, it's a clapping for 20 crores. Clapping for 20 crores. Oh my God. Two Australians. 40.50 crores. 40.50 crores. And He's gonna break Pat Cummins record. 20.25. He's 25 away from Pat Cummins. Amazing. My But God. that's- हो जाएगा भाई ये that's ये 21 जाएगा शगुन होगा. Like I don't feel इतना So we पैसा have just a for one season. We have crowd also sitting in the auction today. Yeah, it's an open arena this time. So that's why they went to Dubai. Yeah, that's why I went to Dubai. Like a big open space. That Coca-Cola Arena something. Oh. Okay, that's Should have interesting. planned Dubai. Huh? Should have planned Dubai. You could have. I could. I'm talking about myself. 20.5. 20.5. 20.5 CR. Maxwell would be thinking I think, should have oh, put KKR raised their KKR. Acha, RCB. Done. buyer. Yes, 2075. They have highest. 2075 highest. 2075. Maxwell would be thinking, Chetan bhai, he should have put his name in the auctions. Who? Maxwell. Maxwell, yes. 25 crore. But the thing is, 21. all respect to Glenn Maxwell, I still think he's underperformed and he's a little overrated. Yes. He's Uh, underperformed. I wouldn't say overrated, but yes, he is underperformed. I'm saying overrated. So, yeah, I mean, only Maxwell can get out for first ball duck and then And score score a a 40 ball 100. score a double 100 and win you that match next day. So that's only Maxwell. He works in extremes. Beach ka kuch nahi hai. It's still going on? Yeah, still 21 going crores. That's a lot of money. Like I understand. for 41 GT, crore between between Two players. two players, Between two two Australians. Yeah, I mean, worldwide, those who are running T20 leagues, they like to talk money. Can you yeah. That's fathom? money. Can you That's fathom serious money. exactly what these two guys did exactly a month ago on November 19th, December? This is set their base price here. Yeah. Yeah. One match. Yeah, One match. One match. And like you rightly No, said, two from- matches. They did that to India in the summer. No, as no, well. but I said to shut down a stadium. 22.25. and Get get this price. 22.5. Wow. Oh This is my insane. god! Oh my god! This is Who's insane. it? 22 crores. I think it's with KKR. The owners are shocked. The They're other owners shocked. are shocked. You're missing out What on is happening? 25.25 as well. 22.25. Yeah, I mean, still, I mean that's. 22 किसी का पर्स भी है और टीम का इस टाइम जितना ये बिट पहुंच नहीं, SRH was the only one with 30 plus. 30 Yeah. They've spent a GT lot. had 38 I think before the auction. RCB had GT got when they were Mavi. bidding No, for Pat 22, Cummins, they had 23 when yeah. they were bidding for Pat But Cummins. they see, look, the thing is, Whoa, 22.5. Oh my. So the thing is, you spend this much money, that guy has to play 14 matches. Yeah. Is he going to come first? No. And then He will. He will. I think we can now remove the come. come wala bit. But 14 matches. When has Mitchell Starc ever played 14 matches in a row? That's the point. Now we've jumped to this kind of terrain. के Yeah. ठीक है, अब तो आएंगे. Will he actually show Okay, up? even if he goes for And this, will he play 14 matches? even if he goes for this amount, that's more than a crore for a game. Even if you reach the finals. Yeah. Oh, it's still going. 22.75. Oh 22.6. my god. Oh my god.
23. KKR, We're speechless. Oh, 23. seven 23. matches at Eden Garden. Mitchel Starc. 23 CR. Oh my now God. it's kind of getting little That's just insane. a little much. Yeah, little 23 weird. is a Insane lot. money. Yeah. That's weird. insane money. Yeah, I mean it's. For someone who's not played a lot of T20 recently. Yeah. Oh my God. Is Mumbai happy they don't have 23 crores to spend or 23.7? Oh my 24. God, 24. Ashish Nehra seems to be very adamant to take him, right? Who? Ashish Nehra. आशीष नेहरा ने Your मन word, बना your- लिया तो लेकर आएंगे Your words on that. लेकर आएंगे आशीष नेहरा ने मन बना लिया तो लेकर आएंगे Mr. But Malhotra, सामने your भी your जो thoughts on सामने this? भी दिल्ली वाला बैठा है सामने भी It's basically Ashish Nehra versus Gautam Gambhir. Gautam Gambhir. it's a beautiful song of fire and ice both like with the same my God. mindset इसमें आइस कौन है भाई? आइस तो Ice, नेहरा Ice, जी है ना Nehra. ही हो गए ना? Nehra ji. Comparatively. ये जब गंभीर का रेफरेंस है तो आइस तो गंभीर नहीं होगा ना वहां सिर्फ फायर होगा Fire to Mitchel Starc है भाई. 24. So they had a steal. Gujarat Titans and Umar Azai taking him away for 50 lakhs, who scored some runs. He's the इतने में highest, बाकी second players highest की run auction getter. कर लेते हैं. And the all-rounder. And the हैं? all-rounder. We can have a तब तक अगले player की auction कर Auction लो. कर लेते हैं. हाँ, अगले इसका player की decide कर auction लो कर दोनों. लो. I think इसके बाद they should break for lunch यार this is a Oh, lot of money spent. 24.25. They've broken the bank. Yes. बस हो जाओ यार. I think this Gambhir is making a return statement of sorts. I'm back at the उनको table. पता है ना कि 6 साल तक मिचेल स्टार्क एक आईपीएल मैच भी नहीं खेला है ना. This is bonkers. This is. What if, okay, if madness. Mitchel Starc is available for all the 14 games, fine. What if he gives away runs like for 8 or 9 or 10? Then look, what? see- Srini. That happened with Cummins, yeah. 15.25 crores, economy of 10, just 3-4 wickets. Uncapped, Oh Chris my Morris. I can goodness. go on about the bowlers who've gone for Srini, 15 your crores. thoughts? Sam Srini? Curran. Your He's thoughts processing right if now. he, Yeah, if he he's gives away grossed in runs He's grossed in at the. 8, 9, 10, what do you have to say? Itne amount I am mein. at loss of words. I Yeah. can't believe what is happening yeah, here. This is unbelievable. I'm at complete loss of words. is unbelievable. 25 crore, like, this is the IPL year. This is the year of IPL that people are going to remember. As Chetan said about Hardik Pandya, what Yeah, Mumbai yeah. Indians Mumbai did, Indians. what is happening to Starc and Cummins. You know what? Doesn't matter where you play a cricket, appreciation of it lies in Right, yeah. India. No. That's And- the and story so- of this IPL. And you know what? And He the has- Oval. Yeah. And Where you were. And one more thing I would like to add here. Srini ने बहुत बार ये कहा है Cricket Next पे जब हमारे shows होते हैं that the players' purse needs to increase to reflect the value of the players. अगर हार्दिक पांड्या की deal की आप बात करें या आप this bonkers money that's being spent 20 crores is the second time we've crossed today. We are edging on 25. Oh my God! बोलते another 25 lakhs. My point is, 24.75. my point is, with the kind of rights money that is being thrown in the IPL, I agree with Srini. You know, it's time for the player purses to go up, where this becomes as mind-boggling as this is. This becomes the normal, and Ashish Nehra has pulled out. Says he dismisses the bid. He Yeah, just अब हो गया, dismisses हो it. गया, हो गया. Done. हो गया मेरा. And are Is are Gautam they? Gambhir No, is KKR smiling? smiling? Yes. You know, Or we've they're got just- him, or oh my God, we have no. What are they thinking? Oh my God, we've got That him. is what Oh, I'm we've saying. got him. Ah, Oh. look at that. Look at that. It Gautam was- Gambhir is smiling. Oh my God. Oh my God. This is. My gosh. And they paid 15 crores for him. 24.75 crores for Mitchel Starc. He goes to Kolkata Knight Riders. That's another record broken in the day, in the span of 1 hour, probably. Australians are having a brilliant time. So are New Zealand players. Gajab hai. I mean, it just says you win 2 titles in the span of 5 months. One अगर ये against दोनों India, अपने पैसे one in जोड़ लें, India. अगर कमिंस और स्टार्क अपने पैसे जोड़ लें तो अगले साल आईपीएल की एक team ले auction ये कर सकते हैं। एक ऑक्शन तो यही कर सकते हैं 90 करोड़ कितना 90 करोड़ में से 40 And करोड़ arguably the best T20 Australian bowler has just come now. and then But he won't get and anything. CSK will take him for He 4 won't get- crore. yeah, exactly. CSK will take him for 4 Josh crore. Hazlewood is the man who's actually won titles for Australia in T20. And Oh, the wait a IPL. minute. RCB released him also. Yes. Huh? Yeah, so they had he had availability issues, no? He won't be available like for the entire. About a fine. 1 month he's They gone. released Hasaranga, Harshal Patel and Hazelwood in one go. No, Hazelwood was because of availability. Whatever it was, they released him in all 3 in one go.
मतलब उनको इस साल भी टाइटल नहीं जीतना है. At times, I'm just looking forward to Chetan Bhai's reaction when we talk about RCB. I know that's more entertaining than That's more entertaining RCB, than the bowling than order. the bowling attack. We'll जैसा मैंने कहा था कल कि लास्ट ईयर 19-20th ओवर में चेज होता था 200, इस बार इस बार 15-16 में चेज होगा. Oh my god. What did Hazelwood go unsold? Unsold. Availability issues. Yeah. That's why they released him. And the thing is, Also purse issues now. The CSK have got Shardul. And What they've got Darren Mitchell. behavior was this? They broke into an advertisement when Jaidev Unatkat came on screen. This is not done. This is not done. I will protest. I will In the walk last I will IPL, he walk got out right it on now. the You road. just No, can't but do that talking with about Jaidev it. Unatkat. No, but talking about it, they CSK have Shardul and they have Darren Mitchell. Rachin as well. No. What I'm saying is कि they don't need Hazelwood. वो जो need दिख रही थी कि Hazelwood को ले सकते हैं because they believe in getting those players back. Maybe in the mega auction they'll go again for him because यहाँ पे availability की बात आ जाती है. So we'll just have to wait and watch. It's interesting. Interesting, Jamie. 24.75 crores for one Australian player, and then the next one going unsold. Was probably the finest in the format. Yeah, boy. It's both things. You've already spent so much over what you planned to get Pat Cummins and Mitchel Starc, and then like Sahil just said, अगर एक महीने के लिए Josh Hazelwood नहीं है तो कौन आपको देगा? But again, you just have to process, and it probably will take a couple of days to understand कि भाई what we've just seen. I totally get Pat Cummins going for a lot of money. I mean, maybe not 20.5, but Mitchell Starc, चलो हम मानते हैं कि वो आएंगे, पूरा सीजन आएंगे अगर वो फिट रहते हैं तो. But 14 matches, like you were saying, Swami, to divide the math, that's an immense load of pressure on someone जो 6 साल से एक भी गेंद नहीं डाले IPL में. बहुत international experience है, बहुत उम्दा record है, but you've not been breathing the air that so many others have been breathing, and you've not been in the IPL setup for 6 years. So let's hope, for Stark's sake, कि वो आके 25 विकेट तो ले लेंगे और जहाँ भी वो जाएंगे फिट रहेंगे हर मैच में, whatever venue. Because look, IPL, you play one match, आप 2 बजे आप घर आते हो, next morning आप flight पकड़ के, it takes a lot on a tall fast bowler. So let's hope, for the sake of the IPL and the franchises, that Mitchell Starc lives up to this reputation, because that's a hell of a lot of money. It's going to go for a toss if it doesn't work out. Like it's going to be massive criticism on social media for KKR, Chetan bhai. So more than I think जब आप ऐसा एक पासा खेलते हो तो obviously you're putting a lot on the, and I think looking at the way Gautam Gambhir reacted, this was a statement buy for them. They're looking to make a statement, and they need that statement because हमने जैसे बात की थी कि they didn't have a proper leader of the attack. They didn't have resources in the bowling. ठीक है, they have Sunil Narine and Andre Russell. हम लोग बात कर रहे थे कि आप कब तक उसके ऊपर चलते रहोगे. Obviously, retaining Mitchell Starc for 24.75, that's not going to happen. Retainer will be at 15 crore or 10 or 12 crore. This is for one season. But again, at the end of the day, it could show them the path ahead, maybe. That there is life beyond Sunil Narine and Andre Russell. जो चीज KKR को नहीं मिल रही है. तो यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि वो गौतम गंभीर ही कर सकते हैं. And I think the way they went after this, I think that makes a statement. But again, you're absolutely right. If it doesn't work, criticism से ज़्यादा social media पे तो comedy होती है, वही होगी. I think. Who is KKR's second opener? Because you cannot open now with Gurbaz and Roy. Do they have a domestic opener? They'll have to go with Venkatesh Iyer. They'll have to go with Venkatesh Iyer. Or promote Nitish Rana to opening. He's open. I was going to say earlier we were talking about Nitish won't Rana. open. With Gambhir around, Nitish won't open. Nitish will either play 3 or 4. No, Shreyas Iyer. How can he play Shreyas? Rana is utterly wasted at 4. With Gambhir and Rana around, you can expect anything to happen. No, I mean they can't. ऐसा नहीं होगा कि open नहीं करेगा, वो 3 या 4 ही खेलेगा. अरे 3 नहीं खेल सकता. Shreyas Iyer is the captain. How can he play 3? Shreyas can play 4 also, no? Why would 3 or 4? He can play either. No, there's not much of a difference here. When Ideally, 4. There is a lot of difference, but I think. See, but I think we are on the same page that Rana could open. I've seen him open. Yeah, he has Nitish Rana. Nitish Rana could open. He should be opening. In fact, that will be actually better because. For IPL में दो lefty because do the job. But the point is, Venkatesh Iyer was definitely not doing that job for them.
So you need somebody who's more reliable. Last year Rana को 3-4 पे I understand आपको जरूरत थी because Shreyas was not wasn't there. Correct. So I don't know. For me, Andre Russell should be batting up. He should not be coming for 12 balls and then you expect him to score 30-40 runs every time. आप उसको नंबर 4 पर लाओ, 10 बॉल खेलने का Because मौका for दो. that you have Rinku, right? Now you have Rinku, na? Andre Russell has been there for a long time. Jaydev Unadkat is a crorepati again, sold to Sunrisers Hyderabad for 1.6 crores. Okay. That's a It's not 16 crores. Yeah, Yeah. it's not 16 crores. Let's just be happy. But 1.6 Srini, coming back to 1.6 Srini, crores. Srini, coming back to KKR, okay. I'm just thinking if they release all these players, all these 3 players in the next edition, how much budget will they have? Well, and the salary purse is going up. Yeah, and anyhow the salary purse. How the salary purse is going up. I mean, yeah, that is going to be like, you know what? Not being able to retain players doesn't really speak well of a franchise, which means that you really haven't been able to form a core, which is why you feel the need to let go of what you've built time and again. I think I think any franchise which faces a problem of plenty, you know, when the time comes for retention, the Mumbai, Chennai, you know, kind of, you know, the way they go about retaining shows why they have won the title so many times, because they have identified a core group, backed that core group and allowed that to be the nucleus around which the rest of the franchise revolves, right? Which is why it hurt Mumbai Indians that they had to let go of Hardik Pandya. Yeah. Right? I mean, you know, since we are at the subject, I'll quickly cover that. Hardik, they could have waited for a year, you know, and tried to look for Hardik next year, you know, when the time would have come for retention, you know, they could have, Hardik could have said no to GT, MI could have bought him. But had anything gone wrong and had he gone away to the IPL auction, some franchise like this would have spent 25-30 crore on him and not know what to do going forward with the, you know, could they have just, you know, you buy Hardik Pandya. Around Hardik Pandya, do you have a plan? Do you know how to go about? I don't want to name franchisees now. The point is, half of them have literally kind of, you know, been witless in terms of how they have gone about, you know, team selection. Year after year after year, they come to the auction to form a completely new team. There's nothing that you can identify with. And remember, you will not be able to build club sport. Doesn't matter which sport. You will not be able to build club sport unless you pursue with a set of players and with a line of thought, you know, thinking, thought processes. You look at the biggest clubs anywhere, any sport around the world, you identify with legacy building, you know, and which is a part of a club management exercise. And I think most IPL franchisees have still not managed to learn the basics of what is required. And I think that is what is differentiating, you know, between the top clubs in IPL and the ordinary clubs in IPL. Results apart. A little bit of lightweight movement now. I just tweeted that Mitchell Starc better show up. So somebody from Australia just tweeted he's just bought a new house, so mortgage to pay karni hai. So this time he'll Sorry? He just bought a new house. I tweeted that Mitchell Starc better show up. So somebody from Australia, he just responded to my tweet that he's bought a new house, so has to pay the mortgage now. तो हमारे देसी लोग के लिए Mitchell responded. EMI लिया है, चुकाना है. ये कहने का मतलब है चेतन. Mortgage wala shab bouncer ho gaya. Between all this, Yeah. my call, Chetan, my call is correct. Madhu Shankar is with MI, and that's a steal buy at 5.6 crore. Oh my God. Madhu I Shankar. Ah, think we saw this coming. We saw this coming. 5.6. This was Jamie. He's giving me credit once on a live show. This was Jamie. No, No, I didn't you hear pointed that. out Madhu Give me Shankar. credit, yaar, I'm happy for that. Yeah. No, he said Madhu Shankar before me yesterday. No, we were discussing this morning, so I didn't hear your side. Kal show me. Who did they go? MI got Madhu Shankar. So they got Gerald Kotzia and Madhu Shankar. Sorted. Close to 10 crores for 2 quality fast bowlers along with Jasprit Bumrah. Called it. This is You were not there on the show last night with us. We called this that. is a good attack. And they will still go for a spinner. They must go for a left arm spinner. They don't have a a tall spinner. left arm spinner. And I think अभी live pictures अभी तो चलो हम लोग वो देख रहे थे auction, but अभी live pictures भी आ रही है, तो I think Rinku Singh is going to debut in the second ODI. He was doing the shadow practice. Yeah, he was doing shadow practice. We'll see what happens.
Adil Rashid is unsold. 2 crore. Who keeps a price, base price at 2 crore, boss? And when you're not going to be available. Yeah, that too when you didn't even play most of the games last year. So the big news is Mitchell Starc has broken the bank. 24.75 crores for him. He's gone to KKR. Had a bidding war with GT Gujarat Titans. Apart from that, Pat Cummins is someone who has also broken the bank. Harshad Patel. Harshad Patel has been one of those guys who has grabbed more than 10 crores in this IPL auctions, while Jaydev Unadkat is once again a crorepati. He's gone for 1.6 crores to SRH, and that is the update. That is the reason Shanka has been rewarded for an excellent World Cup as well. He has been picked up by Mumbai Indians for 4.6 crores. The two Aussie greats have fetched a combine of 45 crores. So we're talking about Pat Cummins and Mitchell Starc. Josh Hazelwood surprisingly has gone unsold because of his availability issues as well. The first bid was of the day was Rovman Powell, who went for 7.4 crores to Rajasthan Royals. A bit surprising for all the panelists that were with us, but again, he's someone who can play that role of the finisher at 5 and 6 and probably give that balance to the side in the middle order, considering they have someone like a Butler and Samson up the order alongside Yashasvi Jaiswal and also Ryan Parag in the lineup. So it's been a great day for the bowlers. So you talk about Pat Cummins, Mitchell Starc, Harshal Patel, and also someone like all-rounders like Rachan Ravindra, uh, Daryl Mitchell. Rachan Ravindra will be a part of the CSK squad now. He's a left-arm spinner and a brilliant batter who bats up the order. Uh, can play a good role as an anchor. Has done a good job during the World Cup for New Zealand. Daryl Mitchell again, he's someone who is well versed with the conditions in this part of the world. Played brilliant knocks in the World Cup for New Zealand. Uh, I'll just repeat once again. Starc has gone to KKR for 24.75 crores, while Pat Cummins has been picked up for 20.25 crores, more than 20 crores. That has been a huge amount of money. Zari Joseph has gone to Royal Challengers Bangalore. They were in a bidding war with SRH for Pat Cummins as well, but they ended up getting Zari Joseph for 11.5 crores in uh, uh, for 11.5 crores, uh, and added another overseas bowler in the lineup. Well, Srini, I'll come back to you. Bowlers are having a big day today. But what do you think about the batters? Because the teams don't really need them, or what it is? I don't. Okay, as I said, any which ways, it said that in Test cricket you need to take 20 wickets to win a Test match. But I think any format, be it any format, the match is going to be won for you by the bowlers, and more so right now. In a tournament like IPL, you never know where your next Rinku Singh is coming from. Okay, so this is about mad hitting. It's about blind hitting. You never know when is your next Tewatia or a Rinku Singh coming from, who can come and just blindly, kind of get the middle of the bat, time it, and that's it. Over the mid wicket. There are batters in IPL who just have a zone. They can't really, kind of play any other shot. You put them in a 50-over format, they'll fail. Any other format, they'll fail. This format suits them because they get only those 2-3 overs to express themselves. The ball is in their zone, in their radar. They are in the right kind of form. Look at what Ryan Parag did in the Mushtaq Ali tournament. Normally, I don't mean any disrespect to a Ryan or a Rinku or a Tivatia, but would you really watch them in a longer format? Probably not.
Where you need experience is you need it with the bowling attack. Yeah. Because you can't get a bowler who's just about in his 20s, to come understand the conditions, know what the scenarios are like, Yeah. and it's a true reward for Cummins and Starc, all their lives, for all the work that they put in with Australia. And I just tweeted this a while ago. I said that, doesn't matter where you ply your trade in the world, the appreciation lies in India. Is India. Yeah. Animesh, Genevieve Notcut has been picked up by SRH once again for 1.6 crores. Were you expecting that? बिल्कुल, क्योंकि देखिए एसआरएच जितनी भी डील कर रही है, आप आपने वनिंदु हसरिंगा की डील उनकी देखी, तो वो ऐसी डील करना चाह रहे हैं कि अपना पर्स उनका कम ज्यादा ना कम हो, और उसके अलावा भी उनको प्लेयर्स मिल जाएं इस तरीके के, क्योंकि जयदेव उनादकट उनका बैकअप जरूर हो सकते हैं. देखिए T20 में उनकी कोई बहुत महारत उनको हासिल नहीं है, लेकिन एज एन बैकअप प्लेयर आप अपने टीम का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, और उसी लिए आप बहुत कम पैसे खर्च करके जयदेव उनादकट को लेकर आए. हालांकि आज का आईपीएल थोड़ा सा कह सकते हैं जो ऑक्शन है बिल्कुल थोड़ा सा चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अनसोल्ड रहे, लेकिन लग नहीं रहा था, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन का पहले राउंड में अनसोल्ड होना, हो सकता है कि बाद में वो उनका ऑक्शन में कुछ ना कुछ बिड लगे, लेकिन इस तरीके से थोड़ा चौंकाने वाला कि जयदेव उनादकट की बोली लग रही है लेकिन उनको नहीं लग रही. खैर, एक कारण हो सकता है कि वो ओवरसीज प्लेयर होने की वजह से वो स्लॉट कोई फिल नहीं करना चाहता अभी. उत्कर्ष, फाइनली एसआरएच के पास इंडियन बॉलर्स आ रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स आ रहे हैं, बिकॉज दे वर बिडिंग फॉर ओवरसीज प्लेयर्स. आई डोंट नो व्हाई दे वेंट फॉर पैट कमिंस एंड वनिंदु हसरंगा एट द सेम टाइम, because they already have someone like a Marco Jansen. Okay, different kind of bowlers, but overseas slot तो आपके पास minimum ही है. What do you have to say about that? देखिए, आप सिर्फ जब 4 प्लेयर ही खिला सकते हैं तो कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि आप जब ऑक्शन में कई बार आप सोचते हैं कि हम उन चारों को शफल कर लेंगे, लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाते हैं आप देखते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है. आईपीएल जो लास्ट ईयर हुआ हमने वहां पर देखा लखनऊ के साथ, आपने क्विंटन डिकॉक को बैठा कर रखा क्योंकि वैकेंसी आपके पास नहीं थी. तो आप लोकल प्लेयर लेने का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास वैरायटी है, आप उनको खिला सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं. एसआरएच फाइनली उसके साथ गया है. एसआरएच की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वो भी कुछ हद तक आरसीबी का नाम लेना चाहूंगा मैं, आरसीबी की तरह बड़े प्लेयर्स के पीछे भाग रहे थे कि भाई मैच के पहले जो डिस्प्ले आता है प्रीव्यू में हमारी टीम पेपर पर सबसे स्ट्रांग दिखेगी, लेकिन मैच के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें हमारी टीम हार जाएगी. उसका नतीजा ये होता है कि आपके जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बहुत हद तक आपको राइट टाइम पर डिलीवर करके नहीं दे पाते हैं. आप ऑक्शन में ये गारंटी नहीं ले सकते कि कोई डिलीवर करके देगा ही. बेशक आप 20 करोड़ दे दें, 24 करोड़ दे दें, तो यहाँ पर लोकल प्लेयर को लेना बिल्कुल एक एडवांटेज है. बिल्कुल. श्रीनी, जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है. हैरी ब्रूक इज अ क्लासिक एग्जांपल. कहाँ खिलाओगे आप उसको? आप ले तो लिया, 4 करोड़ में स्टील है, पर आप खिलाओगे कहाँ? आपके पास स्पेस बिल्कुल नहीं है. वही बात है, ग्लेन फिलिप्स आपके पास बैठे हुए हैं, या फिर आपको किसी ना किसी एक को बैठाना पड़ जाएगा. एडन मार्करम अगर आप उनको कप्तानी का भार सौंपते हैं, तो उसके अलावा आपके पास हेनरी क्लासन है और ग्लेन फिलिप्स, इन दोनों में से दोनों ही इतने बेहतरीन T20 प्लेयर हैं कि आप कीपिंग तो कराओगे, किसी को कीपिंग तो कराओगे और एक को आपको बैठाना पड़ जाएगा. बिल्कुल. बट यहाँ पे अनिमेश, उमेश यादव वंस अगेन, नहीं, ये शॉकिंग था मेरे लिए. टेकिंग अवे अ लॉट ऑफ मनी, 5.8 crores, बट गुजरात टाइटंस नीडेड दैट. देखिए, वही है, बैकअप है मेरे हिसाब से कि आप इनको एक 6 करोड़ का बैकअप, 6 करोड़ का बैकअप है, लेकिन पर्स बड़ी थे मेरे हिसाब से. थोड़ा एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो कहीं ना कहीं अब हर कोई मोहित शर्मा नहीं बन सकता, पर उमेश यादव के साथ मैं वैसी चीजें देखूंगा भी नहीं. इंग्लिश कंडीशंस पे उनके रिकॉर्ड्स कुछ अच्छे रहे थे, लेकिन उसको अगर सिर्फ उसको ध्यान में रखकर ये बिड हुई है तो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में बहुत काम नहीं आने वाले. लेकिन बैकअप में जरूर रखेंगे कि 1-2 मैच में कहीं आपको किसी प्लेयर को रेस्ट देना पड़ जाए, तो वो लीड बॉलर तो नहीं रहेंगे मेरे हिसाब से. Shrini, with the kind of money we put on the players right now, जो players अभी तक unsold गए हैं, क्या आपको लगता है कि वापस इनके ऊपर bidding होगी because of the they have a base price of 2 crores, 1.5 crores? Yeah, some of the wicket keepers I'm hoping will be bought at base prices later on. देखो, ये this auction, kind of, it was not about building a core at all, right? Most of the franchises had a nucleus around which they wanted, kind of a player or two here and there, right? Like, for example, MI wanted to bolster their bowling attack, KKR, I don't know what they wanted to do, but some of the others, like, kind of, they wanted, like, for example, Punjab, they wanted a batter next to Shikhar. Like, if you remember the last season, the entire onus was on Shikhar alone, and the poor fellow was under massive pressure each time he walked out to bat. Right? So I'm saying that this auction was not just about an exercise of any kind, except that, kind of the whatever buys you're making now is only relevant for the next 3-4 months. That's it. After that, most of the core is going to break again. That is what is the curse of the IPL, and I've been saying this, that the mini auction does not make sense anymore. This practice of a mini auction needs to be stopped. Have even a mega auction every 3 years.
आप प्लेयर्स खरीदा रहे हो फ्रेंचाइज से, आप उनको बोल रहे हो, गो पुट बिग मनी. Next year, you're going to go to these same franchises and say, all right, what? You can only keep 3 Indians. You have to let go of the rest, right? You have to only keep. You can only keep one overseas player. You can let go of the rest. Yeah. What exactly is the purpose of an auction like this? So that's where I think, to me, the mini auction doesn't make any sense. Yeah. It's a break in the auction. एक ब्रेक आ गया है इस ऑक्शन के अंदर. बट श्रीनी, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा आपको कि ये जो ऑक्शन, मिनी ऑक्शन होते हैं, isn't this an opportunity for the franchises to make that core and then not bid in the mega auctions? It's fine, you just need a player here and there and just go on. आप तो कोर तो मेगा ऑक्शन में बना रहे हो ना. आपने 15 करोड़ खर्च करके ईशान किशन को आपने आइडेंटिफाई किया था. मैं का एग्जांपल ले लो. आपने ईशान, लाइक आप चेन्नई सुपर किंग्स का ले लो बात. ऋतुराज गायकवाड़ को उन्होंने रिटेन किया. क्या ऋतुराज गायकवाड़ को उन्होंने ऑक्शन में बाय लक बाय चांस खरीदा? नहीं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये एक लड़का है महाराष्ट्र से, इसको हम बड़े लेवल पे क्रिकेट खिला सकते हैं. उसको उस ग्रासरूट लेवल पे आइडेंटिफाई किया, आपने लेके आया. आप यूरोप में फुटबॉल क्लब्स देखिए क्या करते हैं, यूके में फुटबॉल क्लब्स देखिए क्या करते हैं. वो एक रोनाल्डो को या मेसी को कहीं बाय लक बाय चांस आप ऑक्शन में खरीद के या कहीं खरीद के नहीं ला रहे हैं. आपने उसको बचपन में आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद आपने उस प्लेयर में इन्वेस्ट किया है, आप उस प्लेयर को एक बड़े लेवल का एक खिलाड़ी बनते हुए देख रहे हो, आप उसमें पोटेंशियल देख रहे हो. तो आपने पहले आइडेंटिफाई किया प्लेयर को, आपने पहला इन्वेस्ट किया और उस प्लेयर के फ्यूचर पे आपने एक बेट लगाया, और वो प्लेयर आपको जो है अगले 20 साल तक वो रिटर्न दे रहा है. बार्सिलोना के लिए जो मेसी ने किया, रोनाल्डो ने जो पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, उसके बाद में रियल मैड्रिड के लिए किया. तो अगर आपको एज अ क्लब स्पॉट अगर आपको बढ़ना है, आपको ग्रासरूट्स आइडेंटिफाई करना है. ऑक्शन क्या करता है? ऑक्शन आपको ग्रासरूट्स आइडेंटिफाई नहीं करने देता है. 15 साल हो गए. ऑक्शन पर्स क्यों लाया गया था आईपीएल में? सो दैट there are teams which high spending capacity. For example, like Mumbai Indians को देख लीजिए. Because of the back end Mumbai Indians का जो एक सपोर्ट सिस्टम है, उसके कारण वो पैसे ज्यादा खर्च सकते हैं किसी शायद और फ्रेंचाइज के मुकाबले, राइट? उसको कर्ब करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए. लेकिन आज हर फ्रेंचाइज 300 करोड़ प्रॉफिट बना रहा है आईपीएल से. वो पैसे आप कहां डाल रहे हो? आप 100 करोड़ ग्रासरूट क्रिकेट में इन्वेस्ट करो साल का. तो दिस इज अबाउट नोइंग व्हाट यू वांट टू डू. मैंने क्रिकेट नेक्स्ट के न्यूज 18 क्रिकेट नेक्स्ट के एक रिपोर्टर से मैंने रिक्वेस्ट किया था. मैंने कहा लेट्स डू और फाइंड आउट कौन सा फ्रेंचाइज बेस लेवल पे कौन क्रिकेट एकेडमी चला रहा है. मैं चाहता हूं व्यूअर्स जो हैं वो गूगल करें, बेसिक गूगल करें और ढूंढ ले, या क्रिकेट नेक्स्ट की स्टोरीज पढ़ें, जहां पे आपको समझ में आएगा कि कौन सा फ्रेंचाइज ग्रासरूट लेवल पे क्या काम कर रहा है. कितने फ्रेंचाइजीज है जिन्होंने एकेडमी खोली है या क्लब क्रिकेट को एक फीडर लाइन तैयार करने की कोशिश करी है. कुछ फ्रेंचाइजीज ने आज तक 15 साल में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. तो पैसे जा कर रहे हैं. आप कैरेबियन प्रीमियर लीग में टीम खुलती है, वहां जाके पैसे डाल देते हो. आप यूएई में लीग खुलती है, वहां जाके पैसे डाल देते हो. आपने इंडियन क्रिकेट जो इतनी टैलेंट है, आपको जो मौका यहां से ही शुरू हुआ, राइट? तो आप यहाँ पे रिटर्न व्हाट एग्जैक्टली, हाउ एग्जैक्टली आर यू इन्वेस्टिंग? अब कोई और फ्रेंचाइज है जो करना चाहता है, जो मेहनत करता है, तुम उसको लाइक नीचे खींचते हो. अगर चेन्नई सुपर किंग्स आज अगर आइडेंटिफाई किया है ऋतुराज गायकवाड़ को और आज उसका वो फायदा उठा रहा है, आप कौन होते हुए सीएसके को बोलने वाले कि अब तुम रिटेंशन में आ जाओ? क्यों? क्योंकि हमको बैलेंस क्रिएट करना है. कोई दूसरा फ्रेंचाइज है, अगर वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए ग्रासरूट लेवल पे काम नहीं कर रहा है, तुम उसको पिनलाइज करो ना. है ही नहीं कंसेप्ट. और यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ उठती है? प्रॉब्लम उठती है आपके प्राइज मनी की. मैं चाहता हूं जो टेबल रैंकिंग्स होती है उसके हिसाब से आपकी प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. ये नहीं कि आपने उठा के जो नॉट जस्ट प्राइज मनी, मीडिया राइट्स का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये नहीं कि आपने इक्वल अमाउंट में सबको बांट दिया. अरे आप देखिए कौन ग्रासरूट लेवल पे कौन क्या डेवलपमेंट वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से आप बांटिए. आप देखिए परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहा है, उसको आप रिवॉर्ड कीजिए ना फाइनेंशियली. तो ये ऑक्शन नहीं तो चलता जाएगा. ये एक दिन के लिए यहाँ ऑडियंस आपने बिठा के रख दिया, ये हाँ ताली बजा रहे हैं, अरे वाह मैं पैट कमिंस को 20 करोड़ मिल गए, भाई मिचेल शाह को 25 करोड़ मिल गए. आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आपको अगर अगले 25 साल 50 साल का अगर आपको एक बड़ा सेटअप बनाना है, एनएफएल, एनबीए, ईपीएल, बड़े बड़े लीग्स जो है वर्ल्ड के, इनके कंपैरिजन में अगर आपको एक प्रॉपर्टी खड़ी करनी है, आपको ग्रास रूट
पे ही जाके खर्चा करना है। टॉप हैवी नहीं हो सकता कोई भी लीग। एनी लीग हैज टू बी बॉटम हैवी। डिमांड वर्सेस सप्लाई। आप देखिए, आपके पास आज 10 फ्रेंचाइज है, हालत यह है आपकी कि आपको ढंग से एक सीजन में 10 कप्तान नहीं मिलते हैं। ये सच्चाई है आईपीएल की। तो आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप कहां से इसको फायदा उठा पाएंगे? कमिंग बैक टू द ऑक्शंस, अनिमेश, स्पिनर्स का उतना बोलबाला नहीं रहा है जो हम सोच रहे थे, जो हमने कल बात भी करी थी शो के अंदर, कि कहीं ना कहीं शायद हर टीम को स्पिनर्स की जरूरत है, बट अगेन एवरीवन इज अनसोल्ड। मुजीबुर रहमान मेरे लिए शॉकिंग था थोड़ा, क्योंकि वो क्वालिटी स्पिनर है, खासकर पावर प्ले में उनका आपको अटैक देखने को मिल जाता है। तो ऐसे बॉलर्स को, अगर ऐसे बॉलर अभी अनसोल्ड जा रहे हैं, हालांकि अभी मुझे लग रहा है लास्ट राउंड में सब चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी, पर थोड़ा सा मुजीबुर रहमान थोड़ा सा मेरे लिए बचेंगे तो क्लियर हो पाएगी ना। देखिए, मुजीबुर रहमान मेरे हिसाब से अनसोल्ड लास्ट तक चले जाए, ये और भी बड़ा शॉकिंग न्यूज होगा मेरे लिए, क्योंकि ऐसा क्वालिटी प्लेयर आपको नहीं मिलता है। और उमर जई का बिकना, उसके बाद मुजीबुर रहमान का ना बिकना, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है मेरे लिए। उत्कर्ष, आपका क्या कहना है इसमें? हाँ, मैं सर की बात को पहले एक्सटेंड करना चाहूंगा। जो आईपीएल के लेवल की बात की है, आईपीएल देखिए, ये मिनी ऑक्शन आप क्यों कराते हैं? आप मिनी ऑक्शन कराते हैं कि भाई आपकी लास्ट ईयर के सीजन में जो खामियां थी आप उसे दूर कर सकें। आपकी खामियां अगर गेंदबाजी है, आप सिर्फ एक गेंदबाज को लाकर 23 करोड़ रुपए दे देंगे, आपकी खामी दूर हो गई? नहीं दूर होगी। आप मिचेल स्टार्क के साथ देख चुके हैं, वो आरसीबी को अपने कंधे पर लेकर चले थे, कंधा टूट गया, वो टीम नहीं जीत पाई, आज तक नहीं जीत पाई, इतिहास हम सबको ही जानते हैं। बुमराह अकेले मुंबई इंडियंस को नहीं जिता सकते। टीम बनाने की जो बात हुई, इसको काफी हद तक मुंबई इंडियंस कई बार कहता रहा है। हार्दिक पांड्या को लेकर उन्होंने कहा कि भाई हार्दिक पांड्या, आप कहते हैं कि बड़े खिलाड़ी बन गए, उनका कहना है कि भाई हम ढूंढ के लेके आए, हमारा जो टैलेंट हंट पूल है उनको ढूंढ कर लेकर आया, निकाल कर लेकर आया। उनका ये कहना है कि भाई हमारे प्लेयर्स जो हैं वो जाते हैं, ढूंढते हैं, हमारा मैनेजमेंट खिलाड़ियों को लेकर आता है। शायद यही वजह है कि मुंबई इंडियंस बाकी टीमों से ऊपर नजर आती है। उनके पास टैलेंट नजर आते हैं। तिलक वर्मा, जिसको हम देख रहे हैं भाई, जिनके ऊपर अभी इंडियन क्रिकेट इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई तिलक वर्मा एक खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर नए खिलाड़ियों पर इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन जब बाहर से आप खिलाड़ियों को लाकर पैसे ज्यादा देंगे तो हमारे नए खिलाड़ी हताश हो जाएंगे। बिगेस्ट एग्जांपल शायद रिंकू सिंह हो सकते हैं। जी, लेकिन उत्कर्ष यहाँ पर मैं इसमें और भी ऐड करूंगा। देखो, आप इंडियन टीम के सिलेक्टर को देखो, T20 के जो सिलेक्टर्स हैं, T20 की वर्ल्ड कप की टीम आप सिलेक्ट करते हो, कोई सिलेक्टर, नेशनल सिलेक्टर जाके ग्रास रूट पे प्लेयर को देख के आ रहा है? नहीं ना। आपके लिए तो आईपीएल फ्रेंचाइजीज सारा काम करके दे रही है, आपको तो सिर्फ आईपीएल देखना है। अपने 11-15 जो है, आप उसमें से भी अगर अपने 15 नहीं चुन सकते तो फिर आप में सही में खामी है। बट माय पॉइंट इज कि आप रंजी, आप अपनी टेस्ट की स्क्वाड बनाते हो, तो आप टीम्स कहां से, प्लेयर्स कहां से आप आइडेंटिफाई कर रहे हो? रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी से आइडेंटिफाई कर रहे हो। बट आप ग्रास रूट लास्ट माइल पे जाके आप सिलेक्ट कर रहे हो प्लेयर नहीं। उसके लिए स्टेट एसोसिएशन का अपना सिलेक्शन कमेटी है, जो कि जूनियर लेवल तक सिलेक्शन कमिटीज है उनके, वो आइडेंटिफाई करता है टैलेंट, तब जाके प्लेयर जो है रणजी ट्रॉफी या दुलीप ट्रॉफी लेवल पे उभरता है, तब जाके उसको नेशनल सेलेक्टर्स जो है इंडिया के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? वही पूल एक आईपीएल में भी बन रहा है, जहां पे जूनियर लेवल पे जो है फ्रेंचाइज, जो अभी मुंबई इंडियंस का टैलेंट स्काउटिंग टीम है, किसी और फ्रेंचाइज का टैलेंट स्काउटिंग टीम है, वो जाके एक हार्दिक पांड्या या तिलक वर्मा या नेहल वडेरा को आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसके बेसिस पे इंडियन टीम उस प्लेयर को उठा रही है। तो एक सिस्टम यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है, विच मीन्स इंडियन क्रिकेट ने भी आइडेंटिफाई किया है कि जो फ्रेंचाइज का टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम है उसका एक इंपॉर्टेंस है। तभी आप तिलक वर्मा को एक बढ़ावा दे रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, और फिर आप उसी टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम को इंसल्ट करते हो भाई, बार बार आप टीम को ब्रेकअप करके। तो वो उसमें बैलेंस ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, 100 करोड़ का आपका साल का आईपीएल का ऑक्शन का पर्स होता है, आप उसको ब्रेक कीजिए। आप बोलिए 50, आपके पास अभी एक बनी बनाई, मुंबई इंडियंस का एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास एक बनी बनाई टीम है अभी, जिसमें जो भी 22-25 लड़के हैं, 100 करोड़ का समझ लीजिए आपका ऑक्शन पर्स होने वाला है। अगले साल आप जाओगे मेगा ऑक्शन से पहले, आप बोलिए कि ठीक है, आप 50 करोड़ तक प्लेयर्स जो है रिटेन कीजिए। आप इंटरनली क्या देना चाहते हैं प्लेयर को, वो 50 करोड़ में से मैं नहीं पूछूंगा, आप एक लिस्ट सबमिट कीजिए, हु यू आर पेइंग व्हाट टू, और आप जो 50 करोड़ है वो आप ऑक्शन में खर्चा कीजिए। तो आप एक ऐसा सिस्टम लगाइए। आप क्या बोल रहे हो, नहीं आप 4 प्लेयर रिटेन करोगे, इसको 4 करोड़, इसको आप 6 करोड़ दोगे, 8 करोड़ दोगे, जो भी उसका ब्रेकअप है। अरे भाई, हो सकता है मैं एक बच्चे को रिटेन करना चाहता हूं जिसकी वैल्यू 1 करोड़ ही हो, मैं उसको क्यों 8 करोड़ दूं भाई? हो सकता है एक 22 साल का बच्चा है जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है, मैं रिटेन करना चाहता हूं, तुम मुझे क्यों बता रहे हो कि मैं उस बच्चे को कितने पैसे दूं? तो ये सिस्टम ही गलत है, और खैर आईपीएल इसके बारे में सोच नहीं रहा है। बट अनिमेश, यहाँ पे अगर
इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं तो क्या हम एक स्क्वाड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा के इस चीज को हम उसे कर्व कर सकते हैं कि 25 का स्क्वाड 30 का कर दें, ओवरसीज स्लॉट उतने ही रखें, इंडियन स्लॉट्स को बढ़ा दें? देखिए ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए जो श्रीनिवास सर ने कहा, वो मतलब थोड़ा लॉजिकल है। आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा ग्रास रूट लेवल से ही करनी पड़ेगी। ये तो आप एक्सटेंड करते जाओगे लेकिन आपने रूल नहीं चेंज किया तो फिर भी वही चीजें दिखेंगी ना आपको। वो 30 के स्लॉट में भी आपको सारे स्टार प्लेयर कहीं ना फिर से दिखने लगे, और कहीं ना कहीं आप अगर सही बात है कि आप तो रिंकू सिंह ने परफॉर्म कर दिया, अब अभिषेक पोरेल एक नाम है, अभिषेक पोरेल अगर अच्छा करते हैं लेकिन उनको टीम रिटेन करना चाहती है पर वो स्लॉट्स उतने अवेलेबल नहीं है, तो वो उनको रिलीज करेंगे, फिर से रिटेन करने के लिए बिड में जाएंगे और वहां पे उनको फाइट भी करना पड़ सकता है। लेकिन उसमें स्क्वाड बढ़ाने से मुझे नहीं लग रहा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली। कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल से कहीं ना कहीं ये चीजें, रूल्स हैं, इनको ही चेंज करना चाहिए, या फिर एक पूरा बुक में जो आपका लॉ है उनमें ही कुछ कुछ चेंजेस होनी चाहिए। Yashin, you were saying something? No, no, I was. अच्छा, ओके। उत्कर्ष, कमिंग बैक टू द ऑक्शंस नाउ, स्पिनर्स की मैं बात कर रहा था। स्पिनर्स हैवंट अट्रैक्टेड एनी ऑफ द बिड्स, और बड़े नाम है तबरेज, शामसी, मुजीब, जो हम सोच रहे थे कि शायद वो जाएंगे बिडिंग के अंदर क्योंकि रिक्वायरमेंट है। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए मुझे लगता है सारा पैसा फास्ट बॉलरों को दे दिया गया है। फास्ट बॉलर सबसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कीमती रखे गए हैं। इंडिया में आईपीएल होता है, शायद ये बहुत लोग दुबई में बैठ के शायद नहीं समझ पाए कि आईपीएल में इंडिया होना है, स्पिनर्स की क्या कीमत होती है। शायद बहुत हद तक टीम गई है पार्ट टाइम स्पिनर्स के ऊपर कि भाई हम उनके ऊपर से हम अपना काम चला लेंगे, स्पेशलिस्ट स्पिनर में शायद इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक रीजन हो सकता है, लेकिन हाँ स्पिनर बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जब भी आप पर्पल कैप में देखें, पिछले आप 1-2 सीजन अगर हटा के देखें, आपको मोस्टली वहां पर स्पिनर नजर आते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है। फास्ट बॉलर के सर पर वो कैप सजने लगी है। शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि अब आप फास्ट बॉलर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, लेकिन पार्ट टाइमर्स पे आप जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन और वहां पे इम्पैक्ट प्लेयर का भी एक रूल है, लेकिन एक स्पिनर, फ्रंटलाइन स्पिनर होना वो जरूरी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, फ्रंट लाइन स्पिनर आपको चाहिए। वो जो 4 ओवर होते हैं, बॉडी मैच टर्निंग ओवर हो सकते हैं। आप युजवेंद्र चहल को देख सकते हैं, जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं, उनके साथ अश्विन वहां पर मिल जाते हैं, टीम का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा नजर आता है। केकेआर की अगर बात कर लें, उनके पास आप स्टार्क देखेंगे और वरुण चक्रवर्ती देखेंगे, बीच में आपको कोई गेंदबाज नजर नहीं आएगा। सुयश शर्मा को भूल गए। सुयश को आप ले सकते हैं बिल्कुल, आप ऐसे फिर रसल को ले सकते हैं, लेकिन आप फ्रंट लाइन अगर बॉलर देखें तो आपको 2 ही नजर आते हैं। बाकी आप ऑलराउंडर की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो 2 गेंदबाज के दम पर आईपीएल जीतना थोड़ा मुश्किल है। जी, अनिमेश, व्हाट डू यू हैव टू से कि ठीक है, पार्ट टाइमर्स की बात हम करते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर भी अब बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने लगा है, लेकिन एक फ्रंटलाइन स्पिनर का होना बहुत जरूरी है। इसका एग्जांपल आपके सामने एक एसआरएच है। देखिए मयंक मार्कंडे वहां लीड करते हैं स्पिन अटैक को, उसके अलावा आपके पास पार्ट टाइमर्स के पास आपको जाना पड़ता है, वो अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद। तो आज मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मुजीब उनके लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तबरेज शामसी भी अच्छे ऑप्शन थे, हालांकि मुजीब बेटर ऑप्शन होते, लेकिन इसीलिए उन्होंने वरिंदू पे तो वो बिड लगाई, और आप उनके बिडर्स को देख भी रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी कि 1.5 करोड़ में उनको लेने के बाद उनके बेस प्राइस पे वो हैप्पीनेस थी। लेकिन मुझे लगता है कि उनको और बिड करना चाहिए। अगर मुजीब है ऑप्शन में तो बिड कर सकते थे, हालांकि बरिंदू उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहा है, लेकिन बरिंदू का आईपीएल हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं रहा है मुजीब के कंपैरिजन में। और वो अगर देखे कहीं ना कहीं जिस तरह से एक ऑलराउंडर है, आरसीबी के लिए उन्होंने कुछ खास नहीं किया था, बल्ले से भी खामोश रहे थे और गेंदबाजी में भी उतना कुछ खास करिश्मा नहीं करके दिखाया था। तो एसआरएच को मुझे लगता है उनके लिए बेस्ट बाई मुजीबुर रहमान होते हैं, जो उनको पावर प्ले में भी उनके लिए थोड़ा मददगार साबित होता है। लेकिन उत्कर्ष, यहाँ पर एसआरएच के पास बहुत ओवरसीज प्लेयर्स हैं। आई मीन यू डोंट रियली नीड समवन, ठीक है, नीड है एज अ क्रिकेटर, नीड है, लेकिन लाइनअप को आप देखेंगे तो वो रिक्वायरमेंट अब है नहीं शायद। बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपके पास अगर इतने सारे प्लेयर दे दिए जाएं, आप बैलेंस कैसे करेंगे। आप याद कीजिए आईपीएल के जो शुरुआती दिन हुआ करते थे, 2009 का जो सीजन था साउथ अफ्रीका में गया, केकेआर लगभग 60 से ज्यादा प्लेयर अपने साथ लेकर गया था। तब स्क्वाड की लिमिटेशन नहीं थी, आप 60 खिलाड़ियों को लेकर गए। अगले 10 दिन में बोल दिया गया कि चलिए भाई 10 खिलाड़ी वापस चले जाइए आप इंडिया, आपका पूरा पैसा हम पे करेंगे। तो जब इतना बड़ा आप पूल लेकर जाएंगे, आपके पास बैलेंसिंग ढूंढना बड़ा मुश्किल होगी। हैदराबाद की टीम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, ऐसा नहीं है कि हैदराबाद की टीम कोई बहुत अच्छा सीजन खेलती हुई आ रही है, स्ट्रगल लगातार उनका जारी है, तो मुश्किल यहाँ पर होने वाली है एसआरएच के लिए। बेशक आपने बड़े बड़े नाम वहां पर इन्वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन सीजन आसान नहीं होने वाला भाई। जी, सीजन आसान नहीं होने वाला, और मुझे ये बिडिंग एसआरएच की तरफ से थोड़ी सरप्राइजिंग हमेशा लगती है। ठीक है, आपने पैट कमिंस को वहां पे लिया, आपने बिड अच्छे करे, लेकिन इतने ओवरसीज प्लेयर, अनिमेश, आई मीन यू हैव व्हाट, एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासन, मार्को यंसन, उसके बाद आपने पैट कमिंस भी ले लिया, हसरंगा भी ले लिया। का करेंगे क्या, ये ट्रेविस हेड का क्या करेंगे एग्जैक्टली? ट्रेविस हेड आपके लिए क्या करने वाले हैं? या तो वो बॉलिंग जो पार्ट टाइम बॉलर बन गए थे वर्ल्ड कप में, वो उनकी पार्ट टाइम बॉलिंग देखने को मिली थी, वो फिर से जो विकेट कीपिंग ऑप्शन भी देखे तो आपके हेनरिक क्लासन है, ग्लेन फिलिप्स है, और फिर से, और हेनरिक क्लासन को छोड़ दिया था तो ग्लेन फिलिप्स और
ये ट्रेविस हेड दोनों बॉलर भी हैं, पार्ट टाइम बॉलर्स भी हैं, तो क्या करेंगे, किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि वही हर साल इनके साथ होता है। हैरी ब्रूक को आपने ले तो लिया था पिछले साल भी, पिछले सीजन में, लेकिन उनके साथ क्या किया वो समझ से आपको परे समझ था। ही नहीं आया आपकी आपको उनके साथ करना क्या है एग्जैक्टली मतलब थोड़ा सा ब्लेम होता है हैरी ब्रूक को लेकर के कि उन्होंने पिछले आईपीएल सीजन में क्या किया, लेकिन आप एसआरएच फ्रेंचाइजी के साथ ये हमेशा से इशू रहा है कि उनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है कि वो कोई रोड मैप नहीं तैयार करते, वो कैसे लेकर जाएंगे इस पूरे सीजन में, और ये हमेशा रहा है। केन विलियमसन के साथ जो स्टोरीज आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी, किस तरह से उनके साथ चीजें अच्छी नहीं गई। बिल्कुल। और वो हो सकते थे उनके की मोमेंट, आप एक प्लेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आप उनको लगातार उनके साथ बैकअप उनको पूरा बैक करते आगे लेकर जाते, लेकिन वो ऐसा किया नहीं उस फ्रेंचाइजी में। शायद लीडरशिप की कमी उनके अंदर देखने को मिली है। पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई स्टार्ट आपका आईपीएल भुवनेश्वर कुमार करते हैं, फिर मार्करम आ जाते हैं, और अवेलेबिलिटी का बहुत साहब देखिए लास्ट सीजन जब साउथ अफ्रीका टी20 लीग में एसआरएच गया था, वहां पे विनर बन के आए थे, एडन मार्करम की कप्तानी में आपने वो पूरा सीजन जीत लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार को आपने कप्तान बना दिया, फिर उनकी कप्तानी में आपको ज्यादा भरोसा नहीं दिखा, फिर आपने चेंज करके स्किप करके आप पार्ट टाइम कैप्टेंसी थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो पार्ट टाइम कैप्टेंसी थी। तो लेकिन एडन मार्करम अगर आपके पास ठीक है 2-3 मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उनसे पूरे सीजन की कप्तानी आपको हमेशा से करानी चाहिए थी। आपको एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि एडन मार्करम हमारे कप्तान जी। इस बार कौन होगा कप्तान, फिर से एक बार अभी सवाल तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन मार्करम से ले लेना कैप्टेंसी मुझे नहीं समझ आएगा, क्योंकि उन्होंने एज यू सेड एक लीग जिताई है, लेकिन पैट कमिंस अगर वहां पे आ गए हैं तो प्रॉब्ली डब्ल्यूटीसी विनर, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है भाई, लेकिन सबसे बड़ी उनके प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी की। 2 महीने क्या वो लगातार इंडिया में रहेंगे। पैट कमिंस जिस चीज को छूते हैं उसको सोना कर देते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से वही मुझे लग रहा है हमारा लाइव देख रहे थे वो। मेरे ख्याल में कमिंस पे इतनी बड़ी बिड लगाई है। मेरे ख्याल में एसआरएच आर बैंकिंग ऑन द ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स, इट वाज अ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हु वन देम आईपीएल इन 2016। बिल्कुल। डेविड वार्नर प्लेयर्स ऐसे हैं कहीं ना कहीं। ट्रेविस हेड को तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उनको कितने मौके मिलेंगे ये बड़ा सवाल होगा। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क पे इतनी हाईएस्ट बिड गई है, इतनी ज्यादा बिड लगाई गई है, उसका एक बड़ा कारण है कि ये खिलाड़ी पूरा मैच नहीं पूरा सीजन पलट सकते, लेकिन पूरा सीजन खेलना पड़ेगा। शर्त इनकी ये होती है कि इस बार तो खेलेंगे। देखिए कहीं ना कहीं 2023 वर्ल्ड कप आपके सामने था, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का ये हमेशा से रहा है, वो प्रेफरेंस तय कर लेते हैं अपनी। उत्कर्ष यहाँ पर अगर ट्रेविस हेड आप पूरा खिलाने वाले हैं, पैट कमिंस को पूरा सीजन, ट्रेविस हेड तो नहीं पूरा खेलेंगे, ये तो पैट कमिंस अगर पूरा खेलते हैं, एडन मार्करम को आप नहीं हटा सकते, हेनरी क्लासन आपको वहां चाहिए फॉर कीपिंग, बिल्कुल कोई एक जन चाहिए, तो फिर आपके मुझे तो लग रहा है हेनरी क्लासन जिस तरह से अच्छा सीजन गया था, उनको भी प्लेइंग 11 से जब तक कुछ बहुत खराब वो नहीं कर देते सीजन में, बाहर करना मुश्किल होगा। 3 तो आपके ये ओवरसीज हो गए। आप अगर ट्रेविस हेड को भी डालते हैं, या आप ट्रेविस हेड को एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाना चाहते हैं कि आप 8+3 का एक इक्वेशन बनाएंगे, मुझे तो लग रहा है यही होगा, या तो आप ग्लेन फिलिप्स के साथ जाएंगे, ट्रेविस हेड के साथ जाएंगे, प्रोबेबली आई जस्ट फील कि ट्रेविस डिसीजन मेकिंग पावर पर भी डिपेंड करता है कि वो आप एग्जैक्टली देंगे किसको, कौन सा खिलाड़ी रिस्पांसिबल होगा, वो मार्करम होने वाले हैं या फिर अगर फ्रेंचाइजी खुद डिसीजन करेगा, नहीं भाई हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेविस हेड को अगर आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर खिलाते हैं, तो वहाँ एक फायदा हो सकता है कि आप मार्को येंसन को बॉलिंग में ला सकते हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आपको बॉलिंग वहां पर चाहिए, आपके लिए अकेले पैट कमिंस बॉलिंग नहीं करेंगे। पैट कमिंस नहीं कर, और उसके साथ आपके साथ जयदेव उनादकट है, उसके अलावा फारूकी नहीं खेल सकते, फारूकी की जगह नहीं बनेगी। वही प्लेइंग 11 बनाना बहुत मुश्किल है। वनिंदु हसरंगा को बोल रहे हैं आज ही खरीद, वनिंदु हसरंगा एग्जैक्टली, वनिंदु हसरंगा को आपने खरीद लिया, लेकिन उसे आप खिलाएंगे कैसे? जी, और आपके पास आईपीएल के ड्रीम प्लेयर उनादकट है भाई, उनका जो रिकॉर्ड कहता है उनादकट 11 में खेल सकते हैं। जी, वो 11 में खेलता है। इस सारे कॉम्बिनेशन के बाद आई फील उनादकट हैं जो खेल सकते हैं, उनकी जगह बनती है। पैसे थोड़ा कम मिले। एसआरएच का पॉइंट्स टेबल में क्या होने वाला है आपको कहीं ना कहीं से दिख रहा होगा, अगर उनादकट आपके प्लेइंग 11 में दिख रहे हैं तो। बिल्कुल, पैसा थोड़ा कम मिला है हर बार के हिसाब से जो होता है, लेकिन हाँ फिर भी इस बार आईपीएल में पिछली बार तो बहुत शॉकिंग था, बहुत ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन ठीक है वो पिछले साल की बात थी। बट अगेन आई मीन मेरे को ऐसा लग रहा है कि एसआरएच ओवरसीज 11 बनाने की सोच रहा है अपनी। कमिंग टू आरसीबी क्या करना चाह रहा है? व्हाट आर दे थिंकिंग? आई मीन प्लेयर्स ले नहीं रहे, ले रहे हैं तो इतने महंगे ले रहे हैं। ऑन पेपर वो टीम सबसे स्ट्रांग है, मुझे लगता है उनका मोटो क्लियर है भाई कि वो तो 2008 से स्ट्रांग है। मैच के पहले हमें सबसे स्ट्रांग दिखना है, सामने वाला वैसे ही हमसे गेम से आउट हो जाए। लेकिन एक बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये उनके सामने आती है कि भाई आप चिन्ना स्वामी में उतरते हो बिना बॉलर्स के। आपके पास जो भी बॉलर हैं चिन्ना स्वामी में, वो कोई भी एक गेंदबाज आप ले आइए, आप कमिंस को उतार दीजिए, स्टार्क को उतार दीजिए। स्टार्क ऑलरेडी खेल चुके हैं आरसीबी से, उनका हाल हमने देख लिया। उस मैदान पर जब तक आपके पास बॉलिंग यूनिट नहीं होगी, आप नहीं जीत सकते। आपके वहां पर मैक्सवेल मार देंगे रन, आपके फैफ डुप्लेसी मार देंगे, विराट मार देंगे, बॉलिंग यूनिट तो इस बार भी नहीं है। जारी जोसेफ आ तो गए 11.5 करोड़, जारी जोसेफ आ गए, कैमरन ग्रीन भी है, तो खिलाओगे किसको आप? ऑप्शन तो वहां तो फाइट तो यही है, आपके जो मेन बॉलर है वो आकाशदीप है, मुझे व्यास का,
वो तो ऑलराउंडर। प्रॉब्लम ये है, विजय कुमार हजारी वैश्य, जोसेफ को लेके आए, उसके अलावा आपने फाइट किया है, विजय कुमार वैश्य, आकाशदीप और कैमरन मोहम्मद ग्रीन सिराज, को आपने तीनों का ट्रेड कर प्रॉब्लम लिया ये है। है। तीनों का यही प्रॉब्लम है कि रन्स बहुत देते हैं, एंड आल्सो रीच टॉपली। आई मीन आप वैसे तो उनकी जगह बन नहीं रही है, क्योंकि विद हजारी जोसेफ को अगर 11.5 करोड़ में खरीदा तो आप उन्हें ही खिलाएंगे, बट अगेन जो आप देख लीजिए, अगर ओवरसीज उनके गिने जाए तो फाफ ओपन करेंगे आपके लिए, उसके बाद फाफ मैक्सवेल तो पक्के ही हैं बिल्कुल, और उसके बाद आपको अलजारी खिलाते हैं आप, तो फिर आप किसे या तो रीच टॉपले खेलेंगे या तो कैमरन ग्रीन, 2 ऑलराउंडर और मेन बॉलर्स आपके फिर वही होंगे, आकाशदीप और अजय कुमार। देखिए ऑक्शन हो गया, लेकिन आरसीबी अपनी प्रॉब्लम अभी ढूंढ नहीं पाया, वो सॉल्व नहीं कर पाया। जो प्रॉब्लम थी बॉलिंग की बरकरार है अभी। आई जस्ट होप दे गो टू डोमेस्टिक प्लेयर्स दिस टाइम, अनकैप्ड प्लेयर्स को खिलाएं और उस तरीके उससे बैलेंस करें, तभी बैलेंस आ सकता है आपके पास। पिछली बार कोशिश की थी विजय कुमार व्यास, डोमेस्टिक से ही लेके आए थे आप, लेकिन वो बैलेंस दिखा नहीं ना। ठीक है, एक एक्सपीरियंस की भी बात होती है। कंपटीशन इतना हाई आप होता है, 16 2-3 मैच सीजन में आप ड्रॉप एक्सपीरियंस करते हैं। देने के लिए थोड़ी खेल रहे हैं सौम्य, आप खुद देखिए, आप 16 सीजन से आपको जीत नहीं मिली, आप एक भी ट्रॉफी से महरूम है, आपकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, ये सब ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक बूस्टअप चाहिए होता है जी। मेरे हिसाब से वो इस साल भी नहीं आने वाला। मुझसे ज्यादा कौन जानता है इस चीज को। लेकिन थोड़ा सा बात करूंगा मैं मुंबई इंडियंस की। उत्कर्ष, क्या लग रहा है? अच्छी टीम दिख रही है, जो थोड़े मिसिंग पीसेस थे, देखिए परफेक्ट टीम दिख रही है, परफेक्ट टीम दिख रही है। पेपर जो 22 थे वो और भी परफेक्ट थे जी, मेरे परफेक्ट दिख रही है टीम। कप्तानी जरूर बदली है, ट्रेंडिंग काफी है इधर बीच, बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह की बातें जरूर टीम के बारे में कर रहे हैं, लेकिन आप पेपर पर उठा कर देखिए, चाहे बैटिंग की बात कर लें, अब रोहित शर्मा एज एन ओपनर खेलेंगे, अब रोहित शर्मा आपके लिए वो कप्तानी वाला जो रोल है वो प्रेशर नहीं करेंगे, हो सकता है उनका बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर नीचे हो सकता है, काइंड ऑफ शफल भी कर दिया जाए, लेकिन ज्यादा फ्रीली खेलेंगे। पिछले 2-3 सीजन से रन नहीं आया रोहित शर्मा के लिए, हर कोई इस बात को जानता है। शायद हम तीनों में से भी रोहित शर्मा को एक कोई ग्रेट इनिंग आईपीएल में याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर तो, लेकिन इस बार उम्मीद होगी कि थोड़ा फ्रीली मेरे ख्याल से यहाँ पे उन पे रोहित शर्मा को लेकर मेरी समझ तो खैर अलग है, वो कई बार मैं बोल चुका हूँ, आज रहने देते हैं उसे। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का जो रोल रह सकता है, इफ आई हैव द अथॉरिटी टू मेक दैट 11, आई वुड रादर कीप हिम एज एन इंपैक्ट प्लेयर, विद ड्यू रिस्पेक्ट कि आपने बहुत कुछ करा है, आपने एक लेगेसी क्रिएट कर दी है, आपने 5 टाइटल जीते, अब आप आराम कीजिए और सिर्फ वो था ना, एक 6-8 ओवर खेलिए, हमें एक अच्छा स्टार्ट दीजिए, वाइल चेजिंग, वाइल बैटिंग फर्स्ट, और उसके बाद आप जाइए वहां पे प्लानिंग करिए, डगआउट में प्लानिंग ज्यादा करिए, सिर्फ पावर प्ले खेलिए और आउट हो जाइए। नहीं आउट नहीं हो जाइए। देखिए वर्ल्ड कप की बात क्यों करते हैं? अगर रोहित शर्मा की आईपीएल की कप्तानी को आप तवज्जो दे रहे हैं, उसके बाद इंडियन टीम की कप्तानी, उसमें सिर्फ वर्ल्ड कप के वो 10 मैच थे जहां पर रोहित शर्मा सच में कप्तान के रूप में दिखे थे, कुछ ऐसे डिसीजन लेते हुए, वही फाइनल में आपके 10 ओवर पहले ही आपके कंधे गिर गए थे, तो उनको अगर आप 5 आईपीएल ट्रॉफी उनके पास है, वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से अब इम्पैक्ट प्लेयर की तरह ही खेलना उनके लिए लाजमी होगा। अगर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में उनके पास जिस तरह से प्लेयर्स हैं और जिस तरह के आज के बाइज हैं, गेराल्ड कोचजे, दिल्सन मधुशंका, तो मुंबई इंडियंस बहुत दूर का सोच रही है, और अगले साल मेगा ऑक्शन आने वाला है, तो उनका पूरा फोकस उस साल पे रहेगा, और इस साल वो कमबैक करने की कोशिश करेंगे। बट लेकिन फैंस चाहते हैं कि रोहित शर्मा इस बार एक लंबा स्कोर बनाए। विराट कोहली आपके लिए हर दूसरे तीसरे सीजन में आपको 500 रन बनाकर देते हैं, रोहित शर्मा शायद वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन 400 सवा 400 तक रुक जाते हैं। आप खेलिए इस बार फ्रीली, मुंबई इंडियंस की टीम स्ट्रांग दिख रही है, बड़ा डीप बैटिंग लाइनअप है, गेंदबाजी भी पूरी तरीके से टाइट मुंबई करती है। इंडियंस की टीम कभी वीक तो लगी नहीं है, मुझे तो नहीं लगी। पिछले साल इंजरीज हो गई थी, बुमराह के बिना वो टीम वैसे भी, चाहे इंडियन टीम हो, मुंबई की टीम हो, बुमराह के बिना थोड़ी सी वीक लगती है, लेकिन बुमराह भी आ गए तो टीम हार्दिक काफी पांड्या strong। गुजरात में जाने के बाद बुमराह ही उनकी स्ट्रेंथ बचे थे, उसके अलावा आप देखिए वो स्टार प्लेयर्स थे, कहीं ना कहीं केरन पोलार्ड थे वहां पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्टार्क और बुमराह की जोड़ी अगर साथ में हो, बट वो हुआ नहीं, ज्यादा ही लीथल हो जाता। रचन रविंद्र इज ही अ स्टील एनिमेज सीएसके के भाई लिए? अब तो डबल स्टील हो गया ना, 2 रविंद्र आ गए सीएसके में, तो डबल रविंद्र की पावर कहीं ना कहीं, और धोनी उनको यूज करना जानते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा रचिन रविंद्र बहुत की प्लेयर बनकर उभरेंगे इस पूरे सीजन में, क्योंकि बॉलिंग उतनी खास नहीं है, लेकिन बॉलिंग जिसकी खास नहीं होती वो एमएस धोनी में वो करिश्मा है कि वो उस बॉलिंग को खास बना देता, उसको अब किया जा सकता है, तो वो एक की रोल बन सकते हैं। और लेकिन वही है कि आपकी प्लेइंग 11 में कैसे स्पेस बनेगा वो देखने वाली बात होगी। हैंडी प्लेयर तो हैं उत्कर्ष। करिश्मे की इन्होंने बात की, कहा कि वो करिश्मा धोनी के पास है, मैं चाहूंगा शार्दुल ठाकुर के ऊपर भी वो करिश्मा किया जाए, वो भी सीएसके में वापस लौटे हैं। शार्दुल ठाकुर पे पूरा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं सीएसके का ही था, जो मुझे लग रहा है कि वो इंडियन टीम तक पहुंचने में वो कामयाब रहे, और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी धोनी ने, वही एक इन्वेस्टमेंट थी। शार्दुल ठाकुर भी एक स्टील ही है वैसे, 4 करोड़ में। शार्दुल ठाकुर देखिए कहीं ना कहीं सीएसके ये पहले से क्लियर था, सीएसके उनके लेकर बहुत बढ़िया बिड करने वाली है, और 4 करोड़ उनके लिए बहुत अच्छा प्राइस था। और ऑलराउंडर है वो, बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर है भाई वो, अपने आप को बॉलर नहीं कहते हैं,
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर वो भी है। साथ ही रचिन रविंद्र की आपने बात की, भाई न्यूज रूम में मैं बाहर बैठा था, कई सारे लोग डिसअपॉइंट भी हुए, कह रहे थे कि शायद ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, कुछ कम पैसा मिला। सचिन रविंद्र को 1.5 करोड़ मतलब बेस ठीक है। प्राइस ही उन्होंने अपना 1.8 रखा हुआ था, करोड़। खुद सेट कर रखा था उन्होंने 50 लाख, तो जो भी मिला पहली बार के हिसाब से ठीक है। लेकिन हाँ, इस देखिए सीजन को T20 प्लेयर तो अभी उन्होंने अपने आप को साबित भी जी। नहीं किया है। T20 फॉर्मेट्स में उनके कुछ आंकड़े नहीं है और आपने T20 फॉर्मेट में उनको खेलते हुए बहुत नहीं देखा है। ओडीआई वर्ल्ड कप अच्छा गया था। आप ट्रेविस हेड को ही आप खुद सोचिए, जी 6.4 करोड़ मेरे लिए कोई बहुत बड़ा प्राइस नहीं था उनके बिल्कुल। हिसाब से। ट्रेविस हेड जिस तरह की विस्फोटक आई वाज बल्लेबाजी करते एक्सपेक्टिंग हैं, 10 to 12 crores for हाँ, तो लेकिन वही चीज है ना कि आप ओडीआई फॉर्मेट में कितना अच्छा कर रहा है, ये T20 फॉर्मेट में बहुत मैटर नहीं करने वाला और फ्रेंचाइजीज ने बहुत अच्छे से शो किया है। और जी। काफी हद तक एक जैसे बल्लेबाज भी हो जाते हैं। अगर गायकवाड़ की बात कर लें आप, रचिन रविंद्र की बात कर लें, दोनों वहां पर सीमेंट करने की कोशिश करते हैं, एंकर वाला रोल प्ले करते हैं। कोई बहुत अटैकिंग बैट्समैन नहीं दिखेंगे आपको वहां पर स्टार्टिंग में। और 3 नंबर के प्लेयर के लिए रचिन रविंद्र सबसे परफेक्ट ऑप्शन होते हैं, पर वहां पे ऑप्शन बनेगा नहीं बिल्कुल। सीएसके में। बिल्कुल। बात करते हैं थोड़ी पंजाब किंग्स की उत्कर्ष। क्रिस वोक्स 4.2 करोड़, हर्षल पटेल से 11.75 करोड़। वो शॉकिंग था मेरे लिए भी। वो सबके लिए शॉकिंग था। मैं न्यूज़ रूम में बेस था प्राइस उस पे वो अगर अनसोल्ड जाते तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं होता। ट्रू। क्या कहना चाहोगे आप उसके देखिए बारे में? गेंदबाज वो बड़े शानदार हैं, उस गेंदबाजी के दम पर इंडियन टीम में आए थे, वर्ल्ड कप खेल गए थे, फिर ऐसे गायब हो गए कि लगा भाई कहाँ चले गए। हर्षल पटेल भी कोई गेंदबाज थे, T20 वर्ल्ड कप में खराब गेंदबाजी, टीम इंडिया से आउट हो गए। लेकिन कह सकते हैं कि उनका 2.0 वर्जन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। फिर से एक बार उनके ऊपर किसी ने ट्रस्ट दिखाया कि चलिए भाई हमारी गेंदबाजी लाइनअप को संभालिए। बेंगलोर के लिए गेंदबाजी करते थे, उस मैदान पर बहुत मार पड़ती थी। ऐसा ना उत्कर्ष लेकिन कि शिखर धवन खुद हर्षल को संभालते संभालते उनका पूरा सीजन निकल जाए। नहीं पिछला इंपॉर्टेंट होगा सीजन कि जैसे शिखर का निकला था, हर सार प्लेयर को संभालते ही रह गए थे। नहीं इंपॉर्टेंट होगा कि वो 50 ना मारे, 4 ओवर में वो 50 से कम रन दें, क्योंकि उनकी गेंदबाजी कई बार बहुत बहुत मुश्किल है आगे उनके चली लिए, जाती बहुत है। बहुत मुश्किल टास्क दे रहा मैं है। एक चीज बोलता हूँ कि हिज बैड डेज आर रियली बैड और वो जरूरत से ज्यादा खराब हो जाते हैं। वेरिएशन नहीं है। उनके देखिए किसी उमरान बॉलर मलिक- में अगर वेरिएशन नहीं, आप अपनी स्लोअर बॉल पे डिपेंड हो रहे हो तो कोई बहुत खास नहीं। आप हमेशा आपका एक ही एम रहता है कि आपको विकेट लेना है, वो भी बाउंड्री पे कैच करा के। पूरी दुनिया आपको जान चुकी है, अब आपके पास क्या आपकी आपके स्पेशलिटी पास है। कुछ नया नहीं है ना। हर बार अब मोहम्मद शमी अगर कमबैक कर रहे हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो वो वेरिएशन लेके आ रहा है ना। कुलदीप यादव अपनी सेकंड इनिंग जी। खेल रहे हैं अपने करियर की, तो उनके पास वो वेरिएशन है। हर्षल पटेल के पास क्या क्विकनेस है है? उस बॉल पार्टनर्स के कौन होंगे हर्षल पटेल, किसके साथ गेंदबाजी करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। जी। एक बार आप पार्टनर्स बताएं कौन है उनके, कि भाई किसके साथ उससे पहले मैं एक गेंदबाजी छोटे करने से वाले। अपडेट देना चाहूंगा। जी। इंडिया बैटिंग फर्स्ट और इंडिया हैव लॉस्ट द फर्स्ट विकेट। गायकवाड़ बाहर हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। बर्गर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। ही हैज बीन ट्रैप्ड इन फ्रंट फॉर 4 मेरे लिए सबसे बड़ी जानने का मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या रिंकू ने डेब्यू किया आज? रिंकू ने डेब्यू जी। कर लिया है ये अच्छी खबर है। रिंकू सिंह को बहुत बहुत बधाई। और उनके और साथ ये डिजर्व करते थे वो। बहुत सारे ऐसे लोग संजू हैं जो सैमसन है स्क्वाड जी में। बिल्कुल है। केएल राहुल भी हैं। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे वही वही हुआ है, शगुफा लेकिन आज 3 फिर नंबर पे तिलक वर्मा सेलेक्टर्स है। ने छोड़ जी। दिया है कि 4 नंबर पे प्रमोट कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड कप के बाद डिसअपॉइंट हो गए। उनका कहना है कि वो क्रिकेट आज की डेट में सिर्फ रिंकू सिंह के लिए देख रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। रिंकू सिंह ने अपना नाम बनाया है, आज उन्हें मौका मिला पर है, तो मैं बहुत रजत सारे पाटीदार फैंस के लिए बिल्कुल थोड़ा मिलेंगे। निराश हूँ कि वो पिछली बार भी एक सीरीज पे गए थे, बेंच स्ट्रेंथ जी। बढ़ा के आए थे। इस बार भी ऐसा ना हो। लेकिन एनिमेश कहीं ना कहीं वो एक प्रायोरिटी की बात हो जाती है। तो प्रायोरिटी आप संजू कि आप सैमसन को संजू क्यों दे रहे सैमसन हैं? को देंगे। क्यों दे रहे हैं? आप ये हमारा क्वेश्चन है। जो टीम मैनेजमेंट आपको का जो विकेट आउटलुक है, कीपिंग बैकअप है, उनको बैकअप की तरह ही टीम में रखना चाहिए था। उनको बहुत मौके मिल चुके हैं, वो साबित नहीं कर पाए उन मौकों पे अपने आप को। जी। आप स्ट्राइक रेट और एवरेज का हवाला मत दीजिएगा प्लीज, क्योंकि कुछ मैचेस में खेल के आपने स्ट्राइक रेट अपना आप कर लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिट ही नहीं होते। 4 नंबर पे भी आपके फिट बैट्समैन है, आप उनको जी। बैकअप में भी रखोगे, आपकी बहुत लंबी फेरिस्त है 4 नंबर पे। 6 नंबर पे फिनिशर में सूर्य कुमार यादव तो चले और डे में फेल हो गए। रिंकू सिंह है, उसके अलावा और सारे कई प्लेयर्स हैं जो आपके सामने बहुत सारे प्लेयर्स होने वाले। नहीं, संजू सैमसन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, खासकर उनके फैन क्लब के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि पूरा आईपीएल जब वो 2 महीने लगातार खेलते हैं और परफॉर्म नहीं कर पाते, कोई आवाज नहीं आती है। जी। लेकिन अगर एक मैच में वो नहीं चलते या फिर मौका नहीं दिया जाता है, सवाल उठ जाता है कि भाई संजू सैमसन क्यों नहीं खेल रहे हैं। संजू सैमसन का डेब्यू आज नहीं हुआ है, 2015 में हो गया था उनका डेब्यू। हम 2023 में बैठे हैं, 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो संजू सैमसन कोई नए खिलाड़ी नहीं है। मौके दिए गए, शायद अब वो जमाना चला गया कि आपको 3-4 सीरीजें मिलेंगी, आपको एक मैच मिलेगा, परफॉर्म कीजिए, नहीं जी। तो आपके दरवाजे खुल जाएंगे। जी। पीबीए केस की हम बात कर रहे थे पंजाब किंग्स की, वहां पर भी मतलब ये जो बाई है मेरे भी समझ से थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि आप स्क्वाड उठा के देखे, रबाडा वहां पे है ही है, नाथन एलिस सही है, तो फिर कैसे फिट करेंगे सबको? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मतलब ओवरसीज प्लेयर्स पे इतना पैसा लगाना मुझे मेरी समझ के बाहर हो गया है ये। बट कमिंग टू लखनऊ सुपर जायंट्स, गुड पिक शिवम मावी 6.4 करोड़। बिल्कुल, बहुत हैंडी शानदार पिक, था वो। बहुत अच्छे बैट्समैन और बॉलर है, तेज फेंकते हैं। जी, What- यही हम what नोएडा are के your गेंदबाज हैं, यहीं पे शानदार गेंदबाजी केकेआर ने शिवम बहुत मावी करते इन्वेस्टमेंट हैं। भी किया उन पे। क्या कहना बोल बट एग्जैक्टली। सही प्राइस उन्हें इस बार अच्छा मिला, एक्सपेक्टेड शायद नहीं था इतना, जिस तरीके से उनका हाँ बेस बहुत प्राइस बढ़ना मतलब शुरू हुआ। इतना ज्यादा तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपका क्या कहना है और शिवम मावी के पिक पे?
कॉम्बिनेशन बनाना पिक तो कितना अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा बिट जाएगा ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। और लेकिन ठीक है, मैंने भी 5-6 क्वालिटी करोड़ बॉलर की हैं, अभी भी वेरिएशन उनमें बाकी है, चीजें बदलने की कोशिश करते हैं, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, फील्ड पे जाते ही टेम्परामेंट लूज नहीं कर जाते हैं। जैसे हर्षल की हम अभी बात कर रहे थे, शिवम मावी कम उम्र के खिलाड़ी हैं, लेकिन केकेआर के लिए खेलते हुए कहीं ना कहीं कोचिंग का भी हवाला देना चाहिए कि वसीम अकरम की कोचिंग के अंडर में उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रूम किया है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। और जो वेरिएशन कहीं ना कहीं उमरान मलिक के साथ आप देखिए, कहीं ना कहीं जब लंबा सीजन खेले, आप बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि आप बॉलिंग वेरिएशन को कंटिन्यू कर पाए। शिवम मावी ने भी वही कहीं ना कहीं मिस किया था और इसीलिए बहुत खर्चीले साबित हो रहे थे। अब लेकिन पिछले सीजन में भी जब वो खेल रहे थे तो थोड़ा सा उनमें सुधार दिखा था, और मुझे लग रहा है इसीलिए डोमेस्टिक को देखते हुए कहीं ना कहीं लेस्जी ने दांव चला जी। टॉकिंग अबाउट अनसोल्ड प्लेयर्स एंड लॉकी फर्गसन थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बाकी मेरे को समझ आता है स्टीव स्मिथ का अभी नहीं पिक हुए उनका, आई एग्री कि ठीक है पर्स देख रहे हैं। मनीष पांडे को मुझे लग रहा था सीएसके लेंगे, मनीष पांडे का आई गेस भी नहीं लिया गया है। एग्जैक्टली, मनीष पांडे प्रोबेबली जो उनका बेस प्राइस है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट्स 50 लाख जी। या तो वो मेरे ख्याल से बाद में शायद पिक हो सकते हैं इन द फैग एंड ऑफ द ऑक्शन। बट लॉकी फर्गसन आपकी रिक्वायरमेंट है, टीम्स की रिक्वायरमेंट थी, प्रोबेबली आरसीबी कुड हैव गॉन फॉर हिम। बिल्कुल लगा था कि शायद उन्हें जरूरत होगी, बट उन्होंने भी कह दिया नहीं भाई हमें नहीं क्योंकि चाहिए। ब्रिज टॉपली के अलावा उनके जी। पास कोई भी मुख्य तेज गेंदबाज नहीं है वहां अब पर। आपके अलजारी पास जोसेफ है। अलजारी जोसेफ पर अलजारी जोसेफ से ज्यादा मैं लॉकी फर्ग्यूसन पे थोड़ा डिपेंड होना चाहूंगा। एग्जैक्टली, आपके पास पहले से इतने ऑप्शंस हैं, पहले से आपके पास इतने ऑलराउंडर हैं, फिनिशर हैं, वहां पे आपको अलजारी जोसेफ से ज्यादा जरूरत मेरे हिसाब से एक मुख्य तेज गेंदबाज की थी, जो अलजारी जोसेफ पहले करने में नाकाम रहे हैं आईपीएल में। जी। अगर आप उनको मेन बॉलर की तरह देख रहे हैं अपनी स्क्वाड में, तो वो कहीं ना कहीं आपको निराश करेंगे जी। मेरे हिसाब से। जी। चेतन सकारिया 50 लाख, गुड परचेज। बिल्कुल डिजर्व करते हैं भाई। शुरुआत उनकी भी करियर की इस तरीके से अगर होती है तो उन्हें भी जरूर अच्छा लगेगा, और साथ ही कई खिलाड़ी उन्हें देख भी रहे हैं, जितने सीनियर खिलाड़ी हैं कुछ स्टेटमेंट उनको लेकर धीरे धीरे आते रहते हैं, छप नहीं पाते हैं वो खबरों में जरूर, लेकिन इस बार जब वो परफॉर्म करेंगे तो नजरें उनके ऊपर होने वाली हैं भाई। आपको अगर इंडियन टीम तक पहुंचना है, दरवाजा आपको दे दिया गया है, अब आप चलिए आगे बढ़िए। कोलकाता नाइट राइडर्स का एक क्विकली देख लेते हैं स्क्वाड। जेसन रॉय, रहमतुल्लाह, गुरबाज हैं ऊपर। ओपनर की अभी भी जरूरत है शायद, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि विकेट ओवरसीज कीपिंग बैकअप चाहिए था। वो केएस भरत को उन्होंने बेस प्राइस में परचेज करके एक अच्छा लेकिन option ले ओवरसीज लिया। का इशू तो आएगा, क्योंकि आपके पास एंडर रसल और सुनील नारायण को आप रखेंगे 11 में। यही बड़ा सवाल था कि उनको रिटेन ही क्यों करते जा रहे हो हर साल, और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है आपके लिए, तो उसके बाद ये थोड़ा शॉकिंग रहता है कि आप सुनील नारायण पे अभी भी इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो बैट और बॉल दोनों से फेल रहते हैं। आंद्रे रसल आपके लिए किसी ना किसी मैच में करिश्मा कर सकते हैं, वो उस पर खैर आप पूरा सीजन एक करिश्मा के वेट करते हुए तो नहीं कर सकते कि आप एक बेहतरीन पारी आएगी या बेहतरीन एक बॉलिंग अटैक आएगा। वो पिछले सीजन में कहीं कहीं पे दिखा था। नहीं देखिए, उसके कुछ ग्लिम्स दिखे थे। रसल ऐसे खिलाड़ी हैं कि सीजन या तो उनका है या तो नहीं। या तो नहीं, अगर बिल्कुल। सीजन नहीं है तो फिर वो पूरे सीजन नहीं चलते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगर वो परफॉर्म करते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज वो पूरी तरीके से फ्लॉप प्लेयर नजर आते हैं। उसके बावजूद आप जेसन रॉय को बाहर बैठाते हैं, उन्हें बाहर नहीं बैठाते। जी। रसल के साथ एक मेरे को एक अब इशू लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एज फैक्टर है वो रोपिन कर चुका है उनके गेम में, और या तो वो बॉलिंग से परफॉर्मेंस देंगे या वो बैटिंग से। पिछले साल या उससे एक एडिशन पहले की बात है कि वो बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन बैटिंग में वो दम नहीं आ रहा था। एक दो क्विक फायर्स आए थे, लेकिन बॉलिंग ज्यादा बेटर थी। अभी हमने रिसेंटली इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा, एक मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए शायद, और उसके बाद ही वेंट फॉर व्हाट 50 एक बड़ा रीजन है जो हम हर मतलब जिस प्लेयर्स की उम्र बढ़ रही है उनके साथ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बैट एंड हैंड कांटेक्ट जब आपकी आंखों पे वो इफेक्ट दिखने लगता है, तो वो जब आंखों पे इफेक्ट दिखता है तो वो आपकी बढ़ती उम्र के साथ वो आता ही आता है। अब विराट कोहली आप देखिए, अगर वो जब मैच नहीं खेल होते हमेशा उनके स्पेक्स दिखते हैं उनके साथ, तो ये कहीं ना कहीं इशू क्रिएट होता ही होता है हर प्लेयर के साथ लगभग, और वो आंद्रे रसल के साथ भी आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी प्लेयर हो। बिल्कुल वो उतना कोऑर्डिनेशन आपका बैट और आइज में, वो हैंड में, वो तीनों के बीच वो कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू रहे आपकी बढ़ती उम्र के साथ, ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बॉलिंग में वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, पर बैटिंग में वो बहुत खास इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जब उम्र बढ़ने लगती है तो आंखों का जो रोशनी हल्का फुल्का तो देखिए वेरिएशन आता ही है उसमें। सुनील नारायण की भी आपने बात की, वो भी एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हुआ करते थे केकेआर के लिए। जब गौतम गंभीर कप्तानी किया करते थे, उन्हें ओपनर तक बना दिया गया था कि चलिए भाई अगर गेंदबाजी नहीं चल रही है आप में भी ओपनिंग ये तक खेलिए। कुछ प्रयोग किए थे, फिर से उनको ओपनिंग का भार संभाला था। लेकिन शायद 2-3 साल गुजर चुके हैं, सुनील नारायण अपने उस कैलिबर पर परफॉर्म नहीं कर पाया। जब से कुछ एक्शन चेंज किया है, वापस आए हैं, वो सुनील नारायण नजर नहीं आते अब। गंभीर बिंग बैक इन द डगआउट, उत्कर्ष क्या लगता है कि ये एक कुछ बोल्ड डिसीजंस वहां पे लिए जा सकते हैं कि ठीक है एंडर रसल या सुनील नारायण को हम बैठा देते हैं एंड लेट्स, ठीक है टीम में है, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, क्योंकि रिटेंशन
आपने करी है फाइन, लेकिन अभी बैठाते हैं, रेस्ट देते हैं, बेंच करते हैं, लेट्स हैव अ यंगस्टर इन देयर प्लेस। पुराना बॉन्ड है गौतम गंभीर का, देखिए इनके साथ तो कह भी सकते हैं और फ्री हैंड भी उन्हें दिया जाता है, जैसा गौतम गंभीर ने कहा कि भाई उनको पूरी तरीके से कहा जाता है कि चलिए भाई आपको जो डिसीजन लेने हैं आप डिसीजन लीजिए, आप मुझे एक्टिंग मत सिखाइए, मैं आपको क्रिकेट नहीं सिखाऊंगा। तो वही वाला फिर से एक बार यहाँ पर थ्योरी देखने को मिलेगी गौतम गंभीर के साथ। हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिले कि ये खिलाड़ी आपको बाहर बैठे हुए दिखाई दें और कुछ नए खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करें। गौतम गंभीर के माइंड को अगर थोड़ा सा भी पढ़ने की कोशिश करें तो गौतम गंभीर अक्सर इन खिलाड़ियों पर नजर रखते हैं जिन पर हमारी नजर नहीं होती। वो उन खिलाड़ियों पर जाते हैं कि ये परफॉर्म कर सकता है, आप पूछिए बेस्ट कप्तान कौन, तीसरा जवाब देंगे ये नहीं, ये नहीं, ये। तो गौतम गंभीर का जो नेचर है थोड़ा सा अलग है, हो सकता है उसका हमें रिजल्ट भी हमें देखने को लेकिन मिले। गौतम गंभीर के एक्सप्रेशन मुझे थोड़े अलग लगे थे जब मिचेल स्टार्क गए वहां पर केकेआर को ज्वाइन किया उन्होंने, तो ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग जीटी टू पुल आउट। योर थॉट्स? बिल्कुल एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन देखिए अब जब आपने ठान ही लिया था तो वो परचेज तो कर ही लिया। भले आज की क्या पूरी आईपीएल हिस्ट्री की हाईएस्ट बिड थी वो 24.75, लेकिन ठीक है जीटी पुल तो करेगी, उनके पास पर्स बड़ा था और अभी एक प्लेयर खोया है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहेंगे कि उनकी भी स्क्वाड कहीं ना कहीं मजबूत हो। और देखिए जब बिड होती है तो कहीं ना कहीं ये भी एक गेम प्लान होता है कि किसी का पर्स जल्दी खर्च कराया जाए, तो आपके प्लान में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनको आप बाद में पिक करना चाहते हैं। दिल्ली कैपिटल्स इसकी मास्टर है। बिल्कुल, दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली की कैपिटल्स मास्टर की है। मास्टर है, वो एग्जैक्टली। आपने शायद किसकी बिड में अभी देखा, हमने रचिन रविंद्र की बिड में देखा। दिल्ली कैपिटल्स, मुझे लग रहा है रचिन रविंद्र उनके प्लान में ही नहीं थे, पर 1 करोड़ की बिड तक वो लगातार बिड करते रहे। फिर उसके बाद सीएसके बिड कर रही, फिर उन्होंने पंजाब किंग्स को कहीं ना कहीं पोक कर दिया, वो बिड में आए, फिर बिड से फिर गायब हो गए और रचिन रविंद्र देखिए उनकी सीएसके पास गए। सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है कि भाई दिल्ली कैपिटल डिस्कशन नहीं होता, हम देखेंगे टेबल पे डिस्कशन होता है, दिल्ली कैपिटल्स बस यूं करते रहते हैं, उनका फिक्स होता है कि हाँ भाई और फिर वो एंड कर देते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बैलेंस टीम है ना उनके हिसाब से। जी नहीं, पृथ्वी शॉ को मैं जरूर इस बार देखना चाहूंगा इस सीजन में कि पृथ्वी शॉ के बल्ले से कुछ रन आए भाई। आप देखना चाहेंगे कि लेकिन डीसी क्या उन्हें खिलाएगी सारे मैचेस? जिस तरह की खबरें उनको लेकर आ रही हैं और जिस तरह से वेट उन्होंने गेन किया है, और काउंटी खेलने गए थे वहां पर भी चोटिल होकर वापस आ गए, तो उसके बाद उनका कोई गेम अभी किसी ने खास देखा नहीं है, तो उस हिसाब से मेरे लिए नहीं मेरी समझ से बाहर है। पिछली बार भी इम्पैक्ट प्लेयर बन के आप रह गए थे, आपको पृथ्वी शॉ की फील्डिंग पे भरोसा है नहीं। बिल्कुल। And I really feel bad for someone of his age because you know आप इतने यंग हैं, आपको लुक एट शुभमन गिल और ये मुद्दा है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सरफराज खान है। सरफराज खान इतना परफॉर्म करने के बाद भी सिर्फ एक मुद्दा बन के आता है कि उनका वेट ज्यादा है, और ये चीज उनके लिए कहीं ना कहीं बैरियर बन के पूरी करियर में रही है कि वो फ्रेंचाइजीज के लिए खेले भी हैं लेकिन उनको पूरा सीजन नहीं मिला है। डीसी के लिए पिछले साल अभिषेक पोरेल को उनसे ऊपर खिलाया गया। लेकिन यहाँ पे एक कहीं ना कहीं we do talk about सरफराज, he is a great domestic player, बहुत रन बनाते हैं रेड बॉल में, across format बहुत रन बनाते हैं, but the moment he is put up against good quality bowling attack he does fumble, that is a reality। आप आईपीएल देख लीजिए, आप इंडिया ए देख लीजिए, ये एग्जांपल रियान पराग भी है। रियान पराग का इतना अच्छा स्मैट का सीजन गया, अभी आईपीएल आते ही उनका कहीं ना कहीं वो फॉर्म आपको वापस जाता हुए दिखेगा। 1-2 सीजन थे जिनमें उन्होंने वो करके दिखाया, इसीलिए आरआर उनमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। कहीं ना कहीं उनको एक ग्रास रूट लेवल से उनको जोड़ रखा है अभी तक अपनी फ्रेंचाइजी के साथ। लेकिन रियान पराग आप सोचो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे उनके जैसे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों से उनका मुकाबला होता है, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बिल्कुल, तो वही मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी शॉ की, ठीक है, कि इट रियली फील्स बैड फॉर समवन ऑफ हिज एज। शुभमन गिल जहां जीटी की कैप्टेंसी कर रहे हैं, पृथ्वी शॉ उनके कैप्टन थे अंडर 19 2018 में जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। अर्शदीप वाज अ पार्ट ऑफ दैट। अपनी जगह के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जगह के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जगह भी मिलती है, तो जगह भी इसलिए मिल रही है क्योंकि आपके पास इंपैक्ट प्लेयर है। अगर इंपैक्ट प्लेयर नहीं होता तो शायद वो 11 से बाहर होते। बिल्कुल इन द फैग एंड ऑफ द आईपीएल लास्ट ईयर। तो ये खुद पे काम करना, फिटनेस आपकी कोई कराएगा नहीं, आपको फिटनेस पे खुद ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने को रेडी रखना पड़ेगा। यू नीड टू पुट अप योर हैंड एंड से कि नहीं बॉस, आई विल फील्ड फॉर 20 ओवर्स एंड आई बैट फॉर 20 ओवर्स। आपको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। कुछ ऑफ द फील्ड बहुत सारी ऐसी चीजें पृथ्वी शॉ के बारे में सुनने को आती हैं जो कि सही नहीं है। बहुत सारी चीजें सुनने को आती हैं और वो रहा भी है, जिस तरह से कंट्रोवर्शियल रहे हैं कहीं कुछ चीजों में। अभी एक रिसेंट कंट्रोवर्सी थी जो सामने आई, तो कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा नीड है और वो है नहीं उनके अंदर मेरे हिसाब से, क्योंकि टीम में आपके लिए खेलना, आपका सिर्फ टैलेंट मैटर नहीं करता। बहुत सारे टैलेंट हमने इंडिया में देखे हैं जो इसी कारण वेस्ट होते हुए नजर आए, और पृथ्वी शॉ ऐसा ना हो कि जल्दी रिसेंट एग्जांपल बनते हुए नजर आए। बिल्कुल नहीं बनते जा रहे हैं, क्योंकि ठीक है आप सोशल मीडिया अभी तो यही सोच रहे होंगे किसने मेरा प्रैक्टिस वीडियो लीक कर दिया है। अगर खुद किया था तो ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन था उनके लिए। बिल्कुल ठीक है सोशल मीडिया पे क्या होता है, यू नो, वो हम लोग बहुत ज्यादा हाइप कर देते हैं, बट यू नो हैदराबाद का स्क्वाड आपके सामने, आप खुद देखिए, एडन मार्करम वहां पे दिख रहे हैं ओवरसीज में,
ग्लेन फिलिप्स, हेनरी क्लासन, ट्रेविस हेड, उसके अलावा मार्को यानसेन ओवरसीज 11 बना सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ये बात। इस टीम में एक खिलाड़ी अभिषेक शर्मा जी, उनको बहुत हद तक उनकी बात जब भी आप युवराज सिंह से बात करने जाए उनका नाम लेते हैं कि मेरे जैसा खेलते हैं, इनको मैंने ट्रेन भी किया है, काफी उन्हें पर्सनली ग्रूम भी करते हैं, उन पे भी नजर रहने वाली है इस अभिषेक बार। शर्मा इज प्रोबब्ली वन अभिषेक ऑफ द शर्मा मोस्ट is a key player. अंडररेटेड प्लेयर, की प्लेयर फॉर एसआरएच. key player for SRH. He made his debut for Delhi Daredevils in 2017 or 18, if I'm not mistaken, against RCB. Did a brilliant knock, some 17 ball 46 he scored. आरसीबी के पास उस समय पीक डिविलियर्स और पीक विराट कोहली थे, तो वो 160 170 का चेस बहुत बड़ा लगा नहीं था, लेकिन उस पारी ने, उस नॉक ने बहुत कॉम्प्लेक्शन चेंज किया था। हैंडी बॉलर कैन बैट अप द ऑर्डर, 4 ओवर डाल सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड इनको यूज, एंड इज अ वेरी गुड कैप्टेंसी मटेरियल टू, ही कैन बी समवन हु कैन बी अ कैप्टेंसी प्रोस्पेक्ट। आई डोंट नो व्हाट एसआरएच थिंकिंग, या तो आप रिलीज कर देते हैं इनको किसी और फ्रेंचाइज में जाने देते, इनका रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपकी डिपेंडेंसी कितनी है इनके ऊपर, आप कहां खिलाएंगे, किस नंबर पर खिलाएंगे, इंपॉर्टेंट होने वाला है अभिषेक शर्मा कैसा खेलते हैं, क्योंकि युवराज सिंह बार-बार ये बात कहते आए हैं कि भाई युवराज सिंह ने उनको ग्रूम भी किया है। देखिए जैसे दो ही खिलाड़ियों का नाम लेते हैं, शुभमन गिल और इनका। युवराज की कोचिंग में शुभमन ग्रूम है और अभिषेक की कोचिंग में, और दोनों का कनेक्शन युवराज से बहुत अच्छा है और वो कनेक्टिविटी दिखती है। और देखिए आप युवराज बॉलिंग भी बहुत अच्छी युवराज जितनी अच्छी बॉलिंग करते थे वही पार्ट टाइमर बॉलर अभिषेक शर्मा भी है, और एसआरएच ने उनको बहुत अच्छा यूज भी किया है इसी तरीके से। लेकिन अब वो सीजन में, पिछले सीजन में तो उन्होंने बैटिंग से बहुत अच्छा किया था और पार्ट टाइम बॉलिंग में भी उन्होंने एसआरएच के लिए बहुत कुछ खास करने की कोशिश की थी, और मुझे लग रहा है एक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसआरएच उनमें करना चाहेगी। बिल्कुल। उत्कर्ष, अनिमेश, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, आपके साथ। अच्छा, आज तो ऐसा लग रहा है कि आईपीएल के मिनी ऑक्शन नहीं हो रहा, आईपीएल ऑक्शन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पर्स दोनों ही सारी फ्रेंचाइजीज खर्च कर रही हैं, ये कहने वाली बात होगी कि आईपीएल हिस्ट्री की इतनी हाईएस्ट बिड अगर कोई लगा रहा है तो ये शॉकिंग होगी मिनी ऑक्शन में, जब आपके पास अगला मेगा ऑक्शन आने वाला है। इवन ये भी होता है ना कि चलो मेरे पर्स में इतने पैसा है, मैं स्पेंड कर सकता हूँ, कर देता हूँ, क्योंकि अगले सेशन के लिए तो मेरे पास नया बजट होगा, नए पैसे होंगे। लेकिन फिर भी आईपीएल जनरली लोग कहते हैं कि टी20 गेम्स जो होता है वो बैट्समैन के लिए होता है, बैट्समैन फ्रेंडली गेम है, लेकिन जिस तरह से हम प्राइस लिस्ट देखें और आईपीएल ऑक्शन का हिस्ट्री देखें तो मुझे लगता है कि बॉलर्स के लिए आईपीएल पैसों के मामले में जन्नत है। बिल्कुल रहा है, आज तो पेसर फ्रेंडली रहा है बॉलर फ्रेंडली भी नहीं, स्पिनर फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं रहा है, पेसर फ्रेंडली रहा है पूरा का पूरा आज का जितना भी ऑक्शन आपको देखने को मिला। इवन ये रहा है, देखिए की रोल तो होता ही है आपका, जो बहुत बड़ी भूमिका होती है वो बॉलर की होती है। आप देखिए एसआरएच, आरसीबी की नाकामी का सबसे बड़ा सिलसिला यही है कि उनके पास एक अच्छे गेंदबाज नहीं है। बैटिंग में आप 200 का स्कोर चिन्ना स्वामी में लगा देते हो, लेकिन आपको डिफेंड करने की बात भी आती है तो आप 17 ओवर में भी 200 रन खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं? क्योंकि आपके पास बॉलर अच्छे नहीं है, और इस बार भी वही चीज, कहीं ना कहीं वही गलती इस बार भी हुई है उनसे। अलजारी जोसेफ को जरूर पिक कर लिया है, कैमरन ग्रीन आपके पास ट्रेड होकर आए। अपनी कमियों को दूर करने के लिए आईपीएल का मिनी ऑक्शन होता है कि जो आपकी कमियां हैं, लास्ट सीजन में अच्छा नहीं लगा, आप दूर कर लीजिए, लेकिन अगर वो कमियों के बजाय आप एक इंडिविजुअल मेरे हिसाब से लॉकी जाएंगे, फर्ग्यूसन के साथ उनको जाना चाहिए था पहली ही बिड में। अब वो बाद में उनको खरीदने के लिए जाते हैं, हो सकता है कि वो जो आखिरी राउंड होगा वहां पर लॉकी फर्ग्यूसन के लिए जाएं, और मेरे हिसाब से अलजारी जोसेफ से ज्यादा अच्छा पिक उनके लिए लॉकी फर्ग्यूसन होते हैं। बिल्कुल, ये देखिए अमूमन होता यही है कि जब भी हम आईपीएल बिडिंग होती है, बिडिंग के बाद हम पेपर पे देखते हैं कि ऑक्शन में किसने बीट किया, किसने बाजी मारी, और अमूमन देखते हैं कि हम पंजाब की टीम टॉप पर होती है। लेकिन जब ये ग्राउंड पे चीजें आती है तो टोटली बदल जाती है। फिर लगता है यार इतना पैसा हमने खर्च किया इस खिलाड़ी पर, क्या वो खिलाड़ी था इस लायक? ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन बात यहाँ मैं शुरुआत से करना चाहूंगा, चेन्नई की बात मैं पहले करना चाहूंगा। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीमों में से एक है। एमएस धोनी कप्तान, उनके पास टीम काफी लाजवाब है। अगर आज की पूरी बिडिंग को देखें, ऑक्शन को देखें, तो आप लगेगा कि हाँ, एमएस और सीएसके ने प्लानिंग के साथ अपनी टीम तय की है, बीट किया है। उन्हें पता है कि हमारा प्लेइंग 11 तो फिक्स है, लेकिन अगर एक दो खिलाड़ी ऊपर नीचे होगा तो वो कौन हो सकता है और उन्हें क्या चाहिए। देखिए काफी एग्रेसिव दिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्शन में जिस तरीके से चेन्नई ने शुरुआत की है, ऑक्शन में शुरुआत में उन्होंने देख लिया था कि भाई हमारे प्लेयर ये होने वाले हैं। बिगेस्ट एग्जांपल रचिन रविंद्र को देख लीजिए आप, शुरुआत की बिडिंग वो फिक्स करके आए थे कि भाई रचिन रविंद्र हमारी तरफ से ही खेलने वाले हैं, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ वो खेलेंगे, वहां पर रहाणे होने वाले हैं, साथ ही वो शार्दुल ठाकुर के साथ गए हैं। शुरुआत शार्दुल ने जहां से की थी, केकेआर गए, फिर उनको अपने साथ लेकर आए हैं, तो इंपॉर्टेंट होने वाले। और डेरी मिचेल को भी उन्होंने अपने साथ लिया है। डेरी मिचेल को लेकर ये था कि भाई आईपीएल में कुछ पैसे मिल जाएंगे, 2-3 करोड़ शायद मिल जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट सीएसके ने दे दिया। और सीएसके जब कोई काम करता है, बहुत हद तक जो फैंस हैं, फैन क्लब है, वो कहते हैं कि भाई सही किया होगा। अगर थाला कुछ सोच रहे हैं, सही है। मुंबई इंडियंस पे मैं आना चाहूंगा। मुंबई इंडियंस की टीम को किया होगा तो मुझे जो लगता है उसमें युवराज सिंह की झलक थोड़ी बहुत दिखती है। मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं मोइन अली का बैकअप है सीएसके के लिए। बिल्कुल, ये बात मैं जब बैठे हुए थे हम लोग, तो मैं
सिरी भी ये बोल रहे थे कि मोइन अली का बैकअप कौन हो सकता है इन फ्यूचर, तो वो एक सही पिकअप है चेन्नई सुपर किंग्स का। अब गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, जितने पैसे उनके पास थे, एक कप्तान ही सिर्फ नहीं गया है, एक बॉलर भी गया है उनकी टीम से, कप्तान के साथ साथ एक बल्लेबाज भी गया है और एक शानदार फील्डर भी गया है। हार्दिक पांड्या ये तीनों कमिटमेंट करते थे अपनी टीम के साथ कि अगर मैं ग्राउंड पर हूं तो मैं ये 3 डिपार्टमेंट को देख लूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ बात ये थी कि क्या हार्दिक पांड्या के मुंबई में जाने के बाद गिल कैपेबल है उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए? क्या हार्दिक पांड्या का जो अल्टरनेटिव हो सकता है वो क्या वो तीनों पैमानों पे खड़ा होगा या फिर 2 अलग खिलाड़ी पे बीट करनी पड़ेगी? कैसा देख रहे हैं गुजरात टाइटंस की बिडिंग को आप अभी? देखिए गुजरात टाइटंस, एक तो सबसे पहली बात है स्टार्क को अपने साथ ले रहे थे, चूक गए, बिल्कुल करीब आ गए थे, शायद स्टार्क आ जाते वो टीम और स्ट्रांग हो जाती, खैर वो नहीं आए। लेकिन अगर हार्दिक की बात करें, जो शुभमन गिल अब कप्तान होने वाले हैं, क्रेडिट मुझे लगता है देखिए हार्दिक को सिर्फ नहीं दिया गया है। जो 2 आप फाइनल खेले हैं उसमें क्रेडिट डिवाइड हुआ है, आशीष नेहरा में डिवाइड हुआ है, कुछ क्रेडिट ओनर को गया है, कुछ आपके खिलाड़ी चाहे मोहित शर्मा हो, राहुल तेवतिया हो, इन खिलाड़ियों को भी गया है। तो कई बार हम देखते हैं कई ऐसी टीमें होती हैं जहां पर सिर्फ कप्तान को क्रेडिट दिया जाता है कि भाई आपके कप्तान बेस्ट हैं और बाकी आपकी टीम ऐसी नहीं है। बार बार जिसका जिक्र गौतम गंभीर करते रहते हैं कि भाई सिर्फ कप्तान को क्रेडिट मत दीजिए, आपके 11 खिलाड़ी खेलते हैं। गुजरात के साथ ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिली है। हार्दिक पांड्या पर डिपेंडेंट थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे, उनकी टीम अभी भी स्ट्रांग दिख रही है काफी हद तक। देखें शुभमन गिल की कप्तानी में क्या नया होगा, ये पहली बार देखने को मिलेगा। मिचेल स्टॉक 33 साल के हो चुके हैं, जनवरी में वो 34 साल के हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं देखा गया मिचेल स्टॉक पे। आपने सिर्फ एक सीजन देखा है कि 2024 के लिए मेरे पास पैसे हैं, मैं खर्च करता हूँ। मिचेल स्टॉक का काम उतना ही है, मतलब 2024 या 2000 मैक्सिमम 25। देखिए आईपीएल बड़ा कैलकुलेटिव होकर खेलते हैं, वर्ल्ड कप आने वाला है उसके पहले आईपीएल है तो खेल लूंगा, अगर टी20 मुझे आगे नहीं खेलना है तो नहीं खेलूंगा। तो कैलकुलेशन जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं उनका बड़ा स्ट्रांग रहता है। पिछली बार याद कीजिए WTC फाइनल टेस्ट मैचेस होने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी नहीं दिखे हमें। वो प्रेफरेंसेस उनकी क्लियर है। देखिए जब भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होते हैं वो लीग्स को प्रेफर नहीं करते हैं, और ये बिग बैश लीग के साथ भी उन्होंने किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये देखिए प्रेफरेंसेस हैं, अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं। ट्रेविस हेड ने भी प्रेफर किया था कि वो नहीं खेलना चाहते पिछले सीजन में, इसीलिए आपको नहीं दिखे थे। और मिचेल स्टार्क अपनी टीम के लिए एक ट्रॉफी लेके आना, वो किसी भी लीग खेलने से अच्छा है, चाहे वो लीग कितनी बड़ी हो, इंडियन प्रीमियर लीग ही क्यों ना हो, तो वो मैटर करता है। बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि लोग जाने इसलिए जाते हैं। आज एमएस को सबसे सक्सेसफुल कप्तान इसलिए कहा जाता है कि एमएस के क्योंकि पास 2 वर्ल्ड कप उनके नाम ट्रॉफी, है। आईसीसी की सारी ट्रॉफी उनके पास आप है। चेन्नई की ट्रॉफी अगर हटा भी दीजिए तो तब भी हमेशा वो हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज रहेगा कि 2 वर्ल्ड कप जीतने वाला खिलाड़ी आपके लिए हमेशा सबसे ऊपर रहने वाला वही है। बात है कि कपिल पाजी जिंदगी भर हमारे लिए यादगार रहेंगे। कपिल पाजी ने कोई आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप उन्होंने अपने नाम किया है। इसी तरह ये चैलेंजेस अब हार्दिक पांड्या के लिए भी है। गुजरात की बात जो हम कर रहे थे, थोड़ा सा शॉकिंग ये था कि आपके पास एक मोहित शर्मा पहले से है, आपके पास कह सकते हैं कि आपको ओल्ड हॉर्स आपके पास पहले से है। उमेश यादव पे 5.8 करोड़ की बिड थोड़ी मेरे लिए शॉकिंग थी कि आप दूसरा ऐसा प्लेयर क्यों लेना चाह रहे हैं। आप या तो उनको सिर्फ बैकअप में ही रखोगे, वो ठीक है, लेकिन आप एक नए किसी युवा प्लेयर्स पे, किसी अनकैप्ड प्लेयर पे इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते थे मेरे उसका हिसाब एक से। शायद रीजन ये हो सकता है कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे, पहला ओवर खुद लेकर आते थे जब वो कप्तान हुआ करते थे। अब कौन करेगा वहां गेंदबाजी, शायद वो एक विकल्प के तौर पर उमेश यादव को देखेंगे। अगर फिर से अगर किसी भी टीम के ओपनिंग बॉलर हैं तो मेरे हिसाब से वो टीम के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है पूरा अच्छा, कुछ सीजन। फैंस मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप अपने पैनल से जरूर ये पूछिएगा इस बात को, स्टीवन स्मिथ को इग्नोर क्यों किया गया? स्टीव स्मिथ का देखिए वो स्ट्राइक रेट है नहीं कहीं ना कहीं, और लगभग आप किसी भी फ्रेंचाइजी को उठा के देख लीजिए, उन्होंने अपना 4 नंबर सेट कर रखा है या 3 नंबर सेट कर रखा है, वहां पर आप किसी ऐसे प्लेयर के लिए बिड भी नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा सा स्ट्राइक रेट आप, मैं कहता हूँ कि एक सीमेंट करने वाला प्लेयर चाहिए होता है आपको ओपनिंग के बाद भी, कि आपके लिए वो कम से कम 6 से 13 ओवर 14 ओवर तक का गेम निकाले। लेकिन स्टीव क्योंकि स्मिथ आईपीएल में ये माना जाता है कि अमूमन वो उन खिलाड़ियों को जिसको इग्नोर किया जाता है उनकी टीम भी उनको इग्नोर करती है। वर्ल्ड क्रिकेट के फैंस जो हैं, ग्रेट फैंस जो हैं, स्मिथ को खैर वो भी इग्नोर इग्नोर करना करते मुश्किल हैं। होगा। T20 में शायद नहीं बन पा रहे, उनकी जगह नहीं है, जैसा कि कह भी रहे हैं कि 3rd 4th पोजीशन पे आते हैं, और उस समय तक तो 16वां 15वां 16 ओवर आ जाता है, वहां पे ट्रेंड हिटर भी चाहिए चेंज हो आपको। गया, टी20 का ट्रेंड भी चेंज हो गया। पहले था कि भाई ट्रेंड था कि आप 2 ओपनर आएंगे, दोनों ही आते हिट करना शुरू करेंगे। अब एक ओपनर आपके एंकर पोजीशन ऑलरेडी निभाता है या फिर नंबर 3 का बल्लेबाज हो, तो मिडिल ऑर्डर में कोई एक्स्ट्रा बल्लेबाज जो सिर्फ आपकी सीमेंट करे पोजीशन, शायद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। मनीष पांडे डिसअपॉइंटिंग। मनीष पांडे को शायद वहां पर कोई खरीदार मिलना चाहिए था। मनीष पांडे बेस प्राइस बहुत ज्यादा उनकी नहीं है, 50 लाख रुपए रुपए मेरे हिसाब से उनको खरीदा, और आखिरी राउंड में वो बिकेंगे, जो मुझे लगता है कि लास्ट राउंड में कहीं ना कहीं वो सोल्ड आउट जरूर होंगे। मतलब जिसके पास पॉकेट रहा कि हाँ ठीक है, अभी इन्वेस्ट देखिए कर आप सकते हैं। फ्रेंचाइजीज भी अपने पूरे कह सकते हैं कि पूरे प्लान के साथ आते हैं कि अपने उनको पर्स कैसे पहले स्पेंड करना है, उस हिसाब से अपने ओवरसीज प्लेयर्स को देखिए। ये पूरा जितने भी राउंड्स हुए वो सारे ओवरसीज के नाम रहे हैं मैक्सिमम,
तो अब जो आने वाले राउंड होंगे मुझे लग रहा है अनकैप्ड प्लेयर्स और जो अनसोल्ड प्लेयर्स रहेंगे उनके नाम रहेगा। अच्छा, ओवरसीज की बात आपने की, कुछ लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं कि जो ओवरसीज खिलाड़ी हैं उनको आईपीएल में खूब पैसे मिल रहे हैं, मतलब कोई हिसाब किताब नजर नहीं आ रहा है। मतलब युवराज का एक दौर आपने देखा था कि 14 करोड़ फिर 16 करोड़ युवराज सिंह ने बिडिंग हासिल की थी। उसके बाद से जो ट्रेंड हमने चेंज देखा है, जितने आईपीएल बिडिंग हुई है 2020, 21, 22 में अगर हम देखें, सारे फॉरेनर प्लेयर्स पे ही बिडिंग की जा रही है, बहुत मोटे पैसे खर्च किए जा रहे हैं। इवन आज भी किसी को उम्मीद नहीं था कि नहीं, ये 25 तो करोड़ 21 करोड़ रुपए कोई खर्च कर देगा खिलाड़ियों पर, 34 साल और 30 साल। पैट कमिंस एक फ्यूचर है, कप्तान को रोल में है, कप्तान पे भी आपने दाव लगाया है, बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा ट्रेंड क्यों बनता चला जा रहा है, खासतौर पर बॉलर्स पे बहुत ज्यादा पैसे फ्रेंचाइजी खर्च कर रही है? इसका जवाब आपने शुरुआत में दिया था जब आपने हमें रिजॉइन किया था, वहीं पे आपने बोला कि ट्रायल पीरियड है, जितना पर्स है वो सारा मैक्सिमम खर्च करना चाह रहे हैं, एक सीजन में देखेंगे, अगले साल तो रिटेन नहीं कर पाएंगे, आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। तो एक ट्रायल पीरियड में जा रहे हैं कि अगले साल इनको कैसे देखेंगे, कम पैसे में भी लेके जा सकते हैं, ज्यादा पैसे में भी लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे एसआरएस ने इसलिए सबसे ज्यादा उस पर पैसा लगाया कहीं ना कहीं पैट कमिंस पे, क्योंकि वो उनके पास कप्तान नहीं है। बिल्कुल। एडन मार्करम पिछले सीजन वो खेले नहीं थे, इस साल भी मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स फिर से बीच में छोड़ के जाएंगे कुछ सीजन के लिए। इवन पैट कमिंस की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री भी रहा, जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, ऑस्ट्रेलिया में प्रूव किया, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलियन फैंस के लिए वो विलन हो चुके थे। लोग कह रहे थे कि यार ये तो खिलाड़ी है ही नहीं हमारे तो लिए। वो जिस ट्रॉफी को छू रहे हैं उसको सोना कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसी बहती गंगा में एसआरएस ने भी हाथ धो लिया, चाहे पैसे चाहे जितने जिमी भी खर्च इसी हो। बात को कह रहे थे कि भाई जिस चीज को वो छू रहे हैं ना, एमएस वाली काबिलियत उनके अंदर आ गई है, जिस चीज को छू रहे हैं वो सोना हो जा रही है। जिस तरह से WTC एसएस देख जीता, लो जिस आप। तरह से WTC फाइनल जीता, उसके बाद आप ओडीआई वर्ल्ड कप जिस तरह से जीता, और जो उनका स्टेटमेंट था वो बहुत प्रॉमिसिंग था। ऐसा कप्तान अब बहुत मुश्किलों से मिलता है जो कह रहा है कि 1.5 लाख की जनता होगी, इतनी 1.5 लाख की जनता होगी, मैं वहां जाऊंगा स्टेडियम में सबको खामोश कर दूंगा, और कर दिया। वो करके दिखा देना तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था वहां पर, मुझे लगा था शायद वो मजाक कर रहे हैं, एक होता है और ऑस्ट्रेलियन इतना गेम प्लान कॉन्फिडेंट होता अगर है, आपका लेकिन कप्तान है, और सडनली एसआरएच इसी तरह के कॉन्फिडेंट कप्तानों की कमी से जूझता रहा है। एडन मार्करम पिछले सीजन में भी स्टार्टिंग के मैचेस में अनअवेलेबल थे, अभी भी मैं बहुत कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि मिड सीजन में साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स लीग को छोड़ के जाएं। तो वहां पर कहीं ना कहीं ये एक उनके प्लान में था कि उनको एक कप्तान ढूंढना था, पैट कमिंस उनके लिए बेस्ट ऑप्शन थे, इसीलिए वो इतने लंबी बिडिंग तक गए। मेरा कंसर्न सेम है ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स के लिए कि भाई क्या आप पूरा आईपीएल नहीं खेलेंगे, जाएंगे, देखिए क्या आप एंड तक जाएंगे? नहीं, आईपीएल प्लेयर्स का जो प्रेफरेंसेस होती है वहां पे आपके सामने अभी कोई आईसीसी ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप है वहां, उसके अलावा और कोई ट्रॉफी नहीं है, तो वहां उससे पहले ये छोड़ के जाने वाला उनका सीजन नहीं रहता। अभी आपके पास पिछले साल आपके पास WTC आपके सामने था, WTC फाइनल था, एसएस उनके लिए एक बड़ा इवेंट है, उसके अलावा आपके पास ओडीआई वर्ल्ड कप था। जब 3 बड़े इवेंट आपके स्टेक पे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर मैं इंडियन प्लेयर होता तो मैं भी प्रेफर करता कि मैं 3 आईसीसी ट्रॉफीज को प्रेफर करूंगा। अच्छा, दिल्ली की टीम की मैं बात करना चाहूंगा, पंत भी खुद आज मौजूद थे, लेकिन दिल्ली की टीम, मतलब मुझे पर्सनली, मैं अपनी बात कहूं या जो मेरे फैंस शायद मैं बात करता हूं, उनमें कह रहे हैं कि भैया पेपर पे तो ये टीम ठीक है, बट ग्राउंड में जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, ये टीम पूरी की पूरी डिसबैलेंस हो जाती है। और ये कप्तान अभी से नहीं बदलने है, के बाद उनके लिए बहुत कुछ अच्छा अभी रहा से नहीं है, नहीं है। 2008 से कहानी चल रही है। शुरुआत से ही है, आप नाम शुरुआत से बदल लिया। उठाकर देख लीजिए, बिल्कुल तमाम खिलाड़ी आए हैं, बड़े बड़े पेपर पर बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं। शुरुआत में डिविलियर्स हुआ करते थे, दिलशान, गंभीर, सहवाग, लेकिन ये टीम डिलीवर नहीं कर पाती। मुझे लगता है शायद लीडरशिप क्लियर नहीं है कि भाई एग्जैक्टली हमें क्या करना है, किसे किसका रोल लीडरशिप देना बोलो है। या फिर एक थिंक टैंक, हर टीम के पास एक थिंक टैंक है। बिल्कुल। जैसे जीटी की हम बात करते हैं तो आशीष नेहरा है, उनके साथ एक पूरी टीम बैठी हुई है। चेन्नई की बात कर लो, खुद MS धोनी है, तो फिर दूसरे की जरूरत है नहीं वहां पर। तो कहीं ना कहीं क्या MS धोनी, स्टीफन फ्लेमिंग है, और यहाँ 2 बहुत अलग-अलग बड़े लोग बैठे हैं, गांगुली और रिकी पॉन्टिंग दिल्ली में। अगर आप नहीं, देखें, गांगुली तो अब केकेआर चले गए। गांगुली दिल्ली में ही है। दिल्ली में। गौतम गंभीर के सॉरी, गौतम गंभीर, सॉरी जी, सॉरी। तो यहाँ गांगुली और पॉन्टिंग नॉर्थ पोल साउथ पोल वहां बैठे हुए हैं, और फ्रेंचाइजी का भी काफी हद तक रोल दिखता है वहां पर। और गांगुली इंटरफेरेंस, गांगुली का इतिहास रहा है, उनके मन में जितने क्लैशेस होते हैं वो आपको कभी स्क्रीन पे दिखेंगे नहीं। हाँ, वो तो मतलब उनका ये स्टाइल है, उनका अंदाज है। फिलहाल बिडिंग की अगर हम बात करें तो फिलहाल इंटरव्यू चल रहा है गुजरात और पंजाब की टीम का, क्योंकि जो पैसे है संजय बांगर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, काफी संजय बांगर से कभी एक पैच था बीच में, उन्होंने बहुत ही इंप्रूव किया अपनी टीम को, पंजाब की खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ जब उनको बीच में लाया गया था। लेकिन फिलहाल 2024 का आईपीएल की हम बात कर रहे हैं, बिडिंग की बात कर रहे हैं, तो आज 2 बड़े सेंटर पॉइंट रहे जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी, फैंस भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, और इवन फैंस के अच्छे एक्सपर्ट भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि भैया मिचेल स्टॉक को आप 33 साल 34 साल की उम्र में 25 के अराउंड उन पे पैसे खर्च कर देंगे। पैट कमिंस 30 साल एज हो चुका है, हालांकि एक फ्यूचर कैप्टन भी है, जरूरत भी थी टीम को, उन्होंने खर्च किया। उसके बाद कई सारे नाम ऐसे भी हैं, शार्दुल ठाकुर की बात मैं करूंगा जो आपने जिक्र भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। शार्दुल का लेना चेन्नई को कहीं ना कहीं उनके मन में था कि पिछले सीजन में वो शार्दुल को लेना चाह रहे थे, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं कर पाया, वो नहीं ले पाए,
तो इस बार उन्होंने गलती सुधारी अपनी। गलती सुधारी, वो उनके टारगेट प्लेयर थे और उसमें कामयाब रहे। सीएसके अक्सर ऐसा करती है कि उनके जो टारगेट प्लेयर्स हैं, जो उनके प्लान में है, उनको करने के लिए कुछ भी करेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से वो इससे भी ज्यादा पॉकेट खर्च करनी पड़ती तो सीएसके उसके पीछे जाती, लेकिन बेस्ट बाय है उनके लिए। और और सीएसके के लिए सबसे बड़ी दिक्कत दीपक चहर बन गया मुझे लगता है, जिस तरीके से उनकी इंजरी हर सीजन में देखने को मिल रही है। इंजरी रहती है, अनअवेलेबिलिटी, खैर जी। वो पर्सनल रीजंस होते हैं, उन पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इंजरी प्रोन है थोड़ा सा, तो वो इशू रहता है। और अनअवेलेबल हो जाते हैं तो ये धोनी जैसा कप्तान इन सब चीजों से जूझना नहीं चाहता। पिछली बार उनको तो नहीं, शार्दुल शायद आप पांड्या से कॉन्फिडेंट भी नहीं होते कि ये खिलाड़ी 14 मैच खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, उनकी बॉडी अलाउ कर रही है नहीं कर शार्दुल रही के है। साथ ये मुश्किल नहीं आती मेरे हिसाब से। अच्छा, हर्षल पटेल के बारे में बात जरूर करना चाहूंगा। शॉकिंग मतलब था मेरे उनका एक इम्पैक्ट, मतलब मैं जब इंजरी की बात करूं, इंजरी से पहले भी जब उन्होंने खेला था, रविंद्र जडेजा ने जब उनके ओवर्स में रन मारे थे, उससे पहले तक हर्षल पटेल का एक इम्पैक्ट था। लेकिन बीच में ये पैच उनके साथ आया, 12 करोड़ के आसपास उन पे खर्च किया गया है। डू थिंक कि शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, या फिर मार्केट वैल्यू समझा गया, देखा गया कि नहीं हमें जरूरत है, लॉटरी लग गई? और वही बात है कि चल भैया लॉटरी लग गई, और मेरे हिसाब से थोड़ा खराब परचेज है ये। इतना ज्यादा महंगा नहीं खरीदना चाहिए था। ठीक है, अब उमेश यादव इतने महंगे बिके हैं तो हर्षल पटेल तो बिकेंगे ही। वो मेरा मेरा एनालिसिस है इस हिसाब से। और 11.4 करोड़ में जी। बिके हैं, तो उस हिसाब से मेरे लिए खराब बाई इसलिए था क्योंकि उस बॉलर में कोई वेरिएशन है नहीं। आप उनके ऊपर अगर दांव लगा भी रहे हैं तो आरसीबी ने उनको स्टार्टिंग के सीजन, जो आपने बात कही, स्टार्टिंग के सीजन में उनको ग्रूम किया था। और जो उत्कर्ष से बात कह चुके हैं कि हर एक गेंदबाज की खासियत होती है कि आप जब तक आप सारे पत्ते नहीं खोलते, या तो आपने गेम चेंज किया, कुछ नए पत्ते बनाए, आप नए पत्ते दांव में लेकर आ रहे हो, तब तो आप कुछ कर सकते हो। लेकिन हर्षल जितनी बार हर सीजन में नई बार वापसी करते हैं, वो वेरिएशन आता ही नहीं है। आपने अभी, मुझे लग रहा है अभी डोमेस्टिक में भी उनका कुछ विकेट मिल जाते हैं, लेकिन खर्चीले तब भी वो साबित होते हैं। और आईपीएल में कहीं ना कहीं इस तरह की T20 फॉर्मेट रहा है, अभी जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप भी आना, और भी मैचेस देखते हैं, वहां पर अगर इकोनॉमिकल बॉलर नहीं रहा, 8 से ऊपर ज्यादा आपका इकोनॉमी जाता है, तो आप मेरे हिसाब से उतने अच्छे बॉलर की लिस्ट में नहीं आ सकते। और हर्षल के साथ ये प्रॉब्लम रहा है कि 4 ओवर में 50 रन खर्च हाँ, करने वो का एक मादा ओवर में भी रखते कर हैं। चुके हैं खर्चे। फिलहाल छठा सेट शुरू होने वाला है, उससे पहले बता दूं कि किन फ्रेंचाइजी के पास कितना पैसा है और क्या इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। तो बेंगलुरु 12 करोड़ के आसपास उनके पास है, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अराउंड 7 करोड़ है, पंजाब के पास 13, चेन्नई सुपर किंग्स के पास 11.5 करोड़ है। अभी भी सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई टीम लेकर बैठी हुई है तो दिल्ली कैपिटल है, जो दूसरी नंबर पे है, वो है 25.5 करोड़ उनके पास है। राजस्थान रॉयल्स 7 करोड़, मुंबई इंडियंस 8 CR, सनराइजर्स हैदराबाद 4 CR, उनके पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं अब करने को। लखनऊ सुपर जेंट्स 7 करोड़ के आसपास है, और अभी भी गुजरात टाइटंस, पता नहीं किस बात का वो इंतजार कर रहे हैं, 32 करोड़ का अमाउंट लेकर फिलहाल वो बैठे हुए हैं। अभी मतलब जो बीडिंग आने वाली है उसमें जो हम बातें करेंगे, गुजरात और जो दिल्ली की टीमें हैं, इनके पास अभी पैसे अच्छे खासे हैं, ये खेल सकते हैं। लेकिन अब वो कौन से चेहरे होंगे जिन पर उनकी नजर होगी? शुभम दुबे, अभी शुरुआत हुई शुभम दुबे से। बिल्कुल, बेस प्राइस इनका 20 लाख है, इनके ऊपर नजरें, कौन बिडिंग करता है इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिल्ली की बिडिंग पिछले 2-3 साल से काफी इंटरेस्टिंग रही है, और पहली बिड भी इन्होंने कर दी है। कई बार ऐसा देखा गया कि सामने वाले की बिडिंग बढ़ाकर ये बाद में कहते हैं नहीं भैया चलिए भाई, मैंने उस खिलाड़ी को दाम दिला दिया, अब मैं नहीं ले रहा हूँ। तो दिल्ली के यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग होता है इनका तरीका, कैसे ये डील करते हैं। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं सेक्शन जो होता है शुरुआत में, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन भारतीय होने के लिहाज से सबसे इंटरेस्टिंग सेशन ये होता है जहां पर नए खिलाड़ी आते हैं जिनका बेस प्राइस 20-30 लाख होता है। हो सकता है फ्यूचर स्टार्स इन्हीं में से कोई यहाँ पर निकल के देखने को मिले हमें। WPL ऑक्शन ऐसा ही रहा था कि आप काशवी गौतम का इस तरह से बिकना, ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। मुझे लगता है कि ये सेशन भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए 20 लाख बेस प्राइस है शुभम दुबे का, और इस वक्त राजस्थान रॉयल्स की बात करूं, मुंबई नहीं दिल्ली की बात करूं, दोनों लगे हुए हैं क्योंकि इनके पास पैसे हैं अच्छे खासे। और शुभम दुबे को अगर दिल्ली की टीम लेके जाती है तो क्या बेनिफिट नजर आ रहा है आपको उत्कर्ष? देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह होने वाला है, आपके पास सबसे बड़ी बात होती है जब आप किसी डोमेस्टिक प्लेयर को लेते हैं कि आप खिला सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विदेशी प्लेयर में आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, आप ले लीजिए वो कितना भी अवेलेबल है, पैसा दे 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। जी, आपके लिए अवेलेबल है। आपके लिए सबसे बड़ी बात है उनके पास भी पूरा चाहते हैं कि आप मुझे रिटेन करें। बिगेस्ट एग्जांपल रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह फ्रेंचाइजी ने बाद में कहा कि भाई, उन्होंने बाद में हमसे कहा कि प्लीज मुझे रिटेन करना, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो नए खिलाड़ी ये खुद चाहते हैं कि भाई आप मुझे लीजिए, आने वाले कई साल तक मैं आपके लिए परफॉर्म करता रहूंगा। तो दिल्ली अगर कोई एक लंबा लॉन्ग टर्म में देख रही है तो आपके लिए जरूर आप खिलाड़ी को ले सकते हैं। तो 20 लाख से बात शुरू हुई थी शुभम दुबे की, 65 लाख तक पहुंच चुके हैं। हालांकि बिडिंग लगातार जारी है दिल्ली के बीच में। यहाँ पर
कई सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन पर नजरें टिकी हुई हैं कि कौन सी टीम किन खिलाड़ियों पर ज्यादा पैसा खर्च करेगी। जैसा कि हमने बताया कि बहुत ज्यादा अभी पैसा जो है गुजरात टाइटंस के पास है और दिल्ली के पास है, लेकिन मुंबई के पास 8 CR, राजस्थान के पास 7। दिल्ली अभी खर्च कर सकती है पॉकेट, उन्हें पता है कि उन्हें किन किन खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना है, कौन से खिलाड़ी की जरूरत उनकी टीम को है, फ्रेंचाइजी को है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं कोलकाता की बात जरूर करना चाहूंगा। कोलकाता आई, दिल खोल के पैसे खर्च किए हैं, उन्होंने अपनी टीम बनाई, लेकिन केकेआर के साथ भी यही है कि टीम तो बहुत अच्छी बना लेते हैं पेपर पे, लेकिन वो आउटपुट नहीं आ पाता है जो आउटपुट हमें चाहिए, मतलब जो ग्राउंड पे चाहिए आउटपुट। देखिए इंजरी भी हो गई पिछले साल, उनके जो कैप्टन थे वो खेले नहीं, तो काफी दिक्कतें उनके साथ आई हैं। इस बार जब कैप्टन वापस आएंगे, गौतम गंभीर वहां पर वापस आ गए हैं, उनकी भी घर वापसी एक तरीके से हो गई है, तो ये टीम काफी स्ट्रांग वहां पर दिखती हुई नजर आएगी इस बार। श्रेयस अय्यर से उम्मीदें हैं कि भाई श्रेयस अय्यर कप्तानी पारी खेलें इस सीजन में, लीड करें अपनी टीम को। याद कीजिए आज से 2 साल पहले भारतीय टीम के दावेदार थे वो कप्तानी के, लेकिन फिर इंजरियां इतनी ज्यादा हुई कि वो काफी पिछड़ गए उस रेस में। फिर से अगर वो स्पॉट उन्हें हासिल करना है, टीम इंडिया का एटलीस्ट परमानेंट वाइस कैप्टन बनना है, तो श्रेयस अय्यर पर नजरें होने वाली कि वो क्या करेंगे। साथ ही स्टार्क आपने जो इतने भारी भरकम खिलाड़ी लिए हैं, देखते हैं वो 24 गेंद में क्या करते हैं। अच्छा, गंभीर की बात करूं मैं अनिमेश आपसे, तो गंभीर का जो टेम्परामेंट खेलने का है, जिस तरह से टीम रीड करते हैं या जिस तरह से टीम बनाते हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह से आउटपुट टीम का हो, लगता है केकेआर के खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में होगा या फिर बहुत ज्यादा थोड़ा टेंस होने वाला है डील करना गंभीर और उनकी गेम प्लानिंग को? नहीं, मेरे हिसाब से डील करना तो मुश्किल हो जाता है। एलएसजी जो आपने बात कही वो एलएसजी के साथ हमने देखा था कि टेम्परामेंट इश्यूज होता है, लेकिन कहीं मैच कर गया तो से देखिए कैसा जा सकता है, क्योंकि एलएसजी का और जो पूरी टीम का उनका टेम्परामेंट था वो बिल्कुल सेम पेज पे चल रहे थे, और जिस तरह से एलएसजी ने परफॉर्म किया था उनकी कोचिंग के अंडर में, और ये मुझे लग रहा है बहुत कंफर्ट जोन में थे कहीं ना कहीं केकेआर पिछले सीजन में। और जितने प्लेयर्स उनके पास हैं वहां पे वो कहीं ना कहीं वो वेरिएशन जो प्लेइंग 11 वो बिल्टअप कर सकते हैं वो करने में नाकाम रहे थे। वेंकटेश अय्यर को जिस तरह से वो यूज कर रहे थे हर मैच में, कभी वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ रहे हैं, ऐसे प्लेयर को मैं नहीं देखना चाहूंगा कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपके दिखे। उसको कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में आपको यूज करना चाहिए था। वहां पे आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिनका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ। अगर आप डेविड वीजा एक अच्छे प्लेयर हैं डेविड वीजा, लेकिन अगर आपके प्लेइंग 11 में आपको उनको प्रेफरेंस देनी पड़ रही है जब आपके पास एक अच्छी स्क्वाड है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी कुछ खामियां हैं, और गौतम गंभीर वो दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। और जो उत्कर्ष ने कहा कि कहीं ना कहीं कप्तानी का भी बहुत असर पड़ता है, और नीतीश राणा पहली बार कप्तानी कर रहे थे, उससे पहले सिर्फ उन्होंने मुझे लग रहा है इस मैच में एक मैच में कप्तानी की थी, सिर्फ एक मैच में, तो वो सीधे वहां पे कप्तानी का जिम्मेदारी मिल जाना। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं वेरिएशन आपके जो टॉप टॉप परफॉर्मर्स हैं वो है सुनील नारायण, आंद्रे रसल, उनका फॉर्म में ना होना, तो एक प्रेशर बहुत बिल्टअप हो जाता है नए कप्तान के ऊपर। बिल्कुल, कई चीजें मैटर करती है, सपोर्ट करता है टीम को कि अगर प्लेयर्स कंफर्ट जोन में है, प्लेयर्स फॉर्म में है, तो एक नया कप्तान भी टीम को आगे लेके जा सकता है। लेकिन टफ टाइम तब आ जाता है, जैसे गिल के लिए मैं बोलूंगा टफ टाइम है। बिल्कुल है। शुभम गिल को अपने कैसे कप्तानी दी, और वो जो भी कप्तानी कोई प्लान अनप्लान कप्तानी थी कि हार्दिक पांड्या चले गए, उनको कप्तानी दी गई। अब वो जिम्मेदारी वो ज्यादा अपने कंधों पर लेंगे तो उनकी बैटिंग पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बैटिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर फ्यूचर में आपको पता है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और और भारतीय फैंस किस तरह से जैसा ऑक्शन गया है, आप खुद देखिए कि मुझे लग रहा है कि सारा प्रेशर जीटी शुभमन पे दे देना चाह रहे हैं कि जो है इनके साथ खेल लो, आगे देखा जाएगा, आगे मेगा ऑक्शन में देखना है क्या करते हैं। बिल्कुल नहीं, टेस्ट होने वाला है शुभमन गिल का कि भाई अगर आपको भारत का कप्तान बनना है, इस परीक्षा को पास कीजिए, बन जाइए भारत का कप्तान। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आपके साथ वो होगा जो जडेजा के साथ हुआ कि भाई आपको अब कप्तानी के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, कप्तानी बहुत सारे मिलेगी, ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। कप्तानी मिलेगी। बिल्कुल, तो नहीं, आर या पार वाला मोड है। 2025 में वैसे भी उत्कर्ष कई सारे विंडो खुलेंगे, हर टीम के लिए खुलेगा। अब तो एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है कि चलो भैया अब खिलाड़ी नहीं, अब हम कप्तानी सिलेक्ट कर लेते हैं। मगर अगर आप धोनी के पास शायद 4-5 साल का टाइम होता और धोनी वैसे कमिटमेंट नहीं होता चेन्नई के साथ, मैं क्या फ्लोक बात कह रहा हूँ, तो शायद कोई दो टीम पे धोनी पे ही बीट कर लेता, धोनी को ही खरीद लेता हूँ। देखिए थाला के फैंस भड़क जाएंगे, आपको बोलना होगा कि 3-4 साल का समय है उनके पास। धोनी के जो नहीं फैंस है, हैं वो मानकर चल रहे हैं कि आईपीएल धोनी खेलते रहेंगे। नहीं आईपीएल बिल्कुल, हालांकि उम्मीद ये कर रहे थे फैंस की शायद वो आखिरी आईपीएल 2023 में हम देखे, लेकिन फिलहाल जैसे डेफिनेटली धोनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ अभी कुछ विंडो उनके पास है, वो खेल सकते हैं और चौके छक्कों की बरसात दिख सकती है। लेकिन यहाँ पैसों की बरसात की अगर हम बात कर ले तो शुभम दुबे 20 लाख बेस प्राइस था, 4 करोड़ 40 लाख। क्या बात है, बहुत शॉकिंग है। मतलब बात वही आ रही है ना रमेश की, पैसे मेरे पास बचे हुए हैं, इन पैसों का वेस्ट हो जाएगा ना, कुछ होना नहीं है, तो चलो इन्वेस्ट करते हैं। और जीटी देखे यहाँ भी रेस में नहीं है, तो जीटी को लेकर जो हम बात कर रहे थे वो तो सही है, लेकिन डीसी और आरआर, और देखिए 7 करोड़ ही है इनके पर्स में, 7 करोड़ 10 लाख रुपए राजस्थान के पर्स में, वहां पर भी ये बिड में लगे हुए 4 करोड़ 60 लाख तक जा चुकी है बिड। तो
मेरे हिसाब से दिल्ली इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी। और अच्छी बात भी ये है कि इस तरह से अनकैप्ड प्लेयर्स आपको आईपीएल में इतनी हिस्ट्री बनाते हुए दिखते हैं। बिल्कुल। देखिए लेफ्ट हैंड प्लेयर है, 21 मैच खेले हैं, 485 रन बनाए हैं, 145 का स्ट्राइक रेट है, 58 इनका बेस्ट है। तो कोई बहुत ज्यादा बूमिंग आंकड़े नहीं है जिन आंकड़ों को देखकर आप कहेंगे कि चलिए भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। लेकिन हाँ, शायद इनकी जो टैलेंट हंट टीम होगी, इन्होंने इनके ऊपर रिसर्च किया होगा। कहीं ना कहीं कई जिस तरह से दफा बिड जा रही है तो ये लग रहा है कि काफी रिसर्च करके आए हैं। और नहीं, कई दफा ये भी होता है ना उत्कर्ष निमेश की आप फॉर्म देखते हैं कि खिलाड़ी पिछले एक फॉर्म साल तो में कुछ कर क्या खास रहा है। नहीं है, आप खुद देखिए 145 का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं है, और स्पेस आपके पास होता लेकिन नहीं जब जिस तरह से। किस्मत मेहरबान होती है ना तो ऐसे ही पैसों की बारिश होती है। पैट कमिंस ने और मिचेल स्टार्क ने सोचा भी नहीं होगा कि वो क्या कर बैठेंगे पार्टी आज। हो गई होगी ऑस्ट्रेलिया में। देखिए मैं तो जब कल ऑक्शन होने वाला था, मेरा जो एनालिसिस था, इतना एनालिसिस नहीं था कि हाईएस्ट बिड हो जाएगी आईपीएल हिस्ट्री की, लेकिन जो सबसे ज्यादा बिड थी वो तीनों प्लेयर्स के पास जाने वाली थी। मेरे लिए शॉकिंग ये था कि ट्रेविस हेड इतने सस्ते में कैसे निकल गए। 10-12 करोड़ मैंने उनका आंका था कि 10-12 करोड़ में कम से कम लेके जाएंगे, लेकिन स्पेस नहीं बन रहा है किसी भी टीम के पास उनको खिलाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा है। इवन मैं भी पर्सनली अगर मैं देखूं तो मैं रचिन को लेकर मैं भी था कि कम से कम इसको 6, 7, 8 करोड़ मिल जाना चाहिए। रचिन इतने कैपेबल खिलाड़ी हैं। बट शायद उन्होंने जो बेस प्राइस अपना सेट किया वो भी काफी लो, 50 लाख। शायद वो उन्होंने लगा कि शायद पहला आईपीएल है, शायद मैं ना बिकूं, एक अंडर कॉन्फिडेंट वो नजर आया। शायद अगर 2 करोड़ रखते तो शायद बिडिंग और ज्यादा हाई होती। बिल्कुल होती, शायद बीट पे ही बिक जाते हैं, वो अलग चीज थी। लेकिन फिलहाल ये देखिए शुभम दुबे 5 करोड़ 60 लाख। इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ भाई ये पर शुभम दिल्ली दुबे। मैदान में है भैया। राजस्थान रॉयल्स भी अब एक्टिव नजर आ रही है। दोनों टीमें चल रहे हैं 18 पे। 7 करोड़ पैसे बचे हैं राजस्थान रॉयल्स के पास, जिसमें से अगर वो 5 करोड़ 60 लाख खर्च कर देंगे तो फिर शायद मुझे लगता है कि उनको अगले 4-5 घंटे बैठ के देखना पड़ेगा ये पूरा आईपीएल बिडिंग ऑक्शन, क्योंकि पैसे होंगे नहीं तो कुछ कर सकते नहीं है फिलहाल। देखिए स्टार्क और कमिंस के बीच शुभम दुबे भी हेडलाइंस बनाएंगे। जिस तरीके से 20 लाख बेस प्राइस का प्लेयर यहाँ तक पहुंच गया है और अभी भी उनके ऊपर इतना डिस्कशन हो रहा है, जरूर इनके ऊपर भाई, इनके अगर टैलेंट हंट टीम ने रिसर्च किया, हमें भी करना पड़ेगा। हर्षल पटेल को भी अगर आप मार्क करो, देखो, उनको भी तो लगता है कि हाँ उन्होंने भी बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला उनको है, क्योंकि उन्हें भी खुद उम्मीद नहीं होगी कि वो अराउंड 11 करोड़ समथिंग लेके चले जाएंगे। उन्हें बहुत लगा क्रिकेट कि खेला नहीं इन्होंने, सिर्फ 20 मुकाबले खेले T20 के, और विदर्भ के प्लेयर हैं, और कुछ तो कुछ जरूर है, ऐसा कुछ बहुत बारीक सा देख लिया है जो इतनी हाईएस्ट बिड लेके जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन एक ये भी ऑप्शन नजर आता है वहां पर, हर टीम चाहती है पर कि लेफ्ट मिडिल हैंड ऑर्डर में कोई बैट्समैन आपके पास बहुत सारे लिस्ट में होंगे, उनके साथ भी आप जा सकते हो। वहां पे सिर्फ इतने कम क्रिकेट खेलने वाले को जिसके पास बहुत बेहतरीन आंकड़े ना हो। जी। और ये शुभम दुबे सोल्ड कितने पे? 5 करोड़ 80। 5 करोड़ 80 लाख पर भैया शुभम दुबे साहब बिके हैं। बेस प्राइस सिर्फ 20 था इनका। 20। ये आईपीएल की ताकत है। ये आईपीएल की ताकत है, ये फ्रेंचाइजी की ताकत है, ये पैसों की ताकत है। और देखिए बिडिंग में यही होता है, मतलब आपको पता नहीं होता है कि हम एज ए फैंस कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारा थिंकिंग और पैटर्न ही अलग होता है। बट सारे प्लेयर्स भी टीवी के सामने आज होते हैं। बिल्कुल, अमूमन वो हर कोई रिपोर्ट कार्ड जैसे हमारा भी अगर रिजल्ट आता था, हम भी सिस्टम के सामने बैठ के दिख रही थी। आप पैसा खर्च करेंगे, देखिए सिर्फ एक 1.3 करोड़ रुपए उनके पर्स में बचा है आरआर के। अब आरआर को बस पता है कि कुछ करना नहीं, बस बैठ के हमें देखना है, कोई बेस प्राइस में खिलाड़ी आया तो 2 प्लेयर हम रख लेंगे जो हमारे काम आएगा। बॉलर्स जो होते हैं जनरली नए बॉलर्स को इसलिए भी पिक किया जाता है, अमूमन फैंस को नहीं इस बात की जानकारी होती है कि बॉलर्स जो होते हैं डोमेस्टिक, वो नेट्स में ना बैट्समैन को बॉल डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस लेवल की बॉलिंग चाहिए आपको नेट्स में खेलने के लिए। तो उसका भी कई फायदा मिलता है, बॉलर्स को भी मिलता है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि खुद भी कहते हैं कि हाँ हम सिर्फ नेट्स में बॉल डाल कर हमने भैया बहुत कुछ सीखा है प्लेयर से, क्योंकि जो आप जिस माइंडसेट से फिर आप खेलते हो, जिस माइंडसेट से आप बॉल डालते हो ना, वो बहुत इंपैक्टफुल होता है। और दूसरा वो बजट में होते हैं, वो भी सबके लिए इजीली अवेलेबल होता है। बहुत ज्यादा नखरे भी नहीं होते, उन्हें पता है कि तुम्हें 20 ओवर डालना है, 20 ओवर डालने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फायदे कई हो जाते हैं। अब सौरभ चौहान जी हैं, 20 लाख बेस प्राइस है इनका, और अभी तक तो कोई बिड नहीं आई है। फ्रेंचाइजी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थे। शुभम दुबे है उस लाख उनकी बल्लेबाजी है कि उस पर बीट किया सके, और उन्होंने अनसोल्ड हो गए हैं। सौरभ चौहान साहब भी अनसोल्ड हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम अगली टीम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम गुजरात की बात कर लिए, चेन्नई की बात हो गई, आरसीबी। मतलब मैं कहूं कि आरसीबी की किस्मत, साउथ अफ्रीका की किस्मत, और अब मैं तो टीम इंडिया का भी नाम ले सकता हूं कि टीम इंडिया की किस्मत भी ऐसी हो चुकी है कि हम मतलब करीब आकर चूक जाते हैं। और प्लेयर्स है, नाम है, खुद विराट कोहली इतना बड़ा नाम, हर चीज ट्राई कर लिया उन लोगों ने, क्रिस गेल को भी बुला लिया, एबी डिविलियर्स की भी बात कर लो, आप जिस खिलाड़ी की बात करना चाहो उनकी बात कर लो, लेकिन फिर भी आरसीबी की किस्मत यू टर्न क्यों नहीं मार पा रही?
देखिए प्लानिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है वहां पे। आज भी जो बिड हुई मेरे हिसाब से ठीक है। आज अल्जारी जोसेफ को लेकर आए, वो पहले मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कहीं ना कहीं आपका रीच टॉपली आपके मुख्य तेज गेंदबाज है, उसके अलावा उनका साथ देने के लिए आपके पास कोई बहुत बेहतरीन प्लेयर्स नहीं है। विजय कुमार व्यास पे आपको डिपेंड होना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग होता है। और हर सीजन में आपके साथ आज से नहीं हो रहा है, 16 सीजन से आप यही करते हुए आ रहे हैं कि आप लगातार अपनी बैटिंग पे डिपेंडेंट है। आज आप भी पूरे सीजन में भी आप फाफ पे, विराट पे और ग्लेन मैक्सवेल पे डिपेंड रहोगे, और वो आपको 200 का स्कोर देंगे, आप 17-18 ओवर रन में वो खर्च करके चले जाएंगे। तो बॉलिंग साइड मुझे लगता है कि पर्सनली बॉलिंग बहुत कमजोर है, और वहां पर मुझे लगता है थोड़े स्मार्ट प्ले की जरूरत है। आप चिन्ना स्वामी में खेलते हैं तो वहां पर आपको चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने जो रन है आपने चेस कर लिए, आपको स्मार्ट गेम यहाँ पर खेलना होगा। याद कीजिए 2016 में जो है उनके लिए वनिंदु, मुझे लग रहा है 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वनिंदु को एसआरएच ने लिया है। याद है आपको 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश का गेम उसी मैदान पर हुआ था। वहां पर आपको एक स्मार्ट कैप्टन चाहिए, स्मार्ट खिलाड़ी कि छोटे रन में वहां पर डिफेंड हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या उस समय कोई बहुत तीर मारने वाले गेंदबाज नहीं थे, लेकिन आपको थोड़ी स्मार्टनेस रखनी होती है। लेकिन मुझे लगता है आरसीबी पावर पैक टीम चाहती है, उसी हिसाब से जाते हैं भाई हर सीजन में कि हमारे 3 बैट्समैन होंगे। इस बार भी उनके वही देखने को मिलेंगे, आरआरआर वही पूरी तरीके से उनकी टीम को ऊपर लेकर जाएंगे। तो मुश्किलें जरूर उनके सामने फिर से इस बार देखने को मिलेंगी, लेकिन आरसीबी के जितने भी फैंस हैं वो जरूर चाहेंगे कि भाई इस साल अल्जारी जोसेफ की हम बात कर लेते हैं। जब हम आरसीबी की बात कर रहे हैं, कितने इंपैक्टफुल साबित होंगे आरसीबी के लिए? देखिए मुश्किल है, हजारी जोसेफ के लिए भी यहाँ पर काफी कठिन परिस्थितियां होने वाली हैं। आप आरसीबी के कैंप में हैं तो वैसे ही आप चाहते हैं कि भाई मार बहुत पड़ने वाली है, आपको पता है शुरुआत से ही आपको कि भाई आसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर उन्हें अपना नाम बनाना है, आरसीबी को कब तक पहुंचाना है, तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा। इवन अनिमेश, हमने ये भी देखा कि इस बार जो नए रूल्स लाए गए हैं कि एक ओवर में आप 2 बाउंसर अलाउ कर सकते हैं। खास तौर पे जो बॉलर्स की बात मैंने जिनसे की पर्सनली, उन्होंने कहा कि डेथ ओवर में भैया हमें बहुत फायदा इसका मिलता है कि हम स्लोअर बाउंसर भी यूज कर सकते हैं ताकि प्लेयर्स को हम थर्ड मैन पे या फिर हम शॉट पे कवर आउट कर सकें। तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये कहीं ना कहीं जो बॉलर्स हैं उनके लिए एडवांटेज लेकर आया है। बिल्कुल, थोड़ा सा कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट वैसे भी थोड़ा सा अलाइंड होता है बैटर्स की तरफ, वहां पर बहुत सारा स्पेस होता नहीं है, फिर भी खोजने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं बॉलर्स, और स्पिनर्स का पावर प्ले में दिखना ये T20 की ही खोज है। और इसीलिए कहीं ना कहीं दिखता है कि अगर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्पेस मिलता है बॉलर्स को, तो वो कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए जो एक क्लैश होता है कहीं ना कहीं बैटर अलाइंड नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बहुत वेरिएशन, आप कितना भी वेरिएशन ट्राई कर लो कहीं कहीं डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। फिर क्राउड भी कहीं ना कहीं बैटर सपोर्टेड हो जाता है, तो ये मुश्किल होगा। और बैटर्स के लिए भी जब आपको 2 बाउंसर लास्ट में देखने को मिलेगी, अगर आप चेस कर रहे हो, आपको 12-13 रन चाहिए, वहां पर बॉलर के पास 2 बाउंसर डालने का स्पेस है, तो उसके पास भी एक कॉन्फिडेंट रहेगा वो कि किस तरह से ओवर को निकाल सकता है वो। यानी कहा जाए कि बल्लेबाजों के लिए सिर्फ नहीं छोड़ा गया है कि भैया सिर्फ बल्लेबाज आएंगे, चौके छक्के लगाएंगे और जीत के चले जाएंगे। यहाँ पर एमएस धोनी साहब के लिए भी चैलेंज दिया गया है कि आपको अगर 30 रन मारने हैं या 20 रन मार रहे हैं तो 2 बाउंसर तो खेलने पड़ेंगे आपको। अब वो अलग बात है, वो तीसरा बाउंसर के पैर सूर्य कुमार यादव होते तो उनका स्टाइल अलग है खेलने के लिए, धोनी भाई का स्टाइल अपना खेलने के लिए अलग है। लेकिन अब हम थोड़ा सा देख लें, बिडिंग पे चले जाए। चेन्नई एक्टिव नजर आ रही है, गुजरात एक्टिव नजर आ रही है समीर रिजवी पे। ये भाई 2 करोड़ 3 करोड़ 20 लाख बेस प्राइस है इनका। उत्कर्ष अनिमेश देखिए, और गुजरात और सडनली चेन्नई में जान सी एक आ गई है। गुजरात के सीईओ ने अभी हाल में ही एक इशारा किया, जब वो बिडिंग चल रही थी, इन्होंने इशारा, इनका इशारा कहता था कि ले लो। इन्होंने जिस तरीके से कैजुअली इशारा किया कि ठीक है भाई चलने देते हैं, बहुत पैसा पड़ा हुआ है, ले लेते हैं खिलाड़ी, जरूर इनकी भी रिसर्च टीम में ही रहे होंगे, तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बिडिंग यहाँ पर 20 साल के युवा खिलाड़ी हैं, 3 करोड़ 20 लाख तक ये बिड जा चुकी है अभी। ये यंगस्टर्स के लिए, खासतौर पर जो इंडियन हमारे खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो बहुत पब्लिक फिगर में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग दिलीप ट्रॉफी हो गया या फिर जो हमारे घरेलू टूर्नामेंट्स होते हैं उसको नहीं देखते हैं, बहुत जो फैंस फॉलो नहीं करते। लेकिन ये सब क्रिकेटर लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट देते हैं। एक टीम इंडिया जो हम बात करते हैं ना, आज की तारीख में देख लो, टेस्ट के लिए अलग टीम हमारे पास है, ओडीआई के लिए अलग टीम है, T20 के लिए अलग टीम है, कप्तान भी हमारे पास अलग अलग है। ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज आईपीएल का भी रहा है कि हमारे पास एक बेंच स्ट्रेंथ रेडी हो चुका है। बिल्कुल, हमारे पास आज के तारीख में आपने सही कहा, 3 टीमें अलग अलग हैं। T20 के अलग स्पेशलिस्ट हमने प्लेयर बना रखे हैं, वनडे के अलग, और टेस्ट के हमारे जो रेगुलर प्लेयर वो खेलते हुए नजर आते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी T20 में होता है। T20 में आईपीएल आप देखेंगे यहाँ पर खेला जाएगा, और इसके बाद सीधा आपके पास दरवाजा होता है भारतीय टीम में जाने का, क्योंकि T20 में आप देखते हैं आमतौर पर हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलते हैं। आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जडेजा, बुमराह आपको जल्दी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। टीम इंडिया पर जाने का सबसे आसान तरीका होता है आप आईपीएल में परफॉर्म कीजिए, इंडिया की बी टीम जहां जो खेलने जाएगी वहां पर आपका सिलेक्शन
हो जाएगा। चलिए, शुभम दुबे का रिकॉर्ड टूट चुका है। समीर रिजवी साहब 6 करोड़ में पहुंच चुके हैं। 580 में हो गए थे, 6 करोड़ पे जा चुके हैं। यूपी के खिलाड़ी हैं, स्ट्राइक रेट ठीक है, राइट आर्म बैटिंग करते हैं। नहीं, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो लग रहा है कि समीर रिजवी के लिए थोड़ा बहुत स्कोप बनता है, क्योंकि 11 मैचेस हैं, 295 रन हैं, और स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो 135 का है, जो कि T20 के लिए एक अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाता है कि हाँ बिल्कुल ये खिलाड़ी, और बेस्ट 75 नॉट आउट, 75 रन का उनका स्कोर भी रहा है, बेस्ट नॉट आउट रहा है। 20 लाख के बेस प्राइस के साथ 20 साल का युवा खिलाड़ी बिल्कुल इस मैदान में उतरा था, अगर 6 करोड़ लेके जा रहा है और 6 करोड़ 20 अच्छा, लाख तक भी मजेदार पहुंच बात ये देखिए कि चेन्नई के पास 11 करोड़ 60 लाख है, 6 करोड़ 7 लाख, चलिए 6 करोड़ 7 करोड़ तक चेन्नई ने खर्च कर दिया। चेन्नई रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या है समीर रिजवी साहब? मतलब धोनी ने इनको पे नजर डाली हुई है, धोनी की नजर है इनके ऊपर, साफ क्लियर मैसेज है सिलेक्टर्स को कि ये लड़का जो है, आज इस पे आप 7 करोड़ 8 करोड़ खर्च करना चाह रहे हैं, ये आने वाले सीजन में, आने वाले सालों में ये भारतीय टीम का एक सुनहरा चेहरा, अच्छा भविष्य बनेगा। बिल्कुल मेरठ से आते हैं और यूपी रणजी खेल भी चुके हैं 20 साल में ही। तो बड़ी यहाँ बात है, मतलब 20 साल में रणजी खेलना एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। काफी यंगस्टर है, 20 साल की उम्र है, काफी पोटेंशियल है। 7 करोड़ 60 लाख, 17 साल की उम्र में डेब्यू भी कर लिया था, 2020 में डेब्यू है इनका। बिल्कुल अच्छा। मतलब अब देखिए लास्ट में है 7 करोड़ 60 लाख में कौन सी टीम? क्या चेन्नई? चेन्नई 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 20 लाख रुपए इनका बेस प्राइस था। समीर रिजवी साहब है, यूपी मेरठ के खिलाड़ी हैं, 11 मैच T20 का ओवरऑल एक्सपीरियंस उनके पास है, बैटिंग स्ट्राइक रेट काफी अच्छा उनका है। 7 करोड़ 60 लाख और ये गए 8 करोड़। चेन्नई के पास अब 3 करोड़ 60 लाख एक्स्ट्रा है, अगर चेन्नई इसको बाय कर लेती है तो। बिल्कुल समीर रिजवी जबरदस्त है साहब, भाई। हम अगर कैलकुलेशन करने भी जाएं तो 20 लाख से कितने गुना यहाँ पहुंच चुके हैं ये 8 करोड़ में, शायद उन्हें भी बिलीव नहीं होगा। टीवी कहते भी पर तो है ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ बिल्कुल के देता है, पूरा तो परिवार यूं ही टीवी नहीं के कहा जाता है। पूरा परिवार पूरा मेरा टीवी के सामने बैठा होगा कि चलिए भाई ढोल ताशे बजना आज शुरू हो गए होंगे अभी से घर के बिल्कुल सामने। मिठाइयाँ ऑर्डर कर दी गई होंगी भाई। नहीं, कई लोग तो मजाक में मुझे ट्वीट भी कर रहे थे कि भैया जितने की बिडिंग आप लोग कर रहे हो उतने तो कई कंट्रीज के नाम नहीं लूंगा, कई कंट्रीज की इकोनॉमी हिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल 8 करोड़ 40 लाख चेन्नई। मतलब रिजवी पे साफ तौर पे ये कहूं कि माही की नजर है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पोटेंशियल उनके अंदर है, जिस तरह का खेला है, और इवन माही जो खेले भी हैं, बहुत लोग कम जानते हैं, माही झारखंड से खेले, लेकिन उनका जो बहुत टच रहा है वो यूपी के साइड के खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा रहा है उनका अटैचमेंट, और कई मैचेस भी उन्होंने यूपी के अगेंस्ट खेले हैं। तो माही को पता है कि कौन सा खिलाड़ी कितना तगड़ा है। और ये ऑक्शन चेन्नई सुपर किंग्स, समीर रिजवी, ये नाम वो नाम जो आपको भी सरप्राइज कर सकता है और हमें भी सरप्राइज किया है। समीर रिजवी 8 करोड़ 40 लाख चेन्नई सुपर किंग्स में चले गए हैं। चेन्नई के पास अब बेस प्राइस के लिए पैसे बचे हुए हैं। तो समीर रिजवी 20 साल के युवा खिलाड़ी, चेन्नई सुपर किंग्स, और चेन्नई की अगर आज आप बिडिंग देखो तो रचिन को भी लेकर गए, शार्दुल ठाकुर को भी लेकर गए, समीर रिजवी को भी लेकर गए। तो ये एक टीम जो है फ्यूचर टीम रेडी करती है, उसे पता है हमें 2024 नहीं, हमें 26 27 28 के लिए सोचना है, और वैसे पोटेंशियल खिलाड़ी रेडी करने हैं। फुल्ली प्रिपेयर है। आप ऑक्शन में भी देखिए पूरी तरीके से तैयारी करके आए, रिसर्च करके आए कि भाई इस मतलब मुझे खिलाड़ी ये को हमें खिलाड़ी चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल आप लगा लीजिए हमसे बिडिंग, आप कर लीजिए जितना आपको लगाना है, ये खिलाड़ी चाहिए। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा यहाँ पर प्राइस मिल गया। शायद एक्सपेक्ट ये भी करके नहीं आए होंगे कि मुझे इतनी बिडिंग करनी पड़ जाएगी, लेकिन ये कहते हैं कि भाई किस्मत यहाँ पर मेहरबान है इनके ऊपर आज। बिल्कुल, चेन्नई पे किस्मत तो वैसे ही मेहरबान है, आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीमों में से एक है, उसके बाद मुंबई इंडियंस की हम बात करते हैं, लेकिन एक टीम है राजस्थान रॉयल्स। पहला आईपीएल, शेन वॉर्न, अब वो नहीं रहे शेन वॉर्न हमारे साथ, लेकिन जब वो पहला मैच हुआ, पहला सीजन हुआ, और उसके बाद लगा कि राजस्थान रॉयल्स तक इम्पैक्ट छोड़ेगी, लेकिन उसके बाद राजस्थान रॉयल्स कभी वो टर्न, वो दौर लौट कर नहीं आया जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, पहला आईपीएल 2008 में उस देखा समय था। तो देखिए 2008 में तो सबसे बड़ी अंडरडॉग टीम कही जाती थी। बिल्कुल, कि एक तो शेन अंडरडॉग वॉर्न टीम है कप्तान, वो, लोग मजाक कर रहे थे शेन वॉर्न कप्तानी में क्या हो इकलौते जाएगा। विदेशी कप्तान थे उस सीजन में। बिल्कुल, अंडरडॉग टीम ने किस तरह से मैच को पलटा था, किस तरह से पूरा गेम पलटा था। ये मैं 2-3 टीमें जो ऐसी हैं, पंजाब की टीम है, राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात मैं करूं, मैं आरसीबी का भी नाम इसमें लेना चाहूंगा, मैं हैदराबाद का भी नाम लेना चाहूंगा। कहीं ना कहीं क्या कुछ गेम प्लानिंग ऐसी है, या फिर थॉट कुछ ऐसा प्रोसेस में जा रहा है कि एक पावरफुल इंपैक्टफुल टीम नहीं रेडी हो पा रही है जो कि ग्राउंड पर आकर परफॉर्म करे वो खिलाड़ी के साथ। डिसीजन मेकिंग में भी फर्क पड़ता है। देखिए आप टीम डिसीजन वाइज क्या देखिए है। हर टीम के साथ इन चारों में से अलग अलग दिक्कतें हैं। एसआरएच का कहीं ना कहीं ग्रास रूट से वो काम नहीं करना चाहते। हर बार बिड में आप प्लेयर्स लेते हैं, उसको ट्राई करते हैं, फिर अगले साल फिर से चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं।
लेकिन इस तरह से आप लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ऐसा तो नहीं आपको सिर्फ आईपीएल का एक सीजन खेलना है, आप एक सीजन में अच्छा कर सकते हो, उसके सीजन के बाद आप ट्रॉफी के लिए जा सकते हो, लेकिन एसआरएच के साथ ये मुश्किल है कि कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन बनाने में बिलीव ही नहीं रखते, हर साल चीजों को चेंज करते रहना। और पंजाब और एसआरएच ने जितने कप्तान बदले, शायद ही किसी टीम ने अपने पूरे आईपीएल सीजन में इतने 16 सीजन में कप्तान बदले होंगे, और कप्तान का हर सीजन में बदलना कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल खड़ी करता है। और आरसीबी के साथ उनके बॉलर्स हमेशा दिक्कत करते रहे हैं। ये जो बात आपने कप्तान वाली की, शायद यही इसी का बेनिफिट हमें मिला। चेन्नई को देखो आप, या चेन्नई फिर को, मुंबई और इंडियंस देख लीजिए। बिल्कुल, आप इतने लंबे 10 केकेआर साल भी रहे, जब तक गौतम गंभीर रहे तो केकेआर ने भी एक अच्छा खासा एक लंबे impact समय छोड़ा। के जो कप्तानी, अच्छा परफॉर्म करेगा आप उसे जाने नहीं दे सकते। हैदराबाद ने विलियमसन को जाने दिया, हैदराबाद ने वार्नर को जाने दिया, दूसरी टीमों के लिए वो जाकर क्योंकि परफॉर्म कर और रहे हैं। विलियमसन ने उनके लिए बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक बहुत बहुत अच्छी नींव तैयार करके दी थी। आप पिछले सीजन भूल जाते, वहां से एक नई, कह सकते हैं, इमारत तैयार कर सकते थे, पर वो नाकाम रही वो टीम। कहीं ना कहीं केन विलियमसन से जो खबरें थी, फ्रेंच आईडी के साथ उनकी कहीं ना कहीं एक अच्छी पटरी नहीं खा रही थी, जो अनबन थी, और उसके कारण ही वो जीटी में चले गए। और कोविड आया था, आईपीएल सीजन बीच में छूट गया था, तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटपट हुई थी उसके बाद। तो ये देखता है अब मुंबई से फ्रेंचाइजी अपने हर प्लेयर को किस तरह से सपोर्ट करती है, तो ये भी बहुत मैटर करता है खिलाड़ियों के लिए भी, और फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों के बीच अगर कनेक्शन वो नहीं बनेगा अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ी ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। सरफराज खान, सरफराज खान हर साल खरीदे जाते हैं, फिर रिलीज कर दिए जाते हैं, और मैच तो उनको मिलते नहीं है। पिछले साल डीसी ने खरीदा था, ऋषभ पंत एब्सेंट थे वहां पर, लग तो यही रहा था कि पूरा मौका सीजन मिलना खेले, चाहिए, मिल जाएगा। लग यही रहा था पूरा सीजन खेलेंगे, बहुत बेहतरीन डोमेस्टिक फॉर्म लेकर आए थे, लेकिन एक दो मैच मिले, वहां कुछ खास कमाल कर नहीं सके। फिर अभिषेक पोरेल आ गए इस पूरे सिनेरियो में, जहां अभिषेक पोरेल कहीं भी नहीं थे, वो अभिषेक पोरेल आ गए। फिर गांगुली की कोचिंग में अभिषेक पोरेल का आना सरफराज के लिए बहुत आप सवाल कह खड़े रहे थे कर गया कि था। उन्हें बार बार खरीदा जाता और रिलीज कर दिया जाता, तो उसमें फ्रेंचाइजी ने इन पे बोली लगाई ही नहीं, पहले बहुत बड़ी रिलीज बात कर है। दिया देखिए, सरफराज खान, लेकिन टैलेंट अच्छा है। भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा इनका नाम है। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देखें, मतलब ट्विटर पर जो ट्रेंड चलते रहते हैं, सरफराज को भाई टीम इंडिया में जगह दो, सरफराज को आईपीएल में जगह नहीं दी जा रही है। आप टीम इंडिया तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं। कई सवाल उन्होंने खुद खड़े किए कि मेरी सेहत को लेके, मेरे जो फिटनेस है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो इन्होंने मैंने इनका इंटरव्यू पढ़ा था, उन्होंने 3 बजे कहा, मैं रात सुबह के 3 बजे चला जाता हूँ अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अपना पूरा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कह रहे मेरा बॉडी का ऐसा बनावट ही ऐसी कि मैं इसका बिल्कुल स्लिम ट्रिम बॉडी लेकर नहीं जा सकता। तो लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं जब सिलेक्शन की बात आती है तो उनकी फिटनेस में सवाल हमेशा उठते रहे। नहीं, बिल्कुल ये चीज भी रहा है कई बार। कई खिलाड़ी, इवन सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि सरफराज का टीम में ना होना ये चौंकाने वाला फैसला लगता है। और यहाँ उन्होंने पर तो बहुत चौंकाने वाला बयान दिया था कि अगर आप फिटनेस का, अगर आपके मापदंड यही है तो आप फैशन मॉडल्स को बुला लीजिए स्क्वाड में। नहीं, एक ट्रेंड चेंज हो गया है अब। इवन फॉरेन खिलाड़ी को भी देखो आप, या फिर इंडियन प्लेयर्स को भी देखो, अब आपका मतलब जो एक बॉलीवुड ट्रेंड था ना, वो टीम इंडिया में नजर आता है। 6 पैक 4 पैक का कैप्स होना चाहिए। विराट कोहली सरफराज बहुत एक हद तक विकेट जिम्मेदार कीपिंग है। ऑप्शन है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा एक फिटनेस को सवाल लेकर ज्यादा उठ जाते हैं कि इस तरह की फिटनेस के साथ आप विकेट कीपिंग ऑप्शन के रूप में कैसे टीम के साथ जुड़ फ्लेक्सिबल रहे हो हैं। पाएंगे नहीं हो पाएंगे अब बहुत, क्योंकि देखिए बॉडी और माइंड दोनों अलग अलग काम करते हैं, और वो एक साथ काम करे। और और सरफराज का तो देखिए फॉर्म भी अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वही पृथ्वी शॉ वाला की डिसिप्लिन को लेकर भी उनके भी कुछ सवाल उठते रहे। तो वो कुछ कह सकते हैं कि वो भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेकर उनके सिलेक्शन पर हमेशा बिल्कुल। सवाल उठते रहते देखिए, हैं। बीसीसीआई आपका डिसिप्लिन जरूर देखता है कि आप ऑफ द फील्ड कैसे हैं, टीम में हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। पृथ्वी शॉ का आपने नाम लिया, बहुत बड़ा फैक्टर उनका डिसिप्लिन है, जो टीम इंडिया के साथ वो नहीं है। टीम से बाहर और हुए आईपीएल में सरफराज भी। की बयानबाजी कहीं ना कहीं उनको खुद बैकफायर कर जाती है। नहीं, देखिए जनरली नए प्लेयर्स हो, चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, ये बड़े खिलाड़ी को सीखना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहो। आपका काम खेलना है, खेल लो एक बार, उसके बाद काम क्या है आपके पास? जब आप 30 35 36 साल के हो जाओगे तो फिर आपको सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहना है। तो मेरा यही कहना होता है कि नए प्लेयर्स जो होते हैं ना, उनके अंदर, हाँ मैं इनकी बात जरूर करना चाहूंगा, कुलकर्णी, अश्विन ईशांत शर्मा कुलकर्णी। अनसोल्ड रहे, कश्मीर के प्लेयर, पिछली बार खरीदा था एसआरएच ने उनको, रिलीज के इस बार बिड नहीं किया उनके लिए। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा था, क्योंकि इनके बारे में लोग सुबह से मैं पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि ये कश्मीर के खिलाड़ी हैं, इन्हें क्या मौका मिलेगा, क्या कोई फ्रेंचाइजी इनको ऊपर नजर डालेगी? तो लेट्स वॉच की क्या हो रहा है इनके ऊपर भी बिडिंग को लेकर। अच्छा, दिल्ली और मुंबई के पास एक चीज का बेनिफिट मैं हमेशा देखता हूँ कि इनके पास थिंक टैंक बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो इतने ज्यादा शब्द की जरूरत भी ना पर हो। मुंबई का थिंक टैंक और दिल्ली के थिंक टैंक में बहुत बड़ा अंतर है। अभी उत्कर्ष से सवाल खड़ा कर चुके हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल उनके थिंक टैंक में बैठे हुए, रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली। तो कहीं ना कहीं उनका जो अभी सीजन जा रहा है, जिस तरह से पिछला सीजन में गया, तो थिंक टैंक पे भी सवाल उठते ही हैं। और किस तरह से रिकी पॉन्टिंग का बीच में कई बयान, कई खबरें ऐसी चली कि वो छोड़ना चाहते हैं डीसी। तो
ये सवाल खड़े करते हैं। आप हर चीज पर्दे के सामने नहीं आती, कुछ चीजें पर्दे के पीछे भी होती है। पर इस बार तो ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री छोड़ के यहाँ पर आए रिकी पॉन्टिंग, आप समझ लीजिए प्रेफरेंस उन्होंने कमेंट्री नहीं दी है, बोला कि नहीं भाई मैं यहाँ पर जाऊंगा, ऑक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इस बार ऋषभ पंत भी वापस आएंगे दिल्ली के लिए। ऋषभ पंत क्या कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं? उनकी कप्तानी में इस बार क्या दिल्ली कुछ नया कर सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि खुद ऋषभ पंत, क्योंकि उन्हें पता है कि एक वर्ल्ड कप उनके करियर का एक सबसे बड़ा मौका वर्ल्ड कप था, वो होते तो नो डाउट टीम इंडिया को बेनिफिट भी होता और शायद ईशान के लिए जगह भी नहीं बनती। वो खेलते ही खेलते हैं एज अ विकेट कीपर। लेकिन अब पहले तो खुद अपने को साबित करना होगा पंत को, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, कप्तानी का दबाव। देखिए आप एक जिम में होते हैं, एक फिटनेस सेंटर पे होते हैं, वो अलग चीज होती है। लेकिन जो जिसके लिए आपको जाना जाता है, अगर आप वो चीज आप ग्राउंड पे आके करते हो, वो फिटनेस, वो मेंटल टफनेस, वो अलग चीज हो जाती है। आईपीएल आसान टूर्नामेंट नहीं है, सौरभ नहीं, गांगुली खुद कह चुके हैं वर्ल्ड कप से ज्यादा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। आपके पास 1-2-10 मैच नहीं है ना, आपको 14-14 मैचेस खेलने हैं, कैलकुलेशन करना है आपको चीजों का कि मैं पहला मैच अगर बीट किया, सेकंड मैच में क्या करना है पिच के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि ये इंडिया में जितने भी स्टेडियम्स है सबकी पिच की अपनी अपनी खासियत है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है, तो वो भी कैलकुलेशन रखना होता है। लेकिन आपको पता है कि मुझे कम से कम मेरे 7 मैच तो मुझे अपने दिल्ली में खेलने हैं, और ये हर टीम के साथ, ये खासतौर पे जो आप अनिमेश बात भी कह रहे थे ना कुछ देर पहले की, पिच बहुत मैटर ये इसलिए करता है कि आपको अगर आपके 7 मैच आपको पता है, चेन्नई चेपॉक में 7 मैच खेलेगी तो उसे पता है कि मुझे ये 7 में से कम 6 मैच मुझे जीतने हैं। जीतने वहां पे आप प्लेइंग 11 पे भी डिपेंड करते हैं, स्पिनर्स को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, और यही आरसीबी कहीं ना कहीं मिस करती है। आपने ठीक है चिन्ना स्वामी बैटर्स पैराडाइज है, पर इतना भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो चेन्नई वर्ल्ड कप जब टीम इंडिया अभी भी जो स्पिनर्स नहीं बिके वो मेरे लिए इसीलिए शॉकिंग था कि इंडियन पिचेस स्पिनर्स फ्रेंडली हैं, वहां पर आप पेसर्स पे इतना ज्यादा दांव लगा रहे हैं। शाहरुख खान को लेकर बहुत सारी चर्चाएं थी कि शाहरुख खान को लेकर इससे पहले ऋतिक शौकीन, जिनको मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया, बहुत की प्लेयर साबित रहे थे, कई सीजन्स तक उन्होंने उनका साथ दिया, लेकिन उनको रिलीज कर दिया, उसके बाद अनसोल्ड चले गए। बिल्कुल, शाहरुख खान का नंबर आ गया, देखते हैं शाहरुख खान किसके साथ जाते हैं। शाहरुख के लिए पंजाब फिर से बिड कर रही है, और मुझे यही लगा था कि रिलीज करके फिर से बिड करना चाहेंगे ये इनके लिए। आशीष नेहरा कुछ ना कुछ इनपुट हर समय देते रहते हैं, क्योंकि टैक्टिक्स ये होगी, क्योंकि पिछली बार काफी ज्यादा पैसे खर्च करके शाहरुख खान को खरीद लिया था, लेकिन उतने कह सकते हैं कि उतना अच्छा ऑप्शन उनके लिए साबित नहीं हुए। तो यहाँ आज ये फिर से कोशिश करना चाहेंगे कि फिर से थोड़े कम पैसे में उनको टीम में शामिल किया जाए। बिल्कुल, शाहरुख खान पर नजरें टिकी हुई हैं, इस वक्त बिडिंग चल रही है उनके ऊपर। देखिए गुजरात टाइटंस बीच में आ ज्यादा गए, जरूरत है एक मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आशीष नेहरा कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं शाहरुख खान को मैं कैच कर लेना चाहिए, और वो उनका नेचर ही ऐसा है। ग्राउंड पर भी आप देखेंगे तो नारियल पानी लेकर घूमते ही रहते हैं फील्ड पर। तो आशीष नेहरा हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं गेम में। एक बड़े प्लेयर्स ऐसे ही बनते हैं, आप अब चाहे ग्राउंड पे हो या ग्राउंड के बाहर हो, अगर आप 24 घंटे आपके माइंड में चल रहा है ना। संजय बांगर को मैं इसलिए पर्सनली बोलता हूँ क्योंकि संजय बांगर से जब भी आप मिलो ना, वो उनके पास जब भी उनसे कुछ बात करो आप, वो कुछ ना कुछ नया इनपुट आपको जरूर देंगे, और जिस खिलाड़ी के पास हर समय कुछ नया इनपुट रहेगा ना, वो कुछ ना कुछ अपनी टीम के लिए स्पेशल करेगा। वो चाहे आप एज ए कैप्टन हो, आप एज ए कोच हो, या आप थिंक टैंक में बैठे हुए हो टीम के, आप बता रहे हो कि टीम प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, आप क्या दे सकते हो, हर साल कुछ नया दो, तो नई चीजें होंगी, नए इंप्लीमेंटेशन करोगे। 2 महीने के आईपीएल के अलावा 10 महीने आप क्या कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो उसमें, अपने खिलाड़ियों को पे नजर कैसे रखे हुए हो। सपोज दैट मैं आया, आईपीएल खेला, मैं चला गया, मुझे अगला सीजन खेलना है, मुझे 2 साल की बिडिंग हो चुकी है, तो मेरे 2 साल पर वो आईपीएल फ्रेंचाइजी नजर रखती है, वो कितने मैच खेल रहा है, कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या वो इस प्लेइंग लेवल में जगह बना पाएगा, खेल पाएंगे। की प्लेयर्स पे नजरें रखती हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। तो ये कई चीजें होती है जो ये ऑफ द कैमरा होता है, लोगों को पता नहीं चलता है। फिर उसके बाद कैंप्स भी होते रहते हैं, जो प्लेयर्स डोमेस्टिक के फ्री हैं, कैंप्स में आ जाओ, उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, बैट्समैन जो है उनकी फिटनेस कैसी है, तो ये चीजें कई चीजें इंपैक्ट देती हैं। तो चलिए, शाहरुख खान 3 करोड़ 40 लाख पहुंच गए, 40 लाख इनकी बेस प्राइस रखी गई थी, 33 मैच खेले हैं, 426 रन बनाए हैं, 134.8 यानी 135 का स्ट्राइक रेट है, बेस्ट इनका 47 रन है, 4 करोड़ करंट बीट है, 4 करोड़। समीर रिजवी साहब 6 करोड़, शुभम भाई साहब 5 करोड़ 80 लाख, ये पहुंच चुके हैं शाहरुख खान 4 करोड़। पंजाब के खेमे में कुछ कंफ्यूजन दिख रहा है भाई। पंजाब चाहती तो है इनकी वापसी, लेकिन जीटी जिस तरह से उनके लिए मुकाबला पेश कर रही है, बड़ा मुश्किल होगा। और गुजरात थोड़े से मतलब अटैकिंग नजर आ रहा है इस बिड के मामले में। आशीष नेहरा शायद कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं ले लीजिए आप। कह रहे हैं कि भाई बहुत पैसे, क्या करना है इसका, खर्च करो सारा खर्च करो।
देखिए मोस्टली अमूमन लोग ऑक्शन में ये देखते हैं कि अरे आपने ये टीम ले लिया, आपने वो ले लिया, लेकिन आपको सिंपल ये देखना है कि हर टीम अपना प्लेइंग 11 सुपर सब एक 12 खिलाड़ी में मान के चलता हूँ, 12 खिलाड़ी का पुल रेडी करके चलती है कि ये 12 खिलाड़ी मेरे 14 में से 12 मैच तो खेलेंगे 14 खेल लिए वेल एंड गुड। बिल्कुल। और वही टीम मैक्सिमम सक्सेसफुल होती है जिसकी पूरी टीम कंटिन्यू पहले मैच से आखिरी मैच तक साथ चल रही होती है। यही फायदा होता है। और इसके बाद जो टीम्स में प्लेयर्स एड ऑन किए जाते हैं, उनका एड ऑन का इम्पैक्ट क्या है, क्यों 17-21 का स्क्वाड रखा जाता है? वो इसलिए कि अगर सपोज दैट इस मैच में अगर रविंद्र जडेजा नहीं खेल पाए तो कौन, तो क्या मैं रचिन पर दाव लगा सकता हूँ? हाँ, लगा सकते हैं। तो रचिन पे आप लेके चलते हो। तो बैकअप खिलाड़ी इसलिए रखे जाते हैं, फ्रेंचाइजी इसलिए बीट लगाती है कि प्लेइंग 11 के बाद उन्हें अगले साल भी तो आईपीएल खेलना है। आईपीएल का ये 16वां सीजन होगा। तो नेहरा साहब पानी पी रहे हैं और प्रीति जिंटा को पानी पिलवा रहे हैं। ये दोनों काम कर रहे हैं आशीष नेहरा जी। 6 करोड़ 20 लाख, 40 लाख इनका शाहरुख खान का बीट था और 6 करोड़ 20 लाख पर पहुंच चुके हैं शाहरुख खान। देखिए पंजाब की प्लानिंग थी इनको लेने की, लेकिन वहां पर गुजरात ने जो एंट्री कर दी है तो कुछ कैलकुलेशन जरूर वहां पर पंजाब का गड़बड़ा गया है। एक सेकंड उन्होंने टाइम मांगा कि भाई समय दीजिए हमें। लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बिडिंग होता होगा उत्कर्ष, जब आप बैठते हैं और करोड़ों रुपए आपके पास होते हैं और आप बीट कर रहे होते हैं किस खिलाड़ी पे कितना लगाने हैं, क्या करने हैं। वो टेंशन जो अभी हम देख रहे हैं ना, मतलब प्लेयर्स पे टेंशन तो हम देखते हैं मोमेंट ग्राउंड पे जो दिखता है, लेकिन जो ये थिंक टैंक है, जो ऑनर्स के साथ होते हैं, उनकी जो टीम बनाती है, कोर टीम होती है, उन पे बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि वो बात उन पे ही आती है कि भाई क्या प्लानिंग की आपने साल भर, आपने कहा मैंने इस खिलाड़ी पैसे लगाने, मैंने लगा दिए और इस खिलाड़ी का इनपुट ये है, जिम्मेदारी कौन लेगा? वो सवाल आ जाता है एंड में, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए, आपकी गलती किसकी प्लेयर से तो बाद में बात होगी ना। प्लेयर्स तो चलो ठीक है, नहीं अगली बार हम नहीं लेंगे, बीडिंग में नहीं उनको करेंगे या फिर हम रिलीज कर देंगे उनको इस बार अपने स्क्वाड से। लेकिन जो टीम होती है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है सिलेक्शन के बाद भी कि भैया ऐसे तो रन बनाने हैं, आपका रोल ये है, आपको इसलिए कई बार चीजें मन मुताबिक नहीं होती कि आपको इस खिलाड़ी को आपने एक्सपेक्ट किया होगा इतने में ले लेंगे, लेकिन सामने वाला बिड करने लगता है, आप बहुत हाई चले जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे आप देखें शाहरुख खान लगातार ऊपर की तरफ जाते हुए। अच्छा, पंजाब के पास देखिए 13 करोड़ है, 13 करोड़ 15 लाख है जी, 31 करोड़ 85 लाख, यानी 32 करोड़ के अराउंड अमाउंट जीटी लेके बैठी। पूरी नई टीम बना सकते हैं ये। नहीं, 2008 आईपीएल देख लो आप, 2008 आईपीएल आपको पिछली पहला बार 9 करोड़ में बिके थे। मैं यही देख रहा था, इतनी देर से यही जानना चाह रहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे 6 से 7 करोड़ के, लेकिन 9 करोड़ में पिछली बार पंजाब ने इनको शामिल किया था। फिर वहीं तक बढ़ने की कोशिश है इनकी। और जो मैंने बोला ना, पंजाब उनको एक फिनिशर की जरूरत है पंजाब, इसलिए वो थोड़ा सा अटैक कर रहे हैं इस पूरी स्क्वाड को लेके कि उन अपने स्क्वाड को बैलेंस करना चाहते हैं, और रिलीज भी इसीलिए कहता है कि फिर से रिटेन कर लेंगे। पंजाब को और थोड़ा सा कम प्राइस में करना चाहते थे। जो टैक्टिक्स होगी मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन जीटी ऐसा नहीं करने दे रहा है ना। जीटी फिर उन्हें 9 करोड़ तक ले जा रहा है। जीटी के पास पार्ट्स बहुत ज्यादा है और वो भी देखिए 6 ही बैटर है उनके पास। नहीं, अगर 7 करोड़ में भी अभी मुझे दिख रहा है कि अगर शाहरुख को वो परचेस कर भी लेती है पंजाब की टीम, तो उनके पास सिर्फ 5 करोड़ बचेंगे जी। तो 5 करोड़ में उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगे, क्योंकि लीजिए भाई पंजाब ने फिर से एक बार बिट कर दिया है। जीटी ने भी जीटी तो बैठी हुई पैसे लेकर। लोड है नहीं लाइफ में। सोचना पंजाब को है। गुजरात बिल्कुल रेडी है भाई कि आप चलिए लगाइए। अच्छा, उधर से शाहरुख अगर बैठ के स्क्रीन पे टीवी मैच देख रहे होंगे, ये बिडिंग देख रहे होंगे, ये वो तो दुआ कर रहे होंगे थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। वीर ज़ारा की याद आ रही होगी, प्रीति जिंटा शाहरुख खान के लिए यहाँ पर दुआ कर रही हैं। क्या प्रीति शाहरुख को अपनी टीम में शामिल कर पाएंगी? अखबार के लिए हेडलाइन अच्छी होगी अगर कर लेंगी तो। हाँ, वो ना प्रीति के वो शाहरुख। बिल्कुल। लेकिन काफी सोच विचार का दौर पंजाब की टीम में जारी। आई होप जीटी। यस, जीटी 7 करोड़ 40 लाख में जीटी ने शाहरुख खान को। पर ये शॉकिंग था कि 9 करोड़ में बिकने के बाद कोई प्लेयर अपने आप अपना बेस प्राइस 40 लाख कर देता है। अमूमन स्मार्ट टैक्टिक्स है कि अनसोल्ड होने से तो अच्छा है। हाँ, बात यही कह रहा हूँ निमेश की, दबाव भी होता है ना यार, नहीं खेलूंगा, आईपीएल बड़ा नाम है। अब रिंकू सिंह ऐसा नाम है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आईपीएल में अगर उन्होंने छक्के नहीं लगाए होते तो आज रिंकू सिंह नहीं बने होते। बिल्कुल। तो हर प्लेयर को पता है कि एक मैच, एक गेम, एक ओवर। पिछले बार पूरे केकेआर के सीजन के ग्लिम्स ही रिंकू सिंह थे। और रिंकू सिंह आज दिख भी रहे हैं, कैपेबल हैं, उस लायक प्लेयर बन चुके हैं। वो इंटरनेशनल दबाव झेल रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, तो ये अच्छी चीज थी। रमनदीप सिंह 20 लाख बेस प्राइस है। एमआई के लिए खेले थे पिछला सीजन। हाँ,
मुंबई इंडियंस के लिए। देखिए, खिलाड़ी को अपने आप को जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई केदार जाधव नहीं होता जिन्होंने अपना प्राइस 2 करोड़ रखा हुआ है। अब तक वो सवालों के घेरे में है कि उन्होंने 2 करोड़ क्या सोच के रखा हुआ है, समझ से परे है भाई, क्योंकि काफी अरसा बीत चुका है भारतीय टीम के लिए खेले हुए केदार पिछली बार जाधव को। आरसीबी में बैकअप प्लान की तरफ है तरीके से आए थे, आधे आईपीएल में कमेंट्री की थी आधे और आधे IPL में आईपीएल के बाद अचानक से खेलने के लिए आ गए थे। लेकिन अपना प्राइस अभी भी 2 करोड़ रखा है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो जाधव जैसा। गट से भैया ये तो। सीएसके में खेल चुके हैं, कॉन्फिडेंस तो बनता है। अच्छा, अमूमन देखा ये जरूर गया है कि T20 में हम जरूर फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, स्पिनर्स जो की रोल है, जब आप डेथ ओवर्स में आते हो तो स्पिनर्स आपके आते हैं विकेट टेकर्स। बहुत ज्यादा टीमों को देखा हूं मैंने इस बार की पेस बॉलर पर ज्यादा दाव लगाए हैं, जबकि स्पिनर्स को थोड़ा अवॉइड है। शॉकिंग था ये, क्योंकि आपके लिए स्पिनर्स, देखिए उत्कर्ष ने भी ये बात कही थी स्टार्टिंग में कि जो आप पिछले 16 सीजन उठा के देख लो, वहां पे हर बार पर्पल कैप होल्डर लगभग लगभग आपके स्पिनर ही रहते हैं। और आपके लिए युजवेंद्र चहल का जितना अच्छा सीजन जाता रहा है, बिल्कुल, और ये सब चीजें दिखाती हैं कि स्पिनर फ्रेंडली रहती हैं इंडियन पिचेस। और आप पावर प्ले में भी यूज करना आपने शुरू कर दिया। ये T20 में फॉर्मेट में कहीं ना कहीं पावर प्ले में स्पिनर को लाना ये आईपीएल की ही देन है। और उसके बाद फिर स्पिनर्स पे दाव ना लगाना। हालांकि इस लिस्ट में बहुत बड़े स्पिनर्स नहीं थे, वनिंदु को लेकर एसआरएच बहुत खुश नजर आई थी। आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हो तो 1.5 करोड़ के बेस प्राइस उन्होंने रखा था, 1.5 करोड़ में एसआरएच ने उनको खरीद लिया। उनको स्पिनर की जरूरत भी थी। हालांकि मुजीब नहीं बिके, और वो मुझे लग रहा है फाइनल राउंड में जाके बिकेंगे जरूर। और मुजीब सबसे अच्छे कंटेंडर है स्पिनर्स की लिस्ट में। वहां पे तबरेज शामसी है, लेकिन तबरेज शामसी थोड़ा इकोनॉमिकल नहीं रहते। नहीं, अचानक ऐसा लगने लगा है कि आईपीएल भारत में नहीं हो रहा है, विदेशी पिचों में हो रहा है कि आप फास्टर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है भाई, एक ओवर में आप 2 बाउंसर डाल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है बहुत कि ऑप्शंस आपके अवेलेबल नहीं स्पिनर है। से कुछ बिल्कुल एक ये भी बात है कि आपके पास बहुत बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए भी ये अभी तक देखने को मिला अगर है। उत्कर्ष आप इस तरह से सोचो कि एक ओवर में 2 बाउंसर डाल रहे हो, आपको 4 ओवर करने होते हैं, यानी 24 गेंद आपको बिल्कुल। डालनी होती है। अब आपके पास 8 बाउंसर है, तो आपको पता है कि यार ये अगर मैं कंट्रोल में बाउंसर मार सकता हूं तो मेरी 8 गेंद तो डॉट निकाल लूंगा मैं। बिल्कुल। उसके बाद की फाइट जो होगी रेस्ट गेंद पे होगी। ठीक है, चलो देखते हैं उसमें कितना आप हिट कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर के लिए एक थोड़ा कंफर्ट जोन तो आया ही होगा। यहाँ मेरे पास 2 बाउंसर है, मैं 2 एक फास्ट एक स्लोअर बाउंसर ले सकता हूँ। तो बहुत जरूरी था। फास्टर्स के लिए कहा जा रहा है कुछ नहीं है। वर्ल्ड क्रिकेट पूरी तरीके से बैट्समैन वाला हो चुका है, अब गेंदबाजों के पास कुछ खास बचता नहीं। इसीलिए बार बार जो तुलना होती है सचिन और विराट की, कहा जाता है सचिन अलग है, वो जिस एरा में खेले वो गेंदबाजों का दौर था। अब बल्लेबाजी का दौर है, आपके पास स्टेडियम छोटे लेकिन होते मुझे जा लग रहे रहा हैं। है कि इस आईपीएल के बाद ना, इस बिडिंग के बाद एक चीज नई कंट्रोवर्सी सामने जरूर ये आएगी। स्पिनर्स बोलेंगे भाई हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। ये बिल्कुल, फास्ट बॉलर और ये तेज गेंदबाजों का हमें मैच करा रिजर्वेशन गया, चाहिए। हमें भी तो कुछ चाहिए। फ्लाइट कराते हैं गेंद, आप छक्का मारते हैं। बिल्कुल। चलदारी जोसेफ के बारे में बताया जा रहा है, जो हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने टीमें बाई की हैं और जो उन्होंने बनाया है, जो टीम रेडी की है वो काफी गुजरात के तुम्हें 22 थोड़े शॉकिंग है कि ऐसा लग रहा है सिर्फ बैकअप प्लेयर्स खरीद रहे हैं आज। उमर जई को खरीदा है, उमेश यादव को खरीदा है, उसके अलावा अभी शाहरुख खान को खरीदा है। तो सारा के सारा बैकअप प्लान तैयार हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे प्लेइंग 11 के चेंजेस के लिए कोई प्लेयर अभी तक मुझे नहीं लग रहा ऑक्शन में उन्होंने बिड किया है। नहीं। अमूमन जो देखे मुझे तो सारी टीमें समझ में आ रही हैं, लेकिन वही बात कहूंगा कि मिचेल, स्टॉक, पैट कमिंस सारी महफिल वो जो था वो लूट के लेके चले गए हैं, क्योंकि बात तो कुछ रही नहीं। जो बिल्कुल मलाई थी वो सब आईपीएल की 2024 की, वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया चला गया, मलाई भी ऑस्ट्रेलिया चली गई। आप ये कह सकते हैं। हाँ बस, अच्छा सब कुछ वो लेके हम ही से जा रहे हैं। WTC भी उन्होंने हमसे लिया, बिल्कुल, वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी उन्होंने हमसे लिया, ये और पैसे भी वो हमसे ही ले रहे हैं। 2023 यादगार रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हम मेहमान नवाजी के लिए जाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वसुदेव कुटुंबकम। ट्रेविस हेड, बेस प्राइस 2 करोड़। तो ओवरऑल टीम को हम देखें तो फिर से एक बार अगर हम नजर डालें टीमों पर, तो सभी टीमों ने तेज गेंदबाजों पर इस आईपीएल ऑक्शन में दाव लगाए हैं। जिसमें मिचेल स्टॉक की बात अगर मैं करूं, पैट कमिंस की बात मैं करूं, तो इन लोग की तो चांदी निकल चुकी है, लॉटरी है, बम्पर लॉटरी है। फिर समीर रिजवी की मैं बात जरूर करना चाहूंगा। 6 करोड़ 6 करोड़ बिल्कुल हाँ, शॉकिंग प्राइस था उनके हिसाब से। इवन हालांकि उमेश यादव के लिए लोग सरप्राइज थे कि उमेश यादव को भी 5 करोड़ मिल जाएगा। इसमें शार्दुल ठाकुर की अगर मैं बात कर लूं तो उनको था कि नहीं, ये चेन्नई पहले ही से क्लियर माइंड के तौर पर आई थी कि नहीं, मुझे इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना है, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। एंड अब मैं बात जरूर इसके बारे में करना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं कि सभी टीमों का पेपर पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन नजर आ रहा है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस जो फर्स्ट आईपीएल, आपकी पहला मैं आईपीएल खेला उन्होंने अपनी टीम के लिए और जीता, सेकंड खेला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, बहुत पावरफुल इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए, लेकिन
अभी भी वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं आईपीएल ऑक्शन में, या क्लियर है कि नहीं मेरी ये टीम रेडी है, बस ये ऑक्शन हमारे लिए फॉर्मेलिटी है? ये कमियां तो अपनी पूरी नहीं कर पाए। कमियां जो आपके अंदर थी वो कमियां अभी भी नजर आ रही हैं। आप एक प्लेयर को बड़ा लाते हैं लेकिन एक प्लेयर से टीम नहीं चलती। आपको पूरी तरीके से अपनी टीम पर काम करना पड़ेगा, जो शायद कमजोर अभी भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं केदार जाधव। केदार जाधव का नाम चल रहा है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई उनका इंतजार कर रहे हैं। कोई लिख रहा है गौतम गंभीर के उनके ऊपर नजर है, कोई कह रहे हैं नहीं भाई थाला उन्हें ले जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है उनके साथ। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ पॉकेट में पैसे बचा कर रखे हुए चेन्नई की टीम ने शायद उनके लिए ही, केदार यादव के लिए ही नहीं तो गुजरात तो ले ही जाएंगे फिर। अच्छा, गुजरात यहाँ बहुत स्मार्ट गेम प्ले भी कर रहा है। आप देखोगे अगर तो वो किसी भी टीम को प्राइस बढ़ा दे रहा है, फिर वो कम बैक कर ले रहा है कि ओके ठीक है मेरा डन है, आप लेके जाओ प्लेयर। जी, स्टार्क सबसे बड़ा एग्जांपल है भाई। अगर वो स्टार्क को खरीद लेते तो बहुत उनकी पॉकेट खाली हो जाती। स्टार्क को नहीं खरीदा, सब कुछ। स्टीव स्मिथ दोबारा आए मैदान में लौट के, और आई होप इस बार भी शायद वो अनसोल्ड रह जाए। लेकिन मुश्किल भी लग रहा था स्टीव स्मिथ को लेकर। इस तरह की अनसोल्ड पहले हो गए भी ये। चीजें थी कि शायद वो नहीं बिकेंगे। ब्रेक हो गया है, ब्रेक के बाद ही मुझे लग रहा है फिर से आखिरी राउंड में फिर से स्टीव स्मिथ का वो लेकर हो सकता है, लेकिन अनसोल्ड ही रहेंगे जिस तरह से उनका फॉर्म स्टीव रहा है। स्मिथ है, मनीष पांडे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर फिर से एक बार आप सोचेंगे जरूर। करुण नायर एक खिलाड़ी हो नहीं, सकते जैसा हैं। निमेश भी कह रहे थे कि अगर आप प्लेइंग 11 को देखो, प्लेइंग 11 बनाओ अगर किसी भी टीम में, तो उसमें तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मैं भी नहीं हूँ जी। तीसरे चौथे नंबर के लिए, तीसरे चौथे नंबर के कंफर्टेबल बल्लेबाज हैं, वहां पर आपके किसी भी स्क्वाड में आपके लिए स्पेस बनता नहीं है। और इस तरह के जब तक स्ट्राइक थर्ड एंड रेट के फोर्थ साथ डाउन आता है तब तक तो आप मिड ओवर चले आते हो, आप 13 14 15 ओवर में एंटर कर जाते हो। फिर आपको चाहिए एक ऐसा बैट्समैन जो कि फास्ट रन गेट करे टीम के लिए। उनकी स्पेशलिटी बिल्डअप करना है, और वो इस आईपीएल के सीजन में मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे बिल्डअप की किसी को भी जरूरत थी। मुझे सरप्राइज इस बार रहाणे ने भी किया था, जिनके रहाणे को जो हम लोग कहते थे कि जो उनका अंदाज खेलने का, तो उन्होंने चेंज किया ना अपने अपने अपना टेम्परामेंट एंड पूरा प्लेइंग, अपना बैटिंग स्टाइल ही चेंज कर लिया उन्होंने। इस तरीके से दिखाया उन्होंने अपने स्ट्राइक को जिस तरह से आप किया था, तो वो दिखाता है कि आपको वही है ना। हम बॉलर्स की भी बात कर रहे थे कुलदीप, अगर आप कुछ वेरिएशन लेकर नहीं आते हैं तो फिर उनकी वो जगह नहीं बनती। लेकिन अगर वो वेरिएशन लेके आ रहे हैं तभी वो किसी भी टीम के लिए इंपॉर्टेंट बन के आते हैं, और अजिंक्य रहाणे ने अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव की है। स्टीव स्मिथ T20 फॉर्मेट में अपनी इंपॉर्टेंस आप प्रूव करने के लिए उनके पास स्पेस वो बचा नहीं मेरे हिसाब से। और शायद वो जो पीली जर्सी में है ना, उस जर्सी का भी बहुत हद तक इम्पैक्ट आएगा। सही टीम में गए अजिंक्य रहाणे, वहां पर कहते हैं खिलाड़ी बनाए जाते हैं, एक तरह की फैक्ट्री है वो। वहां पहुंचे, वहां से उनको वापसी भारतीय टीम में हुई। हालांकि भारतीय टीम में अपनी जगह फिर से वो आगे बना नहीं पाए। फिर से एक बार चाहेंगे कि चलिए भाई फिर से परफॉर्म करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सारे मैचेस खेलें वो। एंड हैदराबाद की बात मैं दोबारा जरूर करूंगा, क्योंकि हैदराबाद की टीम ऐसी रही कि इम्पैक्ट उनके अच्छे रहे, प्लेयर्स अच्छे सेलेक्ट किए, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं रहा। लेकिन इस बार बिडिंग में भी नजर नहीं आया कि वो उन्हें करना क्या है, वो शायद क्लियर नहीं मैसेज। शायद पैट कमिंस को कप्तान बनाना है, ये उनके माइंड में शायद क्लियर था। पैट कमिंस को वो ले आए। एक पैट क्लैरिटी कमिंस अब थी क्या करेंगे? एक क्लैरिटी नहीं, थी, अभी उस चीज कप्तान को प्रूव कर लिया उन्होंने। पैट कमिंस को कप्तान वो बनाने के लिए देख रहे थे, इसीलिए वो हाईएस्ट बिड की तरफ भी गए। एडन मार्करम उनके लिए पिछले सीजन में स्टार्टिंग में अनअवेलेबल थे, इस बार भी हो सकता है कि थोड़ा कुछ टाइम के लिए अनअवेलेबल रहे, तो उनके पास कप्तानी को लेकर वो ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं। भुवनेश्वर के साथ पिछली बार ट्रायल में गए थे, और पैट कमिंस जैसा ऑप्शन अगर आपके पास हो तो आप किसी और के साथ ट्रायल नहीं करना चाहोगे। नहीं, सिर्फ उन्होंने कप्तान पे बीट किया ताकि उन्हें पता कि हमारी जो मिसिंग, जो हम नहीं देखिए कर पा रहे हैं, वो ऑलराउंडर भी कप्तान है। हमारे पास नहीं है। अब पैट कमिंस जिस तरह से बल्लेबाजी भी करते हैं, बॉलिंग तो उनकी बहुत अच्छी है ही, उसके अलावा जिस तरह से बल्लेबाजी भी करते हैं, तो T20 फॉर्मेट में की प्लेयर हैं, और उस पर से कप्तानी का जो तजुर्बा है। आप 3 आईसीसी ट्रॉफी लेकर आए, WTC फाइनल आपने जीता ऑस्ट्रेलिया के लिए, वर्ल्ड कप जीता है, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, उसके अलावा आपने अभी एसएस जीत के आए थे, तो ये मैटर करता है। सारे ऑप्शंस देते हैं वो आपको, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी। और इस समय उनका लक भी चल रहा है भाई, लगातार आईसीसी ट्रॉफियां जीत रहे हैं। क्या पता आईपीएल ट्रॉफी भी जीत जाएं। लेकिन इस बार आईपीएल में लोग ये भी कह रहे हैं कि मजेदार देखना होगा मुंबई इंडियंस को किस्मत तो ग्राउंड वैसे पे। भी हैदराबाद की बदली नहीं, जब से डेक्कन चार्जर्स से नाम बदल के सनराइजर्स हैदराबाद हुआ तो सबसे किस्मत भी पलट ही गई थी। हाँ, तब तो सन का उदय भी नहीं हुआ है ना। बिल्कुल। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि लोग ना कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस बार देखना मुंबई इंडियंस जब हार्दिक पांड्या टॉस करने आएंगे और रोहित शर्मा ओपनिंग करने जाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन, क्योंकि अमूमन हार्दिक को देखा गया कि रोहित भैया, रोहित भाई कहते रहे, रेस्पेक्ट हार्दिक पांड्या जरूर करते हैं खिलाड़ियों की, लेकिन जो प्लेयर्स का अटैचमेंट रोहित के साथ जुड़ा हुआ था मुंबई इंडियंस को लेकर, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी में तब्दील हुआ इस बार। बिल्कुल नाराजगी जरूर है, लेकिन शायद लोग ये भूल जा रहे हैं कि आईपीएल का इतिहास यही कहता है। सौरव गांगुली के साथ ये चीज शुरुआत हुई थी। सौरव गांगुली 2009 में गए थे साउथ अफ्रीका एज एन कैप्टन केकेआर के, लेकिन बाद में रिप्लेस कर दिए गए थे। तो ये लगातार होता रहा है आईपीएल में। आप उठाकर देख लें, राहुल द्रविड़ को आप देख लें, हाल फिलहाल में विराट कोहली को देख लें, तो ये लगातार चलता आया है। रोहित शर्मा के साथ जो हुआ है कुछ नया नहीं है।
हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे, कोई फ्रेंचाइजी अगर फ्यूचर की तरफ देख रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है कैसे हार्दिक पांड्या करेंगे, अपनी कप्तानी को प्रूव भी कर चुके हैं। बिल्कुल कप्तानी प्रूव कर चुके हैं, 2 सीजन खेले एज एन कैप्टन वहां पे। एक आपने इनॉग्रल सीजन जीत के दिखा दिया कि आप कितने बेहतरीन कप्तान हैं, और उसके बाद आप सेकंड सीजन में रनर अप की तरफ वापस आए हैं गुजरात टाइटंस के लिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि, और 10 साल रोहित के पास कप्तानी रही, और बहुत लंबा टाइम होता है इतने साल तक कप्तानी कर पाना, कि फ्रेंचाइजी ने आप पर इतना ज्यादा भरोसा जताया। और देखिए चेंजेस तो आएंगे, हर हर फ्रेंचाइजी कोई भी टीम हो या कोई कोई मतलब आप कह सकते हैं इंटरनेशनल टीम भी, वो अपने फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहेगी। और अब अगले साल मेगा ऑक्शन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन जरूर बहुत मैटर करता है मुंबई इंडियंस के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से हार्दिक कप्तानी करते हैं। उनकी कप्तानी हम गुजरात में देख चुके हैं, लेकिन मुंबई जहां उनकी टीम है, जहां से वो बने हैं, जहां से भारतीय टीम तक का दरवाजा खुला है, गुजरात के कप्तान बने, उस टीम पर वापस चले गए हैं। क्या इस बार नया करेंगे, क्या मुंबई को टाइटल दिला पाएंगे? मुंबई की टीम 5 बार जरूर जीती, लेकिन 3 साल सूखा चल रहा है। मुंबई की टीम पहुंची नहीं है फाइनल में, कि मुंबई की टीम जीत नहीं पाई है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। बिल्कुल वही, मुझे लग रहा है वही विनिंग स्ट्रीक जो उनको नहीं मिल पा रही है आज, इस बार उसको तोड़ना चाहेंगे, और हार्दिक पांड्या उसको करने में माहिर रहे। अभी तक गुजरात जायंट्स के लिए पिछली बार भी फाइनल में लेके गए थे, और पेपर में बड़ी अच्छी टीम दिख रही है, नो डाउट। और जिस तरह के आज के 22 देखे आपने, उन्हें कोइट्जा को खरीदा है, उसके अलावा आप दिलशन मधुशंका के साथ गए हैं, मतलब श्रीलंका के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और इस तरह के 22 दिखा रहे हैं कि आप कितनी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। तो पूरी प्लानिंग कहीं ना कहीं अगर फिट बैठ जाती है तो आपको एक बेहतरीन टीम देखने को मिलेगी। और ये तो सवाल देखिए उठते रहते हैं। अब थाला गए थे वहां, हार्दिक रविंद्र जडेजा अगर कप्तान बने थे, उन पे भी सवाल उठे थे, वो परफॉर्म नहीं कर पाए, थाला ने वापसी कर ली। लेकिन एम एस धोनी की वापसी ये नहीं दिखाती कि वो लंबे समय तक फिर से कप्तानी करते रहेंगे। अब एक उम्र हो चली है, चीजें बदलाव की ओर जरूर जाएंगी। Well, this auction is going really very interesting, and we talked about a lot many players in this auction. Now, Pat Cummins was the talk of the town, but Mitchel Starc took all the limelight. 24.75 crores. It's a huge number, and what a player he is. And I believe that Kolkata Knight Riders must be really very happy. But is he a worthy buy for them? That's something to look out for. But in past few minutes, we have seen some really interesting players going for the bidding and being unsold and sold for various teams. Now, well, let's talk about, players who caught everyone's attention. Shubham Dubey is one player. Samir Rizvi is another player. And then Shah Rukh Khan. Well, who doesn't like to talk about Shah Rukh Khan? It's so interesting, isn't it, that you talk about a player who is released before the auction, and he was taken for 9 crores in the auction previous to this one. And in this auction, he's again sold at somewhere close to the 9 crore mark. Sahil, you have tracked a lot of domestic cricket. I'll talk about the players, the uncapped players, but first up, Shah Rukh Khan, 9 crores in the last auction when he was sold. Now, this time he was released, and again close to 9 crores, 7.4 crores to be precise, but 9 crores. I'm honestly very surprised with the bid for Shah Rukh Khan, because he has had a very off-color season this time around. Both in the Vijay Hazare Trophy and Syed Mushtaq Ali Trophy, he has been very very ordinary with the bat. And it was in the TNPL where he looked good, but that was with the ball, not with the bat. So it was a different Shah Rukh Khan on display in the Tamil Nadu Premier League. His captaincy skills were right up there, and he was doing a fine job with the ball. But with the bat, I think what people expect him to do is just come out and start swinging. And that is why we see the amount which he has got today, because most of the teams wanted that finisher, someone who could just take the bowling on. That is why Gujarat Titans were in a bidding war with CSK before bidding for Shah Rukh Khan. But when Samir Rizvi went for 8.4 crores to CSK, Gujarat Titans knew that the sample size right now is not very big. They have only few players to choose from. And Shah Rukh Khan probably was one of them, and he just got lucky because GT wanted a player with a similar skill set. That is it. Otherwise, I think 4 crores for Shah Rukh Khan, that's a lot of money. That's an overvalued bid for sure. Is it an overvalued bid, Srini? Beauty lies in the eye of the beholder. If they think, well, I mean, if they are, while the auction was going on, someone reminded me that Punjab having let go of Shah Rukh, in terms of, kind of releasing him at a 9 crore salary and then going on almost up till 7 crore to bid back for him. Sometimes some things just don't make sense. But that's the thing about IPL. I don't think here, you know, there seems to be a mismatch in terms of the quality of the cricketer that we are looking at vis-a-vis the price that the player is getting from the market.
And I think much of that shouldn't be based on the quality of the cricketer as much as it should be purely on the basis of form. Is this guy in the kind of touch that he season mein meko is going to be worth 7 crore to me? If Shah Rukh Khan is in the kind of touch where those who must have seen him in the nets, trials, whatever, see that, he's just in kind of the touch which is going to keep him in good stead for the next 7 to 8 months, that means this IPL is going to be useful to me. Yeah. So whatever the money that's been paid for him is just kind of taking a, kind of, kind of, it's like trying your luck, but just for one season. And then you see where it goes from there. Chetan, when we were talking about Gujarat Titans, we had a lot of chat around, what they need, the slots remaining. Do you think Shah Rukh Khan has a prominent spot in the playing 11 for Gujarat Titans in the coming season? I mean, at 7.4 crores, you think he's going straight into the playing 11. They do have a couple of youngsters over there. I mean, Sai Sudarshan is going to play a major role for them this year. Then they have Abhinav Manohar also. उन्होंने मनोहर ने ज़्यादा नहीं खेला था. I think he played a couple of matches last season and he was really impressive, the kind of hitting that he was able to do. Yeah. So from that perspective, I think this season, I think it will be a lot of experimentation in the middle. Yeah. Matthew Wade is somebody that they have, जो पहले top order में slot हो रहे थे, अब देखिए आप ऑस्ट्रेलिया के लिए वो middle order में खेलते हैं. Yeah. So he might go and play that role for Gujarat Titans. So I think there'll be a lot of permutations and combinations, and Shah Rukh Khan will be in the mix for sure. 7.4 crores जब आप spend करते हो, that means you're looking at a first 11 player. Yeah. So, but ठीक है, from GT's perspective, it makes sense. He's very, very highly rated. ठीक है. When Ravichandran Ashwin is talking about somebody on his YouTube channel and doing a preview and all, then that shows that the guy is talking about what is the mood of the franchisees. Yeah. Because he's an active player. Yeah. He's talking to people who are sitting there making decisions. Yeah. So he knows that what is the mood, and let's be honest, he's very highly rated. From that sense, I can understand what GT were doing with 7 crores, but what was Punjab doing, releasing him for 9? मतलब आप decide कर लो ना. एक तरफ आप ये कह रहे हो कि he's good, but not good for 9 crores, but he's also good कि हम इसको किसी और पे नहीं जाने देंगे और वो 7 करोड़ bid करेंगे तो हम 7.5 करोड़ bid करेंगे. मतलब आप decide कर लो ना यार. Yeah. कि is he good for you or is he not good for you? Is he good for 9 crores or is he not good for 7.5 crores? So I don't know what Punjab were doing. और ये कहानी हमको दिखती है हर auction में. But from GT's perspective, yeah, a decent buy, but again, he needs to score a few more runs than he has in IPL. Just to add to that, so I was speaking to one of the franchise guys, just on that point. Now, why do you release a player and then go after him? So the idea sometimes, I don't know in this case what exactly it must have been. Sometimes the idea is to release the player and then see if I can buy him cheaper. Yeah. Because I am generally getting that feeling that this guy is not worth 9 crore for me. Yeah. So I want to take that punt, let him go, and then see. Who knows? Agar aaj auction mein, if the other party had not done the bidding for Shah Rukh, they must have got the same. They would have got the same player for 2 crores. Probably, they could have but saved 6, I understand what you're saying, but you also have to see auction dynamics. ऐसे situation में plays a huge role. Yeah. But you also have to see what player you're talking about. A player who is actually in demand. A player a lot of franchisees are talking about. और कभी-कभी क्या होता है ना? I don't know. I mean, पंगे भी लिए जाते हैं. We've seen what DC does. I mean, look at the Mitchel Starc auction, right? Yeah. उसमें से 24 crores that he's got, उसमें से 9 crores DC should be paying. 9 crore DC को pay करने चाहिए because price तो उन्होंने पहले drive up किया ना. Yeah. So I don't know. I mean, what he's saying is absolutely right. You want that player back for cheap, but this is a player who's in conversation. This is a player who's in demand. Yeah. So if there's any bidding for him, but you still want him, आपको उसको सस्ते में चाहिए, लेकिन हमें चाहिए फिर भी. So I don't know what Punjab was doing, but ठीक है, they've saved 1.5 crores. Good. Sorry, they've saved 9 crores. Good on them. Good for them, but let's see, will this season be good for Shah Rukh Khan or not? Now let's switch to the players, some unknown names, and now they are the most wanted players, actually the most wanted players in terms of
having a chat with them and having to know more of them. And we have with us Sahil, who will tell us more about someone like Samir Rizvi. Sahil, nobody knew about him, very few people to be precise, okay? And nobody was even thinking that he'll cross that 8 crore mark and 8.40 crores. Now, from 20 lakh to 8.40 crores, this is something really very huge and significant. Do you think it's a worthy buy for Chennai Super Kings? Why, what this guy has done, where this guy comes from? Tell each and everything to us about him. So for me, it's like that story of Samir Rizvi playing Vijay Merchant Trophy and Kuch Bihar Trophy under 16 and under 19 age group in the same year. He was that good. He played under 16, sorry, and under 19 in the same year for Uttar Pradesh. And what stood out, right from his early days when he was really young, 16, 15, 16, it was his ability to score those big hundreds and the strike rate at which he used to score. Yeah. When he was young, when he was like not having that much muscle in his body, not that much power, he would hit like 15, 16 boundaries in 100. So when I used to look at scorecards of under 16, I was like, who's this boy, man? 16, 17 boundaries every 100 he's scoring. Then he's going to 150, and the strike rate is like always swelling in excess of 125, 130, and nearing around 80, 90 every game. So that is where his journey actually started. But it was unfortunate that he had to wait this long to make his senior team debut, which did happen earlier, but he wasn't getting a consistent run. But the UP T20 league completely changed his life. I think that was one league which was streamed on Jio Cinema, and that is where most of the world got the first glimpse of Samir Rizvi, where he absolutely set the stage on fire. And for me, like watching him play in so many games across in that league, the way he used to clear the ropes with ease and just keep on holding shape while hitting those big sixes, that is something which stood out for me, and that is something which both CSK and DC did see, and GT too, because he's one player who can take the spinners on and not lose shape in the process, and that is what CSK would have thought. Chepauk, Samir Rizvi could be a match made in heaven, and he's a gun player. I've been saying that since a lot of time now. I didn't expect a 8.4 crore bid for sure, but definitely was seeing him become a crorepati this auction, and very, very happy for him. He's a young boy, very hardworking, and did get his opportunities late when it comes to the setup in Uttar Pradesh. But when it did come his way, he made sure to cash it with both hands. Yes, so that was all about Samir Rizvi. Yes, Srini. Now, classic example, Samir Rizvi. Sahil, obviously Sahil had like kind of, mentioned, like, when his name came up, he said, watch out for this boy. Yeah. And like he had said earlier this month that, this boy is going to make news when the IPL auction happens. Now, whether it's Samir Rizvi or a player like Samir Rizvi, okay. For example, there are a couple of other names, that we're going to see in this round. Some franchise sitting where has identified this young man. Yeah. Okay, they have done the hard yards in Maidans wherever these boys are playing, whatever level of cricket they're playing. The franchises have gone there, done the hard yards, identified who Samir Rizvi is, what he can bring to the table. They have identified that he is worth my 8.5 crores, which is no small amount. Yeah. Now, I bring that player on board. I give that player all the opportunities that I can. I put him under the finest T20 captain that India has ever had. The world, probably among the world has ever seen. I put him under tutelage, right kind of tutelage. I invest. And then next day you will come to me. Next year you are going to come to me and say, हो गया आपका time. अभी आप retention में डालो इसको, या फिर you let him go into the auction. Why? I have done the hard yards. Chennai Super Kings has done the hard work. Chennai Super Kings has gone, identified that here is this. How old is he? He's 22. 22. Chennai Super Kings, they have the Indian selectors. Has BCCI has anybody done anything about this? No. The franchise has gone. The franchise has identified this boy. And now conveniently you're going to come next year and say, no, this doesn't work. Why? Because we want a mega auction. With some random theory where mega auction is going to make us look good. So you know what? You let go of the player you identified. How fair is that? How fair is the fact that a franchise which doesn't do its homework at the level at which other franchises do, why should they benefit? Yeah. And some other franchises who are doing the hard work lose out. For what joy? I don't want to name of some franchises, but you have people who are like sitting on the table there and raising the paddle for somebody else's hard work. For fun. Yeah. So I think there should be disparity there. I think there is rather. And I think there should be a balance there in terms of who is bringing what to the table. Enough of,
IPL salary purse is important because it puts a balance between the spenders. Yeah. Now what are you doing? You're earning money. What are you doing? Spending 4 crore on Harry Brooks without understanding where is he going to go and play in your playing 11? Yeah. I would rather go identify a Samir Rizvi Mm. and put money on that future, right? Well, that requires a lot of planning in place, right? Exactly You my really need point. to have a solid plan and go for the Scouting players. is everything. Exactly. Scouting is everything. Yeah. And for that, scouting is only 50% of the canvas. Yeah. The other 50% is once you have scouted for the right player, you protect that investment. You just don't go allow it to disseminate. So we've been discussing so how do you go about, doing something about this? कि आप इस चीज को कैसे negate कर सकते हो? First of all, there are always market forces at play whenever there's an auction or if there's not a draft. जब भी auction होता है, तो there's always market forces at play. अब समीर रिजवी का price was not driven to 6 crores. कितना? 8 crores? कितना? 8 crores. 8.5 crores. Just by they've got a wicket keeper Well, for yes. 7 crore. So Before we go further, Samir Rizvi is 20. My bad, not 22. So he just Samir Rizvi Yeah, is 20 and for 8.4 crores. Right now we have Kumar Kumar Kushagra. Kushagra is 19. India under 19. Under Jharkhand 19. top order batter. But 7.2 crores. 7.2 crores, or this is again perfect example of market dynamics. Yeah. Because they know that Delhi need a wicket keeper. Yeah. So And you a just top drive- order and a top order and a wicket top keeper. order wicket keeper. So they just drive up the price. Yeah. So 7 crores, would he have fetched 7 crores if Rishabh Pant was fit and able? I don't think so. Probably 2 crores, maybe at max if he's that good. But point is, यहाँ पे market factors are at play. Samir Rizvi ka price 8 crores did not go just by CSK. There were 2 or 3 other teams in play there. So some of them have done their homework. तो आप इसको कैसे negate कर सकते हैं? ठीक है, maybe not all 10 did their homework on Samir Rizvi, but maybe 2 or 3 of them did. Yeah. So what you can do is you can create a player pool, where you can either do a bit of a separate process for them, where you have a draft process for these youngsters, or जैसा हुआ था जब 2 नए franchisees आए थे ये, they were allowed to sign 3 players from the available players pool. Right. Similarly, you submit the list, and from there, pre-auction, you're allowed to pick 2 players, under 19 or under 23 or uncapped, so that आपका homework भी बचा रहे, और market forces भी at play ना आए. And because so that you're allowed to go, and that is something that can be done every year, which kind of negates the major auction as well to a certain extent. In that, I have a slight difference of opinion. No, this is not a perfect solution. Yeah, no, but even then, the only point I want to make here is you can't put an age cap. I'll tell you Let's the not reason put why. an age cap. I said uncapped. Uncapped. Uncapped भी. Even uncapped. Like there was this kid who was 29 years old. क्या नाम है? Shivam Dubey. आज हालत कैसा है? Shivam What Dubey. is the scene with an uncapped player? It's like, Chennai Super Kings identifies Samir Rizvi. He does well for 1 season. 6 महीना में BCCI selectors will say, oh, play him a game. And then he gets his cap. So uncapped is not going to, the idea of an uncapped player is not sustainable for too long. But the one point I wanted to make was age cap. You can't have a age restriction on a player on, let's say, have True, two okay, I agree. under 23 or 200. Okay, uncapped रख लो, आप uncapped रख लो ना. Any kind of restriction, actually, any kind of restriction, because the stakes in IPL are way too high in terms of the money that are being put on the table. See, the thing is, So in no way, in no way can you tell one franchise, any franchise for that matter, कि आप ये कर सकते हो, but आप ये नहीं कर सकते. नहीं. So why I said uncapped or I put an age gap was because आप वो rule जो है कि where you pick players before the auction from the player pool, that is not valid for every player. So I'm saying for international players you can't have that rule. I'm saying allowing my mind to just jog here. Yeah. So this is just an example that what can be done. When you are retaining players every ahead of a mega auction, you allow the retention of players. So it's 3 Indians and 1 overseas player, or 2 Indians and 2 overseas players. It can't be 3 overseas players, right? So when you are allowing 4 players to be retained, you are putting 4 different salary brackets. Yes. Whatever. I don't know the exact number. 15 crore, 12 crore, 8 crore. Don't do that. Okay. Because I might want to retain, like for example, who's this guy? Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Punjab had retained Shah Rukh Khan. Let's say Punjab would have wanted to pay him lesser money.
But they But can't. you don't have that option. You can't. You have to pay him the money that has been allotted because somebody in BCCI has decided कि यही चार options है आपके पास. No, So that's what actually a if I fair want? point. Yeah. What if I want to retain a boy who's just 20 years old? I see potential in him. I'm saying 50 lakh. Nobody anyway is going to buy him at the auction. I see potential in the future for this boy. Yeah. Let me retain him at 1 crore rupees. No. Yes. So what you should do is, let's say if the salary purse is 100 crore. You say, boss, allow me a 40 crore retention purse and a 60 crore auction purse. In that 40 crore, I should be able to retain whoever I want. Then you don't put a number on at it. Classic. And right now, as we were talking about the players, we have Yash Dayal. Yash Dayal has been sold to Royal Challengers Bangalore for 5 crores. This is insane. You all remember Yash Dayal, right? The expressions The Rinku Singh guy. say it all. No, He was see, the released- thing is, I'll say, yeah, you go ahead. He was released for 3.2 crores by GT. I thought they gave him a raw deal because he was a good player, and he mentally was in the right space after that. Receiving that damage. But 5 crore and GT went after him. him. But that's not the point, na? GT went after him, but they didn't get him. RCB got him. Yeah. Who's Sushant Mishra? No, wait. Yash Dayal. Yash Dayal. No. But Yash look at the figures, and I have full sympathy for Yash because the kind of hitting that he took. Yeah. And then the thing is, he was dropped the next day. He was he dropped for the next game. No, he wasn't well. He for wasn't 3-4 days. well High for a few fever, matches, and yeah. he was mentally not in the right space. So GT Yeah. took care of him. So that's why when the release came, I was very surprised that why Chalo, they theek hai, released this theek boy. hai. But I they believe actually they bid got for him in him. the semi-finals. Yeah, as they well, got him right? back. They got They him got in the him back. semi-finals. Yeah, they did. But they've gone for him again. So that's fair enough. But my point is, his economy last year was 10. His overall T20 economy is 8. He's the perfect RCB bowler. That's why they bought him for 5 crores. What is the thinking here? I'm not commenting on Yash Dayal or what he did with Rinku Singh or what was his mindset and all. What is RCB doing? Okay, look, they've spent 11 crores on Alzari Joseph, and Alzari Joseph is a good bowler. Yeah. But he was released by GT after the first season. Yeah. And then they got in Lockie Ferguson. Yeah. MI also played in one game. And yeah, so he's not had a lot of success in the IPL. Graeme Swann the hamare saath, unhone bataya he's a tall guy, he's a lanky bowler, he's quite quick and he can hit those yorkers. But in IPL, his performances have not been that great. What does RCB do? Goes and splurges 11 crores on him. मैंने कल प्रीव्यू में एक चीज बोली थी कि लास्ट ईयर पे जिस तरीके से आरसीबी ने अपना बॉलिंग अटैक बनाया है लास्ट ईयर तक आरसीबी के जो 200 चेज होते थे ना आरसीबी के अगेंस्ट वो 200 बनाते थे वो 200 चेज हो जाते थे और वो सोचते रह जाते थे क्या हो गया द ओनली थिंग इज कि लास्ट ईयर वो 200 चेज करती थी विजिटिंग टीम्स 19th या 20th ओवर में इस बार 15वें या 16वें ओवर में चेज हो जाएंगे 200 We'll see that in the IPL. This is going to be crazy, absolutely crazy. What are they doing? I just don't understand. They've released Harshal, they've released Hasaranga, another one they released, right? Hazelwood is not available, but still they released him, right? And they have they bought a replacement? Alzari Joseph? Alzari Joseph is, all due respect, he's not Hazelwood. Because he's not had that kind of success in the IPL, which Hazelwood has had. So, and now they've got a bowler whose economy is already 10. Yeah. Usse pehle they also got another bowler. Who was that? Where I said all the best to him bowling at Chinnaswamy. I forgot. They've got another bowler. Yash Dayal is not that bad a bowler. He's not that bad, but see, he's not that bad. But he's a very popular restricted bowler. Like you but can't the moment bank on him in the death over. That's fine. But the moment you look at Harshal Patel, what's happened to him is because he has those slower variations. Yeah. When did Harshal Patel actually give his best for RCB? I think the UAE leg. The UAE leg. No, also the Mumbai leg. Yeah, Mumbai leg. Wahan pe, the pitches were very, very different. Yeah. They played to his strengths. Where if he's bowling 6 variations and 6 deliveries, they were working for him. Yeah. The moment you go to Chinnaswamy, under lights, on that flat track, under with that dew around, and with that short ground, you're getting spanked all over. His variations went out of the window. Same with Hasaranga. So RCB need to find bowlers who can actually bowl at Chinnaswamy. If there are any bowlers who can bowl at Chinnaswamy, otherwise, आप 8 batsmen खिलाओ और देखो अगर 300 बन सकते हैं तो.
Well, let's see what happens. As you already They- mentioned about another Gujarat big, Titans. big loading. Oh yeah, We'll be that's a talking big about one. Kartik Yeah, Tyagi, but quickly, Sahil, Gujarat Titans didn't get Yash Dayal, but they rightly got Sushant Mishra. Yeah. How about Sushant Mishra and GT? I think he's another one of those under 19 left arm, very like heavily not saying like he's fat, like heavily built bowler who can like Who? he uses the short ball well. Sushant Sushant Mishra. Jharkhand didn't get many opportunities for Jharkhand early on after that under 19 break. If he's that same Sushant Mishra, because face I couldn't recall. No, it's the but same Sushant Mishra yeah, played for so Jharkhand. if he's the Jharkhand boy, then he has he's a mean, Jharkhand boy. he has a mean short ball. You don't see it coming when he runs into bowl, but he has a mean short ball. I've been seeing him since under 19 days. He's a good bowler. But this is going to be a bidding war. Kartik Tyagi is in a bidding war. And talking about Sushant Mishra, Gujarat Titans have got him for 2.20 crores. It's a big amount on him. Let's see how he plays his role with Gujarat Titans. And right now, we can see the bidding war Kuldeep for Yadav Kartik went Tyagi. unsold or what? Kuldeep Yadav? Yes, Kuldeep Yadav went unsold. At base price of 20 lakh, no takers for him. Right now, we can see bidding for Kartik Tyagi, KKR and Lucknow Supergiants are in this war. Yeah, I think RCB should be all over this, but they're not. Abhi tak main dekh raha hu, I don't know if this is the updated list, but they've only got Alzari Joseph today. Yeah. Which is not good enough. Abhi agar aap unka bowling attack dekho, they have Mohammad Siraj, they have Reece Topley, they have Alzari Joseph. They don't have a spinner. But why would LSG want Kartik Tyagi? They already took Shiva Mavi. They've got. They have Mark Wood. They have money also. They have money also. Which fast bowler? They entered the bidding war quite late, in this auction. So they entered that bidding arena quite late. So they must be looking forward to some good players. But meanwhile, let's also talk about Akash Singh. Akash Singh went to Sunrisers Hyderabad at his base price 20 lakh. He was earlier with Rajasthan Royals. Yep. That's that. And right now we can see Kartik Tyagi is bidding. KKR and GT are there now. GT shouldn't take him. They'll put him on the bench for the next year then. He needs game time. No, I think GT will benefit with him because. But he was part of that Australia net bowlers contingent, and he was very close to making his Test debut during the tour of Australia, the Test series, when everyone India's went injured. tour of Australia. India's tour of Australia. Yeah, there were a lot of news. Yeah. Around He was this close to make his Test debut. What is he done? 70 lakh. That's it. Yeah, 70 lakh to GT. That's a steal for Kartik Tyagi. He was bowling 150 in the UP T20. Ishan Porel for 60 lakh. Which to 60 Gujarat, is a steal. Gujarat Titans. to I think Gujarat that's a steal, Titans for 60 हमने lakh. बात भी की थी कि कार्तिक त्यागी could be one of जिसके ऊपर bidding war हो सकता है, but हुआ नहीं. Ishan Porel, I mean, he's played one game, I think. Yeah, I think he was with Punjab last time around. Before this, he was with Punjab, India under 19. Yeah, abhi tak, I don't think there's any bids for him. There aren't any bids for him so far, and I think only looks like that he's unsold. Ishan Porel is unsold at the auction right now. Yeah. But this is actually quite interesting. We get to hear some unheard names. He's going for sure. And as Sahil rightly mentioned right now, that Rasik Yeah, we've already got will 20. be sold. Rasik Dar. MI should go for it. DC. DC को पता है ना MI जाएगा because he's another MI boy, no? Drive his price. Well, there's only Shreni who hasn't said that which team should take Rasik Dar. Will it be DC or No. MI? I said DC have bid for him. I didn't say DC will take him. Okay, so you said DC and you said MI. It's at base price. That's So he's going to DC. Oh God. Do they even know anything about him? I'm sure. I hope they do. Yeah, of course. I hope they do. Rasik Dar has been sold to Delhi Capitals at his base price 20 very impressive lakh. this season. Mushir is going to come now in this Should list? Should come in the all-rounder uncapped category. How big of a I mean, obviously we need to. I don't know if we've spoken about this. Sarfaraz Khan not going sold, right? Unsold. It's good, no, boss. You can't take your IPL opportunities for granted. Any opportunity. Last year, I think he got decent amount of opportunities. 3-4 games are enough sample size, and he has been playing in the IPL
Ever since what? He was retained by RCB at one point. 16-year-old, 17-year-old child prodigy, enormous amount of कुछ नहीं किया talent. वो ऐसा नहीं होता ना. कुछ नहीं किया. Like you just can't keep scooping your way to glory. You need to understand the fact that you are lucky enough to be playing in the IPL and you are good enough for sure. But those opportunities which he wasted with DC, I think last year उसके पास पूरा chance था यार. There was no Rishabh Pant. They gave him so much opportunity, but he blew it up. He blew it up. But that's the thing, Sahil. Last season we saw that he didn't do something really great, or for that matter, even something significant for DC. So in that case, you will be released, and all the other teams will be thinking that why we should take a player like him, why we should waste a slot. And then there are other theatrics at play too when it comes to Sarfaraz Khan. So yeah. Also, tell me something about Hrithik Shawkeen. You were having quite a good chat behind the camera about Hrithik Shawkeen. Let's make it public as well. No, I think there were some issues like off the field which didn't go in the young boys' favor. But from what I heard from MI, he did really well during that MI's development tour this time. So MI generally takes boys out to England and makes them play competitive club cricket games against second division sides. And Hrithik Shawkeen did tour with the Mumbai Indians side this time around too. All the senior coaches were present and he did bowl well. But he wasn't going to be your 11 first choice spinner any which way. You already have Kumar Karthike in the MI setup. And this season also Delhi Syed Mushtaq Ali Trophy team, they didn't really give him many opportunities because Suyash Sharma pipped him for that playing 11 slot. So it was always going to be downhill for Hrithik Shawkeen from there on because the opportunities which he got with Mumbai Indians didn't translate into a lot of successful outings. Yeah. There was promise, there was that fight and hunger to perform. He has a big heart. I will tell you that. Even on seaming tracks, he would say to the captain that I'll go one down. He's an off spinner all rounder, bats lower down the order. But वो जिगरा है batting करने का. और थोड़ा सा जब ये सही जगह नहीं होता तो क्या कर सकते? Yeah. Well, there are a lot of players like that, and as Sahil, Chetan, and Sheeni were talking about players. Obviously, there are a number of players who everybody thought will be sold in this auction, but they're unsold. But we also have an accelerated round after this, so we'll be seeing a lot many players coming in that round, and we'll be seeing the teams there. Right now we have Shiva Singh, the current unsold player. He's that same boy who conceded 7 sixes were hit off his bowling by Ruturaj Gaikwad in a Vijayadhara Trophy match. Yeah. Last season. And I think in the UP T20 this time around, Rinku Singh hit him for 2 or 3, or I think more sixes in the power play. In the, what do you call? Manav Sutar will go. He'll go. So Manav Sutar we have right now for the bidding at his base price. He should go. 20. Am I? Not Manav Sutar. Sutar. No, not Sutar. Sutar is short-heighted, no. He should go, yaar. Please buy him, boss. So who's bidding right now? GT? No one is bidding. No, GT, there is one GT. bid. There is current bid. GT is bidding for Manav Sutar at his base price. And he's sold to GT for 20 lakhs. But they won't play him. They already have Sai Kishore. Even he's not playing. So how will he play? Yeah. Next up, we have M. Siddharth. Tamil Nadu left arm spinner. No, it doesn't matter if you're not playing because Apus. But he should play. He's a gun bowler. He gives nothing away in the power play. Yeah. He's a gun bowler. No. What I'm saying is, his economy. Look at that. Yeah, he does, and he bowls mostly in the power play, boss. He has a mean delivery which comes into the right-hander. RCB are going for him. RCB are going after him and Lucknow Supergiants. So RCB, there's a backstory of why they are going for M. Siddharth because the scout sitting on the table is Malolan Rangarajan, who played his domestic cricket for Tamil Nadu before becoming a scout. So he knows a fair few of things about M. Siddharth, Sai Kishore, and all these boys who are like. And M. Siddharth has been a phenomenal player for Tamil Nadu, age group cricket. Yeah. Plus, he is a spinner and they need a spinner. Yeah. But they have that's the beauty of IPL auction. Some unheard names and then some interesting stories behind the bidding of players. Something that we are seeing right now on screen, and we have M. Siddharth, and his bidding has crossed the 100 lakh mark. That's 1 crore mark has been crossed for him. Lucknow Supergiants, I think. Yeah, Lucknow Supergiants and Royal Challengers Bangalore are currently in the bidding war for M. Siddharth, and Sahil told
where he plays, how he plays, and Chetan told why RCB really needs They don't have spinners. I mean, yes, he's time and again reminded us, Glenn Maxwell and Mayank Dagar, but Karan Sharma. they're not going to win you championships. And but Kohli thought Karan Sharma will win you a test match in Australia. Kohli's never won an IPL also, and he's never won an ICC trophy also. So let's not go there. Naito, we'd be here all night. My point is, yeah, I mean, you need, they have Mayank Dagar, but they have Karan Sharma or they have Glenn Maxwell, but it never hurts to get new bowlers in because we know. How much money does RCB have? Lots. I mean, you need players who can top buy. Give you different and RCB, anything at this point in time, I'll say anything that works for RCB, they should go for it because their bowling is looking really shaky. I mean, yeah. First of all, I was surprised that they didn't go for somebody like a Mujib, or I mean, ठीक है, उनके पास overseas slots शायद नहीं है अब, because they're already Cameron Green, Glenn Maxwell. They can't afford an overseas. They can't have an overseas. 4 slots are done. And there's no top dollar Indian spinner. ये बात हमने कल preview में भी की थी. So RCB is going to struggle always. So if they can find value with an M Siddharth, boost up your squad, because at the end of the day, it can be an option for for the likes of Dagar or Karan Sharma. So it never hurts to have options. Yes. Because they don't have a top dollar Indian spinner or a top dollar overseas spinner for that matter, and they're going to struggle. There's no doubt in my mind they're going to struggle this season. I forgot the second Tamil Nadu reference of RCB. Dinesh Karthik, the finisher. Yeah. Who would know better Right than now, Lucknow Supergiants and RCB are bidding for M Siddharth. The bidding for M Siddharth has reached 2 crore mark. The purse with Lucknow Supergiants is 6.55 crores, whereas if we talk about Royal Challengers Bangalore, they have 6.75 crores. With the squad size. 21-22, both these teams are pretty much sorted with the squad size. And their purse is also somewhat similar. No. MI still don't have this. And RCB have pulled out. RCB have pulled out. But since the mega auction, I've been getting this feeling from MI that they are not really looking for a spinner also. Like, if you look at the mega auction, they went for Archer, Bumrah, Berendorf. They weren't really insisting on that. No, they've always been a pace. No, but then you have dominated franchise. when you had the likes of Harbhajan, Krunal doing the tricks, right? But they're not your out-and-out spinners. Yeah. No, I agree. But then And, you need someone Harbhajan to hold you for 4 overs at least. Supergiants. So Lucknow took it. Supergiants. Yeah, RCB pulled out at last moment. Yes. So if Ekana pitch continues to do the tricks which it has should, been known which it will. So M Siddharth. Murugan Ashwin. No, see, Mumbai, so Harbhajan went to Mumbai when he was at not the top of his powers. Yeah. So let's not count him as an out-and-out spinner. That was more an emotional buy than anything else. Krunal was your spin all-rounder. He was not your out-and-out spinner. Or kitna turn karate? He's a holding bowler. Yeah, he's a holding bowler. The one spinner they had was Rahul Chahar. Yeah. The one really good spinner they had was Rahul Chahar, but they let him go. Obviously they could have retained him, but they have never really gone for spin. So they've always been 3 spacers, 1 backup pacer, 1 backup all-round pacer, wo bhi pacer. Yeah. And then you have a couple of spin options like Krunal Pandya, etc., jo aapko 3 over de sake, 2 over de sake. So that's been their ploy. With Hardik, see, look, now they have 3 paces. Hardik coming back, that's 4 paces. That's 4 pace options they have. So that's 16 overs. Yeah. At best, at worst, that's 14 overs. So aapko wahi spin options chahiye jo aapko 3 over dengi. Correct. And they can go through the season with uncapped players who can give you 3 overs. So in the middle of a cycle, jahan pe aapke top dollar spinners, Indian spinners ja chuke hain, top dollar overseas spinners ja chuke hain, aapko spinner वैसे भी नहीं मिलने वाला है. So it's a waste of time concentrating your energy on that. Yeah. क्योंकि आज के आप देख लीजिए हसरंगा, आदिल रशीद, ईश सोधी and Mujib. Yeah. So they can't really go for an over. They actually could go for an overseas. MI. They could actually go for an overseas क्योंकि उनके जो 4 overseas players हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ Tim David was guaranteed a spot. But look at the way their auction has progressed. Shreyas Gopal goes to Mumbai. No, see, look. So from that perspective, now they have Deval Brevis. Yeah. They have Tim David. Yeah. Now they have Jiral Kudzia and Madhu Shankar. Yeah. So that's your 4 overseas spots.
Where next up we have Pulkit Narang, spinner. Sahil, do you think any Should team go. really needs? He's Ashwin's replacement when it comes to red ball now. Okay. Because he has been with the India A team for a couple of years, is in South Africa right now, and used to play for Delhi, is coached by Virat Kohli's coach Rajkumar Sharma. Okay. Then moved to services, has been playing there since last 3-4 seasons now. Good off spinner, but I'm not sure about the T20 How old format. is he? He should be on the other side of the 20s. But he's unsold right 20 now. going on 21. Okay. Off spinners No, in 28, T20. 29, I'm saying. Oh, achha. Yeah, he's been around for a long time. You're not going to get a market for out and out off Yeah, spinners. he's a proper like red ball off spinner. No, You're not- like you're he'll not going operate to- with yeah. one So slip you- and a gully. yeah, Aisa wala yeah. format. You will not get a market for your out and out off spinner in T20 cricket in 2023. He's a smart red ball bowler, but white ball, I don't know. नहीं आपको नहीं मिलेगा मार्केट ऑफ स्पिनर के लिए आउट एंड और जिस तरीके से साहिल डिस्क्राइब कर रहे हैं वो रेड बॉल बॉलर you will not get a market for such an off spinner in 2023 in T20 cricket. Yeah, and that's why it seems that no teams interested in such kind of players. But Shreyas for now. Gopal to MI, that is that interesting? I don't know. Very interesting. Shreyas Gopal को कर्नाटका में जगह नहीं मिल रहा. I think he's playing for Kerala now in the domestic circuit as a professional player. They could have like got someone like Aish Sodhi. I don't know, thinking widely, tall leg spinner at Wankhede. Yeah, they could have that option of because sitting down. I'm not sure whether Brevis will be getting a game every game exactly. with Rohit around. So they have that over. They could have used that one spot. तभी मैं सुरम्या को भी यही बोल रहा था कि if anybody MI has that overseas slot for a spinner available. कल हमने preview में भी शाम को यही बात की थी कि if anybody, it has to be MI. I don't know. They haven't gone for it. So I don't know. अभी Unsold का round आना बाकी है. Yeah. So maybe तो they'll pick. क्योंकि इनके base prices भी बहुत ऊंचे हैं. Apart from Ish Sodhi. Ish Sodhi 75. Others are 2. Adil is 2 and even Mujib is 2. So maybe they'll wait and see कि Unsold में कोई जाता है या नहीं जाता है. So that is something that we need to wait and watch. They could go for Mujib also. Yeah. So there is now Uncapped. There is a bigger. There are more rounds left, right? Yeah. So now not all Uncapped players will come. The franchises will be asked to submit a shortlist. So at max 30-40 players. But that's quite interesting, we see at some unheard names, then they go to teams at a much higher price than expected. And we talked about a few players in this whole session, especially people and players like Shubham Dubey, then Samir Rizvi, and others as we were talking about. But quickly, let me tell you what Mitchel Starc has to say about today's auction. He said that it was quite shocking for him, and his wife Elisa is here in Mumbai, so she was quite excited than him because she was getting faster updates than him. So she was the one who told him that, okay, you have been sold for 24.75 crores, and that's huge. But he said that it's quite shocking for him. Even he wasn't expecting such kind of a bid for his name. Right. I think they're the real power couple when it comes to sports, right? Because whenever she's playing, you would always spot him in the stands, even when he was injured, not with the Australian cricket team. He would be there cheering for his wife. And the respect and support has been similar from her too. So it's a good story. It's a beautiful story to kind of read on Instagram, see them posting photos and stories on social media pretty regularly about cheering for both of them during their games, and they make sure that they don't miss each other's big games. Games, exactly. So yes. Talk about their story. That picture refuses to leave my mind, where the wife was the one playing a match. And he was there, and she was standing in the queue for to get in. Lovely picture. Yeah. Actually, that's an amazing story, and they have been with each other in all the good moments. As Sahil mentioned, they never miss each other's important matches. And this time as well, when he got sold for 24.75 crores, the costliest player in the history of IPL, he said think that they must have taken a guarantee from the wife here in India that he's not going to go back. He said that he got to know from Melissa, and he said that it was quite interesting because he wasn't getting updates as faster as she was getting because she's here in India. But that's very, very interesting. How do you see, actually, Sahil, how do you see Mitchel Starc coming to this IPL? After so many years, the last IPL that he played was in 2015 for Royal Challengers Bangalore. And now coming here to play for Kolkata Knight Riders,
how big this player can be in the upcoming season? I think first of all we need to keep our fingers crossed that he actually does, and even when he does, we need to hope and pray that he like lasts 14 games, because with him, that's a big gamble which KKR have taken. Yes, we all know and understand that it's just for this season. So it's more of a statement by with Chetan, and we were discussing upstairs before this that it's a statement by Gautam Gambhir. He wasn't stopping, and he's that one player who will go for characters like Mitchel Starc, in your face, out and out fast bowlers. Not afraid to make the batter smell leather, and that's the kind of character Gambhir really likes. And it was a no-brainer that he went for him. But going for 24.75 crores, I think none of us in the room saw that coming, because Srini has probably covered IPL ever since the IPL, before even the IPL was born. So I think even he wouldn't have thought this bid to come, like 24.75 crore. I still can't wrap my head around it. I think Is it insane, Srini? after a point, the franchise at bottom was like, okay, I mean, sahi kiya kya? Have we done it? Okay, was that the right thing to do? While that was going on, it was like silence here also and over there, and I think everywhere, because that's an insane amount of money. And again, I have to say this, कि DC is responsible for at least 9 crores of this. Yeah. क्योंकि उन्होंने वो price inflate करते गए because MI was participating. But anyway, jokes apart, if Mitchel Starc does come and does play the entire tournament and actually does well, he's playing for a franchise which has a mad fan base. Yeah. KKR has one of the best fan bases. हम RCB के fan base की हम बहुत बात करते हैं, but आप Eden Gardens पे जाइए, it's not that tough to fill the Chinnaswamy. Yeah. 30,000 people, but Eden Gardens, 80,000 people every single home game, and the Bengalis are really passionate about their sport, or KKR fans for that matter are really passionate about their team. Yeah. So in Kolkata, if he performs, I remember Shoaib Akhtar, the last time Pakistan players played in the IPL, Shoaib Akhtar came and he went to KKR, and जो उन्होंने buzz generate किया KKR के लिए, and the first ball, I think he took 3 or 4 wickets. I think he took 3 or 4 wickets the in the first game that black he played. and gold jersey. Yeah, the last black and gold jersey that was electrifying. Yes. And that is the kind of effect that somebody like a Mitchel Starc can have. Yeah. If he turns up, if he plays, that's the big thing. And somebody tweeted, I said, he must turn up now. Somebody tweeted back to me and said he's just bought a house, he has to pay his mortgage, EMIs in Indian terms, EMIs. तो अब तो आना ही पड़ेगा, खेलना ही पड़ेगा. Well, खेलना तो पड़ेगा, पर इस IPL में जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ही हैं, क्योंकि Pat Cummins, then Mitchell Starc, then Travis Head. I mean, everybody's talking about the Australians. Is it because of the World Cup, Srini? Yes, and before I come to that, just taking forward that the conversation of Starc, that he used to pay mortgage fine. See, it's also about, look at their body of work in white ball cricket. Yeah. They've achieved everything that is there to be achieved, not just white ball cricket, Red in ball the game. Look at the body of work. WTC final, is done. Another World Cup, is done. And, last World Cup, 2015, last time when they won a World Cup, one fast bowler was man of the series. This time when they won the World Cup, another fast bowler was the captain of their team. Yeah. And having accomplished and, kind of constructed this body of work, today they can afford to sit back and say, okay, now it's time to earn out of it. Now it's time to earn money out of what we have created for ourselves. Right. And what it is also telling us about the IPL is it doesn't matter whether you are an international grade player on the wrong side of 30 or you are just a 20-year-old Samir Rizvi. If you are talented, we will reward you. Yeah. There are only two kinds of talent that has proven their worth and talent that is yet to be tested, right? What is the IPL doing? The IPL is rewarding both richly. Yes. And that is turning out to be the beauty of the tournament. Specifically talking about the Aussies, yes, it's fresh in our minds, but why not? I am saying this, if Australia's Big Bash League was not so unfortunate to be played in a time zone which is so restricting, it would have been a very, very good league anywhere around the world. I've obviously toured Australia a few times, and every time I've made a point कि मैं वहाँ जाके Big Bash का एक game देखूं. And I can say this out loud. The IPL may be far advanced in terms of broadcast money and the franchisees and the best players and everything. But the way they market their product, the way they sell their product, what is the product? They're selling the Big Bash League. Yeah.
And who are they targeting? They're targeting the regular crowd, but also they're targeting the kids. जो चीज वो बिग बैश करते हैं, बिग बैश में करते हैं, to target their audience, to target the market that they are targeting, it's nowhere in the world. It's nowhere in the world. Not in the IPL least of all. So as it is, we talk a lot about how Indian cricket needs to do a lot for the fans who come to the stadia. But एक पुल अभी ठीक है, हमें पुल बनाने की जरूरत नहीं है, because the Indian masses are as it is cricket crazy. And IPL match आप कहीं भी करवा लोगे, आपको stadium full मिल जाएगा. But you still need to provide them good amenities, and you need to make it a wholesome. You need to make it a wholesome event. They really need to see what the Big Bash does. The kind of nowhere in the world, the best product that any T20 league is selling is the Big Bash league. And that's only 3 reasons. I mean, only 3 reasons. How you engage with the crowd. How frequently as a property you continue to innovate. And 3, your commentary. 3 things. And these are 3 things they have done continuously, consistently very, very well. And these are 3 spaces where the BCCI lags very badly. They refuse to engage with the crowd. They have no understanding of how to engage with the crowd. They refuse to innovate. The last innovation was impact player, which is nothing but a super sub, which again comes from Big Bash. And the third, commentary, lesser the better. So that's how Let's not even go there. Okay. What is that flipping the bat thing? So they've replaced the toss with that the is flip. long, but That's an innovation. Flipping the bat. So that's still, but that is that is still an innovation. They're still trying to do something different. That's like that's like that guy putting his feet on the trophy and we having an objection. If they don't have an objection, it is their trophy. So they've earned it. They had that they can do what they air like. show this time around, right? When they had like that the man with that, what do you call that device, boss? Like a human rocket kind of thing. वो जो पीछे mid innings they did that thing. So I'm saying it's not just money that drives things. That the only thing that IPL cannot be compared with is if you are anybody in T20 cricket, you want to associate with the IPL. With the IPL. With But the the IPL. money is here. But the money And the consumption is here. and the quality of cricket, let's also be honest. And that also quality of cricket also comes with those participating. With those participating. But if अगर आप सिर्फ product की बात कर रहे हो ना कि product क्या बेच रहे हो, at the end of the day, it is about the product you're selling. India mein we have that advantage of the masses and the cricket frenzy and everything, and we are crazy for the cricket stars and everything. So that's always there. But at the end of the day, what is the best product that any T20 league is selling? That is the Big Bash. Yeah, that's right. Well, as we're talking about, Big Bash and IPL, obviously we can't compare the 2 leagues because of the reasons that Srini mentioned. There are a lot of things that can be said and done about both the leagues. Now, as we're talking about the IPL auction right now, next up we have accelerated round. And but before that, let's have a look at the first left. Unsold round. The unsold round. The unsold round, yes. No, just before that, just to lighten things up, I just got a message on my friend's WhatsApp group. Rinku Singh has an IPL contract of 55 lakh rupees, and the player he hit for like 5 sixes in that over is earning 5 crore from the IPL. This is not fair. I was waiting that I can touch upon this topic. Chetan bhai, Yashtal goes to RCB for 5 crores. हाँ मैं पहली जोक बना वो हो गया. मैं मिस किया था, मेरे को दोबारा सुनना है. अच्छा मैं दोबारा सुना देते हैं. Okay, दोबारा सुना देते हैं. So okay, I don't want to comment on Yash Dayal, ठीक है, because my heart went out to him that he could not. ठीक है 5 छक्के लगे, ठीक है, that's a batsman's game, right? But the next day he could not play that next game, and all of that was great. Sanju Samson out हो गए, by the way. आरसीबी की बात यहाँ दिल है संजू सैमसन. अरे वो सामने मैच मतलब ये तो लॉटरी इवनिंग हो गया चेतन नरूला. मतलब वही तो, अब बोलना है तो बोलना है. Anyway, my point is, so his economy last year is 10. Last year. Overall T20 economy is 8. He's the perfect RCB bowler. मैंने ये कहा. Because of 10 or 8? Because of 10. He's the perfect RCB bowler. और उन्होंने दिया भी 5 crore है. और I don't know. I mean, I know he's a great RCB fan. And I've made peace with certain no, things. I'm दिखा सकते हैं क्या एक ही shot में दोनों को? I worry for his health. I worry for his health.
ठीक है, देखो मेरा हाथ पहुंच गया. I worry for his health. Yeah, नहीं जीतने वाले तुम अगले साल कुछ भी. Well, Graeme Swann already mentioned, ना Yeah. कुछ भी कर लो. So नहीं he होने named वाला. 5 teams that he wants to win, but he didn't name He RCB. didn't name He didn't RCB. name RCB, so he knows, right? He knows. Yeah, he So, knows. yeah. So We can lose 3 finals. That's okay. We can reach finals and This lose game 3 is finals. happening in Port Elizabeth. Yeah, Port Yeah, Elizabeth. Port Elizabeth. yeah. Well, next up we is gonna have a very interesting round where we'll get unsold players and it'll be an exhilarated round. But before that, let's talk about the teams and their remaining purse, the remaining money that they have. The team with the most amount of money is Gujarat Titans. They have 21.45 crores. And the team with least amount of money is Rajasthan Royals with 90 lakh. This is interesting, you know, Gujarat Titans have been through and through in this auction. They have gone after some good players. They have done decent job and still they are left with 21.45 crore. Srini, are you looking forward to some interesting buys now? Because there are n number of players who are unsold. Smith Starting going with for 10 Steve crores. Smith. Yeah, Steve Smith, you mentioned it right. Yeah. I really don't see Steve Smith selling. Yeah. नहीं नहीं Likewise. बेस प्राइस पे ले जाएगा Base रिकी price पॉन्टिंग पे तो ले रिकी सकते पॉन्टिंग हैं. ले जाएगा. Handy player, Maybe no? one of डीसी those. नहीं लेके जाएगा रिकी पॉन्टिंग Chetan लेके and जाएगा. Graeme Swann had this joke, Yeah, right? I said it and he accepted it. I was like, oh my god, this is not a Maybe joke at our level. One of those reasons that, you know, kind of, tu mera dost hai, to I'll like kind of. Yeah, yeah. But No, he said logic wise, I don't see. Swanny said that, you know, Ricky हाँ, Ponting yeah, का yeah, बस yeah, चले तो 16 There- ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ले लेगा वो. Yeah, yeah, yeah. So, So, yeah. there it's not even banter. Yeah, yeah. That's personal. That's personal, right? Okay. So yeah, I purely, I don't know. So I was just going through the list of players who have not been sold. Wait, Who here are is it. coming back? Riley Russo, like Yeah. someone like him probably yes, but Karun Nair, Manish Pandey, Steve Smith, then Adil Rashid, Waqar. I don't know all these names, none of them except maybe Ish Sodhi is one. No, Mujib. Josh Mujibur English, Rahman. Mujib, I would think Mumbai for Mujib. Mujib, yeah, probably Filford? these 3 names. He, Other than he this, bowls in the power plays. Yeah, Yeah, he yeah. bowls in the power play. So if you can have 2 overs in the power play from him, Yeah. and then you have your pacers, You save Bumrah's you three save for the death. Bumrah's 2 overs for. Even save 3 no Ideal. bowl Madhu Shankar Yeah, 2 yeah, in the yeah. power So play. at So they base can price do of that. 2 crore, we Kushal have Mendes? Riley Russo, Steve Smith, Can we someone have. pick him now? Who? Kushal Mendes. I think by now I think- overseas I think slots would हो be गया है. filled. Overseas slots. I But think Mumbai के पास एक I बचा think है. Gujarat are so happy with the team that they have been silent at the auction. Yeah. They have been so happy So with the team. that's what I told. That's why Soumya they have कि- like 17, So that- 21 crore left. 21.45 So that's why I crores said are left that's with what I told Soumya. कि Like they they're were saving, so happy. they're saving 31 crore to buy Hardik Pandya back next year. So, but yeah, jokes apart, they haven't been very active. They've like we discussed, they needed those players to replace Hardik. Have they Yeah. done that? I'm not sure. Are they really that confident that they buy a junior batter? They buy a couple of Indian bowlers, pace bowlers. They haven't really gone. I mean, it's not like they haven't gone for anybody big. They were not successful in getting them. Yeah. But then, who are their big players, overseas players? Kane Williamson, Rashid Khan. Yeah. Yeah. Who else is there? Matthew Wade, Noor Ahmed. Matthew Wade, Noor Ahmed. Noor Ahmed was a good find for them last season. Yes. But if you look at it, wait, I'm just opening. I think I see a very big role for Kane Williamson this season. Yeah, but the Now thing that is, Hardik is not Yeah, there, I think yeah, he's going yeah. to be that anchor player at number so 3. David Miller. David Miller. David They have Miller. David Miller in the middle. So they're Yeah, relying a this- lot on David Miller. who is Josh Little. CSK's and, plan B for wicket keeping. If They don't have- they don't MSD have- were they to David, don't have get it. sorry, I think. Devon Conway. Yeah, Conway. Conway. Conveys to them. Conway is So the keeper. as we were talking about the next round of IPL auction, let's have a look at the players who have base price of more than 1 crore. We have Riley Russo at 2 crore, Steve Smith 2 crore, then Lockie Ferguson, Josh Hazelwood, Adil Rashid, Mujibur Rahman, all in 2 crore base price set. Then we have Phil Salt 1.50 crore. Soumya, what do you think? Which teams will go after them? Obviously, we have Gujarat Titans with maximum purse left right looking now. at their purse and looking at the way they've been bidding, I guess they can still pick someone like a Manish Pandey, just They for it, can. you know, and can use him probably as an impact player. Just get him in that middle order in 3 or Manish 4 Pandey games. as impact player. Yeah, you can't really No, ask no, him no. to field for 20 overs.
No, I think Delhi के लिए तो चलेगा ना. पृथ्वी शॉ बैटिंग करेंगे, मनीष पांडे फील्डिंग. फील्डिंग करेंगे. मनीष पांडे को सिर्फ फील्डिंग के लिए. हाँ. I mean, पृथ्वी शॉ को अगर आप सिर्फ बैटिंग करा सकते हो तो मनीष पांडे को You know, सिर्फ you know, fielding so But I then had, also I it'll be a had, I good had, buy. It'll be a I'll good remove buy. 1-0 His and base feel price fine. is of Yeah. 50 lakh. Yeah. but Chetan bhai, I'll remove 1-0 from this 50 lakh and just go and field for DC. Just give me, करो get me the option. बोलो, Even बोलो. DC, they have got good money left. I believe 16 crores or so. So they also will अभी be तो, going after good yeah, I players. mean, they always keep money in hand to take pangas with MI. So, you know, अभी दिन खत्म नहीं हुआ No, है. I think this impact player rule. No, last year I was speaking to a few people. I just wanted to understand what is happening with Prithvi. So wildly, it kind of occurred to me that he has been played as an impact player right through the season. How difficult? Not is for it? the first 2 matches. Yeah. No, I wanted to ask those people like, how difficult is it for a batter to be switched on? Like every game, you're treating it like a net session or what? No. See, Like okay, you're not no. on the field, you're not mentally there. No, I agree that you bat first also, but I'm saying that मेरा how थोड़ा different point है. no, आप बोलो. for me, I wanted to understand how difficult was it for someone like a Prithvi Shaw to be switched on, like for the game, or how do you like keep the player in the game when he's just batting and going off the field, not even fielding? Okay, अब मैं बोलूं. I don't really like find it. Once you finish, I'll speak. Yeah, please go ahead. It's his own fault. It's his own fault. Whether he switched on or not is not anybody's problem. No, And no, I'll tell you why. I'll tell you why. How old is he? 20. Right? Same as Shubman. आप कह रहे हो कि Yeah. this guy playing for one of the biggest franchises in the country as an opening batsman, and he's a very well known name. Yeah. At that age, he's not. Who is telling him that, mate, you are not good enough to field? Ricky Ponting, one of the greatest fielders of all time, one of the greatest cricketers of all time, is telling you as your coach that you're not good enough to field in the IPL. If that doesn't, light a fire inside you, कि next season मैं आऊंगा, I'll be the fittest I've ever been in my life. I'll be so disciplined, and the only thing you're getting from me is, however long I bat, but you're getting 20 overs of fielding effort from me. Yeah. If Prithvi Shaw can't do that, thank you so much for coming. Yeah. Thank you so much for coming. Because one of the greatest cricketers of all time has gone out and said, boss, आप fielding नहीं कर सकते हो. Then you're wasting a spot, right? You're wasting a spot. Yeah. They have literally told him, you're not good enough for anything. We don't want you on the field. आप सिर्फ बैटिंग करो, जितने रन बनेंगे ठीक है, नहीं बनेंगे हमारी मजबूरी है आपको खिलाना, क्योंकि वो ऋषभ पंत नहीं है, हमारी मजबूरी है इस साल आपको खिलाना. Look at him this year. He might not even get to play for them. Yeah. So because they now have so Kumar last Prasad year there. also, and I was amazed. जैसे साहिल ने कहा कि पूरा सीजन उनको नहीं खिलाया. Yeah. अगर मेरे साथ ये 2 गेम हो जाए, if I'm in Prithvi Shaw's shoes, और मेरे को 2 मैच ऐसे कर दिया जाए, by 3rd match I'm throwing myself everywhere to impress Ricky Ponting. Yes. But he did not do it. And adding He to, did not do what it. he's saying, And not to play as an impact player, to play To the play as whole a 40 overs, full the 20 over fielding. Yeah. And It's you are not playing because your knees are shaky or anything. You're not fielding because you're not good enough. Imagine this in 2023 playing T20 cricket. And just adding to that, if it does not motivate Prithvi Shaw, it is not even about the coach. Just look at your batchmates around. Yeah, exactly. One is a GT captain. Yeah, the other one is one of the mainstays in the You're Indian talking about team the right now. under-19 World Cup. Yeah. Yash Dhul को देख लो, Yash Yash Dhul को देख लो. And then Arshdeep, Shubman, just Dhruv Jurel. You need to see your batchmates who are coming in, fielding for 20 overs, batting, bowling, whatever. My whatever point it with is. Ricky Ponting is कि if Ricky Ponting is telling you something, that should inspire you. Yeah. Ricky Ponting. I think if there's something which should inspire him right now is the fact that DC retained him after all that drama. I wasn't seeing his retention being done. If that They didn't retained inspire him, this is boss, I don't know. because if they retained him at what 8 or 10 crores, I think क्योंकि that's big money. They retained see, him. it's 1 season left. I One know, more I season know, I left. know. I also saw it as a short-term thing. But if they've retained you, I hope he regains fitness in time because he's at the NCA right now. He's not fit. He injured himself playing the one-day games. In There's a England. lot of there's a lot of backdrop stories about Prithvi Shaw. So we know all No. of I'm them. saying he injured. Like this is. That's fine. But I'm talking about the ill discipline and everything. So all that, that's there. All there. आज सरफराज के साथ क्या हुआ? That is Prithvi Shaw in the next 2 years. perhaps. It's happened. Both of them are on the same path.
Like Sarfaraz, I don't know. It's 2 years later, it's Prithvi Shaw. So I was speaking Yeah. to one of the coaches. They said, certain players are built in a certain way. That is no. boss, Sorry, no, let's not sorry, talk no. about Let's that. not go there. Yeah. I have gained weight. I have lost weight. Yeah. So there's Okay, nothing okay, like let's you talk can't about do weight. that. Let's talk no, about weight. आप Just a winner second, से just a बात को second. देख लो. Let's talk about weight. What happens to you when you are in front of the IPL franchises or playing for India? How often have you performed? That's it. No, आप चलो आप body Check fielding. physique Okay, check नहीं, fielding. look, Check no. your presence on the field. What are you doing with the bat? No, Okay, one let's second. talk about physique. One second. Yeah. The important thing here is there's no place for such arguments. Like, there's no place for, adjust kar lenge type. Yeah. Exactly. Yeah. The stakes are way too high. Way too high. Exactly. Exactly. Yeah. Exactly. You're Ruthless. costing You either an belong IPL and trophy then to That's your what I'm you saying. team. don't. And by the If way, I'm missing, we are still at a very nascent stage. This is going to go worse from here. Yeah. The more the money on the Exactly. table becomes more higher, Exactly. yeah, 10 you crores know, is a huge amount the of money. amount of patience that these guys are going to have will be very, very less. Yeah. No performance, please make way, because Correct. the idea is very clear. Winning in my book, IPL's biggest change in terms of the trend will happen when franchise will see that the key to any kind of success in IPL, whether it's financial stability, earning more money, sponsorship, everything will be directly related to performance. Yeah. Today, even if you're consistently 8th, 9th, 10th on the table, some sponsor is coming to you. Yeah. Somebody is coming, ye lo bhai 50 crore hum dalte hain, right? Where is that? There can't be and there will be no free lunches. So it's only a matter of time. And we're talking about physique. I'm just going to give you a small example. Sachin Tendulkar, he was not the tallest of guys, right? He was short, my height, 5'5", 5'6", right? And you look at his physique, he was not a slender guy. No, he is not a slender guy. He is not bloated, but short height mein you cannot. Stocky. It's very rare. Yeah, you're stocky. It's very rare to have slender short guys, right? Yeah. But did that hamper him from improving his physique? No. His shoulders, his chest, his arms. Surfboard. Oh my God. He made sure that he was fit for 25 years of international cricket. The trainer who has worked with It's them. not a joke. It's he used to dedication. say, It's like, at that discipline. time there was no trend. So There was physics- no Yeah. So, thing. It yeah, just and came and naturally. yeah, and it's not about physique. आपको जो physique मिली है. It's how every physique can be toned down. How Virat you Kohli is a train classic yourself. example. Then there's Yeah. Virat Virat Kohli is an Kohli has example. been Yeah. heard saying so many times Yeah. that if I were to just let my diet go out of control for even a couple of days, it will begin to show on my body. Yeah. So every day, every single day is a new day for him in terms of the effort that he puts. So Yeah, I mean, guess- बचपन में आपका नाम That's a चीकू. body type, right? That's a body Yeah, type. Yeah. but बचपन में आपका Everybody- नाम चीकू is for a reason, right? Because you Yeah. are Chiku like. Huh. But to go on from there and become Virat Kohli and inspire an entire generation to be fit enough. Yeah. That is Virat Kohli's legacy. You know? So Yeah, it's crazy. Yes. So this is not an excuse for these cricketers, this upcoming youngsters, Prithvi Shaw and Sarfaraz Khan ki hamari physique ऐसी है. That's a very poor excuse. आपकी physique के लिए भी fitness होती है. Exactly. Go and do it. Yeah. It's all about intent. It's all about your look at passion for the someone game like and how you Rishabh want to Pant, play who it. is Yeah, उनकी such physique an हाँ. unfortunate No, his physique is not that great either. But he is fit for his physique. He's trying to motivate himself and get back Even on before track. the accident, his physique, he's also a stocky guy. But he's quite fit for his stocky figure. Yeah. So And the way today keeping he in a showed test up for match. the auction is That's again different. That's a different. motivation. For me, it's very simple. If Ricky Ponting is telling you, mate, you're not good enough to field 20 overs for us. That's something huge. उससे बड़ा inspiration कुछ हो ही नहीं सकता है यार. That's right. And he spent the entire last season as an impact player, and I thought that was really embarrassing. Yeah. It was a fag end of the. And if it's a edition when he got challenge 50. being out there for 20 overs, I don't know which other format is even meant for you. So you really don't belong in the game. That's right. 10 ओवर तो हम भी फील्डिंग कर सकते हैं on the trot. मैं 20 भी कर सकता हूँ. हो गया. Next आप ज़्यादा fit. Next question. Let's shift our focus. Next question. Let's shift our focus to the players who have been sold in this IPL I'm just talking auction. about myself.
10 overs. हो गया Let's shift our focus. अभी तो जेमी नहीं है, I'm missing JD must be they must be gymming. हाँ मैं तो 4 ओवर भी डाल सकता हूँ अभी उसके Jamie बाद won man of the match a couple of हाँ days देख लो back. भाई I चलो saw that JD is picture. not here but he's here to boast for it. Okay, so right now I'm looking at some of the answers that Shah Rukh Khan gave after he got sold to Gujarat Titans. So he has asked that what will be your role with Gujarat Titans since Hardik Pandya is not there in the team. He said that I'm gonna bat for sure at number 6 or 7 position, and I've also batted at number 4 in tournaments in Chennai, so I'm definitely going to bat there. Now this definitely and for sure has got my attention. Sahil, what do you think? I think Sir, that I'll just interrupt. I'm surprised he's not talking about his bowling. You can carry on. I won't bowl. His bowling has been the talk of the town more than his batting now. Shah Rukh Khan, Shah Rukh he Khan. was phenomenal in the TNPL with Yeah. the ball. and 19 leadership wickets. skills. But my problem with Shah Rukh Khan batting at 6 and TNPL. 7 is you're not giving enough deliveries to someone like a Rahul Tewatia. He badly needs That's right. game time. No, but we are assuming कि Tewatia bats lower than him. No, he's going to bat ahead of Shah Rukh Khan. But where Where 5 will is you- Miller. 5 is Six, Miller, six yeah. is Tewatia, no? No, but see, we are assuming 5 No, is that's what. If he's saying 6, 7. No, he can say he's not the captain or the coach. Now he's not speaking No, but for that's what Nehra. I'm saying. I just But want my point Rahul is, Tewatia to be batting 6. If Hardik is not there, ठीक है, अभी आप अगर 1 मिनट के लिए आप गिनाओ अगर उनका lineup, you have Sai Sudarshan and Shubman Gill opening. Yeah. Then you have Kane Williamson at Williamson. 3. At number 4, you could have Miller. Yeah. Then at 5, you could have Tewatia. 6, you could have Matthew Wade. And 7, you have Shah Rukh Khan. 5. But why would Wade. you have Miller at 4? I mean, 5 Why Wade. not? No, you can go Why with not? Wade for 4. Wade for Miller 4, at yeah. 5. Miller at 5, Shah Rukh at I don't know. I mean, Tewatia at 6. No, but here Yeah. Shah Rukh is also saying that he has batted at number 4. So if Why not Shah get- Rukh Khan batted. why not get Tewatia? That's not why not happening. get Tewatia a little bit up the order? No, he can. He was He brilliant. can be up the He order. was brilliant Yeah. for Haryana. See, I'm saying कि there's an opportunity here. Yeah. अब हार्दिक अगर नहीं है तो there's like I immediately said that Sudarshan opens the innings. Yeah. ठीक है, एक तरफ शुभमन एक तरफ सुदर्शन. So there's a lot. अभी तो हमने वृद्धिमान साहा को नहीं काउंट किया है. हाँ, वो नहीं खेलेगा. हाँ, but if अगर depends क्योंकि ना. विलियमसन अगर आपको रखना है तो आपको मतलब I don't see Riddhiman playing now. You bat. Yeah, I mean, I'm Sudarshan. just saying. See, the thing is, the fact that they have not gone for any big buys. I mean, they've not gotten any big buys in that sense. Their entire squad is going to be used. Some matches Riddhi is going to play. Some matches Wade is going to play. Yeah. No, because आपको I वो think- भरपाई करने के लिए, हार्दिक की भरपाई करने के लिए आपको permutation combination लगानी हाँ, पड़ेगी. बिठाना पड़ेगा. And it's not going to be a surprise if Miller moves up a spot, Rahul Tewatia moves up a spot. That is Yeah. very much possible. Yeah. GT is going to have either a very good time or a very bad time. or a very clueless campaign. Yeah, that's what, a very bad time. In between Very नहीं होने clueless. वाला है हाँ, कि Extreme होगा. करते 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 फोर्थ फिनिश हो गए, वो नहीं होगा. या एक एक्सट्रीम होगा या दूसरा एक्सट्रीम होगा. जो अच्छा वाला एक्सट्रीम है उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं क्योंकि आशीष नेहरा is not on the field. He can only do so much as a coach. I think yeah, it's haven't going to be. seen Shubman We have seen the leading good the side. extreme. I think now we are going to see the bad extreme for Gujarat. So. Yeah, that's right, because as we are talking about the players, it also becomes important, what the player and what the team is thinking about. And it'll depend from match to match, right? IPL is a big tournament. It's a long tournament. So it'll actually make sense at the day of the match that which player should bat at which spot for the given match. Let's also have a look at what, RCB has to say about Alzarri Joseph. Now, a little while back, Chetan was talking about, why they're going after the fast bowlers and why Alzarri Joseph and all of that. Soumya, RCB are quite clear because we know that what kind of a relationship you have as a fan with the RCB. RCB are quite clear, when it comes to Alzarri Joseph. They said that we're looking at a death bowler. We have Alzarri Joseph as a death bowler, and they said that our captain is fan of Alzarri, so that's that. We got him in. कौन सा ऐसा एडिशन है जहां आरसीबी अपने माइंड में क्लियर नहीं होती विद द स्क्वाड? आई मीन ठीक है, आपने अल्जारी जोसेफ को लिया है अगेन, बट अगेन देन यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन यश दयाल. अगर आपके वो प्लान्स में था तो यू कुड हैव स्टॉप्ड और picked up someone else. So again, I'm not understanding why are they not investing money on young uncapped players. GT has done that. Yeah. जब उनका टाइम है, GT did that. यश दयाल के साथ वही तो किया. But again, no, IPL का एक्सपीरियंस है ना, एंड IPL का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है पिछले साल का. That is what I'm saying. कब का अच्छा था? कब का अच्छा था एक्चुअली. वो 2016 बोल देगा अभी आपको, फिर क्या करोगे?
ऐसे 3 फाइनल बोले 2016 मैंने. is there, like, you know, It's there, coming there. back. What is It's coming coming back. 2016, no ये chance now. एक RCB fan इधर, एक RCB fan इधर. Anyway, my point is आ this: CPL में Yeah. Faf has seen probably Alzari Joseph, Mhm. but CPL conditions are different. That is exactly Yeah. that is the point. Exactly why I don't buy the Rovman Powell bid. Yeah, even I don't. I Even don't buy it. I because mean, I saw him with all due respect in to what some Graeme games Swann at said. Kotla. Matlab, he was struggling. He wasn't reading the googlies. No, yaar. okay, I'll come to Roman Powell, but my point is कि आपने CPL में देखा है, half of the CPL matches happen in daytime now to suit the Indian market. Of course. The conditions वगैरह should How? be taken Totally into different. Yeah, account. it's totally different. अच्छा, Roman Powell की जहां तक बात है, कोटला में 1 मिनट के लिए okay, maybe he's struggling a bit, ठीक है, but जयपुर में Yeah. the pitches are a little harder Hmm. and a little faster, and they come onto the bat. Sahil, Yeah. Savai पे, Savai Stadium पे. Savai's high scoring. So venue. it's a little different from Kotla. Yeah. So that could play in favor of Rovman Powell. But I still believe it is because he's the captain of Barbados Royals. That's the connect that they were like, okay, you know what? We are going to get you. They saw something in the CPL. They think that it will work in the IPL. It hasn't worked so far. So let's see kya hota hai. Yeah, let's just see. And now let's talk about the main players who've been sold in this IPL auction. Well, this is a wrap up of the IPL auction so far, and we'll start up with the costliest player in the history of IPL. That's Mitchel Starc. Actually, Mitchell Starc is one kind of a player that everybody was looking forward to, but another player who each and every person was looking forward to was Pat Cummins. And these two players are the ones who have crossed that 20 crore mark for the very first time in IPL. Now, Mitchell Starc and Pat Cummins, are you looking forward to them as the biggest players in this IPL, Sahil? I don't know. I'm not really sure how the returns would be from them. Pat Cummins hasn't had a good experience when it comes to playing in the IPL. 15.25 crores, I think, was his last bid with Kolkata Knight Riders. He was given a big role there, a role which I haven't come to terms with till date. What the role actually was. They wanted him to be an all-rounder. They wanted him to be a power play bowler, a death bowler, but he ended up leaking runs for fun. The wickets weren't there. I think it didn't even enter double digits right through the season, and only one impact knock came with the bat. Yeah. That was it. That was the IPL season for Kolkata Knight Riders, and there was no dearth of opportunities there. So how different is that his current campaign is going to be? It's going to be very interesting. With Starc, there is one thing for sure. He has pace, he has the angle, he has the movement. So with him, you can like be sure in your head that he is going to give you wickets up front. He's going to give you control in the final few overs. Yeah. But with Pat Cummins, you know what he did in the 50-over format on a wicket in Ahmedabad, where everything was kind of in favor of him, the way he kind of read conditions so well and adapted to them. But in T20s, under lights, bowling with a wet ball, how Pat Cummins is going to fare, I don't know. I'm not really sure with the price tag which they've gone ahead with, but he's a leadership option. So that kind of works in his favor. That is something which Sunrisers Hyderabad desperately want right now, because Aiden Markram is a good leader, fantastic leader, has been SAT20. I think he was the captain when they won. Yeah. Has been good there with the South African team too. You know, he has been part of that leadership group for quite some time now. But, you know, being a leader in the SRH think tank group is a completely different ball game. And that's where I think they need that very un-Aussie character to be kind of fending off the pressure which comes along being And SRH captain. last edition also, we could sense that that there was no clarity with Aiden Markram. There was when no he was clarity. leading. Markram had no clue whatsoever. Exactly. Let's just spit out facts. He had no clue what was happening with Yeah. Umran Malik. He had no clue what was happening with Washington Sundar's replacement, if Placement. any. And that was as clueless as an IPL captain could be. Yeah. And he said at the toss, I don't know what's happening with Umran. So one of the things about Go on. one of the things about getting a player of the caliber of Pat Cummins, is that it helps you if you're a franchise looking to restructure and reorganize, and you're looking to put a brand new ecosystem in place. Obviously nothing is going to happen overnight, right? It's a process. Yeah. So when you have a guy of that caliber, the Australian national captain, been there, done that, kind of knows what it means to kind of succeed at that level, has seen his share of ups and downs with the national team, has seen his share of controversies, what happens in dressing rooms, what like kind of obviously there can be disagreements at times. You've seen success together, you've seen failure together.
So that kind of experience, when it's back in your ecosystem and that kind of an experience arrives, it allows you to gain a perspective. Imagine, I'm paying Pat Cummins 20 crore, not just to lead my side this season, but also to understand what exactly is Australia thinking. Where exactly is Australian cricket heading? So that allows me to get a global understanding of where cricket is headed, modern day cricket is headed. Who better than a World Cup winning captain right now coming, freshly baked World Cup winning captain coming into your ecosystem? That is allowing me to study, to educate myself, to learn. So this is right up there. So there are lessons to be learned, of course, on the field by virtue of what he brings to the table, which again is not a bad option at all. Like, imagine, look at it this way. Maybe a Pat Cummins for the same 15 odd crore, as a captain, bowler, and someone who can bat, and then the extra 5 crore for someone who, by virtue of who he is, brings to my ecosystem, allows me to learn. Let's see how long I can benefit from it, and then of course I'm good to go up, take the next step out. No, like It's not a bad I- thing if I'll you just- look at it that way. If it kind of I have two things to is say a here. long-term vision in place, I Yeah. think then it makes sense. Yeah. Otherwise, if it's a short-term Although thing just with for that one franchise, season, then you begin to doubt. yeah, that's what. Like, But So then that's why. But So again, I have that's 2 points a here. lot of amount. Okay, No. I agree But to they what must you're be saying, looking Srini, for but that's a somebody to huge, captain huge the amount. side Well, as I well. know, like, SRH have so- tried a lot of but, players. So I have 2 points here. Regarding the captaincy thing, I'm not very convinced that they will just straight away hand the captaincy to Pat Okay. Cummins. Yeah. Uska reason एक ये है कि there's a lot of workload management to be done over there. Pat Cummins, आप चाहोगे कि जिस प्लेयर पे आप 20 करोड़ खर्च कर रहे हो वो आके आपके लिए खेले. But at the same time, we have known, when we've seen, the Aussies are reluctant when it comes to it. The day there is an Ashes series, Pat Cummins will say, okay, you know what, I'm skipping the IPL. क्या आप एक ऐसे player को captain बनाओगे? When he's going to skip the IPL because the Ashes is there immediately after the IPL. ठीक है? So that just takes away the point of making him the captain. So I'm not saying they won't make him captain. I'm just saying that I'm not convinced that they will make Pat Cummins captain immediately. He has to be there. He has to be in the ecosystem of SRH and just see what is happening there and tell them, okay, you know what? I want to be captain here. I want to be a part of this ecosystem for long. Yeah. ये ना हो कि पहली Ashes आई और आपने बोला कि मैं नहीं खेल रहा. But for that, That happens. Huh. That happens. Before we move ahead, just second point with Aiden Markram, and I'll defend him. Why? Because I've seen him as a 16-year-old kid. I've known Aiden Markram since he was 16, and I've seen him as a 16-year-old kid. And I knew the day I saw him playing a junior league cricket in India, in Dehradun, I was covering that tournament, and I knew he would play for South Africa and he would captain South Africa one day. Red Bull campus cricket. Yes. 2015 या 2016 की बात है, तब से मैं जानता हूँ एडन मार्क्रम को. And it was unfair the way SRH handled their team. We know what is happening in the backdrop. उसमें आप किसी से भी कैप्टनसी करवा लो, होना वही है. वो केन विलियमसन के साथ हुआ, वो डेविड वार्नर के साथ हुआ. तो who is Aiden Markram? He's still growing. He's not even as established as Warner and Williamson. Yes, he's not able to exert himself. I think he's becoming that player now. With South Africa, we are seeing a very, very different Aiden Markram. I am seeing the Aiden Markram that I always wanted to see with South Africa. But एक team के साथ, you need that kind of atmosphere. You need to grow with an IPL franchise. Yeah. So that did not happen. So I think that's unfair to judge him for what happened with SRH. If we look at Sunrisers Hyderabad and Kolkata Knight Riders, they have invested huge sum of money, obviously respectively in Pat Cummins and Mitchel Starc. So they must be having some sort of plan in their mind. Because if you look at Starc, he's returned to IPL auction after 8 years. He last played in 2015. He's come back again. And then you have invested 24.75 crores. That must be with a plan. You can't be putting in a lot of money just for the sake of it, right? Same with Pat Cummins also. Now we'll come back to it. But in terms of captaincy is all I meant. They want them to play, but Pat Cummins, let him play for a year, and if he says कि okay, I'm willing to commit long term, आपका captain ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 में से 1 साल ना खेले, Ashes के लिए prepare करने चला जाए. That is not how it's going to work. Srini ने आपको बार-बार बताया है, it's high stakes over there. Yeah. You can't have your captain just running off and say कि okay, I'm going to take a break this season. So I'm still not sold over the Pat Cummins captaincy thing, but let's wait and watch.
Yeah, well, let's wait and watch. Only time will tell. Only the upcoming IPL season will tell us what these players will have to offer to their respective teams. But one player who caught everyone's eye in this auction was Daryl Mitchell. We hadn't have a word, Soumya, about Daryl Mitchell in this live. You are here for the first time talking about him. Also, alongside this, the auction has begun again, so we'll be talking about that. But quickly, a word around Daryl Mitchell. So I have been a very, very big fan of him because I just feel, he's someone who can get himself settled at any position. किसी भी number पे उसको 3, 4, 5, 6 पे आप खिला सकते हो. Gets into the groove of the situation very quickly. Is very responsible. We have seen that in World Cup. A handy bowler too. 2 या 3 over पे डलवा ही दोगे आप उससे, and the way the kind of form he is in. I mean that's just impressive. So 10 on 10 to the franchise and to the team management. Absolutely. Kudos to Chennai Super Kings. They've always been after New Zealand players, and in this auction as well, they got in Daryl Mitchell and Rachin Ravindra. It's a good time for Chennai Super Kings. Let's see what they'll do in this upcoming IPL season. But for now, let's switch to IPL auction once again. Now, next up, we have Rassie van der Dusen. Again, a really interesting name with base Before price that, of 2 crores. Ashton Turner has been sold for once here. 2? And I think to Shane LSG. And Shane Rutherford. Shane Yeah. Rutherford to KKR for 1.5. Yeah. Van der Dusen. We'll I wanna quickly see tell what this. boy does. ये बहुत जल्दी जाएगा. Yes. Finn Allen unsold, Colin Munro unsold, Rutherford to KKR for 1.5 crore. And Van der Dusen last then played for Turner RR, I gets an think. IPL bid Yeah, with yeah. RR. Yes, LSG. This is unsold. LSG got LSG got Ashton Turner. Ashton Turner. who got Sharfin Rutherford? Nobody. KKR, KKR. Kolkata 1.5. Knight Riders, and Rassie van der Dusen went unsold. Van der Dusen unsold. Okay. Yeah. This is going to be fun, a quick round, and it'll tell us what the teams are thinking. KS Ahmed, leg spinner. Now we have Case Ahmed Okay, at base price of Sahil, a 50 quick lakh. word on him. I'm just looking for one. Afghanistan all-rounder है. 23. Afghanistan all-rounder. I guess he's been playing age group cricket for Afghanistan in Afghanistan and have been performing across formats. Unsold. Michael Ah. Bracewell. This Has to be. Somebody has to go for him. Bracewell's here Yeah. for the bidding. Mumbai. Just go for him. Quickly, Mumbai. Sahil? Mumbai. RCB. RCB. Unsold. Unsold RCB Mumbai. Srini? No, if someone has to Unsold? go, then Okay, so then we RCB. have three. We have three things. Unsold RCB Mumbai. Let's see what happens here. Unsold. Looks like unsold. Looks like unsold. इनका fitness At issues base price है. of 1 crore, right now we have Michael Bracewell. He's a fantastic player. The problem is But एक- unsold play in him. this Yeah. auction. 1 CR base price, Base price, 32 yeah. years old. This is like No. fag end For of one- accelerated auction. For 1 Tom year Curran. for 1 year contract 1 crore is nothing. Tom Curran. Now base have price Tom is Curran. 1.5. He's an off spin. No, I'm not talking about Tom Curran. I'm Yeah. talking about Bracewell. He's a Bracewell. part-time off spinner. Yeah. Long time ago, he used to keep RCB. wickets, and he's a clutch batsman like RCB Daryl Mitchell. are bidding Why- for why- Tom why Curran. do RCB are RCB bidding want for Tom Tom Curran? Curran. He's at base price of 1.5 crore. He's a bowler, right? He's Yeah. a कहाँ fast गिराएंगे bowler. उसको? कहाँ Fast गिराएंगे? bowler. मुझसे क्या पूछ रहे हैं? 4 overseas है मुझे already. पता होता तो मैं यहाँ थोड़े बैठा होता. मैं वहाँ बैठा होता. Good backup for Akashdeep. दो तीन Perfect backup for Akashdeep. 2-3 IPL की ट्रॉफीज भी होती मेरे ना पास. ना Tom Curran. नहीं आरसीबी के लिए 2-3 आईपीएल की ट्रॉफीज भी जीत ली होती मैंने अगर मुझे मालूम होता तो. You would have been leading them. And yes, Tom Curran has been sold to Royal Challengers Bangalore at his base price of 1.5 crores. So this time RCB really need to be close to that trophy, the way they are bidding right now. With that, they can't Unsold. be. James Neeson. Unsold. Should be unsold. इस base price में 1 CR हट जाना James चाहिए Neesham at base price of 1.50 crore. New Zealand didn't play him all games in the World Cup also. था. No. No. Because Just they were played- rotating him with the क्या कहते हैं? Who were they rotating him with? Chapman. Chapman. And- Chapman was injured बीच में ना. Unsold. And yes, Unsold. unsold. Expected.
No, but Tom Curran is not a bad buy for RCB. But you don't need You him. you don't see me saying that very often. पूछ तो लो क्यों? They need bowlers, yeah. They need options. It's very simple. But if you have taken Alzari, so you need a backup for your overseas fast bowler, no? you have reached Oakley already. Okay, that's left arm and right arm, but Yeah. So I mean, they don't have options. I have not You heard never this know name. what's going. See, Even I Chinnaswamy mein you Who's need this guy? I've Timo vaguely Paul, West heard, Indies player, no? Fast bowler है ना ये? vaguely heard, but I don't know what. he Fast does. bowler है ना? At He base played for price of Leeds. 75. All rounder, Like yeah. all-rounder. Fast bowling all rounder. छोड़ो, unsold चला गया, क्या करना? No, so आरसीबी में आपको जितने बॉलर सॉरी चिन्नास्वामी में आपको जितने बॉलर मिल जाए कम है पहले 3 मैच में अलजारी जोसेफ मार खाएंगे उसके अगले 3 मैच में रीस्टॉपली मार खाएंगे फिर उसके अगले 3 मैच में मार खाने के लिए कोई चाहिए ना बीच में एक में सिराज भी खाई लेंगे एक वो तो हर मैच में ही खाते हैं 10 There- उनका 10 का इकोनॉमी है उनका There was one game, Chinnaswamy, IPL game. चिन्नास्वामी Odion Smith. is a death knell for So that's what bowlers I'm यार saying. So चिन्नास्वामी Irfan Pathan wasn't doing commentary and he made that fantastic line. I still remember it clearly. जब चिन्नास्वामी की पिच खोदेंगे तो बहुत गेंदबाज यहाँ दफन मिलेंगे आपको और तब वहाँ मार पड़ रही थी like no but which is very actually this is a very big thinking point for RCB कितने साल हो गए हैं IPL को 15 साल हो गए हैं Yeah. जिसमें से आपने 12 चलिए 11 साल आपने चिन्नास्वामी पे खेला है 11 साल not once they have changed strategy क्यों 11 साल? एक बार साउथ अफ्रीका गए एक बार दुबई गए अच्छा, एक बार वैसा। मुंबई में खेले एक बार हाइब्रिड खेले अच्छा, अच्छा, अच्छा। I'm thinking 11 could be 12 I think 11 12, 11, yeah, 11 or yeah, 12 but, We 11 have or David 12. Willie. David Willie was one name that Graeme That's Swann was that's quite a very interested base in. price. Base and price if he is goes still a unsold, base price is still a if he problem. goes unsold, that will be a huge blow because he retired from international cricket. Yeah. Now उनको contract मिला और अगर यहाँ पे भी unsold चलेगा Current bid, no, CR base price आया है? और no current Someone current bid. oh current bid Current bid, 2 yeah. crore पे ले लिया किसी ने LSG or what? could be His Mohsin base Khan. price is 2 Base price crores. is too much, yeah. no it is not Nee, for an But I think accelerated I don't get that mindset of English players. Like Swan did explain earlier in the show Hmm. that there are so many games that they're going to play, so might as well have a bigger base price. But I think that's not how auction dynamics No, work. they don't. Might as They well go don't. for a 50 lakh base price But- and expect And teams to engage. Exactly. but for 2 crores And in here an he has accelerated been auction sold to Lucknow Supergiants. It's at not his a bad base price deal. of 2 Yeah. crores. it's not a bad deal yeah He's it's a not good bad deal. backup for Mohsin. Yeah. Mohsin Khan, Mohsin yeah. Khan. Mohsin Khan. no so Shy hope. Unsold. I really want him yeah to go unsold Go right. where? go to any of the franchise. He can go to the beach. Strike rate of 120 balls. Coming back He to lives the in point. Navi Coming back to the He point. lives in Navi Mumbai. Navi Mumbai. Coming back to the point. 11 years they've played at Chinnaswamy. They've not changed tactics Hmm. once. कि नहीं आने दो टीम को हम 200 बनाएंगे और फिर उनको 200 चेज करते हुए देखेंगे. Hmm. Change the damn pitch. Change the damn conditions. Make a Yeah. spin friendly wicket for once. But they never change anything about it. They're always playing with that same mindset. And until that changes or they change their venue, RCB is not going anywhere. That's why Yes, result also never see, changes. You also have to understand that beyond Srimanta Chamira. those 2.5, 3 months, they really don't have any say over Chinnaswamy. Yeah. That belongs to KSC. But still, they can say, na, ki don't make these It's a pitches. pain. It's also one of the things. Is also a pain dealing with the state association. That's what happened with DC at Best of luck Kotla then. Best of last luck. year. Yeah, DC that's kept another creeping. thing. That's a very important That's thing, what I was Best mentioning. of luck then. which when- nobody when wants we to were- discuss. They literally, by the way, that used to be 50 lakh. Now they get 1 CR from the franchise. What do they do with this money? They're not like they're not being Best of accountable. luck then. I mean, if you're not going to change the pitch conditions, nothing is going to happen. Dushmanta Chamira is No, but also we all- unsold. Chetan, you can't really do much because IPL starts when a long domestic season That ends. is where You just have 20 days. that is where Yeah, I've the seen test pitches leasing in, of the Bangalore ground. Gujarat. But From day one. it's been so many years for this Yeah. IPL tournament. You And know the and ground. I You tweeted know that this, it doesn't belong to you. and I You tweeted know the this last year. A situations. lot you of know the RCB fans conditions, agreed right? with me. So A you lot of you know them. things. So at that stage, you really need to do something else. To reach exactly. near Do to that something trophy. different. I'm lost 1 second. I didn't You understand. mentioned right that the ground doesn't belong to RCB, Yeah, of and course, it belongs to the all of state those association. things, right? So they know about it. They Of know course. that this is something that's not gonna change. Of course. So they can do something with the things that can be changed, right? Or the things that can be made better. No, you And- can't. I'll tell you what. You are paying that money for whatever those 2.5, 3 months of Hmm. engagement you need during IPL, or you want to host your matches during the IPL, the home matches. Hmm. Other than that, you have no say.
over what the state association does. One second, let me yeah. complete. You have no say over what the state association Okay. does. And there are 1,000 problems I can list out that the franchisees have with the Okay. state association. Okay. I'll give you an example. You think Mumbai Indians can't spend money on Wankhede Stadium and make it different? There are 100 things I can point out that can be done to make fan engagement better. You think they can't do it? It takes them a matter of months to change the entire complexion. They can't touch it. It is not theirs. It is Mumbai Cricket Association. Mumbai Cricket Association is about members. Everything, you change a brick, you have to get a voter count done. What did the Supreme Court try and do? The Supreme Court was trying to change the system. But again, they went there unequipped. But the point is, it was not, of course, they were ill-equipped to handle it. But the point is, it is not easy to change. You think of Kotla, a Par Jindal and a Kiran Gandhi, owners of Delhi Capitals, can't do anything to change the this thing of Kotla, around Kotla, or inside Kotla. Of course, they can do a lot. But it's not well within their rights. By the way, there is a flip side to this. They pay good money to the state association year after year after year. The state association gets paid hosting money from both sides. It gets paid money from the IPL as well as gets paid money from the BCCI. What do you do with this money? Where is the accountability? These are questions nobody is asking. At some point, a franchise is going to stand up and say, nonsense. If you want my money, then you give me an idea where my money is going. So questions are not being These are asked. some tough questions that they really need to answer. But before I go to you, Chetan, let me tell everyone that Kylie Jamieson went unsold, and currently Spencer Johnson is up for the bidding, and KKR are he's looking for Starc backup at 89. If Starc pulls out, Gujarat Titans and Kolkata Knight Riders are For a bidding second, I just for thought Spencer RCB Johnson. was once again going for Kyle Jamieson. Malinga hairstyle. Malinga hairstyle. good bowler. No, Left but arm quick. see, the thing is, Shri, I just want to ask, how is it that Chepauk then makes pitches suitable for CSK? You want the answer? Isn't the answer very obvious? Obvious. But my point is, there are some state associations which will... Name another one. KKR. What? They made spin friendly wickets and then they made pace friendly wickets. जब जो उनको जैसा उनका टीम रहता है वैसा उनको विकेट मिलता है. अभी तो उनको यही नहीं पता उनका टीम क्या है. That's different. That's different. That's KKR's That was problem. at the time of Gautam Gambhir, those 3-4 years that made a difference. Now Other to than that, they I have been don't at see anything loggerheads. The KKR has done. management and KKR that's true, curator, that's they have true. been at Yeah, The loggerheads. point is, Chennai Super Kings is the only franchise which is an exception. Why? Because the Tamil Nadu Cricket Association and the franchise are so well intertwined in terms of understanding each other, in terms of everything. There is no other franchise which is That's a like, problem, but I can list out a lot of positives also. Okay. In terms of each franchise and how they have probably even benefited from the association. But since we are on the subject of, what exactly are state associations doing, where the big picture is concerned, I think they are lacking. They are lacking on multiple fronts. I'll say this, 2020, first year of the second year. Second year of the pandemic, the IPL had partially returned to India before it was again shifted abroad. And I was at the Wankhede Stadium watching the game, and one BCCI official was standing next to me. He said, "What do you think of the?" See, it was an empty ground. Okay. He's like, "What do you think?" I was like, "If I give you my honest opinion, you won't talk to me." So he said, "No, tell me. I really want to hear." I said, "This is Mushtaq Ali with a DJ playing there." and you put 4 overseas players on the field, and one DJ is playing some Bollywood songs. If you stop both these, what is the difference between Mushtaq Ali and IPL? There's no difference. This is not a world class tournament. There is so much to do. If you have not watched sport outside the country, I'm sorry. If you have not watched football in Europe, in UK, you've not watched NBA, you've not watched NFL. It's like मेरी कुएं के अंदर मैं बैठा हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, मैं तो world class tournament चला रहा हूँ. It doesn't work like that. You are not world class. You have a long way to go. Yeah. It's a fact. I mean, people may not that's reality, like it, but in the meantime, that's reality. 7.8. But right now, let's have a look at Spencer Johnson. 8 crore mark has been touched. Actually crossed. The 8 crore mark has been crossed for Spencer Johnson. Gujarat Titans and Delhi Mr. Capitals. Malhotra. Kindly enlighten us. Left arm fast. I just thought of him as a backup for Mitchell Starc when तो they ठीक है were ना, going, half but- price में ले रहे हैं But ना on, उसे? then on, you no, have on Twitter, Gujarat I've been Titans in reading these. that people were gunning for him. Like, still the Australian media rate him very highly.
But why these two teams are going after him? Now, do they need DC Spencer Johnson? DC probably yes, because ever Like- since they let go of Mustafizur Rahman, the only left arm seamer, they let go of Mustafizur Rahman and Sakaria Chetan as well. Sakaria. Sakaria as They well. only have Khalil Ahmed, Hmm. who I'm not sure about because he has been like really wavered last 12 months. 10. So probably they need one good out and out good bowler. And जैसा पहले मैंने कहा था कि they still haven't figured out Yeah. a partner for Nokia. Hmm. That's what they're probably trying. I'm hoping that's what they're And trying. and Nokia not- without They've got good Rabada, money has with been, them right Nokia without Rabada has been half the bowler he was. Yeah. There Yeah. has been a clear हाँ. difference. So यही Yeah. मैंने पहले भी explain Yeah. किया था. So I'm hoping that's what they're doing and not just upping the price for Gujarat. बाकी अभी So पता चल technically जाएगा. they only have one spinner in Akshar Patel and part-time spin of Lalit Yadav. Yeah. Kuldeep. Yeah. DC. Kuldeep. No, but he's Kuldeep. Kuldeep. No, but he's a pacer. My bad. No, I'm just thinking the squad composition. So who can be the four foreign players? Warner, Warner, Mitchell Marsh. Marsh, Mitchell Marsh, Nokia. Harry Nokia, Brook, Harry Brook. Harry. And Nokia, and sometimes- Spencer Johnson. No, Harry Brook पे depend करेगा ना यार कि is Rishabh Pant coming back? What is the composition of their They have middle also order? picked up Kumar Kushal, and for It a is very actually- hefty price, Hmm. 7.2 Yeah. crores. Yeah. He's a keeper. 10 batsman. crores. 10 crores for 10 crores Spencer bid Johnson. for Spencer Johnson. I think Gujarat will go for him because they have a lot of money and they need somebody. Both the to- teams have a lot of money. Obviously, But in comparison, logically, Gujarat DC have needs higher him more. amount of money than Gujarat DC. have more money. Yeah, they have more money. But yes, DC needs DC him needs more. him more. Because GT already have Joshua Little also. Yeah. And Yeah. he did a reasonable Decent job. job. Yeah, he's a good ball. But you need backup, and I think DC have pulled out. DC have pulled out. Yep. Yeah. हम चाहते हैं कि गुजरात 10 Weren't you crore खर्च करे. expecting this, Chetan? I have Spencer Johnson? 10 crores. 10 I have crores. no idea who he is. Left arm pacer. From Left arm Australia. pacer, that's all I know. Adelaide born, 28-year-old. That's what Google Maybe told me. he'll immediately. register his 28-year-old, name in everyone's 28-year-old. book this IPL season. Maybe in the next Maybe. IPL season, got him. we'll be talking about him. They've got him. And yes, Spencer Johnson has been sold to So- Gujarat Titans for 10 crores. Now So we have to replacement watch. of Yash there? No, Mitchell Starc. Mitchell No, Starc. no. अरे left arm pacer no. So He's gone now to we have to GT. see. Now we have to see कि 24 करोड़ के स्टार्क काम करेंगे या 10 Yeah, करोड़ का. that's Spencer. Spencer Johnson. But he's gone to Gujarat Titans, right? Yeah. Well, this is interesting, Sahil, that how teams plan and then they invest money very, logically. Kaimal Mills. I hope he's unsold. This part of With the that auction base is price, he should be is unsold. one Overrated. part where you 1.5 kind crore, of yeah, very over. get a sense of It's teams his flexing time. their auction purse muscle. Huh. Because right now GT He and played on ODI against India. DC this both year. have that Ever. purse to kind of exercise that domination on the table. He And that is what you are going to look Spencer Johnson. from teams who actually need certain Indore. set Yeah, of he did. players. For before the World Yeah, Cup. and this is where business part of जब IPL वो इंदौर comes में in. You बहुत really खेला, need पहली to बात. put in Wasn't he good the bowler business who got hit for minding some runs? skills there, Correct. He to was the one buy who got hit players for and to some buy runs. players Yeah, at a cost yeah, that yeah, on will be debut. very effective Yeah, for your team. He's the one. Correct. who- Spencer Because Johnson got they- hit for most runs on most debut. runs in ODI debut. ODI debut. Indore That में. was a record, no? I guess. And that fetches you 10 crores. So, इससे बड़ा example, 5 sixes and you fetch 5 crores and so Who against wants someone Adam who is Milne now? You win a World Cup, you get 20 crores. The economy that's says still RCB. reasonable. Adam Milner. Adam Mooney. RCB 9.47. Unsold. नहीं. It would be a good buy for Should RCB. be unsold. He would be a good buy for RCB. The base price is 1 crore. Very good So- buy. Unsold. बोला मैंने unsold. Yeah. No, but he would. I don't know. 1 crore pe he would have been a decent buy for somebody who needs a overseas pick. But RCB at this moment, do they need another overseas pick Overseas that pick, they can't exactly. pick? I don't know. Lance Morris. Lance इनका Morris. बहुत नाम चला था. Yeah. कल शाम को हम जब preview कर रहे थे. Yeah. Another of those bowlers who gets that nice bounce, who has a good Yeah. performance in the Big Bash. There's a lot of chatter in the Punjab Kings side. Punjab already has fast bowlers. Harshal Unsold. Patel, Rabada, Arshdeep Singh. No one's looking Nathan quite Ellis. in- Unsold. unsold. सारी auction यही होनी चाहिए. Accelerated. Mustafizur. Unsold. Massive base price. 2 Who crores. is his agent was? 2 Who crores. has recommended him my a 2 crore God. base Oh, there's a price? bid. There's a bid. CSK. And Chennai CSK. Super CSK. Kings. CSK. Left arm pacer. Mukesh Leaving Chaudhary Akash Singh and getting Mustafizur.
Mustafizur, now Dhoni will turn his career around. and Mustafizur Rahman will become the next big story. But then Chennai Super Kings have only 3.20 crore with them. So they have 2 crores So, base price. Yeah. They don't need So they to- might take it. Yeah, they have. Two They crores have base taken price. him for 2 crores. See, I had said that they'll go for Josh Hazelwood, but Josh Hazelwood ka availability ka issue hai, Yeah. right? So from that aspect, Chennai they में need, totally different bowler. no? yeah, but you still need you need an overseas fast bowler. That's what I'm saying. They're not going to play him every match. Yeah. वैसे ही 7 मैच तो वो नहीं खेलेगा. So 7 match away from Chennai, he might be able to play. ठीक है? So those 7 matches also, if he can play 4, that's good enough. Yeah. He's So an the option. maximum He's an purse option. is with Delhi Capitals now, Richardson 13.15. has a pick. 90 lakhs किसका बचा है? That's of Rajasthan Royals. They don't need to do anything. Why are they Delhi bidding for Jai Richardson, boss? Kotla mein khelna hai. No, he's a. But they are He different can be- bowlers when they play in a different. Yeah, I jersey. know. But RCB is also going for Kyle him. Jamieson is the biggest he's- example of that, right? RCB No, is also no, but- going after Jay Richardson. I mean, Chinna Swami pe to mati judge karo na. But my point is, Jai Richardson can be very controlling on his Yeah, day. has good slower ones also. He has very good variations as well. So for Delhi, I can understand. RCB, I don't. And there's a bidding war between the two. Yeah. दिल्ली कैपिटल्स तो आज मेरे को वो बॉर्डर का सुनील शेट्टी का याद आ रहा है देख के वो एमएमजी संभालते हैं ना हर चीज में बिडिंग वॉर हुआ है इनका तो यही करते That पैडल has been छोड़ा the ही trend with नहीं Delhi they've Capitals. like They always changed do so. they probably have changed 4 paddle raisers Kiran Gandhi Mr. Gandhi was doing it once Rishabh Pant had it Ponting had it Everybody is having a good time Yeah. raising them. I mean, he was unsold, right? Huh. So he's come back. Accelerated. Wow. Imagine being unsold and coming back and then touching 5 lakh going forward. No, Five because crore. the thing is कि उस time पे if you, for example, if you can get a Mitchell Starc, why would you want a Jai Yeah. Richardson? So they were preserving money for that, but they didn't get Mitchell Starc. Hmm. They were trying to spoil Mumbai's party, but उनकी खुद की party भी spoil हो गई. So now they're coming back for Jai Richardson. So I guess from Praveen Amre has survived what happened? from that support staff thing Seems Delhi Capitals will take in Jay Richardson. Yes, RCB are out. RCB are out. Yep. So RCB Delhi will will get a Delhi bowler. will get Richardson. What happened? I don't know what he heard. Yes, so Richardson has been sold to Delhi Capitals for 5 crores. It'll be interesting to see who's the next player in the accelerated auction. Rishabh Pant is. No one to say. Well, this is an interesting round, you know, the accelerated round, because players come in, they go up fast, and we have seen some really good buys as of now. Especially, we were talking about Jay Richardson. He's been sold to Delhi Capitals for 5 crores. This is something very interesting. And we talk about Spencer Johnson. Yeah, we have first bid for Nuwan Thassara. fact, Nuwan second. Thassara, base price of 50 lakh, 50 and the bids lakhs. going RCB between and KKR. RCB and KKR. Yes. Spencer Johnson got a really good deal, you know, of 10 crores. And so did Jay Richardson as well. Right now, we're looking at Nuwan Thassara. Current bid is of 85 lakhs, and the bidding war is between RCB and Kolkata Knight Riders. So, I mean, Kolkata Knight Riders had the maximum slots before this IPL auction. You know, they really need to fill in. They really need to change the whole dimension of their squad. They have already did so by getting one big player. They have gotten stuck. But right now, what must be their strategy? You know, get players who can just make up the combination. Mm. Because, you know, coming before the auction as well, they had the players, right? You know, Shreyas will be leading the side, Nitish is there, Venki is there, Gurbaz is there. So they had certain players. Also, you can't really rule out someone like a Russell and Sunil Narayan out Mumbai there. Indians have also entered in this bidding war. Nuwan Thassara. Fast bowler. RCB is there.
RCB is there, Mumbai Indians are there, and And now Kolkata there's a Knight bidding Riders war. have backed out, I believe. KKR have backed out. Yeah, KKR KKR have. have backed out. Mumbai Indians are looking quite interested in Nuwan Thushara. Oh, that's something interesting, isn't it? That's again very huge amount, Sahil. Fast bowlers For are in fast bowlers. demand, boss. Demand, yeah. Sahil Clearly. said that from the first go, you know, that you keep your eyes on all the fast bowlers. They'll be the ones who will be taking in a lot of money in this IPL auction. Yes, the two have crossed the 20 crore mark, and right now we are seeing at one who has also crossed the 4.50 Barik Kushagra, crore. I don't think so. There's anyone else who's crossed 5 CR mark apart from the RCB out. bowlers. Samir Rizvi, Samir Rizvi, Samir Daryl Rizvi. Mitchell. Daryl Mitchell, Samir Rizvi, and that's it. Yeah. Rovman Powell. A fun chatter going between RCB and Mumbai Indians. Must be talking about the strategy to go ahead. Or are they making up a deal just before putting up that paddle? Mumbai have got him. Mumbai. got him. Oh. 4.8 crore. Seems like the conversation worked, isn't it, Chetan? I mean, maybe they were asking them कि अगर if आपको pull out ही करना था तो इतना ऊंचा क्यों कर दिया price? I don't know. Maybe. Maybe that happens a lot. With But I MI. think There's all a- the teams should discuss that with Delhi Capitals after the auction. I know, then. right? But this was RCB and. जरूरी नहीं है चेतन भाई ऐसा हुआ. Oh, that's interesting. But yes, Mumbai Indians got Nuwan Thushara, and now we have Sandeep Warrior at base price of 50 lakhs. Not a bad choice for a backup For a seamer. RCB RCB are can discussing go. something. 78 lakhs for him, Sahil. Unsold. And Unsold. Wasn't a bad choice. Brings the ball back in. Yeah. Good bowler. Mhm. But the problem again was Luke the base Wood. price because he's no longer uncapped player. I haven't. He played for India during that Yeah, during Series- COVID Sri Lanka series, right? under During the Shikhar COVID. Dhawan. Yeah. Shikhar Dhawan, I yeah. haven't seen much of Luke When Wood. we had a problem of making an 11 Yeah. eventually. You would. They could Doesn't have seem taken that any team is RCB could interested have in taken him. him for 50-60 lakhs. Yeah, they should have. Handy bowler. Swastik Chigara. Should get a bit. Another Swastik Chikara. UPT20 product. Okay. Opening batsman Mhm. hits the ball long. Is that base price of 20 lakhs? He attended trials for almost, I think, every franchise this season. Both him and Samir Rizvi. Rizvi, I'm not sure went to all franchises, but majority of them. Mm. Yeah. Unsold. Unsold. But we'll see more of him in future. Wasn't he one of the favorites among the young Yeah. ones? Yeah, he should have. He should have He got a should bit. have got. It's Ritik currently is the well. accelerated round going now, and we're looking at players Right. who have been Surprise. priced at a much No, they lower always value and ask getting you good for deals in Is this round mein they do. accelerated rounds. These No, players usse were pehle nahi unsold in the Usse pehle first bhi nahi round, and right now they're again in front of the teams. And now some players have gotten really good deals, and right now we have Ritik Iswaran on our screen at base price of Even 20 for lakhs. the Let's see main what list, happens there the to only this players young they want player. come. Yeah, I know. So no, He's been even if unsold as well, all 300 and players don't come. Yeah, some I good know. buys that have happened so far, Sahil, have done really well in the domestic. Do you think that, domestic performances, consistent Singh. performances are really One important? name who has been flashing since 8 years now. I hope he gets a bit. Tell us something about Himmat Singh. Himmat Singh is favorite to lead Delhi in Ranji Trophy this season. Okay. But again, his returns in white ball cricket, except the list A format in T20s, haven't been that great. But he has been attending trials like since 7-8 years now. Almost every franchise he has been going to. Okay. Yeah. But again, unsold in Yeah, this unsold. auction as well.
दिल्ली के सितारे अभी ठीक नहीं है लड़कों He में. should have been an Australian. Who? He should migrate to Australia. And Shashank Singh up next. just a joke. I mean, they're spending 20 crores on Australians. हमारे 20 लाख वालों को भी नहीं मिल रहा है. ये jealousy आ रही है. नहीं, just a हमारे point. वालों को नहीं मिला, बाहर वाले ले गए. हाँ, It's like obviously. BCCI का कोई ऑफिस बेयर रिट्रीट होके बोल रहा है. हमारे पैसा हमारा, प्रोडक्ट हमारा, पैसा बाहर No, वाला I mean, लेके जाएगा. नहीं, if you hear the story, I mean, obviously he's a decent player. Can bowl and Shashank bat. Singh as well. Yeah, unsold. So Unsold. my point is, 20 lakhs is nothing, right? When you're spending 20 crores, and these kids are going to different Sumit Verma. Sumit Verma They're up going next. to like Sahil said, he's been to 7-8 camps. तो किसी ने कुछ But नहीं देखा. then, Chetan, He's in line to lead Delhi, और किसी franchisee ने कुछ नहीं देखा उनके वो अंदर. that's the There's problem. a That's the different thing, right? So, format. no, I know, but are you And telling me also there Sahil is leading Delhi is No, a no, different story. no, but I'm saying no, but he's still good enough to be in Yeah, to be in that Yeah. league probably. But my point here is, are there no other red ball players that have been picked up? That's not true, right? So, but then my I feel point, that what I understand it's all market dynamics. I'm just saying, I'm just making a point that 20 Yeah, agree lakhs to what mein, you're saying. Yeah. you know, like we were discussing earlier also, okay, for these players, there needs to be a different category or a different selection system where at least they are part of the system in some way. You know, 20 lakhs is nothing for when you're spending 20 crores. But Chetan, So- I think that is exactly why you have Ranji Trophy and Syed Mushtaq Ali Trophy. For them No, to I'm be talking part about the of IPL system. No, but then Talking about the- IPL can't be a the same- freebie for the- players like No, these. the same thing that what Srini said. You are in the IPL because you have taken that next step. Maybe you would We're just not wait talking for about playing domestic in the cricket. IPL. No, We're I'm talking not- about being a part of the franchisee in some manner, part of the club. But why would in you a way. carry that big a load? But Sahil again, and That's Chetan what we've been discussing. I think there's But why? The there whole has idea to of be- IPL is to filter out. make a point. okay, so just look at this. It's your argument that I'm taking forward. No, I mean, see, at the end of the day, the franchise has to see merit. If the Exactly. franchise is not seeing merit, then there is nothing to be And said. Shani, ऐसा नहीं है कि uncapped players को You पैसे नहीं become मिले. you become You part look at of the. Sameer Rizvi, you look No, at Kumar no, I'm Kushal, saying they are getting money. You become part of the IPL. You have to see merit. If Yeah. there is merit, then continue. अब ट्रायल में है तो समीर रिजवी 20 से 8.5 करोड़ गया. Umran Malik became Umran Malik Yeah. because of the Because- IPL Yeah. only. Even And I think- Shah Rukh himself. Shah Rukh yeah, Khan Shah himself, Rukh yeah. Khan. you know what Graeme Swann said in the earlier part of this live made a lot of sense. He said that, if team sees spark in a particular player, Yeah. they'll go after that player. It doesn't matter what base price he is coming at, So they'll definitely go after that player and they'll buy him in. And even if for a matter, they don't get that player, they'll make sure that they raise that paddle for that player so that the other teams get to know that, this player is of some merit and let's have him in our team. So I think Okay, talking about Australian players only, na, Pat Cummins got 20 crores, Steve Smith is still unsold. exactly, yes. So that makes a lot of sense that you really need to play well. And that's what Sahil clearly mentioned. That's why domestic matches and domestic tournaments are so important, that you show your talent, you show your hard work there. You do come up with good skills and you don't show those things on field during the domestic tournaments, then it doesn't make sense, right? Exactly. Boxing thing. Nahi, No, he PK. this was he was trying to make a flying tackle. He was trying to make a flying tackle. Actually, जो उसने डुबकी So मार के exactly, Yeah. It's called we उसने just flying saw tackle someone मारा. like a Shubham Dubey. Yeah. The He defender got the bid under which it. he got, but That's in called the that Dubki. same Vidarbha squad, you had So that players was a like Dubki Karun Nair, defense. Dhruv Shore. That's what I But was there, marveling at. He's Karun like Nair flying has been tackle मारा, unsold. but the Dhruv Shore's defender name hasn't popped up yet. dived in Shubham Dubey and got a escaped. bidder because he scored runs at a strike rate of 190 in the Syed Mushtaq Yeah. Ali Trophy. He's 29, but he's serving the purpose for one of the franchise. He was the highest run getter for Vidarbha. Yeah, and Right. he's scoring runs Wait, at what is a happening? strike rate of 190. So I think I that is think what it's over, right? not Auction over. is I over? think. No. No. No, we have moved on to the next. Auction is over. It says accelerated auction in progress. Channel. Well, Naman Dheer has been sold to MI again. No, not again. But yes, he's been Channel. sold to the MI.
Okay, the bidding is going on, and Sumit Verma unsold, as we were earlier talking about him. Harsh Dubey is unsold. Anshul Kamboj to Mumbai Indians at base price of 20 lakh. Great. He's a good pick. You tell us something about Anshul Yeah, Kamboj. he was a net bowler with RCB. A couple of years back, has been a part of that Red Bull campus cricket, and also gave trials for Rajasthan Royals, and now he's been picked up by Mumbai. And he was a part of that MI trials as well. Okay. So now he's been He picked was up for RCB camp. RCB camp. He was a net bowler for RCB and good bowler. Bowls really quick and had a fantastic Vijay Hazare. Picked up 15 odd wickets. Had a good smat as well. Yeah. Didn't get to play a lot of games then, but in the Vijay Hazare, because of the combination and everything, he got to play a lot of games and picked up 15 wickets. Had a very good economy and average. So he and along with him, Sumit Kumar, both of them for Haryana, who have been crowned the champions. So a good pick, a good steal, and I just hope he gets some games because that's the stage now he needs to move on to. Yeah, and it's good, that such young players do get a He's team in young. the IPL. Tanush Kotian has been unsold. The Mumbai spinner. Yeah, because he's suspect action also. No? Okay. Yeah, he has that action problem. Mumbai off spinner. For a long time, he has been like repeatedly called out for action. In and out, yeah, just because of the action. The auction is going on and we're talking about the players, some unheard names that'll perhaps be known in the upcoming IPL season, and that's the beauty of IPL. We get to know some interesting names in the auction, and those players, when they come onto the ground, they show their skills and they show their talent, then they become known faces to each and every person in the country and outside the country as well. We were talking about Anshul Kamboj. Soumya rightly mentioned, how he has been in the domestic circuit, and now Mumbai Indians have taken him at his base price of 20 lakh. But there are some players who've been unsold so far, and it's going to be interesting, this auction moving forward, how young players will get in some good teams. Right now, the last name that I can see on board is of Anshul Kamboj. Okay, no, we have Sumit Kumar. So I was talking about Sumit Kumar. He's gone to Capitals for 1 crore. 1 crore. Good buy. Great. Good buy. Very good buy. Very good bowler. And Delhi Capitals and KKR, they were in the bidding war. Played a massive role in Haryana's final victory. I think you should now stop saying Delhi Capitals. You should say also in the bidding was this. Delhi is there. Delhi is there. Delhi is there. ये थे साथ में. Delhi तो था ही था. Coming to Sumit Kumar, he played a massive role in Haryana's final win in Vijay Hazare. Picked up 3 odd wickets or top 3. That included in-form Deepak Hooda. So, and I think he but Delhi Capitals and he also picked up 15 wickets in total. They have done this so far in the auction. They just they up the price and then they go back, and that's how the other teams are like, okay, ठीक है, अब 1 crore लगा देते हैं, 2 crore लगा देते हैं. But a good one, I believe. सौम्या, आप ही बात कर रहे थे सुमित कुमार के बारे में जब हम अंशुल कंबोज के बारे में बात कर रहे थे, and Sumit Kumar picked up 15 odd wickets in Vijay Hazare recently concluded. I think he's a long hitter of the ball. Lower down the order with the bat. He can bat as like well. meaty blows. We have 2 other players now. Kamlesh Nagarkoti unsold. Not really surprised. And Pradosh Paul also unsold. Sorry? Pradosh Ranjan Paul. He's a Red Bull player for now. I think that's a classic case of how they didn't take care of a bowler who was very promising. Or rather, either they didn't take care or they took care so much that they overdid the taking care part. Pradosh Ranjan Paul, for the longest time that I can remember, he's still not come out of NCA. Yeah. It's almost become his home away from home. Nagarkoti, yes. Pradosh Ranjan Paul is more of a red ball batsman right now. Tamil Nadu vice captain. He led the Tamil Nadu team in the fag end of the Ranji Trophy. Had a great season though in red ball. Yeah, he's a part of India A team. He's vice captain this year. Vice captain this year, yeah. Has a very unique style of celebrating his 100. That was instinctive, kind of a Bahubali kind of a celebration. Yeah. He puts his bat down, hangs his helmet on the handle. Okay. Yeah, and that's instinctive. So I just asked him, like, कुछ plan किया था? नहीं, वो excited हो गया था इसलिए रख दिया. That was his answer. He's very young. Rohit Raidu also unsold in the auction.
I think this is more or less done now. Yeah, Yeah. now they're just like filling the blanks, Yeah. kind of thing. It's over for us, but not for these players, Srini. They must be hoping for at least one bid in the auction. All these youngsters, at least, to get at So least it's a into huge, one it's a team. huge inspiration. Even Yeah. if a player at 20 years of age gets sold at base price, it's about being seen as like, what does a 20, 21-year-old want? Some kind of motivation, knowing Yeah. that he belongs. True. And that's Someone great like in itself. someone like Anshul Kamboj being around Hardik Pandya, Rohit Sharma, and all those Malinga now in Yeah. the dugout. You That's get a lot huge, of- boss. Like I can give you countless examples of players who have returned from just IPL as a net bowler. The kind of experience they've had and the kind of mental improvement they've had and the outlook towards game, that completely changes you. Even if you're not playing in the 11, the experience of being around players, of being battle ready for the battles ahead, it's a game changing experience for these young Exactly. players. Yeah. And it's no surprise that Ryan Parag, okay, people troll him for doing what he does in the IPL. But when he turns up for his domestic side, Assam, he's a different beast, boss. Yes. He plays it for fun. He mocks oppositions. मतलब Okay. वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया, and that's after 4-5 years in the RR setup, playing with the best in the business, facing Trent Bolt and all these bowlers in the nets. बहुत difference पड़ता है उससे. Yes, and meanwhile, Punjab Kings have taken in two players, Ashutosh Sharma and Vishwanath Pratap, both at their base price 20 lakh each. Sahil, tell us something about Ashutosh Sharma. I think it's Chhattisgarh. no? Chhattisgarh. Yes. Chhattisgarh. Okay. Chhattisgarh middle order bat, if I'm Used not to wrong. play for Railways, if I'm not mistaken. Is he the same guy or no? Chhattisgarh middle Okay. order bat for sure. I've heard about Okay, it. and Vishwanath Pratap Singh. No idea about Never heard about him. Too long a name for a very short form. it. Then what do you say for Vijay Kumar Vaishak and Vidvat Kavarappa? But they want Tane Tyagarajan, Hyderabad. Tyagraj? Tyagarajan. Punjab wants him. Okay. The teams must have done their homework quite well. That's why they have gone after these young players. Some unheard This is names. what I was telling all of you. ठीक है, इस बार का auction शायद वो youngsters के लिए होगा after the bowlers. Meanwhile, Shashank Singh also goes to Punjab Kings. Punjab Kings are after some unheard names. I think filling in the blanks. They're just making up the space. They have the bursts. They've got an Ashutosh Sharma, Vishwanath Pratap Singh, Shashank Singh, and Did they get a decent batter? Who? Punjab. Punjab. Yes, they haven't got one. Because otherwise, whatever they do, Yeah. like how much are you going to depend on one or two guys? You need a more stability top of the order. okay, Tane Tyagarajan also to Punjab Kings, that is base price of 20 lakhs. So in this consecutive fashion, they've gotten 4 players. Yeah. Gaurav Chaudhary. Pretty good job done by this auctioneer for the first time. Yeah. Considering it's and I mean I'm the other two auctioneers that IPL has had, the last two, they've like kind of auctioned at the highest level in Europe and UK and everywhere. So considering all that, I mean this is a very fine job. She's a professional auctioneer as well, no? She is? I didn't know that. Is I she? think she Yeah, was the yeah. one She is. who was She- doing Is the she a WPL. For the no, she did WPL as WPL, well. but She did outside of before WPL, I outside think. of the cricket, has she auctioned anywhere? Is she a Yeah, I think so. guess she She's has, a she professional has. auctioneer. What I have heard is that she's a professional auctioneer, Yeah. and No, she's a that's why she got in WPL and now IPL. Yeah. On the basis of WPL, she got IPL. No, as but well. what did she get WPL on the basis of? She's a professional auctioneer. Then that's pretty smooth, pretty cool. No, this is an unheard name. Robin Mins. And
Chennai Super Kings and MI are quite interested in Robin Mins. Wicket The keeper, 21 bidding year mark old. has crossed Robin 1 Mins. crore. Jharkhand. Some tribal connection there. Plays for Jharkhand. What connection? Some tribal they're saying, like comes from a very small tribe or something. Sounds interesting. Which means that both the teams, Chennai Super Kings and Mumbai Indians, have done their work quite well. That's why they are going after him. The only two 1.5. teams. 1.5 CR. And GT. Oh, we have also GT. done our homework. GT enter. Yeah. Yeah, but MI don't have anything left. They have 2 I mean, crore. yeah, they just get 2.75. MI have 2.75 They're ready to crores. put everything on the table. Yeah. पैसे ही नहीं है, वैसे ही खत्म. नहीं है. Okay, so it seems Robin Mins will go to Gujarat Titans for 2.80 crores. Now, this is something interesting. We really need to look for Robin Yeah. Mins. He's a keeper Soumya batsman. mentioned that he plays for Jharkhand, isn't it? And he's a keeper He batsman. belongs He's a to keeper Jharkhand, yeah. batsman. He's a keeper batsman. Oh, SRH are in the bidding war. Huh? It's going interesting. It's very interesting. SRH versus GT And for SRH have Robin put Mins. everything on board, no? They're They are all in. 3.4, They they're need all- one they're player. all in. This has They gone- need this one has gone player. beyond They've that. gone all in. They've gone all in. खत्म बाकी चलो Yeah. इसको ले लेते हैं. What will GT do? GT can go all in. But What then, is you GT? know, have they already- have Arey, actually. GT have already taken it, na 3.6. SRH only have 3.4. हाँ, तो ठीक So है. they just entered for those couple of crores or like couple of lakhs, you know, that's that. And they said, okay, GT, goodbye. Yes, Robin Mins to Gujarat Titans for 3.60 crores. This is interesting. We really need to look at Robin Mins and his performance. It'll be good to talk about Robin Mins, but the auction is also going a bit interesting. It was Mumbai Indians and Gujarat Titans in the bidding war for Robin Mins, and then SRH entered at the very last moment, but finally it's to Gujarat Titans. Next up, we have Bipin Saurabh. Bipin Saurabh, guys, have any of you heard of It's like Bipin Harsha Saurabh? school quiz which I'm facing Yeah. right now. Bipin Saurabh, Robin wins This- this, that, Mara, Dimara. Unsold? I guess the IPL franchises haven't heard about. KM Asif, Rajasthan Royals, Kerala, medium fast. Yeah. He played for CSK. Sunrisers He- Hyderabad He are played having a word. some games for CSK, Ah. right? Yes. DC have the highest purse right now, 10.85 crores. No, I guess that's Punjab Unsold. Kings with 12.35 crores. So that's Punjab Kings, then Delhi Capitals. पंजाब किंग्स के पास स्लॉट कम है, पैसे ज्यादा हैं. साकिब हुसैन. Saqib Hussain. I think it has been a terrible auction for Punjab Kings. For RCB. Punjab RCB. Kings too. For RCB. They haven't got anything. Again, Fast bowler, yes. Fast they bowler. could have done better with. They should have got at Saqib least one. Hussain Saqib Unsold. Hussain plays for Bihar, right arm medium, 4 wickets in 2 games. That's it. But what have these guys got? They just got Harshal Patel. Mohammad Kaif. He's, I think, Mohammad Shami's younger brother. Yeah, Okay, yeah. that's If, interesting. if he's the same guy. He's Yeah, Bengal Shakil, medium pacer. look at the face. Mhm. Yeah, he's Shami's younger brother. Sounds very interesting. They're Let's real see if brother. any team is interested Kuch in Mohammad Kaif Chacha or Wacha not. ka Cousin- bhai something. cousin. Like, but they trained together. Shami keeps on posting about him as well. on Yeah. social media. Doesn't seem He's the that same guy. anyone's interested in him. GT? And yes, probably? he's unsold. So Punjab has got just Harshal Patel and Chris Wokes at the auction. That's it. They did some shopping. No, abhi. No, they Mystic. bought 4 players, no? No, Four but none of them uncapped like players. looked like making the 11. Yeah, So what team have they got? they got the ahead with? players at their base price, and next up we have Abhilash Shetty at base price of 20 lakhs. RCB have got Joseph, Yash Dayal, Tom Curran. Tom Curran.
Akashdeep, Mohammad Siraj. That's it. Ray Stopley. Rajasthan Royals And have Vaishak. 20 with them Vaishak. right now. हो गया ये वैशक कुछ नहीं करने वाले भाई चिन्ना मैं स्वामी गिनवा रहा हूँ बस. हो गया कर्ण शर्मा ना. We have Kern Sharma, no? मयंक डागर मयंक Mayank डागर Dagar. तो भाई उसको पूरा Anuj season- Rawat can also bowl. Anuj Rawat is not playing a single game this season. Next up, we have Gurjapneet Singh. Well, Chetan, quickly, which team has done really well so far? CSK Graeme Swann said the same thing. He said Yeah, that CSK, CSK. I and this think, auction can take them near to the title as well once Yeah. again. अभी think fan if- bias नहीं आ रहा. नहीं Let's ask Srini. He has नहीं, never Yeah, taken even a I don't single know. team's No, name. CSK I mean they had Chennai Super Yeah. Kings. they had a title And Very, you know, very- for a team that Yeah. actually did so badly in the 2 years back. 2 mega years auction, back, No, I mean they've look, really kind had of a- made up for it by leaps and bounds. yeah, they had Yeah. a title winning team. Raidu retired. Ben Stokes was released. And look at the players they've got. They've Yeah. got Shardul Thakur, who gave them a lot of balance Hmm. early on. Then Yeah. they've got Rachin Ravindra and Daryl Mitchell for, to fill up for Ambati Raidu and all. And I think that's a fabulous auction. Then Yeah. getting Mustafiz was a beautiful auction. They had a brilliant auction. Sensible And auction. Mustafiz- Except that and they have Mustafiz. too many reserves now. I mean, Yeah, I think the problem is going to be sorting the right 11 now. वो धोनी And को playing छोड़ the दो ना, right वो धोनी का वो काम. धोनी पे छोड़ दो overseas ना, players. That is on, वो हाँ, धोनी पे that is छोड़ over दो. to That's Dhoni. on Dhoni. So I think that's a fabulous option for them. I think MI have done decently well. They've Yeah. got those two fast bowlers With the purse they with had. the purse they had. Yeah, they've managed it really well. But I don't know. KKR got their big buy. SRH, I think they have had. I mean, like Graeme Swann said, Hmm. SRH have had a very good player picking auction in a way. But they always What do is that. he in each doing and on the every screen, auction. man? Prince Who? Chaudhary. What comedy? Who is bidding? Prince Chaudhary. Who's Prince Chaudhary? You know him also. Of course I do. This is Who is Prince mockery, Chaudhary? boss. He played some sort of age group cricket for Delhi. And I Oh, know he's the same. अच्छा. who is bidding for him. Just tell me एक बार किसके पास Punjab. bid है? Punjab Punjab. Kings. And They Punjab want have Prince taken- Chaudhary. He's a leg spinner who doesn't turn. Who doesn't turn. Fifth player that they've gotten at the base price, and that's uncapped player. He's the same guy you were talking about the other Yeah. day. कुछ भी होता है auction में. Next Was up, this we have Jataved Subramanian? Jataved Subramanian. Oh gosh. You were It is a talking bid. about, Which means these guys are coming from somewhere. yeah, We have a bid for it. we have a bid. Yes, we have a bid. SRH are bidding for him, and they've got him. His base price of 20 lakh. So Jataved Subramanian is with I think Sunrisers those Hyderabad. now. domestic T20 leagues, like which are Yeah. aired, no, like the UP T20, the Maharashtra League, the Saurashtra. Saurashtra League, they have helped franchises to look beyond SMAT now. Hmm. They've helped tremendously. Like if you talk about a Samir Rizvi एक ट्रायल पे नहीं जाता अगर वो यूपी T20 इस साल ना हुई होती. No one would have seen Samir Rizvi. Like I know for a fact that Chennai Super Kings scout was there watching most of the UP T20 games. So no Wait, wonder tell me, ki, what has the UP T20 league done? Like, could you see the effect of that? Yeah. Like how? so Samir Rizvi, Swastik Chikara, all Okay. these boys who like popped up on the screen. Then UP का जो T20 setup था, like how you know how things work in UP, right? But the way players performed this season, like there was a boy called Atal Bihari Rai. वो auction shortlist में भी था, but उसका नाम flash नहीं हुआ. Then you have one left arm spinner, so people couldn't look beyond Saurabh Kumar when it came to UP. Shiva Singh got the opportunities he did. Yeah. So I think all these, because UP, when you talk about UP, you're talking about a big country. There are so many players that UP T20 league got them all together under one roof, and it was being live streamed. The scouts had access to everything. I think it helped a lot. It And the helped. performances were brilliant. Yeah, the It was- league was top notch. was I think it was. Great league. Now, right now, if you look at Gujarat Titans, they don't have any slot vacant. They have 0 slots remaining, and they also have 7.85 crores with them, which means that they have done a decent job in this auction. SRH don't have And slots. Rajasthan Royals have 5 slots with them,
and they have only 90 lakhs. SRH don't have any slots. GT does. You know who had the worst auction for me? I think KKR had a very Gautam Gambhir unlike auction. This wasn't a Gautam Gambhir auction at all. I mean, I'm still I not don't- this able is- to this is register a the kind of reaction he Horrible gave when they auction got for Starc. KKR, yaar. I just don't reading think. the- I don't think. Kind of Okay. they brought in enough bandwidth. Is Zaid Khan sitting there? Yeah. Yeah. I'll just say this, that RCB's director of cricket has said that we would have liked to have a crack at Mitchell Starc if he had come earlier. Earlier? पहले तो पहले जोसेफ आया था ना, so उसके दो उसके बाद आया था मिचेल तो स्टार्क. डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को ये नहीं पता कि वो स्लॉट लिखा रहता है कि कौन कब आएगा, RCB. किसके लिए पैसा बचाना है. I can't believe he did. ये पहले आया तो हमने यहाँ डाल दिया था. हाँ, आप पहले आ जाते. I can't believe. अगर वो पहले भी आता, अगर वो this पहले is भी funny. आता, would you have given him 30 crores? That's not the point. That's not the That's not point. the point. That's not. That's not the I point. understand what you're saying. Man, like you can't be such a headless chicken, boss. That there's no that. नहीं मेरे ख्याल से बस भी for a change actually wrongly quoted. No, this is from again. If it's from Crick Info, so I. Do you want me to go on? Do you want me to go on, or should I just stay silent? So, No, boss. Prince Chaudhary can't get a bid. What have they done? So auction is over, and we got to see some really interesting bids. And I was talking about Gujarat Titans. They did a good job. For sure. They did a good job. Under new captain. Under new captain. But Chennai Super Kings, they got in really good players. That's that. All said only for the 2024 season. Yeah, I think that's the important so, bit. Most of these kids who got picked, I know how many will actually get a chance to be part of the playing 11, whatever, the first 15, and difficult to say all these things. So I really wouldn't read too much into it. Maybe it's still only getting past the season and then preparing for the mega auctions next year. Yeah. But KKR, I'm very surprised with KKR. Well, let's talk about the whole auction right now, because IPL auction is over, and we'll talk about the wrap of this IPL auction. First up, we will be talking about the most costliest player, Mitchel Starc. We'll also talk about Pat Cummins, but we'll take team after team and we'll wrap up this auction. First up, we'll take in Chennai Super Kings, because Chennai Super Kings got in some really interesting players, especially Daryl Mitchell. Let's talk about Daryl Mitchell and Chennai Super Kings, Sahil. We got Daryl Mitchell in CSK, Sameer Rizvi, again a very interesting name, Shardul Thakur, Mustafizur Rahman and Rachin Ravindra, two New Zealand players. What's so special about these two players, and how this auction has solidified Chennai Super Kings for another season? So Daryl Mitchell clearly for someone like Ambati Raidu and Ben Stokes, and Rachin Ravindra clearly for someone like a Moeen Ali whose availability is still not sure. So I think they fill the right players. They used the right players to fill the right slots available, and it was not mindless auction dynamics at play. They knew what they wanted. They went after it, got it, and right now look the most sorted squad sheet on paper, at least. Absolutely. It looks good that they have done really good work at the auction table today. Next up, we have Gujarat Titans team. Gujarat Titans were the most seen team in the auction today. Srini, what about Gujarat Titans? They have got a new captain, and they really wanted to look forward to some players who can fill that void that was created when Hardik Pandya moved to Mumbai Indians. Do you think that all those slots have been covered pretty well? Pretty well. I don't know. See, Hardik Pandya alone by himself was pretty irreplaceable in many ways. If you were to kind of so I think and outside of Hardik, I would like to think that Gujarat Titans were more or less a pretty settled squad. Finalists, final winners in 2022, finalists in 2023, riding high on confidence. So they have been really good in that sense. I'm sorry. Yeah, they have been really good in that sense in the last two seasons. Yeah, so I'm saying that the momentum itself is good enough to pull them off in 2023, 2024, and give them a good year once again. So I